Day 3 of the third test between England and Pakistan. Pakistan, of course, batting with a huge deficit, trailing by 5-5-5. And Pakistan, and it's 28 for 3. Azhar at the crease along with Asad Shafiq, who played a lovely square drive, punch through the covers for 3. And of course, aapko kal yaad hoga ki the day ended on the tragic, disastrous note of Babar Azam getting caught leg before. This has been played confidently by Azhar Ali. What an important day in their careers. But looks like the ground staff are warming up. Like that bad scene hai. Rain delay is absolutely imminent. But Pakistan 28 for 3 after 12 overs, trailing by 5-5-5. A huge deficit just to stay in the game, let alone the series. So we need about 384 just to avoid the follow-on. So it's safe to say it's going to be an impossible, inhuman task for us to even get close to that. But the ground staff are on the ready. The wind is flying. Intern is carefully but slowly, worriedly looking at the score. फिर फटाफट जा रहे हैं, कहते हैं यार मैं नहीं देख सकता. But here comes Jimmy Chacha back onto bowl to Asad Shafiq. Begin swing around to the pads but just tucked away to square leg. अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही इंग्लिश बॉलर्स को. एंड ऑफ कोर्स जब हमारे वक्त था तो बॉल इधर से उधर नहीं हुआ, और अब जब जिमी साहब आ गए हैं तो इट्स स्विंगिंग ऑल ओवर द प्लेस. एंड वेलकम टू मुसाद अफजल टू द स्ट्रीम. क्या हाल है ब्रो? यार हाल तो कोई इतना अच्छा नहीं है. आपको पता ही है किस तरह के हाल हैं, किस तरह की नींद आई है. Honestly, I would have been completely fine if we went out for 24 for 2. It's that last delivery of the day that kept all of Pakistan up the extra half hour last night. सही बात है. 29 for 3 now. Azhar Ali and Asad Shafiq. अगर आपको याद हो, when we were closing off yesterday's play, this was down the leg side, मैंने कहा था कि if there is ever a time for Azhar and Asad बिल्कुल to fight back, because a draw here would be a massive achievement. They're basically fighting for their careers. Look at that, James Anderson, 596, only 4 wickets away from the 600. And Anil Kumble उससे ऊपर, उसको तो वो उड़ाई देगा. Shane Warne को पहुंचना काफ़ी difficult achievement होगी, but he's by far the most successful fast bowler in the history of Test cricket. Do you think anybody will ever beat that Muralidharan 800 record? यार 800 तो बहुत ही दूर लग रहा है यार. बेचारे 17-18 साल से ये खप रहे हैं और अभी भी 500 पे हैं. वो जिन 800 पे पहुंचा हुआ है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसकी डिडक्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज ही वाज चकिंग फॉर हिज एंटायर करियर, टू बी क्वाइट फ्रैंक. फवाद आलम स्टैन कह रहे हैं, व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ मनकडिंग? आई थिंक इट्स कंप्लीटली डिस्ग्रेसफुल. Is it man-catting or is it munkading? Whatever it is. Okay. Man carrying the Ashwinning. Ashwinning. I think it's a disgraceful act against the spirit of the game. It's basically, it's cheating within the rules. I don't like it. I've never enjoyed it, and thankfully as a Pakistani team we have never indulged in it, and we are strictly against it. So I like that about us. Played away onto the leg side. There's no square leg in place. It'll just come through for a single. I'd like to disagree with that just a tad bit, Khwaja. Now I see that where you say cheating within the rules, that's a bit of a paradox in itself. How do you cheat within the rules? यार एक रूल, एक accepted moral standard भी होता है जिंदगी का यार. Okay, but then why is the batsman outside of his crease? बैट्समैन के लिए कोई moral standard नहीं है. यार तो वो रिस्क भी तो ले रहा है कि वो स्ट्रेट ड्राइव पर रन आउट हो सकता है. That's a very बहुत दफा होता है. आप कैसे कह सकते हो नहीं होता यार? It's a very fine slim risk. याद करो आप. Fahim Ashraf का याद है, Sri Lanka, the Champions Trophy. But I just think that if you're going to hold a bowler to that standard, then you need to hold the batsman too. Edged and taken. There's the first of the morning, straight to first slip. यार ये क्या we're talking about Azhar and Asad redeeming themselves. It hasn't taken long to Anderson to get to 597. यार ये क्या शॉट क्या है? आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो? उधर 5 स्लिप खड़ी हैं और आप अपना बैट बाय डाल रहे हो. आपको हासिल क्या होना था? लुक एट दिस यार, इट्स अ नथिंग शॉट. खत्म करो यार इसको. इसका पासपोर्ट जला दो, उधर ही को असाइलम ले भाई, जान छोड़ो हमारी. It's all happening. इसके फेस मास्क छीन लो यार, बहुत हो गया. ये क्या प्लेयर है यार तुम्हारा? फिर तुम कहते हो 1200 है तो सही, पीछे ले ले 1200 यार. 30 for 4 after 12.5. 7 मिनट हुए दिन के खेल को. हमने कहा यार थोड़ी पार्टनरशिप लगा लो. लोग कह रहे थे हील मेकर यूजलेस 60. इसकी औकात ही नहीं है यूजलेस 60 की यार. शिट प्लेयर मैन. एंड हियर कम्स द सेवियर. आई एम वेंजेंस. फवाद आलम आ रहा है यार. I'm lost for words, Khwaja. I've spent so much of my time defending the likes of Azhar and Asad, and then they come out and play like this. Absolutely horrid dismissal. Did not need to play at that. Did not need to fish at that. And he did.
चलो, और साथ ही उन्होंने कवर्स बुला लिए यार. व्हाट इज दिस गेम हैज बिकम अ फार्स. दिस इज द सेकंड टाइम वी हैव लॉस्ट अ विकेट जस्ट बिफोर द वेट कर रहे हैं कि बस आउट हो और कवर्स बुला लें. अजहर के साथ भी ये हैंड हुआ था पिछले इन द सेकंड टेस्ट और द फर्स्ट टेस्ट, आई डोंट रिकॉल. बट ये देखो विकेट हमारी गिर गई है. यानी तुम इतना भी सर्वाइव नहीं कर पाए कि भाई बारिश हो रही है, मैं शायद 2-3 बॉलें रोक लूँ, लीव कर लूँ. लीव करके बोल्ड ही हो जाओ यार. लीव करो यार. आपने वो लेंथ पे बॉल ले लीव करे थे, आप लाइन पे भी नहीं लीव कर रहे. द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ये 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से भी गंदी इन्वेस्टमेंट थी असद शफीक पे. हमने जो 10-11 साल लगाए दिए हैं यार. बिल्कुल हमने पैसा लगाया और हमें टट्टी मिली है. दैट्स द रिजल्ट. या आई मीन इट्स यू कैन आप ये रियली डिनाई नहीं कर सकते. नहीं कर सकता. नहीं, सही बात है. स्पेशली जब मिसबाह यूनिस रिटायर हुए हैं, उसके बाद इनका टाइम था यार. वो भी तुम सारे टेस्ट यूएई में ही खेलते रहे हो. तुमने कौन से कितने कोई बड़े टूर मार लिए. हद है यार. यू प्लेड आई बिलीव 3 सीरीज एट होम अगेंस्ट श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. उसमें तुमने कख नहीं किया. फिर हमारी होम क्रिकेट वैसे शुरू हो गई, उसमें भी तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. अब हम क्या करें जब तुम ओवरसीज जाके इधर हगने शुरू हो गए हो. Well, there's a rain delay here, folks, but some good news today for Pakistan fans. AZ Khwaja, the great Zahir Abbas, inducted to the ICC Hall of Fame. The Asian Bradman, of course, one of the legends. आप ज़रूर जाके YouTube पे उनकी बैटिंग देखें. It looks so effortless. ऐसे लगता था बिल्कुल कोई तिनके जैसा उसका बैट था. पतला सा. But the way he was slashing and playing those extravagant cover drives, he was truly a masterclass batsman of his era. बहुत ज़बरदस्त. And he has a stunning ODI record. He was way ahead of his time. Yeah. 47 average in ODI cricket, 44 average in Test match cricket. उस ज़माने में जब पाकिस्तान टीम इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी. He played in the late 70s and the 80s. So that was not an easy period for Pakistan. But of course, rain has delayed the play here. So we'll be right back whenever the play resumes. Stay tuned and let out your frustrations in the chat box. We'll share as many of those comments as possible. Stay tuned to Change of Pace.
We're back live, back for the Zalalat, back for the Bisti, back for James Anderson, 4 for 17. और ये 7 ओवर में ड्रॉप कर दो यार. कैसे ड्रॉप करें? 30 for 4 Pakistan. We've got Azhar Ali. यार वो 7 ओवरों में 4 विकेट ले गया यार. क्या कह सकते हैं? What a disgrace. You got the job on a technicality. बांदरों की तरह हंस रहे हो. It's a joke. Bloody Cheshire cats. It's a joke. Inside edge from the Pakistan captain goes to the leg side for a quick single. फवाद आलम at the crease. जैसे बैटमैन का आज ट्रेलर आया है. यार. क्या ये बैटमैन की तरह खेलेंगे या वो जो आर्मी वाली बैटमैन है? I think later on the day we'll get Emma Jr. intern on the mic to discuss the DC release. Because he's a DC fan amongst us. अच्छा अच्छा. 31 for 4. वो टोन तो वही जोकर वाली लग रही थी. आई थिंक उन्होंने फॉर्मूला पकड़ लिया है एक. अच्छा formula. Make it dark and mysterious. I think that's good because it's different from Marvel. Marvel is all this funky, happy shit. But the keyword is shit. I don't mind it actually. फवाद आलम तैयार होते हुए महायुद्ध पे जाते हुए. Mahyud. Fawad Alam. यार वैसे I hope for his sake भाई at least look competent. Don't look like a joke. Don't make our selection of you, our faith in you, feel bad. Comes Stuart Broad on the wicket. Look at that. Nice defense. Fairly well played. Yeah. Not bad. I mean, you and Emma were talking about his positioning yesterday. Again, he gets into position correctly before the ball is bowled, so that's fine. देखते हैं अभी उन्होंने उस पे deep dive तो कर रहे हैं. I hope he lasts long enough for a deep dive. But I It's completely square. I think वो किबला को देख के खड़ा होता है. मैं ऐसे क्रिकेट खेलूंगा भाई. किबला किधर है? It is a holy sport. And Yunus Khan is just like, what in the... Down the leg side, it should get a few runs. Is that runs off the bat? Are those his first international runs for 11 years in Test cricket? No, it's a leg by. Abey yaar. Another disappointment. Still stuck on a duck. No, I think it's just... No, it's a leg by. Let's have a look. This pivot. No, it's off the pads. Off the bat है यार क्या? नहीं pad है. Bad. But a nice gear, some green and white boots, matching his pads, matching the trim of the... बस यही अच्छा है gear. Actually, this is a good point that Junior makes. मौके हैं भाई. हमारी हर जगह vacancy हो रही है आजकल. Everyone has failed, including the great Babar Azam. यार. Opportunity here for Fawad. Ooh, another pitched up ball invited the drive, but well left by Azhar. Huge pressure on him as a captain, as a batsman. I wouldn't want to be in his shoes right now, to be quite honest. Look at that ball in the first test, and the second test, in fact. A straight ball, he just missed it, yaar, and he looked bad. That was a problem. Ye dekho. Yeah, that looks awful. Your front foot is going down to the outside Let leg. me give you a statistic that'll actually increase or add a little bit more validity to the situation that Fawad Alam is in. You know, 4 balls in 1 innings is a very small sample size, but he has been quite impeccable in... Oh, this is a big appeal. Inside edge, though, I think. Again, Azhar Ali falling forward, getting hit on the pads, but I think he got a decent chunk of the bat in there. And Joe Root contemplating a review with his bowler, and he's saying it's going down leg, so they're gonna... Oh, they're taking it. And they've gone upstairs now, which is 2 seconds on the board. Looks very close, and if it hasn't hit the bat, then it's gonna be damn close. I think it's gonna be umpire's call. Yeah. So 48% of Fawad's dismissals since 2015 have been bowled or LBW. That's 15% above the global average. There's no bat involved, that's for sure. But I think that might be it for the Pakistan captain. No, it's sliding down, like out. Mr. Arsenal saying Azhar Fawad ki stance dekh ke out ho gaya. And this will be missing. So the review, the second review lost for him. हम review तो जीत गए हैं. वैसे हमारे भी एक गया है अभी तक. हाँ सही है. We're 1 up on the reviews. और वो भी क्या review था शान मसूद का. Literally ridiculous. It pitched on middle and it was hitting Michael Holding was really upset about the fact that he took that वैसे review. एक discussion कल से चल रही है, and I think it's quite valid कि भाई बाबर की जगह आपने night watchman क्यों नहीं भेजा? Yunus Khan doesn't believe in night watchman. And he's the batting coach. लेकिन वो ये दलेरी के चक्कर में आपके एल लग गए. But यूनुस खान का ये कहना है ना कि बैट्समैन का काम है बैट करे, कभी भी करना है तो बैटिंग करनी पड़ेगी आपको. ये तरीका तो नहीं है. आज सुबह कौन सी ओवर? नहीं, he said that in the past. अच्छा. When he was talking about कल नहीं कहा उन्होंने, but when he was asked about night watchman. कल किसको भेजा था इंटरव्यू के लिए उन्होंने?
I didn't watch yesterday's press conference. मैं तो इतना थक गया था I कल. think अजहर को ही भेजा था शायद. मैंने कल ट्वीट भी लिख दी कि भाई आज रात एक ही काम है, अवॉइड पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया. यार यही तो वक्त है जब हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए. अभी तो सॉरी स्पाइसी खबरें आती हैं. यार स्पाइसी खबरों की आप बात करते हैं ख्वाजा, कभी कभार तो दिल चाहता है कि ट्विटर के अंदर घुस के चपेड़े मारो लोगों को. एक कल ट्वीट आई उर्दू में, ऑगमेंटेड रियलिटी ट्विटर हो. एक कल ट्वीट आई उर्दू में कि बाबर आजम की जो है टेस्ट मैच में फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि उसकी इमामुल हक के साथ दोस्ती है. यार बंदा क्या बोले यार. उर्दू मीडिया इज टॉक्सिक एज हेल. अच्छा फवाद फवाद, वाई फवाद. सही है यार. असद शफीक की आप बातें सुनना चाहते हैं? टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मैं किसी की बातें नहीं सुनना नहीं, चाहता. उसकी तो स्पेशली नहीं मैं सुनना चाहता. द बिगेस्ट फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. आई कैन कंफर्टेबली से दैट. 32 for 4, Fawad Alam gearing up. 0 of 3, still yet to Fourth get off the ball. mark after his comeback. 4 slips in place. वेल प्लेड. Nice ठीक है defense. यार. जस्ट नीड्स टू गेट ऑफ द मार्क यार, ऐसी कोई बात नहीं है. रोशन फेज कह रहे हैं आई थिंक वी शुड हैव पुट अ नाइट वॉचमैन बट आई थिंक फ्रॉम आवर टेल ओनली रियली यासिर कुड हैव सर्वाइव्ड द बॉलिंग. दैट्स वेरी ट्रू. इसमें कोई शक नहीं, वही है थोड़ा बैट्समैन टाइप. He's asking how we are. We are miserable. We are distraught. We are dying inside. वी आर वेटिंग फॉर बाबर टू बैट अगेन. यार बाबर ने इस सीरीज में 150 किया ख्वाजा, हम क्यों उसको इतना हाइप कर रहे हैं? यार क्या हो गया यार, ऐसे तो ना को. It's been a tough tour for him. यार आपने कंडीशंस नहीं देखी. Walking across his stumps. वो भी उन्होंने अभी स्कोर किया ना. उन्होंने कौन से रन्स किए पूरी सीरीज? उन्होंने जब रन्स किए तो ऐसे थोप के रन किए जिस तरह कोई बफेला का हो. 256, 152 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने. हाईएस्ट फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप फॉर इंग्लैंड इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. यार ये बात तो सही. मजाक है. गोपी मियां कवाल पूछे डू यू गाइस थिंक इफ पाकिस्तान हैड प्लेड इंग्लैंड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ वेस्ट इंडीज वी वुड हैव वॉन. But England played really well in that series. No, but let me be honest. Pakistan have not been bad. Last 2 days have been horrendous. But the first test Pakistan were really good. Won. And the second test for Pakistan again, they had England 91 for 4 after scoring 235. The chance definitely, yeah. Follow on and Babar 300. बहुत Let's बच्चे get हैं it. यार, बहुत बच्चे हैं. इनको जब बारिश चाहिए थी इनको बारिश मिली. इनको जब बादल चाहिए थी इनको बादल मिले. इनको जब धूप चाहिए थी इनको धूप मिली. It's been that kind of series for Pakistan. Take nothing away from the likes of Zach Crawley and Joss Butler, though they did bat phenomenally well. यार 256 करना, उसमें एक एज जब उसका लगा है, वो 200 रन जब वो करा था उस वक्त एज लगा है. That is really special. 267 यार तोबा. और है भी 20-22 साल का लड़का है यार. 22 years of age, Zach Crawley, the crawler, the creepy crawler. James Anderson, 4 for 16. Oh, but I think Fawad Alam's off the mark in Test cricket after 11 years. There it is. Remember the name. Big moment for him, and he looks up into the heavens and thanks to skies. 11 years in the making was that single. क्या बात है. You just can't write this kind of story. Even Disney couldn't come up with this. But 33 for 4 Pakistan. Let's get back to reality now. Goodness me. Trading by 550. Jonathan Trott in the. Trotto. He's done a decent job, don't you think? You reckon? यार we had them under pressure for most of the series. Even the West Indies ने इनको 2-3 दफा उड़ाया है. तो बस वो कंडीशंस भी ऐसी हैं, क्या कह सकते हैं. ओवरसीज इनका पता चलेगा. Jimmy Anderson left alone by Azhar Ali. अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं यार ये ऐसे क्यों लग रहा है कि फवाद के लिए बाउंस कम है, उसको थोड़ी सी कम बाउंस पे बैट नहीं चलाने में मुश्किल हो रही है. यार मसला ये कि उसका स्टांस ही ऐसा है कि ही लुक्स लाइक वेरी awkward when he's playing the ball. But he looks awkward, just period. He's an awkward point blank. ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कल ही क्रिकेट बैट उठा के आया है. But it works for him. Yeah, whatever. Let's hope it works for a couple of hours so he can get a big score. या पूरा दिन ही खेल जाए भाई, क्या ही बात हो जाए. But Jimmy Anderson 4 for 17, unbelievable, and only his first spell of the day. Left alone by the Pakistani captain. Azhar looking relatively okay at the crease. 6 Man, of it 32. is so important for Azhar to get a massive score here. यार कम से कम आप कोई 50-60 तो करो कि हम कहें यार चलो लड़ा तो है. बाकी तो ऐसे ही बिखर के. Like a house of cards. What do you make of that show, Quadra? यार अच्छा था जब तक he didn't get cancelled. And I honestly. But थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ridiculous हो गया था. प्रेसिडेंट होने के बाद ridiculous हो गया था. उससे पहले मज़ेदार था जब वो प्लानिंग में लगा हुआ था. I thought it was fine even with that, but I just felt like after he left the show, it was a disaster. वो तो खत्म हो गया ना फिर वो तो सारी. By the way, it was the steepest plummet
for any show in their final इतना season. highly rated show था वाकई. Yeah, it was really strong. I mean, man, people were asking about the show to Obama in press conferences. That's how important and how mainstream the show had gotten. I think it was a lot better than Game of Thrones. आपने देखा ही नहीं Game of Thrones? मैंने 2 season देखे थे. 33 for 4. Left alone by Fawad Alam. Interestingly, they have put a leg slip in place for Fawad as well, so they might try to get some extra bounce. Azhar has gotten some starts, hasn't made any solid score yet, says Gopi Mia Kawal. Like the second test, first innings. Yeah, he's looking. Chandar Paul Fawad comparison साथ ही शुरू हो गए हैं यार. Both very ugly batsmen to watch, if one can be frank. But look at that leg slip. Ollie Pope. Edged, and I think it's been dropped at third He slip. has been dropped. Some sort of respite for Pakistan. Is Dom Sibley doing the dropping? Unbelievable. You couldn't write this script. What are you Even doing, in Fawad? Hollywood. What are you doing, Fawad? यार इसी लेवल का प्लेयर है भाई. I don't Was think it that. an even No, an edge? it didn't carry. Didn't carry यार. ऐਵੇਂ ही आप लोग हाइप क्रिएट कर रहे हो बैटमैन फिल्म की तरह. बट वेरी ये देखो मसला ये है कि ये जो ये क्राउच करता है ना, he doesn't go Spider-Man forward और बैक. stance. आप एक चीज करो ना, या तो आप पीछे जाओ या आगे जाओ. ये उधर ही टांगे फैला के खड़े हो जाता है. Oh. And that's not good for you. It's not good for anyone. Especially if the ball short. जब आप क्राउच में फंसे हुए होगे तो फिर आपको डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा. 33 for 4 for Fawad again. This time falling over in his front foot defense. But I don't mind the industrial batting. यार ये इंडस्ट्रियल नहीं है, ये केमिकल वॉरफेयर वाली बैटिंग है यार. Pakistan 33 for 4. They lost the wicket of Asad Shafiq this morning on a delivery that he should have been leaving. यार Got the outside edge. what he should be leaving is this test team. Honestly, Khwaja, अब I think cannot अब उसको argue decision against. ले लेना I don't चाहिए. think I can argue against that. I think जज Haris. साहब अब आप वर्डिक्ट दे दें. I think Haris Sohail for Asad Shafiq. हारिस सोहेल तो 100% यार बहुत हो गई है. लेकिन मसला ये हम फिर भूल जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड का नहीं टूर नहीं ये है. नहीं अब कोई भूलेगा. Big appeal, and this time I think it hit Fawad too high. He's Right. just, to be honest, Khwaja, I mean, you know, you and I, we've talked a lot about the Fawad comeback, and his numbers in domestic have been great. And again, he's only faced Gara deliveries here and 4 in the last time. But he's, to be very honest, like you can tell sometimes if a batsman looks comfortable at the Test arena, He doesn't. he's not looking comfortable right now. And maybe that'll change if he bats a little bit longer. Hopefully that does. But right now, he's looking at a fish out of water for me. Especially in overcast conditions in England, वो तो definitely is not his cup of tea. But let's see यार, अभी भी very early in his innings, कुछ भी हो सकता है. Musab is saying if Azhar doesn't get a big score in this innings, then he shouldn't worry because he'll have another chance to bat in approximately 2 hours. Whoa. Whoa. यानी 2 घंटे की भी हमारी बैटिंग नहीं है. This time clipped away onto the leg side, and it'll go to square leg for a single. Jofra Archer doing the fielding. Imagine Jofra versus Fawad यार, मजा आएगा. See, now I think the true bounce that Jofra will get will actually help Fawad. यार he doesn't look like the यार अभी इसका तो कमेंट भी नहीं कर सकते इस The पे. thing is, he's also a very skinny lad. तो वो मोटा होता तो उसे क्या होना था. No, I mean, in terms of there's literally no muscle around there, so it feels like. नहीं तो आपकी भी कोई जिद्दी होगी कि आपने अपना टेक्निक नहीं बेहतर किया ओवर द कोर्स ऑफ 2006 14-15 साल I का think इसका करियर है यार. I think in his mind it's probably like if it's not broken, don't try to fix it because he's gotten runs right in the cricket that he was playing. Azhar Ali this time. This is a much लेट हो रहा है वो सीधी बॉल पे. वैसे मैं आपको ये बात बताऊं कि even with this massive technical flaw with the LBW Azhar, जब अजहर आता है बैटिंग करने, it's like a breath of fresh air. There's a lot on the other end. गोपी मियां कवाल करें. हारिस टेक्निक सस्पेक्ट स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्पिन एंड पोक्स. हारिस का ये है कि उसकी बैकफुट गेम वीक है, वो बैक ऑफ लेंथ वो उस पर कंफर्टेबल नहीं है. जो मुंह पे उसको आगे बॉल दो उस पर बहुत कंफर्टेबल है. आपने देखा वो इंग्लैंड में पहले भी स्कोर करता रहा. इज़ ओके ऑन दीज यू नो फ्रंट फुट पिचेस. जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पीछे से खेलना पड़ता है वो उससे नहीं खेला जाता. और शान मसूद का भी यही था कि भाई फ्रंट फुट पे तुम खेल सकते हो. हमने वी थॉट ही वाज मेकिंग प्रोग्रेस विद दैट बिग इनिंग्स. फिर उसके बाद हमने वही देखा, थोड़ी सी बॉल आगे कराओ. Look at Safraz Ahmed doing the running, doing the सिक्कू भाई look at the water boyism. स्वेटर भी पहना और उसके ऊपर भाई क्या ठंड है यार, 18-19 डिग्रीज है. Nice defense from Azhar Ali. They're really testing his front pad कि भाई थोड़ी भी इधर उधर हुई he's a goner. रेलू कट कह रहे फवाद स्कोरिंग 50 in this match and ख्वाजा साबिर को मैंने सेंचुरी पे कहा था. 50 पे नहीं कहा था. Century पे कहा था. But Khwaja, let me ask you this. It's a crazy idea and I don't think it'll work, but I'm just thinking out loud. जी जी.
फवाद तो चलो ठीक है, अब उसको तो अगले 2-3 टेस्ट खेलने ही पड़ेंगे क्योंकि आप इतनी जल्दी बैट्समैन मसला को ये ड्रॉप फिर नहीं कर न्यूजीलैंड आ सकते. रहा है. हाँ. What do you think about Asad Shafiq being replaced by Sarfraz Ahmed as a batsman? क्योंकि हमने देखा है सरफराज के बैटिंग नंबर्स टेस्ट मैच में they're not a disaster. At least under miss you they were 45 की 40 के प्लस की एवरेज थी उसकी. लेकिन आप वही रिपीट चले हुए कारतूस चला रहे हो ना. व्हाट आर द चांसेस इज गोना मेक रन्स एट 5 बैटिंग इन न्यूजीलैंड? Not many, but who will? आई थिंक यू हैव टू बैक द लाइक्स ऑफ हार. यार न्यू ब्लड लाओ, बहुत हो गया, इनका टाइम हो गया पूरा. सरफराज भी 10 साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट. वो भी कोई पुराना he's played 10 क्या 13 साल. He made his ODI debut in 2015 though, right? He made his test debut in 2010 way back in that on that tour. कामरान ड्रॉप हो गया था सिडनी टेस्ट के बाद. And his debut 2007 में उसने T20 डेब्यू किया था in again South hitting Africa. Azhar's pad high on the thigh. When did he make his ODI debut? He really 2007-8 तब की बात है. because he came onto the scene when he was promoted as opener in the 2015 World Cup. उस वक्त उसकी मतलब एक जगह बनी थी प्रॉपर, क्योंकि कभी कभार आपको डेब्यू मिल जाता है फिर आप वापस बाहर चले जाते हैं. कामरान अकमल भी बीच में ड्रॉप होता रहा है, तभी आता रहता था. और उमर भी टाइम कीपर रहा है. उमर स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में तो द सेफेस्ट बेट इन द हाउस इज विद इमाम उल हक. सबसे रिलैक्स वो बैट है. ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर. कहता है अपना टाइम आएगा. आई थिंक बीइंग ऑन द बेंच इन दिस सीरीज इज इजीियर बिकॉज़ आपके स्टैटिस्टिक्स तो हर्ट नहीं हो रहे ना. इमाम इन द मिडिल ऑर्डर नहीं, इमाम एट 3 यू कैन डेफिनेटली थिंक कि भाई अजहर को अब कह दें भाई. अब मसला ये कि अजहर को अपॉइंट भी, व्हेन डिड वी अपॉइंट हिम? लास्ट विंटर. तो विद इन 12 मंथ्स उसको निकाल दे तो फिर कहेंगे मिसबा तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुमने सरफराज को क्यों निकाला. अफवाहें सुबह चल रही थी. वही जो फजूल जर्नलिस्ट जिसने आपने जिसकी कल ट्वीट पढ़ी थी नाम लिए बगैर, उन्होंने आज फिर से ट्वीट डाली कि भाई खबरें ये आ रही हैं कि मिसबा को निकाल दिया जाएगा चीफ सिलेक्टर से. मिसबा को दे लिटरली created a set of rules just to select Misbah. आपको क्या लगता है वो मिसबा को निकालेंगे? That's ridiculous. Quick single for Azhar Ali there. Pakistan 36 for 4. Yeah, 07-08 series. In that Asia Cup, I believe. But it was नहीं in that tour of India जो हम 3-2 हार गए थे. Very good shout out. Okay, वही मैं बता रहा हूँ कितना पुराना है यार सरफराज भी. ऐसा कोई he's not a young spring chicken. रेलू कट्टा कह रहे शान कैन बैट एट 3. आई थिंक दैट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन. बल्कि इमाम को 3 पे कर लो. Oh, beating the outside edge of Fawad Alam again. Still looking like a fish out of water. थोड़ा सा फवाद को डिसीजन लेनी होंगे. am I gonna come forward or stay back? ये दोनों तरफ वाला just throwing your hands at the ball is not gonna work भाई. असद शफीक ने already proved कि look at that big seam off the wicket jagging away. Ramiz Rambo joining us on the chat saying, do you guys think Haris will be available to play in New Zealand if the same biosecurity protocols apply? What was that about, Khwaja? Do we know much about that? It was just a personal decision. Family issue था. I don't know what's Fair happening. enough. Okay, won't really pry into that. लेकिन उधर उसने भूत भी देखे न्यूजीलैंड में, तो पता नहीं वो जाता भी है या नहीं. The haunted lands. यार अब वो मतलब किसी को इन चीज़ों में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, to be honest. यार क्या हो गया यार, प्लीज. Defended away onto the offside. न्यूजीलैंड में आपको ऑर्क्स और हॉबिट्स और ये सब मिल सकते हैं, भूत तो नहीं मिलेंगे. Get a quick single there. Oh no, coming back for 2. Good running there. And the Pakistanis. नहीं आज पाकिस्तान है, नॉट पाकिस्तान. आज पाकिस्तान है. ये तो जल्दी से खेलना चाहिए. पाकिस्तान. He should be available for that tour. I don't see why भाई. Of course वो कितने टूर स्किप करेगा वो. फिर तो मैं वापस ही नहीं बुलाएंगे, लोग भूल जाएंगे. और भी लड़के हैं. 38 for 4 after 17.1 trailing by 545. असद शफीक साहब उधर बैठ गए अपनी टेस्ट कैप में. भाई आप रिटर्न कर दें कोच मिसबा को और कहें जी अलविदा, मेरा काम पूरा हो गया. मैं भी जा रहा हूँ. मैं अभी से पैक माय बैग्स. सेकंड इनिंग्स में कोई कंकशन प्रोटोकॉल करके किसी को भेज दो. 38 for 4 this time, left alone by Azhar Ali. Azhar looking a little bit better, especially जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर रहा है. वही जो मिडिल स्टंप लेग स्टंप की लाइन है उस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक. When his pad gets in the way. रेलू कटरा कह रहे हैं हारिस won't travel if family isn't allowed. Apparently he doesn't like to travel without family and gets stressed out. तो फिर भाई अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो फिर आप छोड़ दो क्रिकेट. ये चेक करें आप, घर पे ही खेलो. shadow batting of the Rizzler, the Razzler. वाह भाई एयर बैटिंग में तो पक्का 100 है इसका. A class batsman, keeper to be honest. यार अब्बास पे जो उसने कीपिंग की है, डाउन द लेग साइड उसने टेक्स लिए हैं, कैचेस उसने लिए हैं. Really he's been a good keeper. और by the way he's a breath of fresh air, मतलब पॉजिटिव है. Trippy behind the stumps, पश्तो भी बोल लेता है. ये कैसा पॉजिटिव यार नसीम शहीन यासिर कोड लैंग्वेज है.
But how is that a positive? It's nice. It's fun. Diversity. Shadab Khan on the bench. वो भी chill माहौल. Looking like a शुक्र है मैं नहीं खेल रहा. Looking dapper. Dapper to the D. Yeah. Shoaib Malik. Oh, beautiful Whoa, from what a Broad, ball. beating the outside edge of Azharali, squaring up the Pakistan captain. नहीं वो मलिक हफीज और जो है ना वो T20 स्क्वाड है वो होटल में है, वो स्टेडियम में नहीं So है. रेलू कटा थोड़ी सी inside info दे रहे हैं. He has family issues. Can't put here on comments. No stress और भूत issue. चलो I hope it resolves. That's ठीक है फिर यार, वो इस तो पे फिर हम आप ही बिल्कुल बेहतर नहीं- जानते हैं हम बात नहीं करेंगे. क्या सीन है. Real But, question is about whatever happened to Salahuddin. उस्मान सलाहुद्दीन वही एक मैच खिलाया फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया. वो भी काफ़ी देर डोमेस्टिक में खज्जल होता रहा है. ही डिजर्व्ड अ रन इन द साइड, लेकिन वही है उसके लिए अभी तक कोई मीडिया प्रेशर नहीं आया इतना खास. Hoja, do you really think that works, the media pressure? यार आई थिंक टू सम Which selection do you reckon has been made because of media selection? यार Media अब pressure. हफीज़ और मलिक जो बार बार आ जाते उनके लिए हैं मीडिया बोलता है. यार हफीज़ तो कहता है मैं रिटायर होने वाला था, फिर ही वाज गोना कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उसको मना कर दिया और वो फिर सेलेक्ट हो गया. इन द आई थिंक इट वाज he was because he wasn't picked for the Asia Cup, आपको याद होगा, तो वो काफ़ी This throw from Shadab earlier yesterday hit Rizwan on the hand on an awkward position. ये तो मीम बन सकता है शद्दाब को शाहरुख खान पोज में. Good looking lad, Shadab Khan. Oh Good indeed. defense. Finally, that's the first delivery I've seen in his 44 that Azhar Ali's gotten the bat in front of his leg stump, middle stump line on time. लेकिन it just feels very dangerous कि एक भी बॉल मिस हो गई he's gonna be gone. True. But 38 for 4 after 18 overs. Pakistan miles away from England's first innings score, but we're hanging in there. Miles, aeronautical miles. बिल्कुल leagues जैसे वो नेवी में नहीं होता. Exactly. leagues. Ligue. लेकिन शान मसूद still in good spirits. I think he should honestly be in the nets getting ready for the second innings. मजाक के अलावा get in there, अपना फ्रंट फुट निकालो भाई. तुम बार बार नहीं, LBW बाबर का 100 तो होना चाहिए इस टूर पे यार. रेलू कट्टा कह रहे हैं हफीज़ क्रेडिट्स याहिया बेचैनी एंड शोएब अख्तर फॉर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम टेकिंग रिटायरमेंट. तो फिर ये शोएब अख्तर और फिर ये याहिया कैंची जैसे लोग, जैसे टॉक्सिक लोग, इतना बड़ा एक शुक्र है हमसे एक माइलस्टोन होने वाला था वो भी रोक दिया. तो बंदा करे तो फिर क्या करे. Beats the outside edge. Brilliant bowling from James Anderson. 4 for 16, Khwaja. What a phenomenal specimen he is of a paceman. क्या ये 600 कर लेगा इस टेस्ट में? मुझे तो लगा कर आराम लेगा. से भाई. अभी उसके पास 16 विकेट है, उसमें से सिर्फ उसने 3 लेनी है. अभी तो ऐसा लग रहा है he'll take 10 in the first innings. And he already has, I believe, a 10 for against Pakistan in Trent Bridge 2010, I believe that was, when he completely destroyed us. इतनी swing हो रही थी बॉल कि हम तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था in that test. With Jimmy Anderson, one of the greatest of all time, if not the. And again, Fawad managing to get his bat out of the way in time. No ठीक run. है, ये इस किस्म की लीव है. He just brings the bat down. Leave का मसला नहीं है. मसला ये है कि when you're actually playing the ball, you don't fall over. मार्क वुड भी उधर बैठा हुआ है, सैम करन भी बैठा हुआ है. ऊपर से कितने बॉलर हैं इनके पास यार, सीरियसली. और सारे बैटिंग करते हैं. एग्जैक्टली. Take नीचे 8-9 पे आके 20-30 मार देंगे. Take any of them in the Pakistan side, wouldn't you? एंड दैट जस्ट शोज गुड कोचिंग यार, कि आप अपने लोअर ऑर्डर से बैटिंग करवाते हैं. हम क्यों नहीं करवाते? वो क्यों 10 रन में ख़त्म हो जाते हैं हमेशा? Yeah, सही बात है. इट्स जस्ट एप्लीकेशन मैन, नथिंग एल्स. यासिर भाई तो फिर लेजेंड है ना यार. बाकी 9, 10, 11 भी कुल मिला के 20-25 रन अगर रेगुलरली दें, इट्स गुड. टारगेट होना चाहिए एवरी टाइम वी गो आउट टू बैट. आवर 8 to 11 नीड टू गिव अस 30 रन्स मिनिमम. दैट शुड बी अ टारगेटेड गोल कि भाई हम 30 रन हमेशा ऐड करते हैं. That could win and make or break test matches for you. Fawad facing and then gets that bat out of the way in time. He's got an interesting leave. It's like a bit of a pendulum swing from his offside to middle stump, but he manages to get the bat out of the way in time. Apparently some media house saying Shoaib Akhtar is offered chief selector role. ये तो पहले भी हो चुका था इसको. पहले भी ऑफर आई थी. देखिए, Shoaib will not take a PCB job. He's smart. ये कौन था? ये वो है क्रेग मैकमिलन था. I think that's Bashar. है नहीं ये तो कोई गोरा है. जॉर्ज बेली भी एक ज़माने में ऐसे खड़ा होता था, आपको याद होगा. Basharat Hassan has a interesting way to stand, right? बशारत हसन कौन? Basharat Hassan, the guy who used to face. हबीबुल बशर होता था एक. नहीं, Basharat Hassan, he was from Kenya. पता नहीं यार. Let me find the. FHD कह रहे हैं कोई नहीं ख्वाजा साहब, गूफी इज ऑन इट टू रूइन द इंग्लिश बॉलर्स. यार वही T20 में हमें उम्मीद दे रहा है कि वो उधर होगा.
पता लगे अगर वो जीत गए खुदा ना खास्ता वनडे सीरीज और T20 सीरीज, वो गंगूली वाली सेलिब्रेशन कर दे अजहर महमूद, अब बोलो यार वैसे ये तो बहुत ही देशद्रोहीपन होगा. कैंसिल कर दो उसकी ड्यूअल नेशनैलिटी. 38 for 4, last ball of the 19th over. Oh, clipped away from Fawad Alam, and it'll go to square leg for a couple runs. They might come back for 3, होने तो चाहिए and they यार, ये don't. सिर्फ 2 हैं, हद हो गई है यार. But nice कलाइयों का उपयोग there from Fawad. It was on leg stump and just nicely flicked through square leg for 2 runs. 40 for 4 after 19. Azhar and Fawad. I think इन्होंने under 19 तो definitely कुछ ना कुछ साथ खेला होगा. Maybe Azhar is oh yeah, he's a bit younger than him, or is he? ज़रा चेक करो इंटर्न, अजहर अली और फवाद आलम ने under 19 साथ खेली होगी. So it's all come together nicely in 2020. Pakistan a very sorry looking scorecard. 6 for 1, 11 for 2. Interesting statistic from Rehanul Haq on Twitter. He said that batsmen in Test cricket tend to perform better with age. For context, Pakistani batsmen batting in the top 6 average 42.34 after turning 33. However, Asad averages 31.6 and Azhar 26.1 since they've turned 33. So it's been a reverse regression for the two people that were supposed to pick up the mantle. लेकिन आई थिंक इन दोज ओवर 30s कौन है वो बंदे? इंजमाम, यूनुस, यूसुफ, मिसबा. Miandad played till 40, right? Miandad भी definitely होगा. Yeah, he played till 40. Those were the true greats of the game. Na? Literally, they're all I think Hall of Famers. Yusuf also played till 33. Yusuf, हाँ कुछ तो उसकी एज होगी तब तक. Yeah, exactly. Yunus, Misbah, Inzamam, Yusuf, वो तो मतलब all-time great Pakistani batsmen हैं. Hall of Fame level guys हैं, तो क्या बंदा बोले. Defended away onto the मतलब offside. अब आप देखो यार, 70 टेस्ट खेले. असद शफीक will have the most forgettable career ever. कोई भी नहीं इसको पूछेगा. He has the record for most consecutive tests for Pakistan. That is the only meaningless shit record you will have. I think he will never be in a Test 11, all-time Test 11. I think that record is a testament to the mediocrity of this Pakistan side. यार वो हम नंबर 1 गए थे यार दुनिया में, आप कैसे कह सकते हैं? पर उस वक्त वो अच्छा खेलता था ना. Not that much, बस ठीक ही था. अभी भी वही एवरेज वाइज तो वही नंबर्स हैं, राइट? नहीं उसकी 40 का प्लस एवरेज था भाई. क्या हो गया यार? आप वो 33 की एवरेज, मिस यू 37, अभी भी 36 है. यही नंबर्स आ रहे हैं ना हमारे पास. नहीं यही नंबर्स हैं. 30 मिस यू से पहले 37 नहीं था यार. इतना ही था, ऊपर इतना ही था. 1200 है यार उसके. बस ये कह सकता है जी मैंने इंग्लैंड में 100 मारा है, मैंने साउथ अफ्रीका में 100 मारा है, ऑस्ट्रेलिया में मैंने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा है. I don't know, man. It's just disappointing because as a Pakistan fan, you want him to do well, don't you? You want him to succeed. Of course यार, हम उसके दुश्मन थोड़ी हैं. लेकिन वही है, अपने आप को आप improve ही नहीं कर पाए. 40 for 4 Pakistan, a very familiar sight if you're a Pakistan fan. Oh. Yeah, that's actually a good leave, Khwaja. I'm going to say that because it's left on length. बिल्कुल. आप बार-बार अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो वो स्टंप्स के ऊपर से जो बॉल्स जा रही थी उनको छोड़ रहे थे. बॉल्जात. You've got to do that. You've got to. नहीं बिल्कुल सही है. कोई oohs and ahs करेंगे bowlers, but as far as your technique and your concentration, it's absolutely I think fine. honestly, Khwaja, even with this middle stump and leg stump line with Azhar Ali, it's increasingly looking like a mental block. If you can just get past that. सही बात है. The other problem with Azhar, and you can say it's a problem, and hard luck भी बहुत होती है इसके साथ बेचारे के साथ. ये भी है, but the other thing about Azhar is that he's a slow starter in terms of strike rate. I mean, he's not your Babar Azam type of batsman that will get runs right off the bat, you know. बाबर को रन नहीं दो तो उसको टेंशन हो जाती है. अजहर तो मतलब 100 बॉलें खेल के 20 रन करेगा. और फिर बंदा सोचता है यार इसने 15 रन किए, but he's probably played 85 balls for that 15, you know. Yeah. Faisal कहने as a Pakistani fan, I don't want him to do well. Doing well will mean dragging this carcass of a career. वाकई यार carcass बनाते सामने. That's a rough one, but I understand where you're coming from, Faisal. 10 off 49 for Azhar Ali, Fawad Alam 4 off 19. Bit of struggle this test match for Pakistan. Ooh. Both on the pitch and in the field. 20 overs gone. Pakistan 40 for 4. Trailing by 543. Azhar on 10 off 50. So he's really battling hard. Fawad 4 not out of 19. अब ये स्पेल ब्रॉड और एंडरसन का निकाल लें तो शायद थोड़ी सी रिलीफ मिले, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि क्रिस वोक्स who loves bowling against Pakistan and of course Jofra Archer as well has been among the wickets against us.
तो there's no respite, there's no relief. Dom Best तो मुझे लगता है फिर से एक फ्री की मैच फीस कमाने वाला है, उसका कोई रोल नहीं होना इस टेस्ट में. But look at those leading wicket takers in the world. Stuart Broad, he's about 3 or 4 years younger than James Anderson and on 511. Unbelievable numbers यार. आप I don't think आप जितनी मर्जी उनको criticize कर लें या बातें बना ले, you cannot dispute the sheer weight of those numbers यार. 597, 511, that's what 1100 विकेटें हैं यार उनकी कुल. 1100 विकेटें. 1100 लाख करोड़ विकेटें हैं इनकी. Jimmy Anderson now bowling in 4 for 20, blaze it. Wait. Playing away to the offside. यार क्या ऐसे जंप लगाई है बाहर कि ये क्रॉली अब्बास है भाई, ये एंडरसन है भाई और तुम फवाद हो. That big jump down the ground. It's like a tarantula batting. Like a tiger. 40 for 4 Pakistan. Or in amongst the memes. यार आप इतने बड़े फवाद आलम स्टैन हैं, उन पर नहीं हंसे भाई. आप he is your boy. यार हमारे तो सभी बॉयज हैं, सब हमारे जो जन. नहीं लेकिन आप ज़्यादा अफिनिटी, आप ये ना, ये आपको मानना पड़ेगा. क्या कर रहा है यार, वापस जाओ क्रीज में. ओ यार ऐसे ही ऐसे ट्रोल कर रहा है यार, क्या हो गया? He thought Zaheer Abbas was a softie, Imran Khan, because in his mind, yeah, I remember reading can't that. do well against the West Indies. You were no good. He held the same way until Milan scored against 80. Yeah, I think it's now there's a lot of respect between them, of course. But I don't know कितनी respect है, लेकिन है respect. Because the fact remains, yes, the West Indies side was the pinnacle of Test cricket then. So if you didn't score against them, how good were you really? 40 for 4. Fawad 4 off 21. मियांदाद ने कहा भी था ना, मैंने तुम्हें कप्तान बनाया. यार इस तरह ना करो. Played away to the leg side. Should come back for a couple. No, just be a single. नहीं भाई, Just be a single. But yeah, I do remember reading Imran Khan's book All Round View. He was pretty harsh on Zaheer के भाई ये short bowling से डरता है और you know ये. Talk about Sikandar Bakht in that book. Did he talk about Sikandar? नहीं, सिक्कू भाई का यार, सिक्कू भाई was basically a Tabish Khan level player. He's an ordinary cricketer. उसने कहा था Dennis. He wasn't that great a cricketer. सिक्कू भाई was like Sohail Khan of his time यार, उसकी कोई इज्जत नहीं थी. Oh my goodness. यार मैं आपको पता है कभी कोई गलत बात नहीं करता. सोहेल खान का तो फिर भी बहुत distinguished career है compared to चीकू भाई. Distinguished career, distinguished chest. Yes, those moves are absolutely sensational. 41 for 4. But he has 5 fers in England. He has 5 fers in a World Cup. तो उसने अच्छा खासा yeah, he won us a test match. career बना लिया. He won us a test match. He drew us this series in 2016. हर मैच में आके 5-5 लेके जा रहा है. Exactly. Don't disrespect the moves. ज़करिया कह रहे हैं अब सॉरी कर लिया मियां दाद ने, लेकिन अब उसको जॉब जो दे दी पीसीबी ने. फैसल इकबाल को. यार अब वही है, अगर इतनी 90 चेस खेली मियां दाद ने तो फिर अभी भी he proved how shrewd he is कि फैसल इकबाल को सिंध का कैप्टन कोच लगवा दिया. Left alone. Basit Ali is. अच्छा, who is बलोचिस्तान? Okay. Is it Balochistan? Balochistan, I think he's a batting में है, बैटिंग उसमें. नहीं, हेड कोच है भाई. अच्छा. हेड कोच है. यार पूरा रीजन दे दिया उसको. मोहम्मद वसीम इज हेड कोच ऑफ नॉर्दर्न. देखिए मोहम्मद वसीम. अब्दुल रज़ाक इज हेड कोच ऑफ साउथ पंजाब. यस, द रैज़लर. अब अभी भी रिटायर नहीं हुए वैसे, मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे टीम में. यार तुम लोगों मुझे बॉलिंग नहीं होती, मैं दिखाता हूँ. Look at that first class career of Fawad Alam. 296, his best score, an average of 56, so can't dispute those numbers. Nope. Jimmy, what a delivery that is to Azhar Ali, just beating the outside edge. 21 overs gone. Pakistan 41 for 4. Head coach and one of the select. हाँ, Emma, can you give us the names of all the new coaches? Because Mohammad Akram and the lad with the beard. मैं बताता हूँ ना. एक है शाहिद अनवर, he is the head coach of Central Punjab. Mohammad Wasim is head coach of Northern. That's a really good appointment actually. वो तो last year भी था. वसीम साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ज़ल्मी के लिए भी. वसीम साहब, वाह क्या बात है. Shout out. हाँ नहीं, Northern last year T20 title भी जीती. Exactly. और the guy with the beard यार, वो क्या नाम है उनका? Abdurrahman. Apparently he's a very good coach. Everyone who's worked with him is saying that he's an exceptional coach. और वही बाजिद खान कह रहे थे ना हमारे साथ कि भाई what is their aspiration, इससे ऊपर वो क्यों आप नेशनल टीम कोच क्यों नहीं बना सकते? कहते जी वो कहेंगे कि मीडिया में क्रिटिसाइज करेगी. ये बाजिद खान ने हमें खुद बताया. Yeah. कि जी ये डिस्कशन हुई थी. No, and the other thing is that he also talked about the industry of coaches. You actually made a really good point yesterday, Khwaja, about first class cricket not just being a segue to international, but being an industry on its own. बिल्कुल. So if that remains a fact, then coaching in that industry should be another profession. 100%. And how are you going to get promoted?
there's nowhere to go because okay, Khwaja's played 50 tests and I've been working for 10 years in first class cricket as a coach. You were gonna get the job before me because you played some cricket. और मैक्सिमम वो अंडर 19 कोच ही बन सकते. दैट्स काइंड ऑफ अ ग्लैमरस रोल, थोड़ा बहुत, नॉट दैट मच. लेकिन अब हेड कोच आपने कोई गोरा ही रखना है या कोई बड़ा नाम ही हमेशा रखना है, तो फिर यू नो it's not fair on those guys. Faisal saying this is why I will always respect Azhar, struggling, strokeless, but still there. Yeah, he's been he's a fighter. Zakaria भी कह रहे सीकू भाई was इमरान खान junior level bowler. Junior. What do you without laughing? Whoa! What a leave from Fawad. Audacious leave by Fawad Alam. Without laughing, tell me genuinely what you think about Imran Khan Jr. यार ट्रेंडलर है यार. We can't listen. ऐसे बॉलर टेस्ट लेवल नहीं खेल सकते but यार. he's played test matches for Pakistan. He's won test matches. He hasn't won. Like he's been in sides that have won test matches. Yes, in Pakistan. but we were carried by Ajmal and Yasir Shah and these guys. ना यार आप ऐसे बॉलर नहीं खिला सकते यार. And he's made it to the international level. कुछ तो होगा ना. यार मेड की बात नहीं. at वही बात है ना. At a certain level your first class numbers they have diminishing returns. जैसे फवाद का भी हम देख रहे हैं यार. They don't mean that much. अब हर साल कामरान अकमल की 65 एवरेज होती है बैटिंग डोमेस्टिक में. क्या करें उसका. हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कीपिंग सेफ नहीं है. बल्कि उसको दिए थे 2 चांसेस. हजारों लाखों चांस दिए हैं यार. वो 50 टेस्ट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए. Faisal get it. Imran is a more accurate spinner than Yasir. That is a low blow. But a very accurate one. Right in the guard. Boom. In the crown jewels. 41 for 4. 21.2 overs gone. Fawad Alam occupying the crease. जैसे भी कर रहा है खड़ा तो है. Unlike this shameless Asad Shafiq. Nice यार ये defense. टांग उधर जा रही है. He's just so fidgety. He doesn't pass the eye test. That is the biggest problem. He doesn't pass the blind test. Oh यार आपने अंधा करार कर दिया उसको. वो तो बिल्कुल ही यार चलो मैं मतलब डेयर डेविल भी इसको देख ली. वो कह रहा है मैं आपको मैं फिर से एसिड डाल लेता हूँ. फिस्क कौन है इसमें. एंड्रू स्ट्रॉस. Wilson Fisk is Andrew Strauss. अबे यार it's all going belly up in change of pace tonight. Leading edge. Oh, Jafar Archer's on to bowl now. Just to let you know the cricket is still happening. Yeah. 21.4 overs, 41 for 4. ज़करिया खालिद वही माइकल क्लार्क वाला बोल्ड ही हमारे गले पड़ गया. वो जो उसने मारा था उसके जो हमारे खब्बे हैं कलीम उसका रिप्ले हमें 500 करोड़ दफ़ा दिखा चुके हैं ट्विटर पे. अच्छी बॉल थी लेकिन क्लार्क भी डिक्लाइन में था. ही हैड बैक इश्यूज. नहीं यार वो बॉल अच्छी थी. It would have gotten a good Clark as well. हाँ no doubt. Who's this gentleman next to Yunus Khan? I think कोई physio है या कुछ है या कोई nutritionist or something like that. Jafar Archer to Fawad Alam beating the outside edge. Bowling यार. I think this leave is working for Fawad. This pendulum swing from outside off. As long as he's at the crease it's working. Exactly. At this point it doesn't matter what you look like as long as you're there. FHD कह रहे हैं फवाद आलम यार कितना स्ट्रेस कराओगे with those leaves यार. I swear to God. फवाद आलम को सपोर्ट करना भी एक स्ट्रेस है. उसको बैक करना भी एक स्ट्रेस है. उसकी बैटिंग देखना उससे बड़ा स्ट्रेस है. What I would say is कि like when he goes out and यार ये क्या है. तुम्हारी टांग हवा में है बैट उधर है. and like he just finds himself. This is the kind of technique when you're facing Bilawal Bhatti and Sohail Khan and Tabish Khan kind of bowlers. Yeah, Tabish Khan is a pretty decent bowler. और ताज वली टाइप बेचारे जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं. आप जोफ्रा को नहीं ऐसे खेल सकते यार. Well, he's surviving longer than many have before him. I will survive. 41 for 4. They've got a short leg in place for him. Is that a short leg, you think? Yeah. Oh, that's hit him high on the thigh pad. Why does he keep asking for यार a ये run? बैटिंग नहीं ये बॉक्सिंग मैच में है. I swear to God. He's just Muhammad Aliing this, taking blow after blow and see how he ends up. I'm young, I'm pretty, I'm Fawad Alam and you can't beat me. 41 for 4 after 22. Faisal keh raha hai, I'm really enjoying this passage of play. Are you really? Faisal? I wouldn't call it play, but it's just blow after blow. But Zakaria saying, yeah, Bhatti was quick. Bhatti had that skiddy round arm action. But looks like the ground staff is being activated once again. Autobots. Bagherat activate ho gaye. Looks like a sprinkle of rain in the air. Yeah. Very frustrating once again यार. अच्छी हम थोड़ी सी पार्टनरशिप at least और क्रीज तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और फिर ही हमारे साथ वेदर इश्यूज शुरू हो गए. Passage of try balls. Weather issues now. Wasim bhai just called Fawad Alam a youngster. Oh God, here we go again. Yep. Weather issues have taken precedent here in Southampton, and we're yet to see whether Pakistan will survive.
We'll be back after the rain break. तुम साथ ही You पंज are मार लो listening अपने. to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary.
42 for 4 Pakistan after lunch. Welcome back to Change of Pace. Azhar on 10, not out of 57. Fawad 5 of 28. Chris Wokes on to bowl for England. Good ball, well outside off, left by Azhar Ali. Welcome back to Change of Pace. हम थोड़ा से लेट हो गए थे क्योंकि हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं वो सो रहे थे. They had a long lunch. And speaking of long lunches, it looks like Pakistan will have a hell of a grind just to remain in this game. 384 the follow-on target, तो वो तो ख्वाबों से भी बाहर हो गया इस वक्त. But maybe, you know, get as close as possible. Maybe make England bat again, waste some time. Dom Best थोड़ी सी तैयारियां कर रहे हैं. But don't think he'll be of much use on this pitch. Lovely drive by Azaz, squeeze past point. Confident looking shot, running away down the hill, and that is gonna be, oh, good save by Mr. Pope. Popatlal, good fielding there, and that should be an easy 3 in fact. फवाद आलम पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे भी, कमेंट्री पे भी, कि भाई इसका स्टांस क्या है, ये है वो है. मुसाद अफजल, आप क्या कहते हैं? What do you think about the Fawad stir? Listen, I reckon it's very early days for his return to Test cricket, so I don't think you should be making any judgments on his style as a batsman. And just like Tom Moody said on Twitter during the lunch break, Tom Moody ने एक अच्छी खासी tweet की है. exactly, he gets into the right position before the ball is delivered, and he's on top of it. Obviously, he's unorthodox. He's got the Spider-Man leave, got the jumpy leave, the tarantula leave, whatever you want to call it. He's definitely not orthodox. He's definitely not the prettiest to watch. But right now, Pakistan need someone that can just bat time and get some runs. And if it's Fawad with his awkward stance, so be it. There is a subplot here that might become the primary issue of this test match now, because Pakistan seem down and out at this point. Azhar Ali is essentially batting for his spot on the side. He's batting for yes. He's batting for his captaincy. 100%. 45 for 4. Chris Wokes for his first over of the match, and he'll get just 4 off of it. लेकिन मसला ये है मुसाद के, he was just appointed last winter when coach Misbah took over. They removed Sarfraz from all the formats. तो वो कहेंगे जी एक साल में आप फिर कैप्टन चेंज करो, ये कैसा कोच है? I don't have a problem with Azhar Ali the captain. The problem is, if you're the captain, just like Sarfraz Ahmed was, you need to be the first name on the sheet, 100%. team sheet. And right now, like I told you, after he's turned 33, Asad Shafiq has been averaging less than 33, and Azhar Ali has been averaging 21. That's not acceptable. Those are horrendous numbers. और वो भी अब आधे वक्त एशिया में खेल रहे थे. ये नहीं था कि आपके सारे टूर बाहर लग रहे थे. And I'll tell you what, in the past decade, you think of test match batsmen, Azhar Ali is one of the most prolific run scorers in the era. He's got that 300 against the West Indies, a double 100 to his name. Only Alistair Cook had faced more deliveries in Test cricket than Azhar Ali in the last decade. You said this multiple times yourself, Khwaja, that under Miss You, he was actually the most important batsman that Pakistan had. 100%. So to see him like this is... It's sad, yeah. It's sad. It's heartbreaking, to be honest, for somebody like me who's supported him from day one. But at the same time, this could be a crucial day for him. As he flicks this off the pads, that's a good shot from the captain. And it'll run down for at least a couple, but it'll go for 4. Oh, lovely shot. And look, that's off the pads, which is a weak zone for Azhar Ali, has been so for the past couple years. So that's definitely going to increase the confidence there. Interesting that England have gone with Jofra and Wokes after the break. They've not gone to their senior pair of Broad and Anderson. So if in fact Jimmy is out off the ground, तो पता नहीं है क्या. And they typically, after every break, they go Broderson immediately. And especially with Anderson on 4 wickets already in this innings. I think he's just going to have plenty of opportunity. Oh, full toss. Good Yorker. If he's got the bat in the way, Azhar Ali, I think that's bat first. It's going down anyways, yeah. But hopefully he got some bat on that. But it doesn't look like England are going to be appealing. 49 for 4 after 23.2. They only got one review left. They wasted a couple of them yesterday, remember? एक तो I think उन्होंने शान पे ज़ाया किया था. The first one, yeah. Ooh, that did hit him on the pads, but it was straying down leg. Similar mode of dismissal again, falling over, hitting that leg stump line. England know about that. It's very, very evident that England know about this problem. A batsman in form actually tucks that away for 4, Khwaja. बिल्कुल सही बात. Because it's full on leg. That is sure of his footwork. Exactly. A good bouncer, good carry for Jofra Archer. I wonder what he's bowling today in terms of pace. 86 miles per hour. Yeah, it's down leg side. लेकिन ये भी they're usually closer than usual. Zainab Rizvi is on the stream. Chow. Welcome Zainab.
Hello, ladies and gents, Pacey and Paceyat. Nice of you to join us on what is a miserable day. हमें पता है कि जी defeat is on the cards, but we're going to be fighting hard. We're going to be commentating hard. We're not going anywhere. At least बाबर आजम की second innings देखे बगैर नहीं जाएंगे हम भी ढीठ है. 49 for 4. Azhar Ali 17 off 62 as he leaves this one outside of off. Jofra Archer. What is the minimum acceptable innings you're willing to take from Azhar Ali? कि भाई चलो ठीक है यार. 100? I want 100. I really like 100. I don't think he'll get 100. Let's hope he can. I mean, Experience तो है उसके he पास. still looks weak against that full delivery. So it is very unfortunate the state of his form. और मसला ये कि वो सारे उनके फास्ट बॉलर्स के स्ट्रेट बॉल पे फंस रहा है. ब्रॉड हो, वोक्स हो, एंडरसन हो. So it's going to be a multi-level And again, challenge for no him. problems for him outside of off as he leaves that one again. अगर ये हो ना कि चलो यार जोफ्रा पे बार बार आउट हो रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन वो सारों के खिलाफ वो सीधी बॉल पे आउट हो रहा है. भाई ये जो अभी अपील हुई है, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, full flush on the pads, that's a boundary delivery. बिल्कुल. बाबर को ये बॉल कराओ यार, अगर आप शान मसूद को भी ये बॉल कराओ, आबिद अली को भी ये बॉल कराओ, it's a boundary delivery. Zainab's asking a legitimate question, saying that Michael Holding also asked from those who have watched Fawad Alam bat in domestic, what is his most prolific scoring shot? Does he drive? I can only see him scoring on the leg side. He's definitely a leg side heavy player. He's not like your Chandrapals that had a good drive. Yeah, basically with his setup, he's good on off the legs, and of course that back cut behind point, that is a very prolific shot for him. Cover drive तो इतना straight drive इतना उसके proficient shot नहीं है, but those through mid wicket and behind point, that is mostly, he's basically, you know, he just uses the pace of the ball. खुद ज़्यादा timing वाला इतना effective player नहीं है. Faisal saying it's the inside edge to fine leg. Yeah, ऐसा तो ना कोई यार फैसल, but वो ये भी कह रहे हैं Azhar needs 150 or something. That's definitely that would be a very nice innings indeed. और शुक्र है उन्होंने हाइट करेक्ट किया. फवाद को उन्होंने अजहर के साथ नहीं लगा दिया जैसे आबिद और शान मसूद को इन्होंने लगाया हुआ होता है. That was hilarious. But Mohammad Rizwan is also there to bat. Yasir Shah, Test Centurion. यार ये ना बोलो अब. यार वो है यार, अब डिनाई तो नहीं कर सकते आप इस तरह कह दो जिस तरह हम उम्मीद रख सकते हैं. यार उम्मीद पे दुनिया कायम है यार, ऐसे तो ना कहें. 4 slips, a point, squarish. Ooh. Getting out of the way of that delivery. Fawad This is Alam. the danger bowler for Fawad. Got out to a straight ball from Wokes in the last test. Hopefully he'll cope much better than that. Now he's faced 30 odd deliveries. Wokes, another Zabardast series against Pakistan. Made runs, got wickets in the second test. क्या करें इस बंदे का? Look at that. 4-5 wickets in the test, and of course that match-winning hand of. If he gets a few wickets here, he could be man of the series. Definitely. But also Butler's a shoe-in for that. He's got a couple of big innings under his belt. Chris Wokes now going to continue to Fawad Alam. He walks across his stumps, clips this away onto the leg side, and will come up with a big, that could have been a run-out chance. risky single there क्या from कर रहा है फवाद Pakistan. भाई? बल्ला डाल. The 50 is up for Pakistan in the 25th over, but 4 wickets down. England bowlers have been on the money yesterday and today. Right, Khwaja, there's obviously a lot we can talk about. यार ये how सिंगल आई थिंक काफ़ी अनकंफर्टेबल था, जिस इतने इजी तरीके से फवाद ले रहा था. He made it. No worries. हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? ज़करिया कह रहे हैं मुसाद उम्मीद रखो कल भी बारिश है. हाँ? बारिश पे अब now we're wishing for the weather gods to डे favor 3 है us. यार, अभी तो सिर्फ डे 3 है. Azah down the leg side again, hitting his rib cage, getting down for a single. सिर्फ डे 3 और वो इंग्लैंड भी कह रहे हैं यार हमें 60-70 ओवर दे दो, हम इनको रैप अप कर देंगे. Exactly. But let me ask you this, Khwaja. Obviously, there's a lot of issues in this batting lineup. I don't see as many problems with our bowling. I think we've done fairly well in that department. If I can ask you to list the top 3 positives from this tour for Pakistan, can you help me do that? Top 3 positives. Wow, थोड़ा सोचना पड़ेगा. Yeah. I think first has been the discipline. The new ball bowling has been very good from Pakistan Okay. throughout the series. Every test match we've had England in trouble. This time gets an edge from Fawad Alam. We squeeze this past the gully fielder, and he'll pick up a couple. And the second would probably be the keeping of Rizwan. Yeah, that's a good one. The third positive, I guess probably the fitness of the fast bowlers. They've कल 150 ओवर कराए, लेकिन तब भी 86-87 माइल्स पर आवर पे शाहीन और नसीम बॉलिंग करा रहे थे. तो probably the slip catching has also been decent.
ये 2-3 चीज़ें आई थिंक मैक्सिमम बैटिंग तो इज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग. शान मसूद ने भी वो एक ज़बरदस्त 150 के बाद ही हैज़न्ट पास्ड 5 रन्स इन 3 इनिंग्स. तो बंदा फिर क्या बोले उसको. So nothing in the batting has been a positive for you. यार अब किसने nobody contributed as we expected. Conditions भी काफ़ी मुश्किल रही हैं to be quite honest. Edge that it falls short of that fourth slip. And then again, it's that edge to third man who will get him in the boundary here, I think. No, England यार have एक been तो ये just हर so रन incredible in the field. 530 रन आ गए और फिर भी हर रन के लिए लड़ रहे हैं इंग्लैंड. That's the sign of a top side. And speaking of top side, Fawad Alam is definitely struggling against Wokes. Another edge through the slip cordon. He has to make a decision भाई. या तो मैंने बॉल छोड़ना है या मैंने फुल ब्लडेड शॉट मारनी है. ये आधा आधा काम नहीं चल. रस्सी तोड़ दी उसने खुद. यार ये रोरी बर्न्स भी ना. I think that might be a boundary. Which let's have a look. नहीं बच गया यार. That's a great piece of work from Burns. 56 for 4. Last ball of the 25th over coming up. Fawad into double figures. Azhar on 17. Ooh, Hits him high on the again. pad. Again, that straighting delivery that straightens is finding difficult to negotiate that Azarelli. And Faisal is saying Fawad now has more runs than Burns. In the series. Apparently. देख लो. But yes, Shaheen has definitely made him his bunny. ये Shane Warne क्या कर रहा है भाई. बाल कॉम ओवर किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरह इसने भी. He's fighting a losing battle against baldness. But Robbie looking smart, looking fit. इतना फिट ये कभी अपने प्लेइंग करियर में नहीं था, to be quite honest. फैसल कह रहे वॉर्न्स हिटलर हैकट यार, ऐसे तो ना कहें यार. ये दोनों चरिया ही हो गए हैं बेसिकली. ज़ैनब इस भी यार कितने अवे टूर्स गुजर जाएंगे और हम सिर्फ पॉजिटिव्स निकालते रहेंगे. हम मैच जीतना चाहते हैं या बस पॉजिटिव्स निकालें. यार अब क्या करें. I think Pakistan have a long way to go. अब देखिए हर टीम टूर करते हुए स्ट्रगल Exactly. करती है, सिर्फ पाकिस्तान का ये मसला नहीं है. We should at least be winning at home. But I also We think should that's be not an dominant at excuse. Well, बाकी सब कर रहे हैं हम भी करेंगे. That's not how it works. नहीं, I'm just saying कि ग्लोबल ट्रेंड यही है कि भाई हर कोई टूर करते हुए स्ट्रगल करता है. देखिए आपकी historically speaking, Pakistan do very well in England compared to other teams. We haven't So- lost a series for 10 years. So you've got to capitalize on that. You've got to find a way to turn those draws into wins. नहीं, ये बात Unfortunately, तो we've सही been very unlucky this series with the rain in the second test match and that incredible partnership in the है. यार first. मसला ये हम सेशंस हम जो सेशंस जीत जाते हैं लेकिन ओवरऑल we just can't seem to put it together. Even that South Africa tour when Olivier destroyed us, यार हमने अच्छे फाइट बैक किए थे. 2 Yeah. मैच हमने निकाल लिए थे, हमारे पास चांस था कि हम गेम निकाल ले. बट यू नो कोई बैटिंग में फॉल्ट हो जाती थी या कोई कैमियो खेल जाता था and then we would let them get away. 56 for 4 is Jofra Archer. Now bowling to Fawad Alam, leaving it outside off. I'll tell you what I've seen so far, and Fawad's been around for now the better part of 40 deliveries, 35 deliveries, Khwaja. He's done a better job of leaving the ball than most of those top order Pakistani batsmen. बिल्कुल सही बात है. मतलब एक मैच्योर बैट्समैन तो ये है ऑब्वियसली फवाद आलमी. He definitely has time with him. इतने साल वो फर्स्ट क्लास खेलता रहा. ही नोज हाउ टू मैनेज हिज इनिंग्स, वो तो इशू नहीं है. बट यस हमने ये क्वेश्चन है कि डज ही हैव द क्वालिटी टू लास्ट अगेंस्ट दिस वेरी हाई कैलिबर इंग्लिश बॉलिंग अटैक. बस यही इशू है. बैटिंग तो उसको ऑब्वियसली आती है कि भैया मैंने कैसे अपने आप को मैनेज करना. Very wayward from Jofra Archer. It should be given wide. एंड वी हैवंट अलाउड द बॉल टू गेट ओल्ड. और फिर जो जैसे हमने भी इनके 4 आउट कर लिए थे न्यू बॉल के साथ. फिर जब बाद में जो भूचाल पड़ा है, फ्लैट डेक, नो मूवमेंट इन द एयर, नो मूवमेंट ऑफ द पिच, उसका उस स्टेज पे हम पहुंच ही नहीं पाए. हम पहले ही 4 हमारी विकेटें गिर गई हैं. लेकिन उन्होंने भी 359 की पार्टनरशिप दी थी. हम भी आधी कर लें तो फिर क्या ही बात बहुत है. ही unbelievable है. Faisal saying that Fawad is looking a little bit better now. FHD KHD saying our new ball bowling has been excellent. Cannot say about the old ball. That's a critique ये that बात we बिल्कुल heard सही about है. Shaheen Shah. And there are a couple of bowlers in the side that are better with the old ball, like Wahab Riaz. Very good point. And even Sohail Khan in that 2016 tour with the old ball was fairly effective. लेकिन I do feel that the inability to shine the ball has really hampered Pakistan on this tour as well. बिल्कुल भी we could not get the ball to do anything once it got softer and 40-50 overs old. काफ़ी इशू हो रहे थे. और यासिर शाह भी up and down रहे हैं. Yes, he got wickets, but वो Very उस wayward लेवल in का line यासिर length. शाह नहीं था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. Jofra continuing here. Oh, it's
Fawad on the thigh. That's going to be sore in the morning. But Fawad has to. अब वही है ना इसके technical issues हैं because he doesn't get to the pitch or go completely back, so he's gonna be nailed in that crouch stance when the ball jumps off a length. So just have to ride it out, hit him in the jewels as they say. Has to be careful. But it's gonna be a battle, and he's got the temperament. कि भाई लंबी innings खेलने वाला बंदा है. 296 highest score है, so he knows how to occupy the crease. 56 for 4. Fawad Alam and Azhar Ali. Two batsmen that are not in the best of form. As this is down the leg side from Jofra Archer. Decent click, Khwaja, 85 miles per hour. यार जोफ्रा थोड़ा सा wavered करा रहा है. I think not sure what exactly his game plan is. So he's just spraying it all over the place. But वही है, एक magic ball डाल के ये कभी भी wicket ले सकता है. And he's got the ability to push it to 90 plus. बिल्कुल 100%. And that'll catch you by surprise. I've seen a lot of interviews of batsmen, and they say, "Yaar, aap 90 pe kara rahe ho, 95 pe kara rahe ho. What's the difference? It's just 5 miles per hour." And apparently, if even at the professional level, it's a massive difference when you go from 90 to 95 and 85 to 90. बिल्कुल. Just that little bit of time that you don't have. Pakistan 527 runs behind. It's I been think the time it takes a signal from your brain to travel across the nervous system is like 120 meters per second or something like that. ऐसा Okay. कुछ है. तो अब जो वो half a second का जो फर्क आता है, yeah. उसमें आपके reactions और आपके brain को process करना, Yeah. it makes a very big difference from 90 and 95. Chris Wokes this time down the leg side. यार ये Bit चौके wayward. वाली बॉलें हैं अजहर, यार क्यों मिस कर रहे हो? वोक्स ने भी हमने देखा था in the previous test, काफ़ी poor bowling कराई थी. He was getting hit for quite a few boundaries, especially off Rizwan and Babar. थोड़े से line length lose कर चुके हैं after his excellent bowling in the first test. Yep. Goat James dropping 38 last night. Oh yeah, baby. Lakers now up in the series 2-1. Pakistan 56 for 4. भाई Lakers तो आपको पता है लेके जा रहे हैं. Lakers लेकर हैं. Wokes. Whoa! Oh, what a delivery. That is actually very well played by the Pakistani captain. Got his bat down well in time. Didn't really fall over. क्रिस वोक्स भी थोड़ा सेटअप कर रहा है अजहर को, थोड़ा सा लेग स्टंप पे बॉलें करा रहे हैं. अजहर falling over a bit in that perfect Yorker, but Azhar was ready for it. And Shane Warne. Yeah. Zainab is saying Jofra wayward करवा रहा है, but run फिर भी नहीं बन रहे. Azhar doesn't punish the bad balls. runs तो यार अब वो But that is a good. That is a time fair. के लिए खेलना है, runs के लिए नहीं. Runs खुद ही आएंगे बाद में. But that is a fair criticism of Azhar Ali. He doesn't really punish the poor ball. हाँ ये है. Yeah. Well left there from Azhar. अजहर की वो कभी भी वैसी गेम नहीं रही है. He's नहीं. basically a 30 strike rate kind of batsman. He just he plays for time. He doesn't play for runs. He's different from Babar Azam in that regards. I keep thinking of that bandage that he has on his knee and how much that really is affecting him now. बिल्कुल बिल्कुल. Because he's not really taking that stride forward, is he? He's definitely had his knee issues. But field में काफी अच्छा लग रहा था, athletic लग रहा था. Needless to say, Whoa. he's got some issues with his knees. With the puns. 56 for 4. Azhar Ali now clipping away onto the leg side, finally cashing in on one of these looseners. वो from मौके Chris दे रहे हैं Watts. उसको runs करने के लिए leg side पे. Off पे ज़्यादा challenge नहीं कर रहे अजहर को. So that's an area where he's quite comfortable, just playing off his hip and his pads. And when he's in prime form, then he gets that on drive going. उसमें फिर वो बहुत पता लगता है कि भाई he's really batting well. 58 for 4 now, Pakistan. And I'm telling you, like, this partnership might go deep, might go long, but it's not going to be an attractive one, Khwaja. It's not going to be one that you're going to get to see a lot of good shots in. It's not going to be one that you get to see a lot of runs with. Both of these are very industrial players. Gopi Miyan Kawar पूछें, if Pakistan bats 70 overs, will England follow on or give the bowlers some rest? Oh, good. That's a very good question. I think इतना उन्होंने score कर लिया, they'll definitely be looking to enforce that follow on. But 70 overs में भी Pakistan going at about 2.5, 2.8, कितने runs बन जाएंगे? It won't really dent them. Yeah. VK is asking, are you guys going to start a Patreon? No plan yet, but we are looking into something like that. 58 for 4. फिलहाल तो हमारी पाकिस्तान टीम को Patreon चाहिए. Yeah, exactly. Runs का Patreon. Crowdsource some batsmen and runs. Pulled away by Azhar Ali. Finally a release shot, but there's fine leg in place. बड़े अरसे बाद अजहर अली का पुल शॉट देखा यार. Yeah. But feels like मैं 2 साल बाद देख रहा हूँ. Seriously. Since probably MCG in 2017 when he made that magnificent 200. Wow. It was a beautiful day for me. वो भी क्या दिन थे. हमने कहा भाई अजहर अली फैब 4 में आ गया है. Make room.
और तब से ऐसा जवाल आया उसकी फॉर्म में यार, समझ से बाहर है. It's really hard to explain. Zakaria saying Azhar और बाबर का इंस्टा लाइव देखा था. अजहर कह रहा था नी इंजरी की वजह से नॉकिंग भी नहीं कह सकता. ज़्यादा पहले घंटों नॉकिंग करता था. Yeah, okay, so he's not even able to do that anymore. तो फिर then he has to यार assess- गोडों का पानी निकलवा के ही हो नहीं, सकता then he has to assess himself as a batsman, right? Don't play in the team as a liability. It'll just make you look bad. है. सही बात है. 59 for 4. Another Lakers fan walking across. असद भी लेकर्स फैन है या रॉकेट्स? LeBron fan. हाँ, लेब्रॉन फैन, फिर ठीक है. लेब्रॉन ये क्या है? ऐसे LeBron fan क्या है? मतलब आप टीम को सपोर्ट करो. हम लेब्रॉन के लिए खेलते हैं यार. देखते हैं. We live to see his greatness. क्योंकि वो तारीखी टीमों में नहीं था ना, जैसे कैवलियर्स. आपको LeBron में क्या पसंद है? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी गेम? यार उसकी गेम, उसकी पर्सनैलिटी, उसका पावर, उसके यार वो आप उसके करियर ग्राफ अगर आप देखें यार, बंदा 18 साल से आया है. Yeah. बेसिकली नेट प्रैक्टिस का वो प्लेयर था. एंड बट ही वाज क्राउंड राइट फ्रॉम एज 13-14 कि भाई ये जॉर्डन के ऊपर जाएगा. Good bouncer from Archer. He has lived with that pressure for 22 years, man. Yeah. And he lived up to it. That's the craziest thing. लेकिन छोड़ो यार, बास्केटबॉल की बातें तो चलती रहेंगी. हमारा माइकल जॉर्डन फिलहाल क्रीज पे है. फवाद आलम. Goat Fawad Alam. 60 for 4 Pakistan. Is it true that Yasser has more overseas centuries than Azhar in the past 4 years? In the past 4 years. No, he got the MCG double. वो तो 2017-18 में था. Cut away from Fawad. That's the first proper मैं shot. बता I've रहा था seen ना, from इसकी him. बैक कट towards point. That's a strong shot. 90 miles, 146k from Jofra. Yeah, Ahmed Hassan and Khwaja. You could endless conversations of basketball with between the यार two. हमने of them. घंटे के बाद, घंटा तो नहीं लगाया था, तो 5-6 मिनट लगाए थे. लग गए थे यार गंदा. लेकिन काफी लंबी डिस्कशन हो गई थी. एंड आई बिलीव आई वॉन्ट दैट डिबेट फेयर एंड स्क्वायर. हाँ, आप तो कभी गलत बात नहीं करते. 100%. ये तो हमारा चेंज ऑफ पेस का स्लोगन है. 60 for 4 सेलिंग पॉइंट है after 27.3. Good bouncer again to spin a short pitched over from Archer. A couple of these effective bumpers that Fawad has done. फैसल एक well लंबा underneath. थ्रो बैक कर रहे हैं. वो कह रहे हैं दिस पैसेज ऑफ प्ले रिमाइंड्स मी ऑफ जुल्करनैन's बैटिंग इन इंग्लैंड 2010. Oh. जुल्करनैन और अजमल की वो पार्टनरशिप. Zulkarnain, a bit of a Zach Crawley in terms of height, right? And the way he bats. लंबा सा पतला सा बैट्समैन था, लेकिन he was definitely a nut case. Nutcase, और मतलब उसने कहा था कि अकमल से उसको कुछ कहा है. यार बस छोड़ो. He got the job on a technicality. फिर मुझे याद है रहमान मलिक was greeting him कि वापस आ जाओ. डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया था. Wow. So he went to the leg side, short leg, doesn't get to it, so he'll pick up a लेकिन single. ये अच्छी बात है कि at least he's getting in the line of the ball when Jofra is targeting. 93 miles per hour from Jofra. Now he's cranking it up. 149 kph. अब ये कायदे आज़म ट्रॉफी का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा इधर. यार इसमें कायदे आज़म का एक्सपीरियंस काम आएगा. To attack the Engrays. Look at that. Genuine pace. man. VK is saying the only similarity between Zulkarnain and Zach is that both names start with Start Z. with Z. Fair enough. But Jofra, what do you feel about this? You know, all the buttons closed in a collar. On a cricket pitch or just generally? Generally, Yeah, it works for need some. to see some chest hair. No, it works for some people. Mm. It works for some people. Look at Oh, that. British boy, look. 61 for 4. Joffrey Archer, another Whoa! short delivery. Wow, what a ball that is! Nahin, nahin, And he's nahin. asking the question. I don't think that's brushed the glove. That is a beautiful short ball, Khwaja. That's the third of the over. And 91 miles he per was hour. carving letters out of Azhar Ali's body there. Absolute screamer. एक ही review रह गया. ले 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 ले. He's going upstairs. And hopefully England will be zip. Azza? अब पता लगे edge हो गया, out हो गया. यार नहीं. Oh, Azza's walking off. नहीं नहीं. It's over, folks. वो नहीं, गप्पे मारने जा रहे हैं यार. एमी डरा दिया. 61 for 4. Last ball of the 28th over. Did he get? I Did think he? shoulder पे ही लगी होगी. किधर लगी होगी? यार. All please reckon? don't be All reckon? नहीं, बाजू पे I लगी think है it's यार. fine. But What a man, ball, that was an yeah. amazing delivery. Oh, it's fine. it's fine. We are safe, and England have run out of reviews. You have dropped the World Cup, Mr. Jofra Archer. CCK, choti choti khushiyan. Hashtag CCK, and we need to see that hashtag KG soon. ऐसे रिव्यू लेते हैं. आज ऐसे नजर नहीं आए.
आएंगे 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 जब हालात अच्छे होते हैं ना, जब पाकिस्तान होता है, जब चौके लग रहे होते हैं तब आ जाते हैं. जोफ्रा अच्छी पेस मारा एंड दिस इज द जोफ्रा वी नीड टू सी. 90 लो 90s में बॉल कराओ एंड रियली यू नो अटैक द बैट्समैन. ये नहीं लाइन लेंथ 138 140, ये तो कोई भी कर सकता है इंग्लैंड में. ये तो आप अभी उसको जो फ्लिंटॉफ को भी अभी को आके कर ले वो करा लेगा 3-4 ओवर. फ्लिंटॉफ प्लेयर है यार आपको याद है वो जो ब्रायन लारे क्रिकेट होती थी PS3 पे, या उस पे फ्लांटिफ इरफान पिटून इमरान खान या आई रिमेंबर दोस द अनलाइसेंस्ड लेजेंड्स तेंदुलकी सुचिन. It's like if Donald Trump wrote cricketer names. पता लगे वो खेल के आया था. Here do some research. सुचिन इरफान खान. यार ऐसे ऐसे जबरदस्त नाम होते थे. That was an OG game यार. कितने घंटे लगाए हैं. 28 overs gone. Jofra Archer in the midst of a fiery, short-pitched, hellish spell, and Pakistan trail by just 522. इरफान भुजानी पूछ रहे चेस्ट एयर से याद आया क्रिकेट की दुनिया का अनिल कपूर कौन है. इमरान खान. नहीं रिसेंट सोचो ना, वो तो सारे ही हबशी थे. डेनिस लिली और ये सब. 61 रिसेंटली for 4. कौन है. आई थिंक अब वो थोड़ा सा शेविंग आर्ट ऑफ शेविंग में शाउट आउट वो सब बिलीव करते हैं अब. क्या नाम है उनका? हेरी कौन होता था. आई डोंट Yeah, I think रिमेम्बर. Misbah's pretty. वो तो वैसे ही हेरी है. चेस्ट कभी उनको शर्टलेस नहीं देखा मुझे, कभी याद नहीं आ रहा देखते हुए. शदीद अख्ती. yes, I remember this. अख्ती हाँ यार. ओए ओए. That was an amazing. और मजे game. का था उसमें वो क्लासिक सिनारियो मोड भी होता था. Yeah. दैट वाज द बेस्ट कि जी ब्रैडमैन बैटिंग कर रहा है 300 पे, आपने द 20 ओवर बैटिंग करनी है. दैट वाज अ रियली गुड गेम मैन. 61 for 4. A little bit of Dom Best now into the attack as Fawad Alam will defend away. I think he'll be a lot more comfortable against spin. Should be, no doubt. Tawfiq Umar Irfan could be the Godzilla, the Hairzilla. The Hairzilla. What about gentlemen from the Indian side? Harbhajan Singh. Maybe UV, yeah. Dom Best this time. Good forward stride. He doesn't get forward to the fast bowlers, Fawad, but he's doing well to get to the pitch to delivery against Bess. Couple of चलो deliveries जी, gone. आरफा साहब की ट्वीट आई. व्हाट्स योर टेक ऑन आरफा ट्वीट दैट मिसबा विल बी आस्क्ड टू रिजाइन. दैट्स सो स्टूपिड. यार वही जर्नलिस्ट है ना जिसकी आप कल बात कर रहे थे. बस वही. अब क्या आपने नाम ही आरफा बोला था, आप खुद समझ जाएं. हाँ. Cut away this time by Fawad Alam. Lovely, but straight to deep cover there. Should have found the gap, to be quite honest. ये बैट कौन सा यूज कर रहे हैं फवाद? ये स्मैशर कंपनी है या हमने सीमेंट वाला बैट यूज कर रहे हैं कोई? नहीं स्पॉन्सर है फवाद के पास है. क्या हो गया. ARY तो करेगा ही करेगा. Whoa. 61 for 4. Didn't he come on one of those sitcoms, बुलबुले or something like that? Sure. On the back foot. बुलबुले पे आया था. वैसे ये कभी भी क्रिकेट छोड़ के इजीली 2 मिनट में फाद मुस्तफ़ा को रिप्लेस कर सकता है गेम शो होस्ट और करंट अफेयर्स. Have you heard him talk? यार टॉक की बात नहीं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है ना. ही इज़ अ मिडिल क्लास हीरो, तो लोग इसके फ़ैन हैं. एंड एवरीबडी लव्स एनीबडी हु हैज़ हैड ज़्यादती डन विद देम. यू नो दैट्स आवर पेट फेटिश इन पाकिस्तान. Whoa. 61 for 4. 28.4 overs gone. Best continuing. Cut away from Fawad. Lovely shot. Yeah, there it is. Fawad Lara cutting past point. It'll go for 4. अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा करके आता हूँ यार. फवाद and Lara in the same sentence. But Brian Charles Alam with a lovely cut shot. Pass point, gandhi ball from Dom Best. Short and wide and plenty of time to rock back and slaps it through cover point. Good shot and found the gap. That's the best part. His first boundary. Indeed, for 11 years. It's been 84 years. Titanic वाली माइक. 65 for 4. Tossed up by Best. ओए, देख Oh, के good भाई. defense. यार अब From ऐसे पिच पे Fawad. प्लीज स्पिनर पे नहीं आउट होना यार. For God's sake. लानत है. Have you seen that clip, Khwaja, of Misbah and Umar Akmal running and he refuses to take the second? हाँ. And Misbah yells at him, "Lanat hai tere te." लानत है तेरे ते. That was the 2000 West Indies series, I think. Yes, 2014 tour of West Indies, I believe. That was a good tour. Afridi made his comeback, got 7 wickets. He got amazing all-round performance from Afridi in that game, I remember. Yep. And on really bad pitches. उस ज़माने में बहुत ही ख़राब pitches होते थे. अजमल और अफरीदी तो टच ही नहीं हो रहे थे उनसे. Yep. But thankfully they've improved. Now fast bowling pitches बना रहे. And they're winning test matches. They beat England in a series last year. Exactly. India ने They चलो almost, थोड़ा they सा. almost drew against us, man. हाँ. Well,
Gabriel Why ने जो- did he do that? If he hadn't done that, सोचो यार, what That a would've- way to end your career for Exactly. Miss You. Unbelievable. I think it was scenes. just written in the stars. One of those things. 100%, 100%. 65 for 4, Jofra Archer, who had an exceptional last over, Ooh. continues here against the Pakistan captain, and guaranteed Khwaja is going to target his legs. 91 miles per hour of Jofra is bowling with some serious heat, some serious pace. You're not going to like this, but I'm predicting a leg before wicket. यार जोफ्रा बॉल आगे पिच नहीं कर रहा, वरना there's definitely a chance. Yeah. I But he's think, going to do one at least. I think a nick off or a glove off is much more likely. No, but with the deliveries that are around his waist, he's much better. Is Asar Ali? But he's moved on to 21 of 76. Fawad 16 of 49. Stitching together a bit of a partnership here. Drive from Azhar Ali. Very interesting shot selection there, because it's a quite short delivery, but no run, no risk. And Irfan Bhojani saying Rahat Ali bhi hairy type लगता है. Hairy type. मिथुन, हमारे जो मिथुन लुक अलाइक हैं, decent bowler था यार, बुरा नहीं था. Like from all the domestic guys, he was at least थोड़ी pace थी, थोड़ी swing करता था ball. राहत भाई हमारे टेस्ट जिताए हैं उसने. Definitely ऐसी बात थोड़ी है, 100%. आपको dead wickets Support पे- bowler बहुत अच्छा था, especially for the likes of Ajmal and Yasir Shah. He really complemented them really well. Zakaria saying उस tour पे Gale 4 down आ रहा था जुनैद खान से बचने के लिए. Another good short delivery, and Butler doing well, just getting a hand to it, and Pakistan should come across for a single. Yeah, his partnership is looking, dare I say it, comfortable. Daler, I say it. Daler. It's definitely not Daler. Rao Iftikhar Anjum, definitely a good shot from Zainab for the Hairy League. And I think Faisal's referring to Rahat's 4 wickets at Lords. रेलू का टक्कर है. Azhar survived 3 reviews today. कौन से 3 reviews? एक तो हमने देखा था जोफ्रा वाला. एक कल था. कौन सा? एक तो शान का हुआ था. एक कल था, एक अभी हुआ है. कल कौन सा था? LBW था शायद. या I think it was an LBW, yeah. हाँ वो डाउन लेग जा रहा था ना, हाँ, वो डाउन लेग भी जा रहा था. Jofra Archer right arm around the wicket to Fawad Alam, and it'll यार, disturb this is a his. very dangerous way of playing. जोफ्रा आर्चर, आपको डिसीजन लेनी होगी, या तो आप फुल पीछे जाओ. Do you think- 93 miles per hour. Do you think Fawad He's is really going flat out against Fawad Alam. Do you think Fawad has faced bowling this fast before? यार शुएब वेब खेले होंगे उसने डोमेस्टिक में. हाँ Tabish वाकई. Khan, how fast is he? नहीं यार, वो तो इमरान खान जूनियर लेवल बॉलर है बेचारा. बड़ी मेहनत की है उन्होंने, सदफ हुसैन और ऐसे बॉलर्स ने. गुड Bouncer लीव, दैट्स from मोर लाइक इट. Jofra Archer getting underneath that well, good ducking technique, and again 91 miles per hour. Yeah, you- और रन्स भी नहीं खा रहा. देखें, सिर्फ 9 runs given away in his 7 over spell so far. runs तो कोई भी नहीं खा रहा. So I Dombes. जक्रिया खालिद हैज won the day. किसी के पूरे जिस्म पर इतने हेयर नहीं होंगे जितने आमिर सुहेल के आर्म्स पर हैं. वो नेक्स्ट लेवल रीच था, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. हम बिग फुट एमी नेपाल में ढूंढ रहे हैं, वो लाहौर में ही घूम रहा है आमिर सुहेल. There's no doubt about it. 66 before. What a Boy, shot! wow, there it is for Wat Charles Alam. What a shot! And he's taking it on, and he's barely connected. Is it वो अलग बात है, 30 यार्ड का सर्कल नहीं क्लियर हुआ, लेकिन फवाद hooking with abandon. What a shot! What a hooker! Unbelievable scenes in Southampton. The earth shook वाला scene. Yeah, speaking of Amr Sohail, I really despise his commentary. Yeah, वो वाकई यार. As a colleague of his now, I would say अच्छा, आप colleague भी हो गए साथ? as a fellow colleague, I say please quit. हाँ यार. You're That's not horrible. your strength, please. I've never said this about any other commentator on air. Amr Sohail is genuinely poor. He doesn't have the tone or the magnetism or even the insight, to be quite honest. You got the job on a technicality. लेकिन फिर भी 10-15 साल से वो भी लगा हुआ है. हाँ इधर उधर करते जाता है commentary वो. यार फैसल ऐसे तो ना कहें यार, ugliest hooker in every sense. हद हो गई है यार. Some people like that beard, and you know. Zakaria does not like. Here comes Bessie once again, 69 for 4 after 30 यार overs. इसको तो कुटो ना. ओए यार, Defend बस ये away जो and इसका go. पैड आ रहा है ना, ये बड़ी इसकी खतरनाक बॉल है. ये जो एक राउंड आर्म मारता है, वो इट्स अ बिट ऑफ अ टॉप स्पिनर, उससे बचना होगा. Fawad is probably irritating Jofra with the stance, saying Srijan, definitely you feel like you're in with the chance कि यार ये बैट्समैन है, ये क्या है. So that's a bit of psychological warfare that Fawad may be winning. Played away on the offside, easily looking secure. Fawad on 19,
To be quite honest, he's looked better than most of the batsmen that we've already tried on this tour, especially the two A's. And of course, Abid भी काफ़ी struggle करता रहा है, काफ़ी edge मारता रहा है. Fawad looking relatively good at the crease. Cut away this. Defended on the back foot this time to Dom back. He was shaping to pull it, लेकिन थोड़ी सीधी हो गई. And just played it back to the bowler. Good thinking. ये नहीं कि जी फिर भी मैं pull मारूं and mistime it. Ben Jones, cricket. This is a good tweet from him, and I'll read it out now. As Best continuing to Fawad. This is driven off the back foot for no run. Someone take that over from Jafra, pop it in a cryo chamber, and bring it out at the Gabba next winter. They're gonna need it, like you said yesterday. उधर तो डेफिनेटली वो उनको तंग करेगा एंड ही इज़ देयर की बॉलर. जोफ्रा और मार्कवुड जैसे बॉलर ही आपको सीरीज जिता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में. ब्रॉडरसन अब उनमें नहीं है, वो बात नहीं रही अब. 69 for 4 off the back foot this time. Fawad Alam cuts away to point for no run. Fawad innings here reminds me of Cinderella Man, says Faisal. यार वो रसल क्रो की जो मूवी थी. Actually, Cinderella Man is a song by Eminem as well. It's a pretty good song. You an Eminem fan, Khwaja? Not that much. Too I liked aggressive? his funnier, more अच्छा. humorous stuff. You're a shady boy. हाँ, जब shady Slim fan. Shady उसका फेस था. जब वो dark और real हो गया तब मैं बोर हो गया था. I actually prefer the darker, real. It's Eminem. probably better stuff, but I just Yeah, I wasn't get interested. that. Full delivery from Best, clipped off the pads. क्योंकि उस ज़माने पर ये इलेक्ट्रॉनिक EDM म्यूजिक जो आजकल कहते हैं, हमारे वक्त में तो ट्रांस कहते थे, वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था. 70 for 4 after 31. So, unpopular opinion here, Khwaja. I absolutely have just not understood. Never been on board with EDM trance or house. यार you just need to find somebody whose music vibes with you. There's so many people, there's all kinds of it in fact. For me, music is so revolved around lyrics, and electronic music kind of puts that on a back burner for me. हाँ. And by the way, Sarfraz and I, producer Sarfraz, who's our music aficionado, got years of music knowledge behind him. गोपी मियाँ कवाल तो कहने भाई Eminem जहर लगता है मुझे straight away. यार, I went to his concert Khwaja last year. It was an absolute banger. यार concert भी अब क्या होंगे, पता नहीं कब होंगे. Concert. 70 for 4. So, speaking to Sarfraz about this, about music in South Asia, and he was saying that if you look at the kind of music that's listened to all across the world, South Asian music specifically is probably the most focused around lyrics. It's where lyrics matter the most. बिल्कुल. And that's why if you take a look at the kind of musicians that we... उर्दू लैंग्वेज ही बहुत रिच है ना. नहीं, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, कुछ भी हो, it's very well it's very much focused on lyrics, and as a result, you'll notice that a lot of the musicians that we admire are often vocalists, and we won't actually pay a lot of heed to the guitarist or the producer or the bunch of other musicians that go around and putting together a song. First delivery of this Chris Wokes over. So Jofra Archer's definitely not bowling long spells here, or he might just be changing ends. Wokes is now on. He's bowled his 3 overs for 13 runs. Take a look at some of the Pakistan boys getting in some fitness. Sohail Khan on the bike. Wokes this time to Fawad Alam, and it's just cut away onto the pitch for no run. I think Zainab Archer might just be changing ends. Irfan Bhojani saying, I think the Sky production team will introduce a virtual 30-yard circle in Test cricket after Fawad's innings. Yeah. Ray Lucas saying, brilliant twenty from Fawad Alam. It'd be funny if he just hangs in long enough to get to that 50. Faisal wondering how you feel as a Test bowler if you cannot even dismiss Fawad Alam. Down the leg side. Clip to find leg for a single. Zakaria is just ripping into Eminem and also appreciating Farsi lyrics as he goes. Chris Wokes rocking that headband as many of the English bowlers have this Test series and this entire summer, to be honest. The summer of long hair due to the coronavirus. 71 for 4 Pakistan. Azhar Ali 21 off 78. Throw by 512. Zainab doesn't care what the runs look like. Doesn't matter if they're ugly or not, as long as they're coming for Pakistan. 31.3 overs gone. Chris Wokes, I reckon he's just helping England change ends here, or Archer change ends here.
It's good defense from Azzarelli, and finally he's getting bad on ball, even on the deliveries that are around middle and leg. And Irfan Bajani has recruited a listener. He's brought on Omar Chuktai from Dublin. Welcome. And he's already got a nickname for him, Chuggy. Acha Chugs. Chugster. From Ireland. From Dublin. Has anybody here watched The Good Place? I watched a season of it. Yaar. That was okay for me. I actually watched 2 seasons. It was fine. It wasn't really as good as The Office or Parks and Rec. Defender away to the offside for a quick single. Runs are starting to flow for Pakistan now. Yaar, you know what honestly ruins for me? Seeing Jamil's tweets. It ruins the show for me. Does that matter to you, sir? कोई इतनी ओवर वोक हो जाती है और सेंसलेस हो जाती है. और मज़े की बात है जब उससे पूछा गया था कि भाई can you comment on what's happening in Indian occupied Kashmir, तब वो कहती है I have no idea what's going on. Oh, that's convenient. That exactly. तो फिर तुम इतनी super woke और leftist बनते हो जब तुम्हारे an issue comes that's close to what your ethnicity and your background is about. तब you're hiding under the covers. So I'm like यार दफा करो. Exactly. 72 I don't for like 4. these fake wokias. Fawad Alam hanging in there, 21 off 61 deliveries as he defends this away onto the leg side. The sun is out now, Khwaja. I think that just might make it a little bit easier for Pakistan, and the ball is 32 overs old. And it kind of shows you that kal raat agar hum survive kar lete, तो would have been a lot easier. About last night. वो कोई movie थी क्या थी या TV show था पता नहीं क्या था. Yeah, look at. Did Umayya Shirazi पूछते हैं what about the new Batman trailer? I am vengeance. It looks good, I think. I think it's very, like you said, it's a very Jokerish feel, the dark, gloomy realities of life. But I guess the villain is the Riddler, right? वही कोई looks like that. वो जो सवाल जवाब और riddles और ये वो. Yeah. So if anybody knows the cast, please. हमें तो Pattinson का तो पता है. Yeah. Jeffrey Wright भी हमें trailer में नजर आया था. So who's playing? What's it, Albert? I didn't recognize the voice, to be quite honest. Talking of cleavages, no match for Shoaib Akhtar. Yes, Shoaib Bhai has some impressive chest hair indeed. Colin Farrell is playing Penguins as Amer Shirazi. Colin Farrell as Penguin, wow. Good shot that from Azzarelli, defended away to mid-on for no run. Colin Farrell की यार आपने वो तो देखी होगी In Bruges, जबरदस्त movie. I haven't seen that. Oh, it's a very good movie. You should watch it. Zoe Kravitz as Catwoman. Wow, यार कोई 5-star cast है. That's good stuff. But लोग कह रहे हैं जी हमें सूट नहीं पसंद ये वो पता नहीं क्या. Defender away to the off to point for no run. Khwaja, why has Archer been taken off the attack? I think कोई 4 over करा लिया थक गया होगा. Yeah, but he was just getting that bounce. He was disturbing both the batsmen. But I think उसकी line length इतनी consistent नहीं थी, so maybe that could be an issue. अब Pattinson में वो acting ability है, do you think? Yes. From what I've heard, and again I haven't watched a lot of him. Did you watch that movie The King जो उसकी थी Netflix में? Timothy Chalamet. Yeah, he was very good in that. He was very good in that. यार कोई कहते हैं he was amazing, कोई कहते हैं ये तो parody कर रहा है. No, I enjoyed it because his character was a bit of a parody, right? He was like this spoiled brat in the movie. तो obviously तो ऐसे. मैं शिराजी आपने Tenet देख ली है? Is it out already? इधर तो नहीं आई. Advance booking चल रही है. Pre-booking चल रही है. But reviews नहीं अच्छे आए Tenet के बाद. I'm hearing. 73. Christopher Nolan overrated or worth the hype? I think he has some bangers. हाँ तो सही. Memento, Inception, the Batman movies. यार वो trilogy उसने बनाई है. For me, no superhero movie is greater than that. हाँ, he elevated the art form. उससे बेहतर कौन सी है trilogy superheroes में? Lord of the Rings वगैरह छोड़ दें. Marvel वगैरह तो उसके don't hold a candle. हाँ. अब मैं अभी सरफराज और सरखेल से भी बात करता हूँ and they go like no, Marvel has edged like they've edged ahead of the Nolan series. The Nolan series, the 3 Batman movies, यार Bane, Joker और Ra's al Ghul की जो villains ही हैं और Christian Bale का जो Batman है, they're better than the entire Marvel universe combined in my opinion. 100%. Cut away to. क्योंकि आप even if you don't know the mythology आप देख सकते हो. भाई एक फिल्म दिखा रहे हैं जी. उसमें क्या नहीं है. There's life lessons, there's action, there's Bane's shoulders, there's Tom Hardy in a sleeveless vest. बंदा मर गया यार उस रोल करने के पीछे. कौन? हाँ वाकई. अब बात करते हैं. Bhai, rest in peace. 73 for 4. Good defense. Again, the Pakistani batsmen looking a lot I more believe comfortable the only against spin. 2 Oscar winners of comic book movies are the Jokers, right? और तो कोई नहीं जीता. Who's the other one? दोनों Joker. Who's the other one? Joaquin Phoenix. मिल गया उसको Oscar? हाँ तो और क्या? As a best actor? हाँ. उसको मिले? हाँ. Yeah, but he was phenomenal. He was phenomenal. He was.
यार that scene when he's sitting with the psychiatrist and he's laughing. Yeah. यार मैंने कहा यार ये क्या सीन है भाई, ये बहुत हाई लेवल ले गया ये बंदा. I probably rated the movie far too high when I walked out of the cinema. And थोड़ा फिर ठंडा हुआ बाद में and I realized कि अच्छा आप गर्म हो गए थे मूवी मैं तो अहमद हसन कह रहा, मैंने कहा इससे बेहतर मूवी नहीं आई कभी. अच्छा फिर बाद में गाड़ी तक पहुंचे, हम ड्राइव करे, मैंने कहा नहीं मूवी ठीक थी, एक्टिंग जबरदस्त थी. उसकी एक्टिंग तो बहुत ही क्रेजी थी. और उसमें उसका भी काम बहुत अच्छा था, डिनेरो का काम बहुत अच्छा था. रॉबर्ट डिनेरो बेचारा हेडशॉट. Zachariah saying Batman. लेकिन do you agree with that notion कि it's glorifying, you know, white anger और ये इस पे मैं थोड़ी बात करता हूँ. थोड़ा था यार इसमें. नहीं इस पे मैं थोड़ी बात करूँगा. 73 for 4 after 33 as headband Wokes is going to come into bowl to Azhar Ali, who's looking a lot better. What a shot! Yes, finally. But mid wicket is in place. Hitting the fielder. मैं था कि बस but he's finally getting that bat in front of the ball. सरोज भी आ गए स्ट्रीम पे. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सरोज. Cheerio, डार्क Suresh. नाइट पे हमारी गपशप चल रही है और जोकर पे. जोकर और आपने तो- और ये तो फिल्म एडिटर है, इनके तो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे. आपको कैसा लगा नया बैटमैन का ट्रेलर जो आया है? 73 for 4. I want to speak to that question that you had about the kind of symbolism that the Joker's supposed to represent. And a lot of the left was very opposed to it. And fair enough, I can see where they're coming from. But Khwaja, all art will instigate emotion. All art will mean something different to a certain group of people. Speaking of art, a lovely leg glance from Azhar and stopped out the boundary. भाई एक चौका भी नहीं होने देते ये. यार ये क्या अंग्रेज Come back for 2. यार वो ठीक है, आर्ट कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त माहौल बना हुआ है दुनिया का, स्पेशली अमेरिका में. नहीं तो ख्वाजा मुझे ये बताएं कि आपको ये तो आपको बहुत बुरा लगता है कि यू आर शोइंग दिस poor man who is struggling वगैरह. I don't care about his color. I don't care about his यार race. बट यही तो पूरी बात है ना. No, ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि जब आपने इराक में जाना था, अफगानिस्तान में जाना था, उस वक्त आप 100 मूवियाँ बनाते हो मार्क वॉलबर्ग और उसको डाल के, उस वक्त तो कोई नहीं कहता this is a clear message. जब एक गरीबों पे आपने मूवी बना दी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, race is a very important issue, but it is an issue that does not supersede the economic divide in the world right now. I'll tell you that. Whether Pakistan or the USA, it is the classism in economics that is dividing us. यही बात ये जो हमारे जो पाकिस्तानी लिबरल्स है, लेफ्टिस्ट हैं, वो ये नहीं समझते, वो अमेरिकन चीज़ें पाकिस्तानी सोसाइटी पे वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता. पहली बात ये हमारा क्लास डिवाइड है, हमारा रेस डिवाइड नहीं है, अमीर गरीब का ज़्यादा डिवाइड है. But I think that's the case in most parts of the world. 100% इसमें कोई शक नहीं है. आप वेल्थ गैप निकाल के देख लें दुनिया का. सही बात है. तबाही, इतनी तबाही. मतलब ठीक है हम इतने मल्टी एथनिक चलो बेस लेवल पे हैं, लेकिन ब्लैक वाइट येलो वाला सीन नहीं है. लेकिन आप ये नहीं कह सकते. अच्छा अभी हम जोकर की बात कर रहे हैं, फॉरेन कमेंट पे आए लोन वुल्फ. Lone wolf. Exactly, that was the word I was looking for. Brosnan is playing Alfred. Speaking of a lone wolf, here comes the KG, the Kalai God, Wasim Akram. यार ये हटाओ पट्टी हटाओ. वसीम भाई, let's see some. अरे यार थोड़ा सा मजा आया, लेकिन क्लीवेज तो देखने को मिल गई हमें. Defender to the leg side for no run. Obi-Wan saying only money makes more money, so the class divide keeps increasing. 100%. 100%. सरोश भी एक वो मॉन्ट्रेज हेरल्ड की बात कर रहे हैं. If what Sarosh has typed in is true, that's नहीं है, सही बात है. लूका inappropriate. डॉन्चिच को बोला था उसने. That's not okay. 75 for 4. Again, I don't see any problem with leftist politics even in Pakistan. It's just very it becomes very difficult to equate another countries or another regions. We're very different. And again, democracy or politics is not a cookie cutter approach. It's different everywhere you go. 75 for 4 after 34, but we'll go back to the topic at hand. Whatever their opinion is, even if it is misguided, they deserve to be allowed to express it. That's the beauty of the free speech. इसमें हमें मानना चाहिए, लेकिन वो लोग उसमें भी कहते हैं यार फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में आपको नहीं उस पे है, और आई एग्री विद दैट. ज़करबर्ग के इसलिए लाइन इसको जलील हो रहा है आजकल, क्योंकि कहते हैं कि भाई तुम हर चीज को अलाउ कर रहे हो ये वाइट सुप्रीमसिस्ट को. और ये आई एग्री विद दिस. वो कहता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे देयर इज अ लाइन बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, बट यू नीड अ फ्रेमवर्क. Who decides the line? There needs to be a who watches Big Brother? No, I completely agree with this, and I'm not qualified to draw that line in the sand. Who is qualified? ना यही बात है. I think there needs to be an international framework around it. जिस तरह बहुत चीज़ों पे है, जिस तरह बहुत चीज़ों पे है. 75 for 4. अगर हम बार बार यही कहते रहेंगे this is untouchable, undiscussable, it will never be done. There needs to be international framework around what the definition of free speech actually is. और isn't it much easier to यार तुमने ठीक है एक व्यू है, आपको नहीं पसंद आया, आपको बुरा लगा है, ओके यू ठीक है टेक इट एट फेस वैल्यू. ये नहीं है जी अब नहीं ठीक है वो बात आपकी सही है, but if it's inciting violence, I think any speech that is questioning the right of someone to exist is a problem.
It's a serious problem. और आप 75 for 4 डिफेंडेड अवे एंड और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इधर, बट अगर आप दुनिया पे नजर डालें तो जहाँ भी ऑक्यूपेशंस और रेजिम्स चलती हैं उनके साथ पूरी फ्री स्पीच के थ्रू वो वैलिडिफाई होती हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनको प्रूव किया, उनके ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं ऑफिशियल इस जरिए से. बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लॉबिंग भी बहुत हाई लेवल 75 for 4, good defense. The Pakistani batsmen are solid against Dom Best right now. No real threat from the spinner as this partnership is growing in stature. As ज़रा कह रही हैं वसीम भाई ने इतने बटन खोले हुए हैं शर्ट के, तौबा तौबा. और खोलने यार, हम तो कभी भी माइंड नहीं करेंगे, वसीम भाई जो मर्जी करें यार. Gopi Mian Kawal actually is countering my point, and he might actually be very well. He's very correct about this, and it's something that I missed. He's saying in the U.S. racial divide supersedes class divide. Look at the rich PhD dude in Central Park. That's a fair point. लेकिन हम यही कह रहे हैं, ये तो उसमें कोई डाउट नहीं, इट एग्जिस्ट, लेकिन आप वो चीज़ पाकिस्तान पे नहीं अप्लाई कर सकते. लोग वो कहते जी आपका प्रिविलेज है यार, इट्स सो स्टूपिड यार. प्रिविलेज सिर्फ पैसे का है पाकिस्तान में. पंजाबी भी पंजाबी को ही ऑप्रेस कर रहा है, सिंधी भी उसको ही ऑप्रेस कर रहा है, सब पैसे पे ऑप्रेस कर रहे हैं, वो ये एथनिसिटी पे नहीं ऑप्रेस कर रहे. We need to understand that thing. See, I just don't know about the specifics of domestic politics in Pakistan to make a comment on that. But Salman K and Venom on YouTube, make your way over to changeofpacelive.com/matchday, your home of Pakistani cricket commentary, and we'll do a little bit of a pivot. We'll go back to the DC event. 75 for 4 as Fawad Alam. Could you believe it? He's got 21 runs in Test match cricket now. And he cuts this away straight to point for यार ये मुसलसल ये कट शॉट ढूंढ रहा है, but he's not hitting the gap. I'm just worried he's going to do something silly against Bess, क्योंकि उसने कहा भाई इसको कट खिलाओ बार-बार, maybe if he misses, what's happening here? An edge. Drinks for the umpire? Drinks break. पहली दफा कोई इंटरप्शन हो रही है. हमने 1 घंटा बैटिंग कर ली, हमारी विकेट नहीं करी है, तो मौजा ही हो गया. रोको यार, कुछ क्या हो रहा है ये? This partnership is now 45 runs at a run rate of 2. गोपी मियाँ कवाल कहने agree with ख्वाजा on the false equivalencies some lives make. वही मेरी वही बात है यार. That's all I mean. All issues are class based. Race is a way of clouding this issue. Maybe यार, लेकिन genuine grievances भी होते हैं लोगों के. हम चलो हमारी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में है. So Pakistan are nearing a 50 partnership, ख्वाजा. Would you believe it? Should you believe it? Could you believe it? यार I just feel that is a mini burst we had last night. थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा क्वालिटी दिखाते, थोड़ा सा दलेरी दिखाते, तो यार we could have weathered that storm, so to speak. But 75 for 4 after 35, good repair job being done by 2 experienced campaigners. I am still quite sure कि इन दोनों ने under 19 साथ खेली भी होगी. I have a feeling that they must have. Fawad Alam was of course part of that 2006 under 19 World Cup winning team. Yeah. I think उसमें captain कौन था? I think he was playing with Wahab. Imad Wasim used to be his teammate in that. Looking forward, speaking of Imad Wasim, looking forward to the T20 series. ख्वाजा will be covering those live, every single ball of that 3 T20 matches on changeofpacelive.com. I think we're going to lose 3-0. नहीं यार, क्या हो गया? Runs कौन करेगा? यार बाबर आजम है यार, बाबर आजम है और इफ्तिखार है यार. मेरी बात सुने, I want to speak about Haider Ali. फखर जमान भी कम बैक कर रहा है. I think there's a lot of unwarranted hype around him. मैंने और आपने साथ बैठ के इधर हमने PSL कवर की थी. He looks very good, has all the shots and consistently gives his wicket away. यार वो तो PSL था ना, उसको उन्होंने कहा था फुल फ्रीडम खेलो, हम तुम्हें नहीं रोक रहे. That was the good thing that the Zalmi management did, कि उन्होंने कहा भाई कि तुमने फुल क्रेजी खेलना है. Would you think the Pakistan management will give him that license to kill? उसको शायद इतना लाइसेंस ना दे, बट उसके नीचे ये है ना, मलिक और हफीज़ एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे, तो उसको थोड़ी फ्रीडम दी जाएगी अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम ना चला. एंड यू शुड रिमेंबर दैट बाबर आजम स्ट्रगल्ड इन दैट T20 सीरीज वर्सेस श्रीलंका, where we actually got humiliated at home by the Sri Lankan B team. Yeah, that's true. So our T20 fortunes have been flagging a bit. हमें थोड़ा सा जब से आपने सरफराज को निकाला कैप्टनसी से. सरफराज को तो यार बहुत पहले निकाल देना चाहिए, to be quite wow. Zainab, the yes, man who took you to number 1 in the T20 rankings. यार that's उसने खुद क्या किया था, आप ये मुझे बताएं. कैरी तो आपको बाबर ने किया था, मैंने आपको वो आर्टिकल में मुझे अभी आप टेस्ट मैच हारे हैं. हाँ. तो आप फौरन ये कहते हैं कि अजहर ने यहाँ फील्ड नहीं रखी, वहाँ फील्ड नहीं रखी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है. तो जब आपकी टीम नंबर 1 जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरफराज डॉन बैटमैन था, बट उसने कैप्टनसी में कुछ तो सही किया होगा. उसने अपनी बॉलिंग चेंजेस, अपनी फील्डिंग, अपने सिलेक्शन, ये सब सही किया होगा, तो आप पूछे ना. आपने न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश किया यार उनके घर पे. लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ होती है. मैं 100% एग्री करता हूँ, इसलिए उसको ड्रॉप किया गया है. उसकी ड्रॉप करना बिल्कुल गलत नहीं है.
अब टिम पेन पे भी यही तनकीद होती है कि भाई तुम इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं राइट आर्म फास्ट मीडियम, फास्ट होना चाहिए यार, मीडियम कहाँ से है बेचारा। हो। हाँ नहीं यार अब तो फास्ट मीडियम हो गया। हाँ ये भी है। फास्ट मीडियम क्या ना थोड़ा जनरस है, मीडियम फास्ट His best performance is only 7 for 42. He can actually इन वन इनिंग्स he यार। can beat that now today I think. 4 नहीं तो ऑलरेडी यार, हो क्या हो गई, गया 4 यार? तो ऑलरेडी हो गई इसकी। यार अजहर अली यार कौमी हीरो है हमारा। ऐसे तो ना कहें यार। I don't push too much stock in T20 rankings. That's what Khwaja does as well. He doesn't appreciate the 3 पे हफीज और 5 पे मलिक को खिलाएं बिटवीन हैदर। यार हफीज do you sandwich between the आप चाहते हैं कि toxicity. हैदर अली इन दोनों के साथ रनिंग करे? ऑनेस्टली आई डोंट, क्योंकि हफीज तो उसको मलिक पक्का की रन आउट रनिंग कर तो देगा। इतनी खराब नहीं है यार रिजवान का भी तो सोचना है, क्या करें उसका। इफ्तिखार भी है, खुशदिल भी है, लगता है खुशदिल को चांस नहीं मिलेगा। शदाब उसको भी तो तो आजकल कभी बैट्समैन बन गया, बैट्समैन। I think Shadab could actually bat at 5. Why not? मलिक और हफीज शुड प्ले, नॉट बोथ ऑफ देम, 100%। दोनों नहीं खेल सकते। और इट हैज टू बी और, नॉट एंड। हाँ तो हम पूछ रहे थे भाई मलिक को होना चाहिए हफीज को, आप तो हफीज कह रहे थे। यार मैं कहता कि he could roll his arm around a bit. यार आई वुड माइट सजेस्ट मलिक, क्योंकि वो 5 पे खेल लेगा। मैं चाहता हूँ 4 पे ऊपर कोई बेहतर बैट्समैन खेले। Nice defense from Azhar Ali. We're back after the drinks break. Chris Wokes now coming in the bowl. मे बी यू कैन हैव हैदर एट 3, शदाब एट 4। Heather at 3. हाँ ऊपर ही खेलेगा यार, नीचे थोड़ी खेलेगा वो। नीचे फिर आप उसको टुल्ला मोड में नहीं भेजो ना, वो तो ख़राब करने वाली बात होगी। फ़खर हो गया, बाबर हो गया, देन यू हैव हैदर, देन यू हैव शदाब, मलिक, and then you have what's it called, Rizwan and Imad and all the इफ्तिखार भी ऑफ कोर्स उधर होगा, यू नो 6 7 8 पे। ये 3 कुछ कुल मिला के कर ही लेंगे आई गेस। शदाब को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इन माय ओपिनियन। Yeah, I think he's developing into a decent batsman. And Azhar Ali, speaking of developing into a decent innings here, because 25 पे तो चला गया है, लेकिन अब देखो। नहीं बट उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो सीधी बॉल को खेल रहा है, much better than he was yesterday. Totally agree. Let's see what the comments are saying. खुशदिल को कीपर बना के खिलाएं, पार्ट टाइम कीपर चलता है यार। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया टू बी ऑनेस्ट। I think that's a great idea because Rizwan और सरफराज दोनों से रन तो नहीं बनते। इमेजिन इफ दे प्ले इफ्तिखार, शदाब एंड इमाद। इमेजिन क्या करना, यही मुझे होगा सबसे बड़ा इशू रिजवान और सरफराज, चलो सरफराज का तो ये इशू नहीं है because he plays constantly for Quetta, but उसका भी है कि he doesn't score boundaries. Rizwan is not even Karachi Kings first choice keeper. आप पाकिस्तान के लिए किस तरह के फर्स्ट कीपर है वो? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में आपको एक फुल टाइम कीपर नहीं चाहिए यार। नहीं वनडो में मैं एग्री नहीं करता, वनडो में पर T20s में ये चल सकता है। हाँ वनडे में रिजवान 4 का अच्छा प्लेयर है। I think he's good. Even Sarfraz would work in one day, but Rizwan ठीक है। हाँ उसकी कीपिंग डेफिनेटली इज। सरफराज कहाँ से वर्कड इन वनडेज यार? यार आपको वही सिंगल डबल प्लेयर चाहिए तो सरफराज इज गुड इनफ, व्हाई नॉट? सिंगल डबल रिजवान कौन से बाउंड्रीज करता है यार भाई? 200 मारे में उसने यार। 100 तो यार सिंगल डबल से ही बन जाते हैं यार। हद हो गई है यार, उसने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नहीं अच्छी इनिंग थी। मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं नहीं कह रहा कि वो 400 वनडों में 400 विकेट। 150 यार स्ट्राइक कौमी हीरो है हमारे। विटोरी की बाय द वे 300 वनडों में 300 विकेट हैं। और आप कह रहे थे बहुत बड़ा प्लेयर है वो I just like विटोरी। the way he looks. I have a man crush on Daniel Vittori. Faisal is saying Shadab is an all formats player in his opinion. Fair enough. Yeah, he looks the part. इरफान कह रहे हैं हफीज विल प्ले ओवर मलिक आई थिंक बिकॉज़ ही हैज स्पेंट मोर टाइम इन द बबल। दैट्स अ वेरी ट्रू। हमारे बबल रैंकिंग्स भी होंगे डेफिनेटली। Oh, left alone and it's a dangerous lead अब आप by ये Azhar. देखें, दिस कुड हैव बीन देयर लास्ट ईयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उनको फिर कोविड की वजह से और सहारा मिल गया कि भाई अब हम T20 के लिए। मज़े की बात है T20 इज़ द फॉर्मेट ऑफ द यूथ एंड द यंग फिटर प्लेयर्स, और हमने ये 2 बाबे लेके अभी तक चल रहे हैं यार। इट्स अ शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। But what about the fact that now the T20 World Cup is in India? दैट्स शदाब इमाद विल बी वेरी क्रूशल इन दैट, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। अगर हमारे पास एक और एक मैच विनिंग स्पिनर मिल जाए ना हमें, फिर तो I think we should really consider what's beautiful delivery from Wokes beating the outside edge of Azhar. I think we should really consider what Sarosh has said about Khushil Shah as a temporary keeper. बिल्कुल यार 100%। रिजवान ठीक है आपका टेस्ट में है रेगुलर, ओडीआई में रेगुलर है, तो ज़रूरी तो नहीं कि उसको तीनों फॉर्मेट में घुसेड़ें। देखें हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। एग्जैक्टली। और अगर आपको बैट्समैन चाहिए T20 में, आई वुड इवन से कि अगर आप खुशदिल को नहीं समझते कि वो कीपिंग कर सकते तो आप रोहेल को खिला लो। हाँ खिला लो, अब क्या जा रहा है यार, ही इज अ डिसेंट बैट्समैन। जो PSL में वो अब नहीं सिलेक्ट हो रहे, दोनों सही बात है, आप सही कह रहे हैं। आप कराची के लिए पहली चॉइस नहीं है तो हाँ। पाकिस्तान के लिए क्यों पहली चॉइस है आप? एंड इट एक्चुअली हेल्प्स कि चलो आप 2 हिटर खिला लो, इफ्तिखार हाँ। और कुछ एक तो चली और जाएगा। आपका प्रॉब्लम ही यही है कि इमाद भी है उधर, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आपका प्रॉब्लम यही है कि मिडिल लोअर ऑर्डर में रन्स नहीं बन रहे, मतलब बिग रन्स नहीं बन रहे। अब यही हमने देखना क्या ये मैनेजमेंट टफ डिसीजन ले ली। सरफराज पे तो उन्होंने टफ डिसीजन ले ली, वो ठीक है, बाकियों पे कब लेंगे ये टफ डिसीजन? देखिए T20 टीम अजहर पे, असद पे, इन लोगों पे। बट T20 टीम में यू डोंट हैव टू ड्रॉप टू मेनी पीपल।
आप रोटेशन भी कर सकते हैं, No बट कोस्टिल doubt. को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, रोहेल को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. रोहेल को भी अंडर 19 अब नाउ ही इज आई थिंक हिटिंग 20. जी cut बिल्कुल. away this time by Fawad to the man वैसे cover. ये अब सरोज के आइडिया के हिसाब से टीम अच्छी बन जाती है. Exactly. हैदर 3 पे 4 पे आप घुसा दो उसको, क्या नाम है इसका, सदाब को खिला लें आप 4 पे. 4 पे वो हो गया, मलिक 5 पे, हाँ 6 पे इफ्तिखार, 7 पे खुशदिल, 8 पे इमाद. दैट्स अ गुड यूनिट. 8 तक बैटिंग है आपकी. Edge that is taken. That's a massive wicket, and Fawad Alam gives those wicket away to the spinner, and he was looking so comfortable against the spin this morning, and that is a very unfortunate shot. यार इसको विकेट नहीं देनी चाहिए थी Fawad. 75 for They 5. turned a little extra, bounced a little extra. Best found that little extra, and Fawad, who came forward to the delivery, that's a good one actually. That's a good delivery, but again यार prodding क्या away. यार, वही. Too much gap between his bat and his body, and a comfortable catch for Joss Butler. Very disappointing in terms of Pakistan, because this partnership was finally looking good, and these टॉम two. बेस्ट ने भी अपनी कमाई हलाल कर ली पिछले 3 टेस्ट की. क्या यार फवाद, ये भी कोई बॉलर है जिस पे आप आउट हो रहे हो. इतना आपने फाइट दी, 21 of 74 deliveries, bitterly disappointed, but now it's up to Rizwan and Azhar, his ex vice captain in fact, अब तो बाबर को बना दिया. But once again the match is in the balance. 75 for 5 after 36.2, trailed by 508 as Mohammad Rizwan will be joining Azhar Ali at the crease. Dom Best को भी यार आपने विकेट दे दी है. फैसल कह रहे हैं इट्स अ शेम आफ्टर गट्सिंग इट आउट अगेंस्ट टफर बॉलिंग. वही बात है यार, आप जोफ्रा की 93 माइल्स पर आवर बॉल आप मैनेज कर रहे थे, फिर आप आगे लल्लू से ऑफ स्पिनर पे आउट हो गए. इट्स रियली बिटरली डिसअपॉइंटिंग. है एनीवेज, वेल प्लेड फवाद. वेल प्लेड तो मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस इट वाज अ गुड इनिंग्स आफ्टर बीइंग व्हाट 30 for 4 आई बिलीव इन द मॉर्निंग. तो 40-45 रन्स की पार्टनरशिप बनी थी. But now it's Mohammad Rizwan, थोड़ा सा active player, a busy player as they like to say. He'll probably it will help Azhar to have somebody who gets a move on, who rotates the strike. It might help him concentrate as well. Fawad Alam gone for 21. उमर शराजी कह रहे हैं goodbye Fawad, see you in a few hours again. यार ऐसा तो ना को, शायद बारिश हो जाए, शायद रिजवान और अजहर 150 की पार्टनरशिप लगा दें, इंग्लैंड को हम फ्रस्ट्रेट कर लें. But that looks pretty unlikely. 333 runs, average of 33.3, 250s. Of course, he got that 95 in the Tour of Australia. Very unlucky not to reach the triple figure mark. But Dom Best, yeah, it was a nothing ball, bit of extra bounce. थोड़ी सी pitch को लग के बाहर निकली, and a good catch by Joss Butler. Well, good take there. उसने हमने देखा Joss Butler struggled in this series as well with his keeping, but he did really well there. एक्चुअली उसने बेस्ट के ख़िलाफ़ ही शान के एक स्टम्पिंग मिस की थी और कैच भी छोड़ा था, बट नथिंग लाइक दैट इन दिस इंस्टेंस, एंड इंग्लैंड वंस अगेन ऑन टॉप. Babar Azam and Fawad Alam both getting pretty decent deliveries to be dismissed, although Fawad's technical flaws being exposed there, especially the gap between bat and pad. Zainab Puchri, can Azhar and Rizwan do a 300-run partnership like Crawley and Butler? Why not? Why not? Why not? या 300 नहीं, 300 नहीं तो 30 की तो कर लो. छोटे छोटे milestones. Quicker delivery played off the back foot by Rizwan. He's played one good innings on this tour. He looked good in the other one, but then foolishly ran out Asad and of course lost his own wicket. So इसका भी यार अगर एक statement innings अच्छी खेल ले इधर, it will really enhance his reputation in the test format. But 75 for 5. Oh, bit of an inside edge on that drive, could have been caught and bowled. But he's looking to place shots. Azhar 25 of 94 deliveries. A strike rate of even below 30, I would guess. 30 के लगभग. Interesting to see Khwaja that in our batting अभी तक जो है वो धूप नहीं निकली. या लेकिन अब स्पिनर पे आप आउट हो रहे हो तो क्या धूप पे बात करनी है, अब But बहुत पुराना हो गया है. आपने that was a good delivery Khwaja. जो स्विंग हो रही थी वो आपने कंट्रोल करी, फिर आप ऐसे लल्लू के तरीके से यार आउट हो रहे हो. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग.
यार They अच्छी don't बॉल put थी. a price on their wicket ना हमेशा. They do the hard work और जब accumulation का time आता है out हो जाते हैं. It's very frustrating and an age-old issue with the Pakistani batting. धूप नहीं निकलेगी तो पार्टनरशिप कैसे लगेगी, ये भी कोई बिलावल ने यही कहा होगा मुझे लगता है. But here comes Chris Wokes. Oh, that's an interesting leave by Azhar Ali. लेट हो गया था लीव पे. Yeah. But that could have easily trod onto the stumps और फिर तो हम वाकई तहस नहस हो जाते. But 75 for 5, the last recognized pair at the crease. But again, Rizwan on the crease. He's one of the best batsmen that we have right now in form. So if Azhar needed a partner, I think Rizwan's better than Fawad. Good shot there by Azhar Ali, straight to the man at mid wicket. Squeezing the runs again, England. ज़ैनब रिजवी कह रही 5 मिनट के लिए निकली थी जब जोफ्रा आया था, बस 5 मिनट की धूप और 5 मिनट की पार्टनरशिप. बट यार कितनी दफ़ा ये रिप्ले दिखाओगे, बस कर दो यार, हम भी तंग आ गए. वी गेट इट, ही इज़ आउट. डॉम्बेस सबसे रिलैक्स्ड सीरीज़ इसकी गई है, ना बैटिंग आई है ना इतनी बॉलिंग की है, और जब आया तो फिर एक मुफ्त विकेट मिल गई. Left alone this time by Azhar Ali. FHD कह रहे हैं यार कोई इंटेंट भी नहीं है टू मेक रन्स. यार इंटेंट की बात तो आपकी सही है, यही स्टेज था जब आपने अपनी इंटेंट पे कैपिटलाइज करना था, लेकिन नहीं, आपने आके फिर एक जस्ट पोकिंग एट द बॉल विकेट दे दी. बात यह है कि देखें टेस्ट मैचेस अब बहुत कम होने हैं. आपने 10 साल इंतज़ार किया कमबैक का. आपने आर्चर, एंडरसन, ब्रॉड, वोक्स को नेगोशिएट कर लिया है और आपने विकेट बेस्ट को दे दी. सीरियसली यार, अपने आप को ही ज़ाया किया आपने, और किसको क्या. Driven this time to the offside for no run. और अजहर तो आपको पता है जिस फॉर्म में है, वो तो कोई भी मूड में नहीं है. ही इज़ जस्ट हैप्पी टू बी एट द क्रीज. Exactly, he's batting time. वो at ये this नहीं point. सोचा कि भाई मैंने बड़ा स्कोर करना है, मैंने सिर्फ बैटिंग करनी है बीच में. गोपी मियाँ कवाल करें, आई फील लाइक विद अजहर्स फील्ड सेट दैट प्रीवियस लेग ग्लांस वुड हैव गिवन इंग्लैंड अ सिंगल. बिल्कुल, अब यासिर शाह भी बेचारे पैड अप कर रहे हैं, भाई मेरा वक्त आ गया. लेट्स सी हाउ आवर टेल रिस्पॉन्ड्स. इट्स गोना बी अ लॉन्ग डे फॉर देम इन द पवेलियन. आई फील Drive from Azhar Ali and a good one at that, and come through for a single. और ये भी इनको एडवांटेज है कि इनके पास 4 लेजिट फास्ट बॉलर्स हैं, तो थकन का भी कोई इशू नहीं होता कि भाई ही इज़ लॉस्ट सम इंटेंसिटी या थोड़ा रिदम ख़राब है. ठीक है, यू जस्ट रिमूव हिम, गेट द अदर गाय ऑन. अभी वोक्स और जोफ्रा ने बॉलिंग कराई है. एंडरसन और ब्रॉड का स्पेल भी ड्यू हो गया है पहले घंटे के बाद, और वो आपको मुसलसल आपको प्रेशराइज करेंगे टिल द टी ब्रेक. उसके बाद वो फिर आ जाते हैं एक स्पेल देने. So that shows that their fitness standards is very high quality as well. 76 for 5, last ball of the 38th over coming up. Trailing by 507, a long way to go. Nice defense from Rizwan. Rizwan. Getting behind the line of the ball. 76 for 5. Lone Wolf पूछ रहे हैं, will it be curtains for Azhar as test captain after this series? That is the $1 million question that we've all been asking. I think क्योंकि न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, इसके बाद कुछ महीनों बाद वो कहेंगे यार यंग कैप्टन के लिए वो ऐसे उसको भेजना, you know, it's a bit harsh. Plus When are we going to New Zealand, do you know? End of the year, I believe. End of the year. After that, Zimbabwe. We have to go to we have to host Zimbabwe, then go to South Africa और फिर New Zealand जाना है. Probably in like Jan or And Feb South or Africa is supposed to come to us as well, right? वो next year आ रहे हैं. Next year. This is only ODIs and T20s on this tour, and I believe we can win यार. क्यों नहीं यार? In New Zealand? In South Africa. Yeah, for sure. There's an opportunity. उनकी टीम भी थोड़ी हल्की है आजकल, Exactly. काफ़ी टर्मोइल में है. क्विंटन डिकॉक को I believe they आ जाएंगे कोई नए लड़के आ जाएंगे उनको. हाँ, उनके कोई जिन फास्ट बॉलर हमेशा ही आ जाता है. वो नोटी है, he has good pace. Quinton de Kock is world class. Rabada is world class. Yep. Ngidi is a good player. Don Best continuing after his wicket of Fawad Alam in the last over. And it gets a leading edge from the Pakistan captain for no run. 26 of 100 in deliveries. अब 26 का आपका स्ट्राइक रेट है. थोड़ा सा तो आप उन पे प्रेशर डालो. इंग्लैंड को फील ही नहीं हो रहा कि यार रन्स के कोई इशू है. भाई अपने तो वैसे कोई इशू नहीं होगा. बॉलिंग के रिदम में आओ, अपने ओवर निकालो. प्रेशर पे वो वैसे ही आउट हो जाएंगे. So you have to counter attack a bit here. Azhar has to change his game plan, I feel. That's just easier to say, but I'm not sure if Azhar has the capacity right now. He's the kind of player in his form. He's just looking to survive, making sure that he doesn't
again get exposed to that middle stump, leg stump weakness that he has to the fast bowler. Just like Fawad, he's looked very comfortable to best, but more often than not, that'll lead to a lack of concentration and then bring about a wicket, as we saw with Fawad. Even though the delivery that Fawad got had an extra turn, an extra bounce. It's just played away to the leg side, and a lot of cover there for Azhar Ali. I have to say that we're faulting the batsman for slow run rate, but the field placements from Joe Root has been pretty good because he knows that that mid wicket is placed perfectly for the clip off of Azhar Ali's pads, constantly putting a short leg in place, one man at mid off and a man at extra cover. So it's no real room for the free shot, even when England bowl poorly, and they rarely do. 76 for 5 after 38.4 overs. FHD कह रहे हैं और लास्ट ODI सीरीज इन SA वाज डिसेंट. हाँ वो अच्छा मैच हम जीते थे. इमाम ने भी 100 किया था, बाबर आजम मेड रन्स, हसन अली ने भी एक 50 मारी थी एक मैच में, आपको याद होगा. शाहीन ने भी बार बार आमला को आउट करा था. आई रिमेंबर इन दैट. Any updates of Hassan Ali? यार देखते हैं. लेट्स फाइंड. होपफुली ही विल बी फिट, बट लुक्स लाइक इट्स अ लॉन्ग रिकवरी प्रोसेस. मे बी इफ ही प्लेज डोमेस्टिक जब ये रीलॉन्च होगा इन द विंटर, hopefully he'll be back to his best. It's my understanding he's based out of the UAE now. अच्छा. Yeah, played away to the because leg his wife side. is of course Indian, so maybe he lives here. Could be. Come through और for अच्छा है, इधर single. रिहैब वाले और बेहतर डॉक्टर्स मिलेंगे, इधर ease of travel भी है, facilities भी Maybe he बेहतर. can use the ICC Academy. They have a great rehab 100% वो तो कहेंगे भाई. I remember आपने नाम लिया ICC Academy का. एक दफ़ा उधर OS शाह मुझे मिला था, उधर ही घूम रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था. So you know. He's a nice guy. हाँ अच्छा cricketer that played some good innings against Bharat especially. James Anderson 4 for 21 in 11 overs. Actually, the ICC Academy, I have a few friends that used to work there in the comms department and a few other places. And everyone who works there, Khwaja, speaks very highly of Mudassar Nazar. And they call him Mudipa. जी. And just a lot of love and respect for this man. बिल्कुल. Apparently, he's very gentlemanlike, very 100%. kind, professional. वसीम भाई भी कहते हैं he was one of my role models, my idols. I think off the field, I don't know him enough on the field, but off the field, he seems to be a character and a half. He was one of the key players in Imran Khan's great test side as well. Bowling भी करता था और आके ऊपर batting भी करता था. Was a defensive kind of opener, but he was a very gritty cricketer. Stuart brought into the attack for the first time after lunch today. 8 overs and 14 runs coming off of them. So, in the midst of that great economy rate that England have had in this innings, they bowled 39 overs for just 77 runs. 3 slips in place, no gully, but there's a short extra cover. तो वो चाह रहे हैं कि अजहर अली कोई अपिश ड्राइव मारे. Also important to note that they've constantly had 3 to 4 slips, England. Pakistan were persisting with just 2 or sometimes even 1. यार वो तो जब आप फेंटा पड़ रहा हो तो बंदा क्या करे फिर, ये भी है. और लोग सोचते हैं कि यार कोई फील्ड प्लेसिंग कोई बहुत ही कोई स्पेशल आर्ट है. ऐसी कोई बात नहीं, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड हो चुके हैं. नहीं, बट क्रिकेट 200 साल पुराना खेल है, सबको पता है कौन सी फील्ड कहाँ रखनी है. Nobody is reinventing anything. Really? हाँ What about यार, those short mid-offs and those short वो mid-ons? तो बिल्कुल आप फंकी होना ना, वो अलग बात है. लेकिन इतना कोई अनबिलीवेबल कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर और रहा जो है. आप स्लिप्स की पोजीशंस की बात करते हैं, थोड़ा आगे खड़े होना. यार वो तो फिर आपके एक तो ग्राउंड का एक्सपीरियंस होना और आपकी जजमेंट क्या है कि आप पिच को कैसे जज कर रहे हो. 77 for 5. Let's see what the comments are saying. FHD is very pleased with those economy rates, and Faisal is agreeing that Azhar's bat is coming down a little bit straighter. Let's hope it stays straight for another 2 days at least, or at least another day. But he is battling hard. 27 not out of 107 deliveries broad. It would mean a lot to me if he got to triple figures. 100% यार. It would just, I don't know. And this is clipped away to square legs. उसके mental frame of mind को इतना वो affect करेगा यार कि चलो at least I have validated myself as a captain कि मैंने lead from the front किया है. क्योंकि especially in Pakistan cricket you have to be able to set the tone with your own performance. मिसबा इतने साल इसलिए नहीं रहा क्योंकि और कोई था नहीं, उसकी performance इतनी strong थी. वरना उसकी 1-2 बुरी सीरीज भी जाती थी, कहते जी कैप्टन रिप्लेस कर दो, अजहर को बना दो, इसको बना दो, उसको बना दो. लेकिन वो मुसलसल स्कोर्स करता रहा. 100s नहीं किया तो 50s तो वो बहुत रेगुलरली करता रहा. ही हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेजेस एज कैप्टन, बैटिंग एवरेजेस एज कैप्टन फॉर पाकिस्तान. तो वो स्कोर कर रहा था, वो इसलिए इतना सिक्योर था. ये नहीं था कि वो फिरौन तब से ही बना हुआ था. Clipped away and this will be straight to mid on. But Khwaja player होते हैं, देखिए, as a Pakistan fan,
चाहे कोई भी खेले पाकिस्तान के लिए, you want them to do well 100%. and you like them to see them do well. Fans बनते हैं, बट कोई कोई प्लेयर होते हैं कहते हैं यार ये मेरा फेवरेट है, हाँ. इसको मैं ज़ाती तौर पे भी पसंद करता हूँ. ऑफ द फील्ड भी आई लाइक टू कीप एन आई ऑन हिम, ही इज क्वाइट कूल. I have a soft spot. मतलब quite दिल में किनारा है उसके लिए. So I have an affection for Azhar Ali, जी जी and actually the same for Asad Shafiq, जी. and I know that you'll fault me for that, but I'll tell you a little. Nobody is perfect. I'll tell you a little कॉमी bit. हीरो है यार. कॉमी हीरो है, but I'll tell you a little bit why. आपको पता है मैंने Oh, what beautiful a delivery. ball there from Brody. beating the outside Big edge. leg cutter. अब यार ये इस बात करते हुए आउट ना हो जाए. नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं. But I'll tell you what, like when I started watching cricket, Yusuf Inzamam Yunus Khan, great batsman. That's when I 2005-2006 जी, की जी, बात जी. कर रहा हूँ. थोड़ी देर एक्चुअली फैसल इकबाल भी आए थे, उन्होंने भी रन किए थे थोड़े. यार एक मैच में किए हाँ. थे उसके फिर अलावा नहीं. अच्छा एकदम से ये तीनों चले गए. यूनिस पीक फॉर्म से थोड़ा बाहर हो गया. हाँ. ठीक है. Then we had Azhar come in and score runs and big runs and constantly score runs. Asad come in and score runs. जब ये तीनों बाहर गए ना 2009 में, ये स्पॉट फिक्सिंग वाला स्कैंडल भी आना शुरू हो गया. वर्ल्ड कप के बाद ये चीज़ें शुरू हो गई. It felt like this Pakistan team was like kind of disenfranchising. Like समझ नहीं आ रहा था कि उमर अमीन आ रहा है, अजहर अली आ रहा है, और घर इमरान फरद आ रहा है. घर में बातें शुरू हो गई कि ये बैट्समैन खत्म हो गए हैं, नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे. और जब आ भी रहे थे ना तो बड़े I don't want to like disgrace their personalities, but frankly there were a lot of them were snakes. इधर कैप्टन बनने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं. आपको तो पता ही है सागास जो चले हमारे साथ. बिल्कुल बिल्कुल. अजहर और असद जब आए, एक तो वो रन्स कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, और फिर उसके ऊपर से उनकी पर्सनैलिटीज बड़ी जो थी ना, go out there, get the job done, come back, कंट्रोवर्शियल नहीं होना, मीडिया में नहीं आना, good man off the field, great cricketers on the field. उस दौरान I became a huge Azhar Ali fan. मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि I actually like Azhar personally more than Yunus and Misbah, because वो उनका फॉर्म भी थोड़ी देर बाद लगी. Misbah अपनी जगह है, greatest test captain Pakistan had. Yunus Khan greatest batsman ever had. but एक जाती जो पसंद होते हैं ना लोग, 100%. Azhar is on top of my list. उस बुनियाद पे if he gets 100 it will mean a lot to me personally, and it'll be like this reaffirmation of the great batsman that he was. 100%. Let's hope he has a bit of a revival in his career, क्योंकि अभी भी आप कहीं से भी देखें, he has a very fine test record, even in terms of global terms, not just Pakistani terms. Yeah. तो अभी भी if he can squeeze out some last final और देखिए हम hurrahs in his career, क्या बड़ी जल्दी बात कर लेते हैं. एक तो आपको देखना चाहिए कि पीछे आपके ब्रैडमैन नहीं वेट कर रहे, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ना खिलाएं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि अजहर अली इज अनड्रॉपेबल, बट आपने मिसबा के साथ देखा, आपने यूनिस भाई के साथ देखा कि they got runs late into their 30s. So as a test batsman, Azhar is not done. And I think he's just dropped a catch there. नहीं नहीं बच गया. But inside edge की आवाज़ थोड़ी सी तो आई है. But extra bounce there for Dom Bess outside off. Rizwan काफ़ी troubled लग रहे हैं, but given as buys, so no bat there thankfully. Speaking of Azhar Ali, he's only 14 away now from 6,000 test runs. Let's hope he gets that. Yeah. And plenty more. Look at that big turn. Ooh, flicked his knee roll a bit. So should have been leg buys in fact. And in the list of the greats, you'll be right behind Mohammad Yusuf. कौन? अच्छा मैं समझा. अच्छा in overall scores बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. For the most runs for Pakistan in Test cricket, it's in Yunus Khan, Javed Miandad, Inzamam ul-Haq, Mohammad Yusuf, and then Azhar Ali. So यानी टॉप 10 में आ रहा है यार. Top 5 में. But इस numbers के खिलाफ. Phenomenal. Remarkable. But there's a steep drop in averages after Mohammad Yusuf. आपने इतना ज़बरदस्त खिताब दिया और असलान ने एक लाइन में कह दिया अजहर इज डन. क्यों यार ऐसे तो मत कहें. अच्छा अब फैसल ये बात करें कि असद इज डन, Azhar might need more time as a good shot from Riz. Beautiful sweep, getting down to one knees and proposing this divine leg for 4. This is the intent that we were talking about कि यार अब उनको सिर्फ बॉलिंग नहीं कराने दे. But that's just थोड़ा the सा kind of player counter-attack भी Rizwan करें. is. He's not going to settle in and stay there. ऐसे ही होना चाहिए. आई थिंक ये अच्छी एक. But definitely Dom Bess को तो हक नहीं है. हाँ उसको तो वैसे ही आप चपेड़े कराओ यार. असद इज डन, Azhar might buy more time. वो भी मुझे आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा फ्लॉड लगता है. Azhar का एवरेज पिछले 2 साल से 21 है और असद का थोड़ा यार मसला ये कि अजहर फिर भी टॉप 3 ओपनर ऊपर आता है. ये बात आप न्यू बॉल पे आप आउट हो सकते हो, लेकिन आप 5 पे आप स्कोर नहीं कर रहे यार. कम ऑन मैन, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली व्हेन यू प्ले 60% ऑफ योर टेस्ट इन एशिया, maybe even more, 65%. Another hard lovely pull from Rizwan. यार टाइमिंग नहीं हुई, बट क्रॉली भाई कैसे भाग रहे हैं. आई थिंक ही इज वेयरिंग दोस. Yeah, it's a poor delivery from Bess. Short and wide. He is a poor down bowler the leg side.
इतना नहीं है, इतना वेल सेटल्ड नहीं है कि आप उसको बल्ला ही नहीं उठा रहे उसके खिलाफ. Taimur This is the Akhtar right approach. is saying Khushdil is not a keeper. Did you mean Zishan Ashraf? Khushdil does a little bit of खुशदिल keeping. पार्ट टाइम कीपिंग कर लेता है. Part-time keeper सरोज है को आपको पता है, सरोज भी कभी कोई गलत बात नहीं करते. जिशान अशरफ ही वाज जस्ट अ हैक यार. वो बैटिंग वो टुल्ला ही था. वो ओवर हाइप हम कर रहे हैं I would actually just hold your horses on Haider Ali as well. He's got the shots, but he needs temperament. यार. हैदर अली ने कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल में भी 100 मारा है यार. आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं ये भी करें. बात है. उसने मारा था या रोहेल ने मारा था, आई एम नॉट श्योर. और ही मेड 80 odd or something. Gopi Mia saying, can Azhar stay as a batsman? Well, Azhar the batsman is more problematic than Azhar the captain. So if Azhar the batsman can stay on, then Azhar the captain can stay on. That's my opinion. फैसल कह रहे we won't play another test for a year after. नहीं यार, एंड ऑफ द ईयर हमारे हैं टेस्ट मैचेस. और बांग्लादेश के साथ भी एक ड्यू है, पता नहीं कब खेलेंगे वो. Yeah, why don't Bangladesh come to Pakistan? यार बंगाली भी आपको पता है. मैं क्या ऐसे ना बोलें. बोर्ड के खिलाफ बात करें, लोगों की बात नहीं बात करें. यार कौमी हीरो है हमारे ऊपर. Who's your favorite Bangladeshi cricketer? I don't have one. Mohammad Ashraf was mine. नहीं वो तो फिक्सर था, उसको कैसे कह सकते यार हैं. 100 किया था उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एज अ टीनेजर. तो बड़ा बड़ी फिट ही नहीं थी यार. वो भी तुक्का ही नहीं थी यार. यार ऐसे ना करो बेचारे को तुम. कार्डिफ में in 2005 Yeah. one of the greatest बिल्कुल moments. मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की थी. Everybody was telling me how shit Bangladesh is, and then this kid comes and scores 100 against Australia. हाँ. I love that innings. One of my favorites. The एक उनका defense प्लेयर था, उसके बाद भी आए थे नासिर हुसैन. ही वाज वेरी टैलेंटेड. ज़ाया अच्छा. कर दिया. और एक और भी था शबीर, क्या नाम था उसका. उनका उमर अकमल का डुप्लीकेट था. क्या नाम था उसका. शबीर हुसैन, ये पता नहीं क्या नाम था. ही वाज वेरी What do टैलेंटेड. you make of Shakib Ball Al Hasan? striker बहुत था. लोग कहते हैं he's one of the greatest all-rounders the game has seen. शाकिब तो यार बंदा बहस भी नहीं कर उसके सकता. numbers देखिए आप. Ridiculous. हम लोग बेन स्टोक्स की बात करते हैं as test all-rounder. Even test. फैसल कह रहे हैं एमएम आलम. That's a legit commie hero. Stewart brought 26 wickets in this summer, 5 test matches भाई, and वो भी back to back. Be Lovely drive by. Good fielding यार, है. ये क्या जबरदस्त फील्डिंग है कवर पे. बड़े मनहूस हैं यार. शबीर रहमान. शबीर रहमान, हाँ. कलर्ड आइस थी मुझे याद है, लेकिन वो भी बैड बॉय, डिसिप्लिनरी इश्यूज, फिटनेस इश्यूज, इनकंसिस्टेंसी. क्या करें. But yeah, I think Shakib Al Hasan by far the greatest Bangladeshi वो cricketer. तो कोई डाउट ही नहीं है इस And बात one of the में. greatest all-rounders of the game, I think. मुशफीक भी यार अच्छा प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा ए होल बन गया, थोड़ा सा वहाँ पर कीपर अच्छा है. नेशनलिस्ट टाइप बन गया. हाँ. वरना मुझे भी अच्छा लगता था. But I mean, अभी recently भी उसकी अफरीदी के साथ भी अच्छी relationship चल रही थी, so he's not that. भैया शायद भाई तो आपको पता है सबसे बना के रखते हैं. हाँ. वो तो बंदा किस किस. नहीं, I think अब इंडिया में उनकी भी कैंसिलेशन हो गई है. नहीं यार, इंडिया ड्रामा ही है. जब वो जाएंगे फिर उसके पैर पड़ जाएंगे सारे. ऐसे ना बोले. Sumaya Sarkar. यार कौमी हीरो है यार, क्या होगा. ये तो है. Yeah, Soumya. I think what is it? How is it pronounced? I think Soumya Sarkar. सौम्या सरकार. ये तो है. सुमैया सरकार बनाते हैं. सुमैया बीबी. वो हाँ अच्छा, वो भी हैंडी ऑलराउंडर है, लेकिन स्कोर नहीं करता है लाइक ही शुड. Arslan Farid coming in with the reality check. क्या रियलिटी चेक दिया. Yunus Khan improved his average from 47 to 52 at the toe end of his career on the flat decks in the UAE. If Pakistan played more home series in the UAE throughout his career, his average would have been 60 plus. Asad and Azhar got a career outside of the UAE. If these home series were in Pakistan, their averages यार would ये be around गलत 30. बात है यार. I disagree with that. कराची में खेलना या लाहौर में क्या खेलना, अजहर और असद स्कोर नहीं करेंगे. क्या हो गया करेंगे, आपको. क्यों नहीं करेंगे. अभी उसने 100 किया है. आप बात हाँ ऐसे तो नहीं कहे यार. 150 तो अभी उसने असद अगर एनएसके में खेलेगा वो 100 नहीं मारेगा. तो बड़े बड़े 100 नहीं मारेगा. वो तो पैदा हुआ है वहाँ. वो लिटरली ग्राउंड में ही, पवेलियन में ही पैदा हुआ था. 88 for 5, 42 overs gone. ये गलत बात है. बाकी यूनुस की बात घर है पे खेलना, घर पे खेलना होता है बाकी यार. यूनुस की बात है उस बंदे की. यार लिटरली हर दुनिया के मुल्क में टेस्ट प्लेइंग नेशन में 11 वेन्यूज, इंटरनेशनल वेन्यूज पे उसके 100 हैं यार. यूनुस खान, एक्चुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ फ्रीकिश his late career spurt was. His and Misbah's. Nobody plays like that यार. सचिन, पोंटिंग, संगा शंगा ये सब खत्म हो गए थे. सब खत्म हो गए थे अपने लेट 30s में. लेकिन ये दोनों तो ऐसे बैटिंग करे थे जैसे तेंदुलकर तो खेल रहा था लेट 30s. कौन. तेंदुलकर तो खेल नहीं यार, आखिरी 2 साल उसकी एवरेज वाज लाइक लेट 30s. अच्छा. हाँ वो खत्म था. उसको 2011 के बाद ही रिटायर हो जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में. लेकिन वही 100 करने मैंने. Ramiz Raja once called Soumya Sarkar Sumaya in commentary in the Bangladesh Premier League, and the Bangladesh Ramiz Raja खुद से खामोश हो. and they sent him home. They sent him home because of that. यार क्या बात करते हैं हम. रमीज भाई की क्या ही बात है यार. वो ट्रांस राइट्स के लिए बात कर रहे थे रमीज भाई. यार इस तरह ना बोलो. यार क्या है यार. ऑल लाइव्स मैटर भाई. क्या All lives matter. Dom Bess this time turning into the right hander, played away to mid-wicket for no यार. run. बजर आपने 112 बॉलें खेली, आप भी थोड़ा बल्ला उठाओ. ऐसे ना करो.
And Zainab also advocating for Azhar and Asad, saying that yes, they're going through a bad patch. Well, यार 2 साल बैट pretty पैच long one, but they both have scored hundreds in England and Australia. 2 साल एक बैट पैच नहीं बॉल्ड पैच होता है. No, but Lovely. good shot again from Azhar Ali getting the sweep. Academic style sweep. Nice. It's orthodox and it'll go to square leg for a boundary. Man, it's been a while that Azhar got a boundary. कुछ और मांग लेता मैं. Yeah, exactly. ये तो है. यार बट ख्वाजा 2 साल की हम बात करते हैं. जी, जी. 2 साल में हम टेस्ट भी कितने खेलते हैं? यार जितने भी खेले तो हैं ना यार. We played quite a few, at least maybe 11 or 12 tests. 6 टेस्ट खेले होंगे. नहीं क्यों 6 टेस्ट? 3 हम इंग्लैंड में खेले. भाई 2 श्रीलंका के साथ खेले. फिर हमने 3 न्यूजीलैंड के साथ खेले. 5. फिर हमने 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले. 7. 2 इंग्लैंड के साथ खेले. 9. नहीं 2018 में. हाँ. फिर आयरलैंड के साथ खेले. 10 हो गए. फिर ये बांग्लादेश सही, और सही. श्रीलंका के साथ अभी जो खेले. That's 12-13 tests, man. There's no doubt about it, Sanjay. No, but like maybe there's a conversation around match practice and match fitness and all of that. यार come on, man. Who's gonna buy that? पुजारा नहीं ऐसे खेलता. नहीं खेलता. हनुमा विहाड़ी नहीं खेलता ऐसे. नहीं सही. मयंक अग्रवाल नहीं खेलता ऐसे. टिम पेन नहीं खेलता ऐसे. Come on, man. True. भैया ब्रॉड और एंडरसन को ही देख लें. हाँ. सबसे बड़े एग्जांपल जिन वो है. वो 600 पे है, वो 550 पे है, और वो कहता है मैंने और खेलना है. वो जान भी नहीं छोड़ा. ब्रॉड भी नहीं जान छोड़ा. एंडरसन भी नहीं जान छोड़ा. 92 for 5. Pakistan inching to that 100. And Azhar Ali's got his highest score of the series. वो भी 33 in the 5th innings of the test. And Musab is Series. quoting the great Michael Scott. I'm going through a bad patch the whole year, actually. The whole 2 years. यार do we know who is running that switch hit Twitter I'm account? not sure, but किसी को तो पता होगा यार. बहुत they're doing a good जबरदस्त job, whoever मीमात it is. बनाता है वो बंदा. Azhar या Ali this बंदी. time cutting away. There's nobody there. Lovely. That is going to be 4 behind Yeah. point. Don't bother running after that one. Azhar Ali is on fire. 37 of 117. भाई शुभ शुभ बोलो. ज़बरदस्त बैटिंग करे. फाइनली हम बेसी को मार रहे हैं जो अभी भी बिलो 3 के इकोनॉमी रेट पे जा रहा है, विच इज़ डिस्ग्रेसफुल. दैट बिग राउंड आर्म डिलीवरी टू शॉर्ट. देयर इज़ नो पॉइंट इन जस्ट एन ईजी बाउंड्री ईज्ड अवे बाय आज़ा. एंड गुड बैटिंग हियर फ्रॉम द पाकिस्तान कैप्टन. एंड द सन इज़ आउट. और अब सूरज ने भी घुटने टेक दिए. कहते हैं यार ये लो मैं आ गया हूँ, खेलो बैटिंग करो, इंजॉयज लें. सरोज कह रहे हैं हाँ 3 टेस्ट साउथ अफ्रीका में भी थे where Azhar got absolutely humiliated when he only made like 9 runs or something in the. ये धूप निकली है. He was averaging 9 in that series. अब धूप निकली तो किधर जा रहे हैं ये लोग? यार आ रहे हैं यार, वो तो कॉमी हीरो है, वो कहीं नहीं जाते यार. वैसे I don't know if everybody knows this कॉमी हीरो जोक स्टोरी. मैं आपको बताता हूँ. New change of pace. PSL 2 का मैच था. मैं और मेरे अजीज़ दोस्त खुशहाल हम मैच देखने गए हुए थे. लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का. सोहेल तनवीर हमारी टीम में था लाहौर में. दैट 59 ऑल आउट वाला मैच था. Oh, that was a good game. तो हम आउट हो गए थे, सब कुछ हो गया था. तो we were basically sitting on the leg side boundary, square leg or something. तो उधर ही खड़े थे. प्लेयर्स हमारे बिल्कुल सामने, जाली वाली कोई नहीं. You can easily chat with them or something. Yeah. It's actually a really nice तो stadium. बॉल सोहेल तनवीर की तरफ. एक्चुअली ही bowled an over, got a wicket or something. अच्छा ओवर कराया था. तो फिर जो हमारी तरफ आया, मैंने कहा वेल डन कुकड़ी, शाबाश. ऑफ कोर्स कुकड़ी फुल मैंने आवाज़ लगाई. तो मेरे पीछे थोड़े पंजाबी भाई बैठे थे. यार इस तरह ना आकर कौमी हीरो है साਡਾ. यार क्या बात है. And we just like half the people in the stand burst out laughing. यार it was pretty hilarious moment. तो तब से Up a try from Rizwan to recover. Yeah, but the DSC is a nice place to watch cricket, isn't it? It's a beautiful उसके व्यू place. हर तरफ से बड़े enjoy मैच करते देखे हमने. हैं. In the cold on a fire, Yep. they like to say. 6 runs away from 6,000. Wow. Inshallah. Straussy भी अपने भाषण उधर दे रहे हैं. What a magnificent gunge he has. Magnificent batsman too. जबरदस्त प्लेयर है. वो जो अपने वो पीछे होकर कट मारता था. I really loved that shot. And a class Roger, player. when England and Australia are playing each other, who do you support? Always England. Always England? Always England. Never the Aussies? नहीं, never. Lovely drive down the ground from Riz. Jofra got to stop down. I tend to agree with you there, actually. यार ऑस्ट्रेलिया तो they have inflicted so many wounds on Pakistan. The Pakistani psyche. Yeah. मैचेस तो छोड़ो, हमारे इतने मेंटल वुंड्स उन्होंने इतने दिए कि अब मैं 2010, 1999. होवर्ड 99 वर्ल्ड कप. Mike Hussey. वही सेंट लूशिया 2010, सिडनी 2010, 2015 वो भी बहुत टफ डिफीट थी टू स्वॉलो. 2015?
यार हाँ, Watson वहाँ वाली। वाला मैच, हाँ. प्लस टेस्ट मैचेस हम इतने उनसे यार हार चुके हैं ओवर द इयर्स. वो तो रोल देते हैं हमें. यार बहुत ज़्यादा. Well left by Rizwan. Looking good at the crease, the Razzler. सही खेल रहा है यार. और वो ये पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, so that's a good 7 off sign. 21. And who is your team to go to after Pakistan and World Cricket? Khawaja? यार of course West Indies. अच्छा. हाँ, I like watching them. You don't have I like watching England in Test cricket. I like. नहीं, जिस तरह आप sport जिसको करते हैं sport. सपोर्ट तो फिर नहीं यार पाकिस्तान, किसी फिर तो पाकिस्तान पे बी ऑल एंड ऑल हो जाता है. I- England I support in Test cricket. I like England in Test cricket, but I also like Sri Lanka. यार श्रीलंका बोरिंग टीम है यार. I like them. जिस टीम में फास्ट बॉलर ना हो मजा नहीं अगर आता कुसाल परेरा का नाम ही बेन स्टोक्स होता ना, उसको भी कौमी हीरो बनाया होता आपने. यार. वो एक इनिंग खेली, उसके अलावा ही इज एन एवरेज प्लेयर. यार वो इनिंग आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. वो एक ही इनिंग वो है ना. इंग्लिश नहीं है तो उसको कोई घास नहीं डालता. यार बेन स्टोक्स ने कितने हीरोइक इनिंग्स खेली हैं वही यार. इनिंग बताते हैं ना, वो खेलता तो है बट वो इनिंग यूज करते हैं. अब look at उसके- great innings by मैं us. आपको बेन स्टोक्स की 5-6 और इनिंग बता सकता हूं. आप मुझे कुसाल परेरा की 3 और बता दें. वो एक इनिंग काफी नहीं है. यार क्या इनिंग है यार. यार नौ- बेन स्टोक्स कॉमेडी हीरो है यार यार. 10 नंबर के साथ उसने आपको मैच जिताया. क्या ठीक है ना यार, उसने भी 11वें के साथ वो जिताया बेहतर था. नहीं थी बेन स्टोक से इनिंग्स. Oh, I think that's just dropped short, got it inside edge. Big appeal from Broad, and he's one. No reviews left, mate. No reviews. Get on your bike. Back to bowling. At least we are winning the reviews war. Can you at least admit कि Pereira की innings was far superior? यार actually I literally remember when that innings was going on. हम PSL का मैच चल हाँ. रहा था, हम ग्राउंड में थे. हाँ हाँ. तो वो हमें स्ट्रीम करनी पड़ी थी. नहीं हम कमेंट्री कर रहे थे. नहीं मैं उस वक्त ग्राउंड में था. अच्छा. बट लाहौर इजलू और हम कमेंट्री कर रहे थे. हाँ. हाँ. So I couldn't really watch that live, but of course, wow. That was out. That was very, very close, but no reviews left. And Rizwan is a lucky boy, a lucky chappy to still be at the crease. Zainab keh rahi hai after Pakistan, she likes New Zealand. New Zealand, yes, a lot of Pakistani fans do love. Hit him outside the line, so it's a good decision. Shut your mouth, Brody. यार लेकिन न्यूजीलैंड भी You don't like them? They're not entertaining enough for you? अब उनके प्लेयर्स अच्छे हो गए. उस जमाने में बहुत ही बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ टाइप बॉलर्स बहुत सारे थे उनके पास. Yeah, true. क्रिकेटर्स इन फैक्ट. Jacob Oram type. स्कॉट स्टायरिस, जेकब Scott ओरम Styris. और ये और वो विटोरी तो मैंने आपको. You know what? Whenever we play England and we play Australia, especially Australia, I feel threatened a little bit. I don't feel that threatened with England. I always feel like we can beat them. ऑस्ट्रेलिया तो इंटिमिडेटिंग है यार बहुत ज़्यादा. I've never felt intimidated by New Zealand. हाँ, उनको कभी सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन आजकल in the recent past they've been smashing us, to be quite Yeah, honest. but that's probably because we don't take them seriously enough. Seriously नहीं लेते हम. Drive. Do you get intimidated by India? नहीं यार, but I can see our players do. I think when I started watching cricket, I thought there's nothing much there. नहीं, अब उनकी बैटिंग थोड़ी स्केरी हो अब गई. थोड़ी मुझे top 3 से intimidation. वो जो होती है. धवन और रोहित और ये और bowling से भी जो ना बुमराह. क्योंकि पहले सिर्फ चलो कोहली थोड़े बहुत रन्स करता था, अब रोहित और धवन जल्दी आउट कर लेते हैं. हाँ. अब वो भी रन्स कर रहे हैं हमारे नहीं खिलाफ. रोहित is a beast. रोहित तो मतलब लिमिटेड ओवर्स में पहली उसने इनिंग वर्ल्ड कप में जो हमें 100 मारा था, that was, और फिर एशिया कप में भी मारा था शिखर धवन ने. So they're becoming quite fearsome. good Lovely drive drive from beautiful. Azza. But he got a hand to it, I think, Jimmy. 98 for 5. So Rosh is saying, I do like India. I met Ganguly, Dravid, Sachin, Yuvi in 04 and became a fan. Irfan Bhujan is saying, yep, the Pereira innings, because it was away. यार वो उसमें no doubt, especially for a Sri Lankan player to do it in South Africa, that's ridiculous. And they won that series, in fact, I believe. जीत गए थे ना वो series. 1-0 जीते थे शायद, or something like that. It's crazy. Sri Lanka has won away series in South Africa and in England. England, यार. yeah. It's pretty ridiculous. हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान और हाँ, इंग्लैंड की उनको बात पूछता ही करते कौन हैं. है, और वो सीरीज जीत चुके हैं इधर. Clipped off the pads from Rizwan, go to find like that drive from Azhar Ali earlier in this over. That's a sign of confidence. If you remember that first test match, you were saying कि अगर ये फॉर्म में होता तो ये लेग साइड पे नहीं खेला होता, इसको ड्राइव कर रहा होता सीधा. बिल्कुल बिल्कुल. He's finally playing that straight drive. जब अजहर ऑफ ड्राइव और ऑन ड्राइव अपनी when he's nailing it, Yeah. especially आप वो MCG वाली इनिंग्स जाके हाइलाइट्स देखे तो इतनी प्यारी प्यारी उसने ऑन ड्राइव्स मारी थी मुसलसल all day. Yeah. That's when he's truly in his prime form. So Faisal and Ramiz both saying they like South Africa. South Africa is a good team to watch, especially जब वो घर पे खेलते हैं. They're very aggressive and they Faisal play. is saying they've beaten Australia away. हाँ वो काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, Yeah. 2-3 दफ़ा कर चुके हैं. Anderson now this time driven by Rizwan. He's got a very high elbow, Rizwan, when he bats. Footwork is not perfect, but he steps into that drive very nicely.
Zainab is saying Dravid and Tendulkar were very humble for their greatness. Sharma and Kohli are good too, but they're very annoying for their off-field antics. That's actually the attitude of the new India. It's working for them. Well, relatively, आप देखें, they haven't won any ICC tournaments. Yeah, that's true. They are choking. जो opportunities इनको मिली थी 2015. If this Indian side doesn't go away with silverware, it's a big failure, massive failure. खत्म ही हो गई है. अब क्या जीतेंगे वो? नहीं, अगला वर्ल्ड कप है ना. 2016 नहीं जीते ये, 2014 भी हार गए, 15 भी हार गए, 19 भी हार गए. लास्ट चांस है ये जो अगला वर्ल्ड T20 आ रहा है 2023. I think by that time Virat Kohli and Rohit will be old. They will be past their best. I don't think Virat will be past. अभी 30 है. कुछ नहीं होता. विराट भाई यार, रोहित तो डेफिनेटली ओल्ड होगा. रिसेंट फोटो आई थी, he looks even fitter. यार फिटनेस की बात नहीं, वो मेंटल टॉयल और यू नो हैंड आई आपकी लूज हो जाती है. कोहली की मेंटालिटी आप क्वेश्चन करेंगे. ये भी है. Question a lot about him, not his mentality. But what about Rohit? He's already. रोहित क्या है, रोहित पे कर सकते हैं. He's getting older. उस वक्त I think he's been. Especially opener आता है. Exactly. और वो हैंड आई जो है ना ओपनर्स पे ज्यादा. क्योंकि जो सहवाग हम देखते थे 2004, 5, 6 में, वो तो ridiculous player था. वो इतना destructive player. और 11 तक नहीं रहा. 11 तक फारिग हो गया, खत्म हो गया. याद है चश्मे पहन के आता था. 45 overs gone. 99 for 5. The Prince of Multan. Virender Sehwag. यार ऐसे मत बोलो. There is only one Sultan, Prince of Multan. इंजी भाई. वो तो नवाब ऑफ नजफगढ़ कहते हैं. इंतजाम तो वो सुल्तान है ना, ये प्रिंस है हमारे. उमेर शिराजी करें. Sharma takes a while to get started in T20. India doesn't have the best 20 team. I was just going to say that. KL Rahul है ना वो अच्छा. I was just going to say that, but I think India's best T20 batsman, like you say, is KL Rahul, not even Virat Kohli. KL अच्छा है, पंट भी ठीक है, हार्दिक भी ठीक है, कोहली तो हमें पता ही है. The Colster. 99 for 5. Broad this time outside off. These two looking good too, but the last time we said that a wicket came about. यार ऐसे तो ना कहें यार. 38 of 120 deliveries, so Azhar plenty of time in the middle. This is what he really needed at the beginning of the series, but just kept getting out. Yeah, Irfan Bhojani saying ear is good too. Shreyas Iyer. श्रेयस अय्यर, हाँ वो भी ठीक है. और ये उनके एक दो यंग बैट्समैन आ रहे हैं, शुभमन गिल और ये पता नहीं क्या नाम है उनके. And again, the IPL captains now are becoming younger and younger too. I think Shreyas Iyer captains Delhi. एक टीम का कैप्टन बन गया वो. 99 for 5. Pakistan one away. Oh, good delivery, getting that extra bounce. लेकिन जो खला, जो गैप MS धोनी छोड़ेगा, you cannot fill that with anybody. आपको 2 प्लेयर लगेंगे उसका वो गैप कवर करने के लिए. Yeah, but Dhoni a gun keeper and a gun middle order batsman. पिछले 2 साल से तो कुछ नहीं कर रहा वो. यार ठीक, तब भी उसने ODI सीरीज जिताई थी ऑस्ट्रेलिया में. हाँ ये है, उसने 250 की थी. यार उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है ना. Presence definitely has a lot of gravitas. The most of any of the modern cricketers, I reckon. अब जो ये सेमीफाइनल हारे थे न्यूजीलैंड से, पंट और हार्दिक ने मैच हराया with horrible shots. धोनी ने क्या किया था? वो तो शुरू में ही आउट हो गया ना न्यू बॉल पे. वो तो कुछ नहीं कर सकते. आप लेफ्ट रन बॉल आके आप स्कोर कर रहे हो ख्वाजा. इस तरह तो ना वो कोई दूध का दूल्हा तो नहीं है, उसकी गलतियां होती हैं. यार तो था कौन, जडेजा के साथ खेल रहा था यार वो उस वक्त. जडेजा को उसने ऑलमोस्ट फोर्सफुली आउट करवाया अपनी रन रेट यार. लेकिन जडेजा की फ्री के हिटिंग पे वो मैच में वापस आया ना. गेम तो निकल गई थी हाथ से जब हार्दिक और पंट ने पार्टनरशिप नहीं बनाई. यार देखें, आपने धोनी को एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज्ड किया है एज अ बिग हिटर. हाँ. और द लास्ट 2 years he wasn't able to do that. ठीक है, वो हिटर नहीं बन पाए, लेकिन वो आपने कवर कर लिया था ना जडेजा के साथ. जडेजा ने जो हिटिंग की थी. 99 for 5. Stuart Broad now bowling the Azhar. जो हम मोहाली में मैच हारे हैं, ऊपर हारे हैं हम, मिसबा पे थोड़ी हारे हैं. That's what people don't realize. नहीं, मिसबा की गलती नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए. This is edged away. नहीं, लेकिन जो हमारा नेशनल डायलॉग और एक ओपिनियन है, 8 में से 10 लोग आप पूछेंगे कहेंगे जी मिसबा ने मैच हराया. यार वो तो ये भी बेवकूफी है ना. लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़िदान ने वर्ल्ड कप हराया. कौन सा वर्ल्ड कप हराया? अच्छा वो तो छोड़ो ना. नहीं हराया कि हरवाया कि नहीं हराया. वो तो यार पेनल्टीज पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया. They only got to penalties because of Zidane. Zidane and Misbah ul Haq are the same in the same boat in that sense. ज़ैनुद्दीन और मिसबाह उल हक वाकई नाम भी मैच होते हैं. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मोहाली में जब हफीज ने वो गंद मारा है और that's sports. That's the fact of life यार. आप यही याद रखते हो, वो जो पैडल उसने मारा है, 6 और 4 चाहिए थे, वो 6 और 4 की नौबत ही मिसबा लाया था. आप तो कल कह रहे थे मिसबा ने वो गलती की थी. गलती तो थी, बट to give us he created the opportunity. मैच निकल गया था जब अफरीदी डक पे आउट हुआ है. खत्म हो गया था मैच. उसने अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और वो नहीं ली फिर. 101 100 has come up for Pakistan. फिर जॉर्डन आया, उसने कहा I took it personal. Drop 50 on him. अब हर कोई माइकल जॉर्डन वाला जिन थोड़ी है यार. Exactly. ह्यूमंस भी होते हैं. तैमूर वही बात करें, मोहाली और हफीज का डिल स्कूप. इतनी घटिया बॉल पे वो डिल स्कूप मारा था.
यार You need a lot of pace to play the disc scoop, by the way. You cannot play on a slow delivery, which Joginder Sharma will tell you. 101 for 5. Stuart Broad now. Oh, Full and again, straight to that the- full and straight ball. But he got his bat down straighter and in time. यार I don't understand फिर भी late हो रहा है बार बार, but Azhar has moved on to 40 of 125, taking his time. Pakistan, the 100 is up, 101 for 5 after 46 overs. So they have made England toil in this session. Only the one solitary wicket of Fawad यार Alam अब ये वो भी देखो बहुत जरा, disappointing. इन्होंने बटन दबाए हैं, अब बादल देखो तुम. देखो यार Really? rain अब storm इन्होंने वाला एंडरसन scene. को निकालना है, उसने 6 विकेट ले जानी है. यार ऐसे तो ना के यार, कौमी हीरो है वो भी हमारे यार. Then we're also referencing the ball of the century by Munaf Patel to Abdul Razak. यार यानी वो 580 बॉलें डाले वो, अच्छा, वो रज़ाक उसको 480 छक्के मारेगा. But that day it nicked off stump and that's it. Good defense from Rizwan. आपने वो मैच बंद कब किया था? यार पूरा ही देखा था, हम तो ढीठ थे वैसे बड़ी बात है यार. क्योंकि लास्ट में हिटिंग शुरू कर दी थी मिसबा ने. हमने कहा या अल्लाह. बस यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट मैच. Yeah, true. वो एक वूंड है जो कब तब तक नहीं अच्छा, भरेगी, वही पिछले वो हमने- तब तक नहीं भरेगी जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतते हम. उस दिन भी हमने बात की थी the most memorable losses, Painful losses. हंसी और ये और वो. What about those matches that you remember कि आप बस कह रहे थे कि बस I am literally the most happiest. Top of the world. I'm the happy. Oh, big appeal. This should be given, but it might be going down leg. Yep. Sliding down leg. यार जो 2017 का यूफोरिया था वो तो आई थिंक एक महीने तक नहीं खत्म हुआ था. मैंने उस मैच की इतनी हाइलाइट्स देखी. कितनी बार देखी यार. अच्छा, कितनी उस मैच की बार. भी नहीं, उस मैच भी नहीं. ये वो मैं लम्हे लम्हे. जो मेरे फेवरेट मोमेंट थी ना उस मैच, उस सीरीज की, जो अजहर ने कुटा था इंग्लैंड को, हाँ हाँ हाँ. जो सेमीफाइनल में. आप सेमीफाइनल से पहले हेडलाइन हाँ. देखते तो ऐसा था कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तय, हाँ रेडी हैं हम, बिल्कुल. मैच करवाओ, पाकिस्तान आया भी क्यों है. और अजहर ने जो उनको कुटा था फखर के साथ. जबरदस्त मैच था यार. और अजहर का उसमें भी 100 था, फाइनल में भी, अगर रन आउट नहीं करवाया जाता. यार बस क्या करें. 101 for 5 Asa Ali. मिस जैनब ने पूरा मिसबा के हक में ऐसे लिखा है. पढ़े जरा. Misbah gets blamed too much. He got us out of trouble so many times. जिसको देखो उसको डिफेंसिव कहता पड़ता है. Very misplaced criticism. Misbah was master of bowling. और उसने 6 साल कुछ भी नहीं कहा बस एक्सेप्ट फॉर दैट इंटरव्यू विद नजम सेठी. 6 साल वो लोग, और वो भी कोई इतना खास नहीं था. वो भी funny था. उसके रॉकेट लो. यूनुस खान ने तो कह दिया था मैं अपने आप को गोली मारूं. Down the leg side. यार Misbah was master of bowling dry and those tactics worked for that team. Got us to world number 1. Also got fastest century for Pakistan. Second fastest overall फास्टेस्ट इन against हिस्ट्री Australia. थी वो उस वक्त. So when Misbah wanted, he could score quickly. It's just that mostly he came in at 80 for 4, so he had to rebuild. Umair, we're not going to talk about the bigger wound because we spent a lot of time on that a couple days ago. यार अब और wounds ना खोलो please for God's But sake. we did ask about the greatest win, and CT17 is the answer from Zainab and FHD and F. Saroj Kere. It was actually he feels that the CT17 was underrated. Pakistanis don't rate it as much as they should. बिल्कुल. मैं तो कहता हूँ सरोज, माइटी डक्स वाली स्टोरी है. वो टीम क्वालिफाई नहीं करी थी उस टूर्नामेंट के लिए, वो जाके जीत गई. यार मसले है कि हम वी डिडंट बिल्ड ऑन दैट ना. हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट ये किया. भी होता है. फिर हमने उसके बाद बिल्कुल. यार एशिया कप 2018 हम We were favorites. We were favorites. रेड हॉट फेवरेट्स. और टीम भी हमारी जबरदस्त थी. तब हमें नहीं पता था कि फहीम फ्रॉड है. मैंने हम कहते थे ये हमारे किंग ऑलराउंडर मैं मिल गया आपको एक हमें. अपनी जो है ना डार्केस्ट सीक्रेट दिल की दुखी बात बता रहा हूँ. हाँ बताएं. India versus Pakistan at the Dubai International, I spent यार. 500 dirhams. 500 dirhams on tickets. Oh, and I think he's got the beat the outside edge. एक doesn't टिकट carry. या भाई वो ब्रादरान भी तो हाँ, जाते हैं हाँ, हमारे. 500 dirhams on tickets. And you know what happened? The good that happened. फाइट ही नहीं दी हमने. इतनी good. हमने कहा यूएई में तो हम इनको जलील करके छोड़ेंगे. और दैट वाज द फर्स्ट मैच आफ्टर सीटी. हमने कहा भाई ये यार मुझे अभी भी याद है जब मोहम्मद आमिर के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, पूरा स्टेडियम गूंज रहा था यार. और क्राउड 70% ओवरवेलमिंगली इंडियन था. और इतनी गर्मी थी आप लोग सोच नहीं सकते. बहुत गर्मी थी. सितंबर मिड सितंबर वो टूर्नामेंट हुआ था. और फिर हमने जो वाह गंद किया. इतनी गंद खाली हो गया था. आई थिंक इमाम पहले ओवर में आउट हो गया था. वो चेसिंग दैट स्टूपिड बॉल टू बूवी और समथिंग. दैट वाज अ हॉरिबल. अच्छा, और जब हमारी इनिंग खत्म हुई तुमने कहा रुक जाते हैं, कुछ हो सकता है. कुछ तो हो सकता है. और रोहित ने इतना कुटा है. यार कोहली भी नहीं था उनके पास. कोहली भी नहीं था. हाँ. 101 for 5 after 47. But let's go back to the big wins. Yeah. Zainab is saying the world. मुझे वर्ल्ड कप और सिटी नहीं बताया, मुझे मोमेंट्स बताए मैचेस.
यार मुल्तान में जो हम टेस्ट जीते थे इंग्लैंड से, दैट वाज सो स्पेशल. Lords 2016 was special. वो भी बहुत जबरदस्त. वो तो हमने जीतना ही I was हाँ वैसे over- फंस गया था I मैच. was over the moon about that. वो भी मैच फंस गया था. यार Shannon Gabriel in West Indies was special. या दैट वाज अनबिलीवेबल. मुझे ये बताया ना जो वो याद है वो जो T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते थे सुपर ओवर वाला, उमर अकमल भागते हुए You were गया in the था. match or no? Huh? Were you in the stadium for No, that? I wasn't I there. was in the stadium for that. That was a crazy. That is my match. best stadium memory. Crazy match था वो. Jofra Archer this time straightening. So Khwaja, we're at the in the green section of the DSC, and I'm watching this happen. And I was with my uncle, and my uncle is a huge cricket fan as well. And he said last over हो गया, and he said match खत्म हो जाएगा. Let's go, because you know how it is. Exit कितनी बढ़ जाती है sports city में, time निकलता है 1.5 घंटा निकल जाता है निकलने में. So it's like let's leave. And I was very new to stadium cricket. It was my third or fourth match. So मैंने कहा नहीं रुक जाते हैं थोड़ा रुक जाते हैं. So we were waiting on the stairs. और वो super over हो गया. So we watched the super over from the stairs, and the entire stadium was bouncing. जबरदस्त मैच. Absolutely bouncing. And Umar Akmal ran off after scoring those winning runs. बहुत फिट था. Amazing scenes. Amazing scenes. उमेश राजी कह रहे हैं Maghreb chase against Sri Lanka. वो भी अच्छा मैच था. Sarosh कह रहे हैं 0-7 South Africa test win was unbelievable. Asif bowled 38 overs in a day in the second innings. कामरान अकमल और यूनुस खान ने वो I think run chase complete की थी. And Sri Lanka 2015 test win to save the UAE legacy. Taimur Akhtar. वही मगरिब चेस ही होगा. Maghreb chase. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे you gotta drop the names of the matches that really made you cry, where they really made you feel like this is it. This is why I'm in love with this dreadful team. यार. Hasan Ali saying Saklin and Waqar winning a one-day in Australia against India. हाँ. That too by their batting. Can you recall that game, Khwaja, for I me? think that was in 99-2000. One-day में तो यार. Test match in Mohali, India and Pakistan, and That ridiculous Kamran Akmal and Razak partnership. Bangalore 2005 यार. वो तो evergreen. Akhtar took 4 wickets in the first innings, and South Africa bowled out for 127. That's the match. When that he was Sarosh is clearly referencing. chucking. Yeah. Oh, just opens the face at the bat. Azhar Ali and drives this to third man for a 4. Good runs. The ठीक है Pakistani यार. captain moves to 44. That's a safe shot, Khwaja. हाँ, सही है. Enough space between gully and the slips. Pakistan's win versus Australia in the 0-2 ODI series. 2002 ODI series. And 6,000 runs for Azhar Ali as he raises the bat to the balcony. He is now the fifth highest batsman in Pakistan to do so, right behind the great Muhammad Yusuf, and an average of over 42. He is a test match great. No doubt he is in some hot water these days. Difficult form. Runs have been scarce for him. But he's got 44 here, and he's reached that milestone. And what a tremendous Pakistani batsman this man is. Imad's inning versus Afghanistan. There's a good one, Khwaja. Test match against Australia and England that we won. Zainab is saying she cried during that. 06 versus India post Irfan hat-trick. यार वो तो. That was a good one. The Kamran Akmal show. Yes. इसलिए मैं कहता हूँ कामी थोड़ा सा underrated है. नहीं जब उसका जो पर्पल पैच था बैटिंग में तब तो बहुत ही जबरदस्त था वो वाकई. 2015 World Cup match we played against South Africa. यार वैसे South वो भी Africa बहुत जबरदस्त. we know their number in the World Cups, don't we? हाँ somehow we do win Yeah, against nice them. straight dive from Azhar to the bowler for no run. And Abdullah Amin, this is a comment for you, Khwaja, saying Pakistan has won, Pakistan has won, Pakistan has won. Do you remember that? Oh, what a The game. the Afghanistan game. That was the probably the peak change of pace match यार. कितना Yeah, Lahore Clippers is also kind of peak change of pace. वो तो of course होते ही हैं. But yeah, that was probably alright. That was unbelievable यार. वैसे मुझे लग रहा था इमाद वहाब, and remember he broke his hand or something. Full dramatic वहाब scene ने था. जो एक घुटने पे छक्का मारा था राशिद खान को, बाद में उसका इंटरव्यू आया तो he was like I didn't know how to play him because I didn't know which way the ball would go, so I decided to play the sweep because it's safer when you don't know which way it's turning, and it worked. Rashid Khan was like a beast in that game, man. यार उसने तो बहुत खौफनाक बॉलिंग की थी. और मुझे याद अभी भी याद है बाबर जल्दी आउट हो गया था. मैंने कहा ओह शिट खत्म मैच भाई. हफीज ऑफ कोर्स सेम बुलशिट. बॉलिंग हमारी अच्छी थी, 220-30 पे आउट कर दिया था हाँ हमको. शाहीन ने बैक टू बैक विकेटें ली थी. ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहा था वो उस दिन. 105 for 5 Pakistan. 48 overs gone, trailing by less than 500 now, so अभी भी chance. अच्छे दिन. Hashtag अच्छे दिन. Shout out Modi ji. Whoa. Piece of shit. We're saying ending Australia's World Cup streak in 2000. That was a great match, yaar. I still remember that cover drive Umar Akmal played of Brett Lee. Went like a bullet. Something like that.
कमेंट्री हुई थी उस वक्त. इट्स अ ब्रिलियंट शॉट. आप कभी भी वो हाईलाइट्स देखेंगे उस मैच की. Yeah. और वो यंगस्टर्स ने जिताया था हमें मैच. उमर अकमल और असद शफीक. हमने कहा यार ये देखो हमें 2 सुपरस्टार मिल गए हैं. अब तो 3 वर्ल्ड कप पक्के हैं हमारी. और वो दिन था और आज का दिन है 9 साल बाद. अब हम दोनों को कोस रहे हैं कि एक मनूस था और एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट था. और एक बैन हो चुका है और एक का करियर खत्म होने को बैन कर देना चाहिए. सरोश सिंह कामी ने इतना कुछ किया मगर 2009-10 में उसने सब खत्म कर दिया. वाकई है. गालिब इज जॉइनिंग अस ऑन द चैट. मिर्जा गालिब क्या बात है. शेर व शायरी करने आए हैं. ही सेइंग अफरीदी's final 6 versus India in Asia Cup. यार उस मैच का भी यूफोरिया बड़े दिन चला था क्योंकि उस ज़माने थोड़ा सा फेसबुक अवेयर और लाइव स्ट्रीमिंग लोग अवेयर हो गए थे. तो बहुत सारी क्लिप्स आई थी कि जी व्हेन अफरीदी हिट द सिक्सेस. लोग यूनिवर्सिटीज़ में मैच देख रहे हैं, घर पे मैच देख रहे हैं. I was watching that game in the university library and we were watching it on the computer. And there was 2 sets of groups. There was one group behind us in a clump. There was Bhartis, the Indians, and there was 4 or 5 of us. And their stream was slightly ahead of ours. So when Afridi hit that final shot, it went straight up in the air. So they thought it was a wicket. So they started celebrating, and we were just like, "Oh shit! Hey, he's done an Afridi again. This is what he does." And then we saw it sail over. यार फिर वो library नहीं. In the air and gone for 6, Afridi, you beauty. Ramiz's cringe commentary, but or this is and the cringe camera work. पता ही नहीं लगा बॉल कहाँ गई. Yeah, but honestly, we are not even sure कि 6 हुआ भी या नहीं. बस हमने assume कर लिया. सरोश क्या comment किया है उसने. He's saying to be honest, उमर अकमल जैसा talent बाबर में भी नहीं है. But बाबर is a complete cricketer. यार स्ट्राइकिंग एबिलिटी और हैंड आई तो नो डाउट उमर अकमल की बेहतर है. यार जो उसने 100 किए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. किसने किए? उमर अकमल ने. कौन सा 100 किए? वो कब किया था जब उसने डेब्यू पे 100 किया था. वो न्यूजीलैंड के खिलाफ. ये दैट वाज अ क्लास इनिंग्स यार. I was like what is happening. मुझे अभी भी याद है इयन हीली ने कहा था ही इज अ लवली मिक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदाद. हमने कहा चलो जी मजाक है. चलो जी कोई मजाक है ऐसे प्लेयर्स. और वो तब का दिन है और आज का दिन है. ही इज बिकम अ लवली मिक्स ऑफ आजम खान एंड शाहजेब हसन. शाहजेब हसन कौमी हीरो है यार. वर्ल्ड कप विनर है भाई. T20 वर्ल्ड कप विनर है. मजाक कर यार वो कितना बड़ा फ्रॉड था यार वो बंदा यार. प्योर हैक. मतलब 1% भी नॉन हैक नहीं था. शर्जील खान इज अ बिट लाइक शाहजेब हसन. लेकिन फिर भी उसका टेक्निक उससे तो बहुत. यार आई रिमेंबर आई डिड एक जो हमारी मैं जिस एक्स वेबसाइट पे काम करता था आई डिड एन इंटरव्यू विद शर्जील. हमने कहा प्रोफाइल पीस. उसने कहता ही इज माय रोल मॉडल शाहजेब हसन. शर्जील खान रोल. मैंने कहा ओ तेरी रोल मॉडल है यार. यार बंदा सईद अनवर बोलता है, ब्रायन लारा बोलता है, कहते शाहजेब हसन मेरा रोल मॉडल. और उसका भी करियर जियोग्राफिया भी वही निकला. तबाह कर दिया अपना करियर उस भैंसूरिया ने. What's happening with Sergio? It's all happening. Faisal's asking. 105 for 5. जिंदा है. इस सीजन खेलेगा फर्स्ट क्लास. देखते हैं वापस आता है या नहीं. Still have a test match on as I think अगर वो 1-2 100 भी मार दे वो फॉरेन टीम में आ जाएगा. He's right on the edge. फखर की फॉर्म आपको पता ही कैसी है. हाँ. फखर की ट्रैजेक्टरी बहुत यार वैसे. यार. Cut away from Rizwan beats. What a shot! 4. It does. That is probably the shot of the day for Pakistan. Maybe Azhar's sweep was slightly better. 109 for 5. Lovely cut shot there from Rizwan. Short and wide and given the treatment and screams away past point for a lovely boundary. सिर्फ 9 चौके पड़े हैं पूरे पाकिस्तान की इनिंग्स में यार. Can you believe it? Just got a bad time, Khwaja. But a good shot there all along the carpet. No worries. और सीम भी सीधी बाउंड्री पे जा रही है. Even better. This partnership now 30 runs. James Anderson. 34 runs, apologies. यार पता भी नहीं लगा 34 रन कर लिए इन्होंने साथ मिलके. Yeah, run rate of 2.83. रन रेट तो आप फिलहाल छोड़ दो ना. Of the partnership at least. अच्छा हाँ हमारा वो तो उससे 2 से भी थोड़ा सा ऊपर है. 48 into 2 96. हाँ 109 पे हम. Barely above 2. Defended away onto the leg side for no run. अब ये देखिए ना, अगर हम थोड़ा सा सर्वाइव कर लेते, थोड़े से तगड़े रहते, थोड़ी सी दिलेरी दिखाते. इट्स कम्प्लीटली सॉफ्ट बॉल. देयर इज नो मूवमेंट इन द एयर. जेम्स एंडरसन से बॉलिंग नहीं हो रही. ब्रॉड से भी कुछ नहीं हो रहा. जोफ्रा को उन्होंने अटैक से ही हटा दिया. वोक्स से भी कुछ नहीं हो रहा. डॉम बेस्ट हैड टू बॉल 7 or 8 overs. बस यार थोड़ा सा टेम्परामेंट सही वक्त पे दिखाते तो वी वुडंट बी इन दिस सिचुएशन. फैसल कह रहे हैं व्हाट आई वुड गिव फॉर इंग्लैंड टू बी चेसिंग 150 ऑन द फाइनल डे. That means we'd need to make 407.
यार बन सकते हैं 625 रन्स बन सकते हैं यार क्या हो गया यार 625 रन यानी अजहर पौने 300 मारे और वो 350 मारे so the best case scenario is definitely a draw here indeed and I think we can be satisfied with a 1-0 loss ठीक है यार no I mean it's a robbery daylight robbery from England daylight and cloud light robbery to हाँ. be quite honest rain light वो पहला टेस्ट इतना जो है ना हर्ट करेगा ना यार वाकई फर्स्ट करें आप वो जीत जाते हैं यू विन द सीरीज 1-0 यार ऐसे इतने टेस्ट हैं जो हम जीते हुए हम हारे हैं केप टाउन 2013 मुझे याद आता है सिडनी 2010 दिस न्यूजीलैंड अबू धाबी अबू धाबी वाले श्रीलंका के खिलाफ भी हम एक टेस्ट इतने दैट्स दोज आर द लॉसेस दैट हर्ट नॉट द फाइनल्स एंड द वर्ल्ड कप्स और ये वाले चुभते हैं जो आप जब टेस्ट हारते हो वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं जैक लीच स्पीकिंग ऑफ चुभना ये तो रैटेटूई वाले भाई आ गए जैक लीच वही लग रहा रैटेटूई वाला चूहा लग रहा How did you find Ratatouille? मैंने देखी नहीं कभी It's a honestly brilliant film. हाँ आपको तो पता है मैं एनिमेटेड फिल्म्स का बहुत शौकीन हूँ I'm a big Pixar fan, big Disney Studios अच्छा fan. आपके फेवरेट कार्टून सीरीज कौन सी नॉट मूवीज सीरीज डेक्स्टर्स लैब जॉनी ब्रावो काउन चिकन ना कहना यार I was a big Phineas and Ferb fan. आई नेवर वॉच दैट थोड़ी बाद आई थी वो वो करेज द कावर्डली डॉग नहीं वो इतनी यार अच्छी थी but like it's not my favorite right Dexter's Lab was I वो loved तो it बेस्ट था यार और वो बैक टू बैक आते थे जॉनी ब्रावो और डेक्स्टर्स लैब दैट वाज द बेस्ट पार्ट I like SpongeBob too यार आई नेवर but वॉच्ड it was like okay for me it was like नहीं बट वाज इट लाइक Thundercats man Thundercats वो तो ऑफ कोर्स स्वॉट कैट्स Yeah, थंडर yeah. कैट्स Thundercats बहुत सेंचुरियंस याद है आपको वो जो मशीन बन अच्छा जाती मैं आपको एक नाम बताऊंगा आपको पता नहीं आपको याद होगा नहीं डिज्नी की एक कार्टून सीरीज थी गार्गोइल्स हाँ यार वो भी क्लास funny थी। क्लास एडम्स फैमिली की भी बहुत मजे की एडम्स होती फैमिली थी बट गार्गोइल्स एक लेवल था उनका यार रात दे वाज जस्ट अमेजिंग Thundercats and Gargoyles up there for me 109 for 5 after 49.1 और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जैक लीच को खिलाते क्यों नहीं है बेस्ट से तो अच्छा बॉलर है वो we spoke to Freddie about this right हाँ. and he said that the Dom best plan is for India हम्म so they're working on him because of that नहीं तो जैक लीच को ट्रेनिंग नहीं चाहिए इंडिया के लिए फिर कौन दूसरा स्पिनर कौन होगा इनका ये भी है Lovely shot as a slashed past point and it screams away for 4. Jofra Archer, nothing to do. Brilliant shot from the captain. Now on 48, not out. What a shot, yeah. Shot of the match killer. Azan, look at that. Just rocked back and Kalaiyon ka upyog and it screams away. Beautiful shot. That's the Azhar we like. And that's the Azhar we remember. Bit in the air, like and safe enough in the gap. Good shot. Yeah. Archer is a good animated series it's a bit on the nose vulgar but ठीक है Shin-chan I don't know what that is Sarosh Karim when Abdurrahman took 6 wickets. Oh yeah, that was an unbelievable amazing match, यार मैंने उसके लिए बैनर बनाया था Oh. ग्रीन वॉश पूरा ये वो जबरदस्त मैच था Wait, यार। fit वो जो उसने पहली बॉल बोल्ड मारा था मॉर्गन को पटंक 113 क्योंकि वो मैच एक्चुअली वो मैच अजहर और असद का फर्स्ट हाईलाइट वो पार्टनरशिप थी exactly द वे दे बैटेड टुगेदर आई थिंक दैट वाज अजहर्स फर्स्ट सेंचुरी और समथिंग सेकंड सेंचुरी ऐसा कुछ अच्छा था interestingly enough ख्वाजा because I started watching live cricket in Dubai मतलब obviously पाकिस्तान में तो नहीं था मैं so I used to go a lot to Dubai International और जब मैं graduate हुआ ना तो obviously I was in Dubai for a bit and I wasn't working and test matches were free हाँ so I used to go and just sit there with my हाँ। laptop there would be और उधर मजा भी आता है टेस्ट हाँ, मैच हाँ। देखने में हवा चलती रहती है वो जो and they would let you into the nice seatings as well हाँ, because it was हाँ, test हाँ। matches I would take my laptop sit there cricket info पे comments कर रहा हूँ tweets मार रहा हूँ कुछ ट्रोल कर रहे हो नहीं अच्छे comments because I like to be part of these cricketing communities हाँ, हाँ, and बड़ा fit माहौल होता था and because of that I got a little bit quirky I was like चलो banners बनाते हैं ना क्योंकि test match में होता ही नहीं है कोई तो 3 of my banners थोड़े हिट हो गए थे वो लाइक पहला जो मैंने बनाया था वो कहता who needs Messi when you have यासिर शाह हाँ वो फोटो भी है वो तो मतलब यासिर शाह तक पहुंच गया इनफैक्ट वकार टॉक्ड अबाउट इट ऑन एयर वो काफ़ी चली थी सरखेल ने अपने ट्विटर पे डाल दिया एंड इट वेंट वायरल कोट एंड कोट फिर मैंने एक क्वेटा के लिए बनाया था वो नहीं चला नहीं चल गया वो भी विव रिचर्ड्स पर्पल आर्मी हाँ हाँ वो भी बड़ा हिट हुआ था शाउट आउट टू माय क्वेटा फैंस ऑन द स्ट्रीम मी एंड ज़ैनब आई थिंक आर द ओनली वंस और तीसरा तीसरा मैंने बनाया था सरफराज के लिए बनाया था वो इतना नहीं चला था
That was नहीं उसकी तरह सरफराज की तरह ही नहीं मैंने एक अभी रिसेंटली मैंने बनाया था न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हो रही थी उसके लिए अबाउट पाकिस्तान वर्ल्ड डोमिनेशन जब वो 10 सीरीज जीतते हुए आ रहे थे ना तो मैंने सबके लोगोस वगैरह लगाए थे दिस वाज एंड आई पुट सम फन ऑन देयर वो भी ऑन एयर गया एंड द सरफराज वन डिडंट गो ऑन एयर बट दोस 3 वर हिट्स एक बड़ा मजा आता है वैसे मुझे बड़े बड़े पोस्टर्स आई यूज्ड टू प्रिंट देम आउट इन A0 big ass posters and they look good in the crowd और टेस्ट मैच वैसे खाली होते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ता है 113 for 5 clip that is going to be 50 for Azhar Ali play through square leg and at long last a very patient innings from the captain. It's gone all the way for 4 and well played skipper. That is much needed. He's thanking his heavens. This is not a celebration. This is relief pouring from the face of the Pakistan captain. It's a long time coming and it's been important for Pakistan. 117 for 5. Big man for the big occasion, Azhar Ali. And a lovely shot as well, just back over length, a bit straight and flicked away through square leg. It ran away for 4. What a vital innings in the context of his career. Maybe even in the series if Pakistan had to draw this test match. Leading from the front, finally getting a start, finally playing through, finally occupying the crease. It's just थोड़े regrets हैं कि ये पहले कर लेते तो चलो ठीक है. But you know, it's never too late. 117 for 5 after 50 overs. A very good platform set. The conditions are quite easy for batting. There's no pace off the pitch, no movement off the deck. A very good opportunity to get 100 in England. And Rizwan also a big chance to solidify his reputation in Test cricket. Driven this time to mid-off for no run. Pakistan. But look, plenty of blue skies now. 52 over 137, so he's really worked hard. अब एंडरसन के इनिशियल बर्स्ट के बाद अब ठंड पड़ गई है इंग्लैंड के बॉलर्स को. फवाद आलम भी अच्छी पार्टनरशिप दे गए थे. Zainab Razvi with a stat that will kind of inflict some pain. हाँ बताइए. This is Azhar Ali's highest away score since Misbah Yunus retired. Wow. Played away down the leg side by Rizwan and he'll get a couple. And I believe he made 100 in that series against the West Indies. तो तब से overseas हाँ क्योंकि इसकी 60s इसने तो अभी 100 मारा था श्रीलंका के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ. And he made 60 odd against Australia and of course that innings against New Zealand. But overseas, yes, this is his probably तब से Mr. Asif के लिए सरफराज के लिए बैनर this is against the constitution मुसाद. ज़ैनब कह रही हैं बस ये against साबित हुआ कि मुसाद रॉ के एजेंट है. फैसल कह रहे हैं in the games Pakistan has played Archer World Cup and this series they have played him well. Fair point. हमें वो तंग करते हैं जो स्विंग करते हैं. ये जो बैक ओवर लेंथ है वो फिर भी खेल लेते हैं. Nice defense onto the offside. No run. अब अजहर थोड़े से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. वही बात है क्लास प्लेयर को आप थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा मौका दें. He is making it count. Hopefully he goes all the way and it will probably be his finest innings as captain. वो तो चलो 100 उसने I think श्रीलंका को मारा था, but this will mean a lot more to him. But अभी भी बहुत टाइम है. Still trailing by a mammoth 465 runs, 52 not out of 138. Only the 51st over. एक न्यू बॉल भी थोड़ी देर बाद ड्यू हो जाएगा तो वो भी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि भाई हमने क्या करना है. और आई थिंक जो प्लान था कि जी इनको जल्दी उड़ा दो और फिर हमारे बॉलर्स फिर से बॉलिंग करेंगे. मे बी इंग्लैंड विल हैव अ रीथिंक ऑन दैट कि यार शायद हमारे थोड़े बॉलर थक गए हैं, इनको और थोड़ा सा जलील करवाओ फील्ड में. बट प्रॉबली कंसिडरिंग दैट देयर इज़ रेन इन फोरकास्टेड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एज वेल, शायद वो फॉलो ऑन इन्फोर्स कर लें. बट वो तो बाद की बातें हैं. फ़िलहाल पाकिस्तान इज़ बैटलिंग हार्ड. ये सेशन तो कम से कम अगर ये ख़त्म होता है आई थिंक वी हैव जस्ट अबाउट एज्ड इट. होपफुली we'll end it on the right note instead of losing another wicket. फिर मैच पलट जाएगा. 118 for 5. Lovely shot but straight to point. Now Azhar looking confident, playing those cross batted shots, playing those cuts that he's pretty good at when he's in fine form. अब इंग्लैंड भी ज़ोर ज़ोर से बॉल शाइन कर रहे हैं लेकिन उनको मूवमेंट नहीं मिल रही. They're also struggling like our fast bowlers did. Let's take a look at some of the comments. Zainab Karim, also the hardest 50 runs Azhar has probably got in his career. Maybe I think he's made tougher 50s. आपको याद होगा 2010 का वो जो टूर था जो बहुत ही गीली पिचेस थी और वो बिल्कुल अपनी डेब्यू सीरीज थी. That was a really tough examination for Azhar. Yeah, but he was informed then. But he was new in cricket ना यार. हमें थोड़ी पता था क्या बनेगा ये. Played away down a third man this time. This come through for a single. Yes, it it's gone all the way for 4. Shot भाई. Azhar timing 99 कर रहा है. ग्रीन पट्टी आ गई अब टाइमिंग में. यार
I'm already getting nervous. He's still on 56, but a long way to go. 122 for 5 after 51 overs. ये पहली जो इसने फ्लिक मारी थी ना वो बहुत अच्छा अब ये 100 कर देगा ना तो न्यूजीलैंड तक जगह भी थोड़ी बिल्कुल यार आपका कैप्टन कॉन्फिडेंट है तो फिर आप और देखिए और परमिएट्स थ्रू आउट द साइड शान के अलावा इसने 100 किया होगा यार अल्लाह करे अब कर ले यार बाबर ने भी क्या खाक किया हमारे लिए यार ऐसे तो ना करें यार कौमी हीरो है एंटी बाबर हो गया आप साथ ही I like a little anti Baberness नहीं triggers the comments of it गलत बात है यार नहीं कौमी हीरो है क्लास प्लेयर मेंटली या आई एग्री ज़ैनब इसने काफी स्ट्रगल किया मेरे टाइम में मैंने बाबर से बेहतर बैट्समैन सिर्फ मोहम्मद यूसुफ देखा होगा पाकिस्तानी बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ स्टाइल इन टर्म्स ऑफ लाइक एस्थेटिक्स और अभी भी मैं कहता हूँ कि जो उसकी लेग साइड गेम है वो यूसुफ से भी बेहतर यार हफीज भी ऑन हिज डे इज क्वाइट प्रीटी टू वॉच हफीज इज टू इनकंसिस्टेंट यार जब या हफीज है चवल लेकिन प्लेयर अच्छा बट वो स्ट्रेट ड्राइव इतनी कम मारता बंदा चवल है लेकिन प्लेयर अच्छा है एक्चुअली हफीज का मसला है बंदा भी चवल है प्लेयर भी चवल है शहजाद की कवर ड्राइव अगर आपने निकाल के देख लिया वो मसला है वो जाती कवर में हर वक्त Oh, here on the head, Rizwan. Be careful, buddy. I don't think that bounced as much as it should have. Kept kind of low, and the English players are having. हमारे प्लेयर इतने ढीठ हैं whenever they get hit on the helmet, they कहते हैं ठीक है भाई चेक करवाओ, हेलमेट बदलवाओ, रोटी खवाओ, नहीं बर्गर पिज़्ज़ा खवाओ. No, immediately the physio is running on. This guy looks like a Batman villain. And I think minimum protocol तो ये है कि जी आप अपना हेलमेट बदलें. तो Rizwan has to be careful here. Look at that, just. Let's have a look. Oh, that's the very dangerous part of the helmet, and I've just noticed, Khwaja, that Rizwan doesn't have that bottom cover that was introduced after that unfortunate incident in Australia. Did it hit him on the grill or the helmet itself? I think the grill. So इसलिए बच गया I guess. इसके बाद बैटिंग हो सकती है इंसान से. यार वो आप देखें, स्टीव स्मिथ का वो सीन याद करें. अच्छा नहीं वो तो वापस ही नहीं आया था मैच में. नेक्स्ट मैच में आके उसने इतने रन किए थे अच्छे उड़ा दिए थे नहीं नेक्स्ट मैच वो नहीं खेला था उसी इनिंग में वो वापस आया था हाँ उसी इनिंग में वापस आया उसने 100 मारा था checking out the helmet there is यार एक तो हमारा Bane from Batman इतना जहाज फिजियो है हमारा अच्छा बॉल भी खराब हो गई है ना आप देखिए अब ये टेम्परिंग आप चेक करें टेम्परिंग देख रहे हैं आप यार ये तो ज्यादती है वो छुपा के कर रहे हैं यार खरूचे मार रहे हैं फुल 90 चेस इन्होंने अपनाई हुई है और स्काई ने भी कैमरा डाली है बॉल से फैसल कहने हु इज दिस जायंट आई बिलीव हिज नेम इज ग्रांट ब्रैडबर्न और समथिंग या पता नहीं क्या नाम है कोई ना कोई नाम ग्रैंड का नाम होना चाहिए हमारे पास ग्रांट फ्लावर ब्रैडबर्न ग्रैंट अली कौन है पता नहीं एलियट या ग्रैंट एलियट लाहौर कलंदर्स लेजेंड बैड ड्रॉप मर्चेंट ओ यार दैट इज डेंजरस यार वो भी कोई मैच था यार वैसे वंडरफुल गेम आई थिंक यू वर वाचिंग इट लाइव weren't you वेयर वाज आई नहीं आई थिंक इधर नहीं No, we weren't doing PS change pace then. नहीं, I think I was there. I might have been there. Because you don't miss a Lahore game in Sharjah, do you? I think Islu को अभी Sharjah International. Islu को अभी भी वो चुपती है वो bad drop moment. अच्छा, you guys have a very good record against Islamabad. हाँ, काफी दफा हराया. For the shit team that you are. But वो जो यार ऐसे तो ना बोले कौमी हीरो है हमारे यार. आप किस हैसियत से हमें शिट बोल रहे हैं? आप तो सेमीफाइनल नहीं आए. Defending champs. We have a. आप चेल्सी चैंपियंस लीग जीते थे और ग्रुप स्टेज पे बाहर हो गए यूवे के हाथों. आपको याद है हमने आपकी बी फाड़ी थी पर वो 2 ऑस्कर के गोल काफी थे. वो तब से बिक गया चाइना चले गया वो 122 for 5. You are the worst defending champs all of your teams. Even Pakistan after the Champions Trophy. सिटी जीत के हम एशिया कप में जलील हो गए. बांग्लादेश से हार गए. ग्लैडिएटर्स के बाद पीएसएल है. लाहौर के पास क्या है यार? हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है यार. क्या इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? 122 for 5. 90 miles per hour. Jofra, good pace, good speeds in this test match, but the consistency has been lacking. And Pakistan, quite frankly, have played him quite comfortably. Yeah. Even Fawad भी उसको हुक मारा था यार. But that ball was a nasty one. Really reared up from a length. Can pace definitely right there. But even Wokes ने भी underperform किया, to be quite honest. उस level पे bowling नहीं करा रहा. लाहौर के पास दिलबर है. दिलबर हुसैन, of course, the bald eagle. And आपको एक funny fact बताऊं, Jofra Archer back in 2016 made his first class debut against Pakistan in a side match. अच्छा. Before that tour, and I think he took 5 wickets. of course. Debut पे आप आए और Project Jofra जो आप Project ENGvPAK कह रहे हैं, हमने ही बनाया है Project Jofra. मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में शुरू करो Project बाबर. 100% यार. हर गली गली से बाबर आजम निकले.
122 for 5 in the 52nd over. Pakistan trailing by 461. Rizwan on strike. Lovely. अच्छा, let me ask you punch. this, Khwaja. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. जी. Test match player, Okay. a fast bowler Hmm. who bowls 145 to 150. हाँ. 350 उसकी टेस्ट विकेट्स. या फिर हाँ. पाकिस्तानी बैट्समैन हाँ. जो गारंटी आपको 7 से 8,000 टेस्ट रन दे. हाँ. कौन सा लेंगे आप? Of course मैं बॉलर लूँगा. एक ही चाहिए. Of course मैं बॉलर लूँगा. बॉलर लेंगे आप. Every day of the week I will take it. Every day of the damn week. This is Joffrey Archer. Let me ask the comments. The choice between वो एक गुफी भाई जो हमारे एक्स कोच थे उन्होंने एक बात बड़ी स्टाइलिश की थी. बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स. आई डोंट नो where he stole that line from, but it was a good line. खुद भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. नहीं वो खुद नहीं कह सकते. कौमी हीरो नहीं, वो हो ही नहीं सकता. वो कौमी हीरो भी नहीं है. 122 for 5. No, but let us know in the comments. If I give you the option of 2 test match players between a batsman 8,000 नहीं, अब 15,000 रन दो फिर मैं जाके मानूंगा. 10,000 12,000 रन दो. 8,000 तो कोई भी कर लेता है. कौन से कितने के 4 लोगों ने किए हिस्ट्री में. 6,000 तो अजहर ने भी किए हैं यार. अजहर को आप मुझे 10,000 का बैट्समैन ऑफर करो. मैं 8,000 देता हूँ. 8,000 नहीं ज्यादा यार. 8 तो 9 कर लें आप. 8 इज नॉट इवन क्रॉसिंग मी दैट मैन. आई नीड 10. चलो 10,000 रन एक बैट्समैन करे. 9,500 ही दे दो यार. चलो 546. एक बैट्समैन आपको दे रहा हूँ मैं जो 9,000 रन करेगा और स्टाइलिश प्लेयर हो. तेंदुलकर का बाप होना चाहिए. ये कोई स्टाइलिश नहीं. नहीं स्टाइलिश फवाद आलम वाला बैट्समैन नहीं चाहिए मुझे. ऐसे रन्स नहीं चाहिए. रन होते हैं. नहीं रन नहीं होते. एस्थीट की बात है. 22 for 5. शाउट आउट एस्थीट. और दूसरा ये है ऑप्शन कि अ फास्ट बॉलर हु बॉल्स 145 150. हाँ. और उसकी 400 विकेटें टेस्ट में. ठीक है. 100% बॉलर लेंगे यार. पाकिस्तान और वो भी लेफ्ट आर्म होना चाहिए यार. आप कोई मेकअप प्लेयर मोड में. चलो ठीक है यार. राइट आर्म दे दो, कोई बात नहीं. भाई आपने 145 स्पीड बहुत ही खत्म. वी आर फिनिश्ड. उसके बाद हम सुनते ही कुछ नहीं. उसके बाद What a shot by Azza. Azza Rally's cut that away past point. Should go all the way for 4. Beautiful. Look, he's finally looks like the Azza we know we love. रमीज कह रहे हैं ऑफेंस विंस यू गेम्स एंड डिफेंस विंस यू चैंपियनशिप्स. हाँ NFL में है बट दिस इज LOL. वो छोड़े. और वो बात भी सच नहीं है जो महोम बॉय ने करके दिखाया है. इवन दैट्स नॉट ट्रू एनीमोर. Azhar Mahmood has played the 7th best innings of all time according to Wisden, says Faisal. यार वो थी वो जिसने 150 किए थे. 140 कुछ किए थे. कौन से? अजहर महमूद ने जो सेंचुरी की थी. हाँ इन साउथ अफ्रीका. यस. नहीं प्लेयर अच्छा था. कोच चवल है मतलब. Azza? They've got a very short mid-on and a very short mid-off in place. And I feel like this is all about disturbing the batsman. आप लोगों ने comments पे जवाब नहीं दिया that who you're picking. 9,000 runs from a test match batsman, 400 wickets from a fast bowler. Which player are you going to pick for Pakistan? I'm going to give you one. Based on this current team. Based on this. नहीं वैसे ही. तारीखी तो फिर सभी फास्ट. Mr. Arson 93 कह रहे हैं the unicorn bowler. Let me take a moment and actually tweet this question out, Khwaja. कर लो, why not? 127 for 5, 52.2 overs gone. Ooh, this has been nudged away in the slip cordon and good fielding by Dom Bess at point. गोपी बैट्समैन कह रहे हैं यार. कम ऑन गोपी भाई, आप तो फिशरमैन हो, ऐसे तो ना को. 128 for 5, Azhar on 61. अब थोड़ा सा हमारा मूड भी इम्प्रूव हो गया कि पाकिस्तान थोड़ी दलेरी दिखा रहा है. इन जहरीले फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तगड़े हो रहे हैं. एंड एंडरसन के उस वक्त 7 ओवरों में 4 विकेटें थी. he's toiled away another entire spell but no wicket so far for any England fast bowler, to be quite honest. Since then only Dom Bess got the solitary wicket. 128 for 5. This has been punched to point and another quick single. Good running here between the two, and it can be quite confusing when you have the short. Oh, these are overthrows by England, and this might run away all the way for 4. नहीं यार रुक गया. And Jimmy will be upset with that. Some extra runs for Rizwan. And in fact Azhar, ये भी Azhar की अब देखो fortune जब आपकी तरफ जाती है, when you get the rub of the green, overthrows भी मिलनी शुरू हो जाती है. And Jimmy is like, what the bloody hell were you doing, mate? Dom Bess ने very wild throw, just threw it over mid wicket, to be quite honest, instead of the keeper.
So Pakistan are finally winning a session in this game. Ridiculous throw way over the keeper and completely missed. समझ नहीं आया हमें क्या हुआ, and even Jimmy is like, what the bloody hell is going on, mate? I want 600. उतनी ऊंची थ्रो जोफ्रा साहब ने भी की है. That went way over the keeper. What's going on? Maybe they want a cup of tea. 132 for 5. Ooh, good from punch. Too short, mid off. The tweet is out. On change of pace 414. Again, that inducker into the pads that Azhar needs to be careful with. He's on 65 now. 132 for 5. Jimmy Anderson nearing that 600 mark in terms of his wickets. ओए गोपी मियाँ कवाल कह रहे हैं आज चपली कबाब का लंच तैयार हो रहा है with Kabuli plow. So he's going all out. Oh my goodness. Celebrating the Azhar 50. Which is a very elusive landmark in world cricket right now. Good defense. थोड़े से signs आ रहे हैं अज़हर में इस वक्त और look at how pissed Jimmy is. Khwaja, you need to look at trigger हो गया full fledged. He's just walking off in anger. 4 for 42. Jimmy Anderson, calm the hell down. Sarosh is saying currently I'll take the team batsman, otherwise I'd go with a bowler. Yeah, Sarosh, why are you sitting on the fence, man? You gotta pick one. यार बॉलर होता है यार. आपको मैंने उस वक्त भी बोला था पहले फास्ट बॉलर हीरा होता है यार. बैट्समैन तो मिल ही जाता है. बैट्समैन तो आप ट्रेन करके किसी को बंदर को भी बैट्समैन बना सकते हो यार. Bowler, that natural ability. Naveed Nadeem on Twitter saying 400 wickets. Test matches are primarily won by bowlers, 100%. Not batsmen. You cannot train anybody. You cannot raise anybody to bowl fast. That's in you. He lives in you. वो वाला scene हो जाता है. Mr. Arsenal asking about Nasser Hussain's third man with Azhar Ali. Yeah, I did watch that. क्या कह रहे थे वो? About his feet positioning to the spinner and the fast bowler. His feet. He's yeah. I think he was pointing far too outwards when he's facing the fast bowler. Yeah, this is the cutting edge analysis that puts Sky Sports over the edge. Sky Sports is the pinnacle of cricket broadcasting. बहुत ज़बरदस्त होता है. Abhi Nasser actually did one about the catch that Butler took and the way his hands are मतलब angled. हर commentary team में अच्छे experts होते हैं, लेकिन जिस तरीके से नासिर और एथलीट समझाते हैं यार कोई नहीं समझाता. It's really, और holding भी of course one of the goats. Srijan is saying bowler क्योंकि I'm from India. Fair enough. Fair enough, Srijan. To be honest, we haven't had a bowler that's got 200 test wickets since Waqar Yunus, a fast bowler. शोएब अख्तर के बाद शोएब अख्तर I think 146 है ऐसी कुछ है. Even he couldn't last that long. Exactly. But even Umar Gul didn't deliver on that. I think वहाब रियाज की 70 कुछ है, आमिर की 115-16 ऐसी कुछ है. Yeah. तो 200 का बॉलर तो पाकिस्तान के पास. I think Shaheen या Abbas ही हो सकता है अभी. यार I hope so. Shaheen definitely तो लग रहा है. Good drive shot from Rizwan this time, getting on top of this one outside off, and it'll go down the hill for 4, I think. हो जा. Nope. Good fielding that from England. Diving effort that'll save. वैसे ये डाइव की जरूरत नहीं थी, बॉल रुक गया था. But you know थोड़ी से आपको मैच फीस भी कमानी पड़ती है. ठीक है. So डॉम सिबली साहब, रिजवान भी हंस रहे, कहते ये क्या फिल्म है यार. बॉल रुक गई थी. तो शाशिद कह रहे हैं Wasim Akram at third man remembers how he kept killing Atherton with a short ball. Wasim bhai to फिर है ना. Wasim bhai at third man, Mr. Arsenal, is actually quite good. Zain Mirza is saying I will take a batsman because our team is like a Jenga. कोई stability की नहीं, कम से कम batsman score तो कुछ करेगा. ये बात भी सही है. Fair enough, Zain. Wow. Away, what a shot by Ricky Azhar Ali. Lovely shot, screams away. Azhar को तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. You can just call him Azhar Ali. He's a great in himself. What a shot यार. जोफ्रा को भाई हम पुले मारे. Fully confident कहते चेक किए शॉट में, चेक की रिज देखी 69 not out. 69. But lovely short ball just sat up in the pitch, asked to be smashed, and once again जैसे वो फैसल बता रहे थे, we've handled Jofra pretty well for the most part. I told you Khwaja when he came almost on, killed, short leg, that the pace actually might help Pakistan. यार क्वेश्चन क्या है? आई एम आउट ऑफ द लूप. ज़ैनब हम पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक टू हैव इन दिस टेस्ट साइड अ 9000 रन्स वाला वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और 400 विकेट्स वाला 145 kph फास्ट बॉलर. ये हमने कंपैरिजन किया था. तो काफ़ी लोग बॉलर कह रहे हैं, मैं भी बॉलर कह रहा हूँ, लेकिन मुसाद भाई कह रहे हैं जी मुझे बैट्समैन चाहिए. और नवीद हमारे जो हैं. It's a trick question. The correct answer is Jack Callis. 139. That's the best answer, to be quite honest. The ICC Hall of Famer. Yep. इनको WWE की तरह करना चाहिए Hall of Fame. बिल्कुल. Ex Hall of Famer Jack Callis weighed 220 pounds. Back off. He's broken in half. 139 for 5.
And he gets underneath that bouncer, does Raza Zarali. 54 overs gone. Pakistan 139 for वैसे 5. अगर हम हॉल ऑफ फेम की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करते हैं. Wasim Akar, Yusuf Yunus, Misbah, NZ. मिसबाह होगा हॉल ऑफ फेम. यार नंबर 1 टेस्ट साइड लेके गया. हाँ ठीक है. हनीफ मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियांदाद, Javed Bhai, ज़हीर अब्बास. Zahir Abbas. He's in the ICC Hall of Fame today. Yeah, and आसिफ इकबाल को भी होना चाहिए to be quite honest. फजल महमूद, the original goat, और सकलैन मुश्ताक को भी होना चाहिए I believe. He changed. Abdul Qadir. He changed the concept. Abdul Qadir, of course, the late great Abdul Qadir. He changed the concept of spin bowling and ODIs, and of course Abdul Qadir kept the dark art of leg spin alive in the 80s when it was almost extinct. सारे फास्ट बॉलर. What about this current generation? सना मीर, हाँ, she वो I भी think आएंगी. number 1 bowler भी बनी थी वो. हाँ, मोस्ट विकेट्स उनकी हैं पाकिस्तान में, तो she would be in the Hall of Fame. I think Fair point. बिस्मा मारूफ जब रिटायर होंगी वो भी Eventually, होंगी. yes. और Keeping में तो मोइन खान, राशिद, I don't think so. शोएब अख्तर, controversial choice but he should be there. नहीं, शेबी है. शेबी है. शेबी द बॉलर पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. नहीं, शेबी वो- द पंडित इज एन इडियट. वो भी मजेदार है. I don't mind it यार. हमें पता है टेंशन सीकिंग कर रहा है, कोई हाँ. बात नहीं. I think Diana Baig will also be there. She's First very woman to talented, play yeah. in Big फुटबॉल Bash. एंड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. नहीं, और बिग बैश का भी कॉन्ट्रैक्ट है ना उनके पास. अच्छा है. हाँ, और वो निदा डार भी गई थी. इस सॉरी, साल. दैट वाज Nida निदा. Dar. डायना बेग को नहीं मिला था. हाँ, 139 for 5. लवली लुकिंग डॉगी. ये कौन सा Dogster. ब्रांड, आई मीन कौन सी Brand. जात है ये? Nike Does Air anybody Dog. know which breed this dog is? Yeah, I'm not a dog He's a person. lab or something, or I don't know, Labrador होगा यार. बहुत ही डिप्रेस्ड लग रहा है हमारी उनकी बॉलिंग देख के. Very upset. The dogs in England speak like that as well. 139 for 5 as Chris Wokes, the magic man for England, has come on back on to bowl. But Wasim Bari, I don't think so यार. फारिग ही था वो, to be quite honest. Keeper was Look good. at the It was a numbers. good keeper apparently. Apparently. Shoaib the bowler per criticism, हाँ, injured, just 49 tests, true. Nice defense. Zain Mirza कह रहे हैं, by the way मुझे इतनी आदत हो गई है कि I mute TV and listen to your commentary than yesterday. That yesterday I was watching tennis match and realized after 15-20 minutes the TV was muted. ये देखो यार. और वैसे मुसाद जो हमारे हैं बहुत बड़े टेनिस फैन हैं, फैन बॉय हैं, Yeah, I do काफ़ी like- टेनिस देखते हैं. Shout out to Nick Kyrgios, my boy. यार आपने सबसे थक्कड़ प्लेयर ही चूज करना था. Yeah, personality है boy. पर्सनैलिटी यार, ये क्या बात हुई? शेबी- फिर आप शोएब भाई को बातें बनाते हो, वो तो कौमी हीरो हैं. निक किरियोस हमारा क्या लगता है? Nick Kyrgios is बंदा है यार अपना. उसका style सईद है. अनवर तो of course उसका क्या? यार, कोई Have you question seen नहीं Kyrgios का jump smash? यार player ऐसे है. ट्रिक शॉट्स तो रॉजर भी बहुत मारता है. Roger player थोड़ी है. Roger legend है, वो तो एक अलग ही level है. अच्छा, between the three, Novak, Nadal, who will have the better final stats in their career? यार I hate to say Novak it, but ले जाएगा Novak ले यार, जाएगा. I Novak hate ले to say it, pains me. यार नोवाक अच्छा प्लेयर है यार यार. but he's a shit person. What shit person? उसने क्या किया है? अभी आपने देखा है रिसेंटली उसकी हरकतें कोविड में. यार कोविड में तो हर कोई चरिया हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात उसने है? वो अजीब जो है वो सूडो साइंटिस्ट बुलाया था अपने इंस्टाग्राम पे. हाँ. फिर अजीब वो जो है वो क्या कहते हैं मेंटोर्स वगैरह को बुला के फेक मेडिकेशन प्रमोट कर रहा था. देन ही होस्टेड अ टूर्नामेंट ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. हाँ, ये उस पे जो है वो किरियोस बंदा है यार. 141 for 5. Tennis needs characters like Nick. ये बात तो है. Played with the leg side for no run. हमजा कह रहे हैं, you need to offer 435 wickets for me to take the bowler. Need to be higher than Kapil Dev in the. यार कपिल पाजी भी यार लेजेंड है यार, ऐसे तो ना. कौमी हीरो है इंडिया के. How do we say कौमी in India? संसार. Let's not try. जनता के I don't know, whatever. How do you say hero in India? जनता के मोदी हैं वो. I don't know. Mr. Arslan, I didn't know this, that Kyrgios is a Tottenham supporter. That changes things. हाँ वाकई he's a Yeah. Spurs fan. So that, Oh my god. यार मेरी फेवरेट मुझे सिंगर. इतना पता है, दिल पोत्रो जो है he's a Juve fan. He is. अच्छा अच्छा. Djokovic is a Milan fan. मुझे Okay, इतना याद था. Okay. और He's actually Roger's the fan of Basel, I think. हाँ, that he's a makes Basel, sense. हाँ. FC Basel. FC Basel, and actually my favorite singer is a Tottenham fan. कौन? Adele. Hmm. 141 for 5. Adele तो Adele है यार. Adele का कोई गाना खराब नहीं. कोई बुरा गाना ही नहीं गाया उसने जिंदगी में. 141 for 5. Oh, नहीं this might be यार. given. The umpire's shaking his head and you're out of No reviews. reviews. No reviews. I think it was a bit high. Wait, that was bloody close. That was very close. I would have given that, Khwaja. अभी तो आप कह रहे थे इतना खुश हो रहे थे, रिव्यू नहीं.
But I would have given that. Let's see. Maybe he jammed it onto his pad. Could be possible. Ooh. बस ज़ैनब ने अभी कमेंट डाला कि आई एम सेइंग दिस बहुत डरते अजहर इज लुकिंग फ्लुएंट. भाई ज़ैनब की इस मैच में शायद लाइन के बाहर लगी है, बट ही इज वेरी वेरी लकी देयर अजहर अली, नो डाउट एट ऑल. एंड थैंकफुली अब 80 ओवर के बाद रिव्यू भी नहीं वापस देते. 3 दिए हैं, वो आपने ज़ाया कर दिए तो कर दिए. सो इट कैन बी अ बिट ऑफ अ स्लॉग फॉर इंग्लैंड अगर हम प्रॉपर बैटिंग करें. 141 for 5, Chris Wokes. Lovely punch. Much better from this. Look at that. Woo. Relax, buddy. Who do you think you are, Chris Wokes? You pretty boy piece of shit. Whoa. Think you can throw the ball back at Azhar Ali? He's got 6,000 test runs. Umpire's call. Just clipping. But could have easily given that audacity, the caucasity of this man. 6,000 टेस्ट रन है उसके. तुम उसके भी जूतों के काबिल नहीं हो. यार ये बात सही है. 141 for 5. कौमी हीरो है आफ्टर ऑल. कौमी हीरो, कौमी लेजेंड है हमारा. सही बात है. Azhar Ali. ओह स्लो बॉल. अब ये नौबत आ गई. 2020 शुरू हो गया. वनडे बॉलिंग शुरू कर दी उन्होंने. और अभी कोई रन नहीं हुए. 150 ही रन हुए हमारे कोई. यानी इतना दबाव है हमारा. But Azhar Ali with a smile and a grin. Omer is coming in through with a comment. Boys have covered 44 runs in the last 10 overs without losing a wicket. क्या बात है भाई, क्या बात है. Majid Hussain कह रहे first time logging in today. As soon as I did there was a shout for a wicket. Should I go by? नहीं यार माजिद भाई आ जाएं. अब अजहर भाई सेट हो गए हैं. And look at that pretty little birdie. ये कौन सी species है जरा बताएं हमें. That is the carnivorous zebra bird. What the hell? गोश्त खाती है, गोश्त खाती है. I just made that up. I have no idea. अच्छा लगता है we don't have any dog people. Does anybody in our change of pace chat have pets? I feel South Asians are not that into pets, to be quite honest. I mean, I know our social media man Sarkhel is a Sarkhel तो big dog person. Wannabe dog person. इसके पास है नहीं dog. No, I think he has a few in Pakistan. पाकिस्तान में तो बंदा रख ही लेता है यार. वो खुद आ जाते हैं. इधर रखो ना हमारे सामने. Prove it to us. नहीं, then I wouldn't go to his place as much. क्यों? अच्छा आप allergic हो? नहीं, not allergic. I just don't like the slobber and all that. यार you're assuming that the dog will like you. Yeah, most animals are cool with me. ये क्या आप क्या डॉक्टर डूलिटल हो? आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? Speaking of Dr. Dolittle, the new one was so bad. It was so bad. Eddie Murphy वाली. No, there was a one with Robert Downey Jr. So bad. 140. Yeah, Eddie Murphy तो. यार कौमी हीरो है हमारे. 141 for 5. Zainab Rizvi Kenny, I have kids. Yeah. Does that count? Yeah. I guess you can guess. Inside edge onto the leg side. थोड़ा सा action change करके आए हैं best भाई. Going with that double windmill, but Archer in his last spell, plenty of short stuff, but no pace in the pitch to really trouble the Pakistani batsman. Faisal is saying he fostered 2 dogs for 3 weeks and they went back a week ago. That's very kind of you, Faisal. वाकई यार. Srijan with a statistical comment saying Wokes has the best average in England amongst this bowling lineup. This is right, and he actually has 88 wickets in England. So definitely. Majid Hussain Puchin, I missed Fawad's innings. What's your take on it? Yeah, it was the typical scratchy stuff, but actually he was looking a lot better. पर Dom Best को wicket दे दी उसने, which is criminal to be honest. क्योंकि आप Wokes, Archer, Broad, Anderson को survive करके आप. मतलब it did look a bit, ungainly. That is the word I'd prefer to use. No. But it was working for him. In fact, he played Jofra relatively well. He was bowling with some decent pace, 93, 92 miles per hour. Bowling करा रहा था, aiming for his rib cage. But Fawad looked all right. He didn't, shy away from it. Oh, good inside edge onto the pads. यार ये बेस्ट के खिलाफ रिजवान फंस रहा है. मैं तब से ही देख रहा हूँ. He just seems to be looking for that big cover drive, and बेस्ट भी चाहता है. He wants him to drive और जो away from the spin. जो बॉल पड़ी थी फवाद को, उसकी गलती थी. He was a bit too far out, but वो अच्छी थी. Extra turn, extra bounce. Nice defense onto the offside for a quick single. So does he justify his place ahead of Shadab? यार देखो, I still believe कि 5 bowling option होने चाहिए टेस्ट मैच में. तो शदाब का वो एंगल भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फवाद ने तो वैसे आज 2 for 48 भी लिए, बेस्ट फिगर्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट वो फवाद ने सॉरी. लेकिन आप ये भूल रहे हैं मुसाद, हारिस वुड बी अ शू इन दिस टीम, और वो हमारा 5th रेगुलर बॉलर है. हारिस तो उन दोनों से आ गया, बट आई थिंक फवाद और हारिस दोनों को खिला सकते हो असद के बजाय. हां डेफिनेटली. ऑल्दो असद इज येट टू no, he's already out. Nicely played to mid wicket for a single. Azhar moves on to 70 over 155. 143 for 5 after 56. देखिए अगर हारिस ट्रैवल नहीं करता ना न्यूजीलैंड, तो आई वुड एक्चुअली गो विद फवाद एंड शदाब अहेड ऑफ असद. नहीं, आप असद को लेके नहीं जा रहे.
हाँ ठीक है यार, खत्म हो गई। स्क्वाड में रख लें आप, कोई मसला नहीं मैं है। स्क्वाड में भी ना रखूँ क्या फ़ायदा है? 1200 है, कौमी हीरो है, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, जब उसको खिलाना है नहीं तो फिर उसको क्या रखना है नहीं, squad में? बैकअप चाहिए होता है ना, हारिस का भी कुछ पता थोड़ी है, ही हैज अ लॉट ऑफ टेंडेंसीज आउटसाइड ऑफ। देयर इज Some two serious men. beard game going on between Shan भाई कोई and कंपटीशन ही Fawad. नहीं है, फवाद की इतनी कंप्लीट है। हाँ ये तो है। शान थोड़ी मेहनत करे तो इधर भी इम्प्रूव कर सकता है। हाँ वैसे थोड़े से पैचेस। कैन यू रेट शान मसूद आउट ऑफ 10 इन दिस टूर? यार ऑनेस्टली आफ्टर दैट इनिंग, आफ्टर द वे ही इज गॉन डाउन, इट्स बैक टू 5 अगेन। ठीक है, एक इनिंग तुमने यार बहुत खेली, अनोइंग बात है उस पे आप 8 पे चले गए, फिर उसके बाद आप 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स कर रहे हो, फायदा क्या हुआ फिर? I wanted, build I on it. desperately wanted more from Sean. 100% यार। 143 for 5. Chris Wokes now coming in inside. Ooh. अच्छा अब ये होगा जो जिस तरह मिस्टर आसल ने कहा है, if we drop असद शफीक, लोगों ने कहना है आप अजहर को क्यों ड्रॉप नहीं कर रहे? यार मसला वही है ना, कप्तान है, दैट फैक्टर गिव्स हिम एन एक्स्ट्रा 6 नहीं, और आप वाली बात, वो ऊपर खेलता है, that's a factor. बिल्कुल। 143 for 5, trail by 440. Time to turn the lights on in Dubai, Khwaja. It's getting a Yes, bit dark. indeed. Ooh, slower ball down the leg side, completely fluffed it did Chris Wokes. But now अब वो variety stage पे आ गए हैं. They've tried the short ball tactic against Rizwan, it didn't work. Now they're trying those cutters and changes of paces with Chris Wokes now bowling slower balls and all that stuff. तो इंग्लैंड थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बीन इन द फील्ड फॉर अ फेयर वाइल नाउ, काफ़ी लंबे लंबे सेशन भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉस्ट टाइम एंड द रेन इंटरप्शंस. सो पाकिस्तान डूइंग वेल हियर एंड ऑफ कोर्स नो रिव्यूज़ लेफ्ट, दैट्स गोना बी अ ह्यूज फैक्टर व्हेन यू गो लेटर इनटू द इनिंग्स. और अजहर जैसे खेल रहा है, इनको और मज़ीद फ्रस्ट्रेशन होगी कि भाई हम LBW शाउट्स भी अपने रिव्यू नहीं कर सकते. सो पाकिस्तान हैव अ कपल ऑफ advantages in the current situation. Rizwan भी 60 बॉल खेल गया, अच्छा खेल रहा है, supporting his captain. So Pakistan can definitely build a good partnership here and delay the inevitable as much as possible. And Azhar needs to get a big score here, a big 100. Down the leg side once again. Chris Wokes has been very off in at Southampton. Old Trafford में तो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करा रहा था. सेकेंड टेस्ट में भी इसको काफ़ी मार पड़ी थी, रन्स दे रहा था, and hasn't managed to find his radar has been off in this test, to be quite honest, in both test matches. और हमारे इंटर्न भी उठ के आगे देखने आ गए हैं स्कोर, कहते हैं वाह यार क्या बात है, बाबर ने इतने रन क्यों नहीं किए. This has been punched to short mid on. Talk of Shan being a future skipper has evaporated as far as I'm concerned. Majid कह रहे हैं 100%. You cannot make one big 50 and then fail the next 3 innings. You're just not living up to you're not building on your CV as they say. End of the day वही 30-32 एवरेज वाला टूर आपका रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? Flicked away by Azhar Ali to square leg. That'll be 1, maybe 2. No, it'll just be 1. A big deficit of 439 still well in favor of England, but they are getting frustrated. Jimmy Anderson got some early success, but उसके बाद उनके तीनों fast bowler really couldn't get anything from the deck. They have all been wicketless. Shan having a Shafiq type career, वाकई what a leveler this game is. Absolutely यार, leveler की बात ठीक है, but when you keep getting out the same way to the same bowler, 100% you know carbon copy आपके dismissal हो रहे हैं, इसका मतलब है you're not working hard to counter his bowling and you don't have a game plan to tackle it. वही ज़ैनब वाली बात है, कह रही है कि अगर आप फेल भी हो रहे हो तो 20-30 करके फेल हो जाओ. 0-5 0 क्या है सिंगल डिजिट, तो इट्स जस्ट. और ये आपका दूसरा टूर है इंग्लैंड का, आप पहली दफ़ा नहीं आ रहे, आप इधर लिए तो चलो पहली दफ़ा आ रहा है. ये भी है. 144 for 5. Bessie continuing here into his 10th over, and it's risky Lovely work shot, from Azhar Ali, and he's not really known for his kalaya, but he's done well there. Easy 3, I think he should नहीं, be 2 ही here. होंगे. Jofra, Oh, good running. I think they're missing, to be quite honest, they're missing Sam Curran with the left arm angle, you know. Yeah. जोफ्रा से उन्होंने चलो पेस निकलवाई है, लेकिन पिच में वो जान ही नहीं है. हम एवं 150 ओवर हमने बॉलिंग कराई है, देयर वाज नथिंग इन देयर. और इंग्लैंड को भी कोई रिवर्स नहीं मिल रही जहाँ तक मैं देख रहा हूँ. That's a good point. 57-58 ओवर्स हो गए. 200 करे, 300 करे अजहर. यार मैं तो कहता हूँ
बिग डैडी 100 तो इंशाल्लाह वो करेगा ही Shut the करेगा. haters up. This partnership now 72 runs Khwaja at a run rate of 3.42. और उस 72 रन्स, आर यू श्योर? हाँ जी, नहीं नहीं यार, मजाक नहीं कर रहा यार रिजवान ने उनमें से सिर्फ 19 रन किए हैं. दैट्स Yes, क्वाइट sir. रिमार्केबल. This is good defensive मतलब work. from हैविंग अ Rizwan. पॉजिटिव पार्टनर हैज हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अजहर. वो अपनी शॉट्स खेल रहे हैं. So that's नहीं a और very उसकी good- उसका बल्ला भी सीधा आ रहा है. वो he's not that. He definitely has a great balla, that's true. Yeah, he's not getting Whoa. worked up upon that straighter line. फैसल कह रहे हैं शान वर्कड ऑन हिज ऑफसाइड गेम एंड फॉरगॉट हिज मिडल एंड लेग. यही बात है यार. ये तो हालांकि तरीका- ये तो कोई तरीका नहीं है. पहले टेस्ट में तो बहुत जबरदस्त फ्लिकें मारी थी, हमने देखा था. फ्लिकात. फ्लिकात मारी थी थ्रू स्क्वायर लेग. दैट्स अ गुड शॉट ऑफ हिज. 300 इंशाल्लाह एंड 150 फॉर रिजवान ज़ैनब. तो वही यही है. वो अलग बात है, वो अभी 20 पे है, लेकिन 130 और ही करने हैं. इट्स नॉट दैट फार. 148 फॉर 5 डॉम्बेस. अच्छा, और इंग्लैंड की भी अगर आप विकेटें देखें, हाँ. विकेटात, तो जब उन्होंने 40 ओवर खेले थे ना, हाँ तो उनके 127 फॉर 4 थे. बिल्कुल तो उसके बाद रन्स बनने शुरू हुए हैं. बिल्कुल. पाकिस्तान की भी ट्रेजेक्ट्री अगर इस इनिंग्स में देखी जाए हाँ तो इट्स अ लिटिल बिट सिमिलर. बिल्कुल और सही कह रहे हैं. पाकिस्तान के टाइम में बादल भी ज़्यादा थे, स्टॉप्स भी ज़्यादा थे, तो ये सब भी आप अकाउंट करें. What a sweep shot that is from the Pakistan captain. It'll beat square leg, go to for 4, and he's Lovely growing shot, yeah. in confidence. These shots are getting better. Azhar Ali is 22 away. Dare I say it, Khwaja? Dare I say it? अब I'm not sure when is the innings break in 10 minutes. The tea break? I think so. So hopefully उससे पहले तो वो नहीं कर पाएगा अगर 10 मिनट में है. वो इसी ओवर में कर लेगा. यार डॉम बैस है या बॉम्ब डेस है, कौन है? Zainab Razvi कह रही है, I am going to be बेशरम and troll Siku Bhai if Rizwan gets runs again. 100%. मैं तो पहले ही ब्लॉक हो चुका हूँ. आप लोगों को ही करना पड़ेगा. Nice defense from Azhar Ali. वैसे मजे की बात है, अगर रिजवान अगर अल्लाह करे 100 मार दे, then he takes out a shirt and says Yeah, Siku talk now. He's not valuable enough to even do that. सही बात अब है. वो जो सिक्कू भाई या रिजवान? No, Siku Bhai. हाँ, हाँ. सरवान ने किया था, किसने किया था? रामदीन ने जब रामदीन ने विव रिचर्ड्स को विव रिचर्ड्स को किया था यार वो. और रामदीन के तब से ही करियर खत्म हो गया, टू बी क्वाइट You ऑनेस्ट. don't talk shit to Viv Richards. सीरियसली मैन. आपको पता है अब शेन वॉटसन की आप बात कर रहे थे उस दिन, तो मैं अभी I haven't gotten around to the podcast but I've added it नहीं to आप my लोग जरूर सुने, बहुत I've added it to my list. But I've read a couple of articles where he mentions the Quetta Gladiators. The biggest takeaway for him at the QG camp has been Viv. हाँ वो बहुत बड़ी साइनिंग है. I think it's bigger signing than the players. वाकई उमर एसोसिएट्स ने उसको बहुत बड़ा काम किया है कि इतनी बड़ी हस्ती को आप PSL में लाएं. उसका जो गुड विल है और जो गुड वाइब्स है उसके आप कोई कीमत नहीं लगा सकते उस चीज़ पे. 100%. Yeah, Ramiz is saying that was blasphemy by Ramden. इसलिए तो हम उसको हरामदीन कहते हैं. Yeah, it's not 152 for 5. आप भूल गए वो जो Played उसने कैच क्लेम किया था 2014 वाले चैंपियनशिप. Yeah, कितना बेगैरत है यार. Played away to. एंड ही गॉट बैंड फॉर द टूर्नामेंट आई बिलीव. अच्छा, हाँ बैन लग गया था उस पे. कैच क्लेम करने पे क्यों बैन लगी? यार बाउंस होके उसने उठा के कहा आउट है. बाउंस हुआ था, बाउंस. I mean, we've done that. अब राशिद लतीफ का करियर खत्म हो गया था उस पे. ही डिड दैट अगेंस्ट बांग्लादेश ऑफ ऑल टीम्स. 153 for 5. बैड डे फॉर कराची प्रेस. अजहर एंड रिजवान गेटिंग रन्स. यार इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा. ये जो आप लोग कराची का नाम यार इस्तेमाल आप अब ये करते ना हैं, कहें डजंट एग्जिस्ट. मैं एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट की बात नहीं कर रहा. इट्स अ माइंडसेट. इट्स नॉट अ एक्चुअल like a 3D thing, but it's a mindset. As a Punjabi from Karachi, I have the right to speak on this. You're a Punjabi. मैं आपको सिर्फ ये बताऊं. Why आप इनको उसने मेरी वकास अहमद से बात हो रही थी on Twitter, who does a lot of interesting work with cricket. जी. And he was like, yeah, कराची माफिया. आप किसी को कराची मीडिया कराची माफिया आप कहते हैं. हाँ. मुझे सिर्फ ये बता दे, इन लोगों के साथ आप कराची का नाम लगाते हैं. हाँ. इन्होंने कराची के लिए क्या किया कभी? क्या मतलब क्या किया? वो क्या तीन तलवार पे जाके झाड़ू मारेंगे? नहीं, ऐसे तो थोड़ी आप होता है बोले ना कि भाई हमने इस प्लेयर को कवरेज दी है या हमने इसको जो है सपोर्ट किया है. प्रमोटिंग दैट बुलशिट नेगेटिवली. मेरी बात सुने. इन्होंने कभी किसी मेरी बात अब आप सुने. नहीं, मेरी बात सुने पहले खत्म होने देना. इन्होंने कभी किसी कराची प्लेयर को मीर साहब मेरी बात सुन ले. अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया. दे कीप क्रैपिंग ऑन देम. यार अभी आपकी इंटर ने क्लिप प्ले की थी रमीज विद दैट फिक्शनल कन्वर्सेशन विद तनवीर अहमद. इस किस्म के एजेंडे ये लोग प्रमोट करते हैं. तो हाउ इज दैट हेल्पिंग कराची? आई एम सेइंग दैट्स व्हाई इट हर्ट्स कराची. ऑफ कोर्स इट डज. दीस गाइज आर एंटी कराची. एग्जैक्टली.
लेकिन वो They're Judas. लेकिन वही बात है ना, वो नाम तो खराब ऊपर ही होता है ना इनका। क्यों आप कराची का नाम लगाते हो? ये कराची के लोग हैं, ये इस तरह बातें करते हैं। सरफराज ने कभी इस तरह की बात नहीं की। वो बंदा जो मर्जी उसको करवा लो, ही इज अ टीम प्लेयर, और आप उसके इसलिए ओ ड्रिंक्स बना दी, ही डजंट गिव अ शिट। हाँ ऑफ कोर्स। क्यों इस तरह आप लिख रहे हो? वो ये लोग कराची के खिलाफ लिखते हैं। ये दीज आर द मांजन बेच रहे हैं ना, मांजन बेच रहे हैं। मंजन जो मर्जी बेचते रहते हैं, किसी का भी बेचते रहते हैं, इनको मौका मिले। आई डोंट वांट माय सिटी एसोसिएटेड विद देम। Lone Wolf पूछ रहा है which podcast are you guys talking about? It's Shane Watson's podcast called Talking with the Greats, something like that. मैं इसका नाम एक मिनट में चेक करके आपको बताता हूँ, मेरे ऐप में है। And he has conversations with Wasim Akram, Viv Richards, Mitchell Johnson, all these Brett Lee, बड़े Michael Hussey, सारे जो उसके colleagues थे. And it's a really good podcast about cricket. Opens the face of the bat this time, Rizwan. Azhar Ali. It's called Lessons Learnt with the Greats. पहले शॉट तो देखो, क्या शॉट खेला है। कौमी हीरो है, आपको ऐसे बादशाह शॉट बना हुआ है मारेगा अजहर इस वक्त। He's just guided that to third man for 4, moves himself into the 80. Pakistan's 157 for 5. Azhar Ali 82 of 170. जी आप ख्वाजा आप कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं बस उनको बता रहा था वो पॉडकास्ट का नाम वो उनको मिल गया। रज़ा भाई भी आ गए ऑन द स्ट्रीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस रज़ा भाई। ज़ैनब रिजवी कह रही है लोगों को सिक्कू भाई की वजह से बेचारे सैफी से चिढ़ होने। एग्जैक्टली। So then why are you calling it? So why are you calling it? लेकिन फिर आप उनको शट अप कॉल भी दे सकते हो यार। कौन उनको शट अप कॉल? सरफराज अपने ट्विटर से दे दे। He needs to stay away from these people. He's not associated with them. I'm sure and he's they're not. not valuable enough to give them the time of day. Yeah, but your silence is incriminating ना, आप क्यों? I don't think it is. It is. गली में कुत्ता भौंका, आप उसको जाके चुप कराओगे? यार ये that's not the same thing. It is. These people are just on a national level यार। What national level? जियो पे हैं वो लोग। तो बिठाएं उनको। आलिया रशीद ने नहीं देखा था उनको किस तरह धोया है? वो तो आलिया ने कहा था क्योंकि वो सेक्सिस्ट हो गया था। That's perfect. आलिया जैसे उनके colleagues ही उनको धोएं बेहतर है। वो बात ठीक है, लेकिन Sarfraz doesn't need to engage with them. He doesn't need to engage, but he can give a tweet के भाई we are all teammates. I don't believe in this BS. लगाई थी ना उसने? अजहर अली के साथ लगाई थी फोटो के नहीं? यार अजहर अली के साथ ये क्या बात हुई यार? You said I'm with you. उन्होंने बता यार ख्वाजा, I'll let me give you a timeline of events. I'm not blaming Sarfraz. I know you're but not. I'm saying the silence can sometimes. But there is no silence. I'll tell you what. When the first test we lost, all of this horrible group of people came out and said off with his head to Azhar Ali and take him away from captaincy. He's a crap batsman. All of that. Right now, alhamdulillah, he's 82, not out. And Alhams, shout out. And all of this was being shout said. Out to the Dean show. Okay. all of this was being said, okay? And they were immediately knee-jerk reaction. Make Sarfraz captain again. Make Sarfraz a wicketkeeper again. And Sikubai was saying things about Rizwan, even though Rizwan did nothing wrong in that match. Immediately, the next morning, Sarfraz logged onto his Twitter and posted a photo of him with Azhar Ali saying, "We're with you. We're backing you." And he was in his training shirt. That's अगर आप कह रहे हो सरफराज ने ये किया है, that's a strong message. That's a strong message. ठीक है, तो फिर जब सिक्कू भाई रिजवान की ले रहे थे तब क्यों नहीं सरफराज ने एक मैसेज दिया? क्या लिखे? दे सकता था। क्या लिखे वो? कहता we are all कहता कि भाई I will give पानी to whoever is with me, और कुछ भी कह ले। मेरी बात सुनिए, सियासी मेरी बात बयान दे सुनिए, ये नहीं है कि वो भाई बाद में हर ट्वीट पे आके तस्वीर डाले। एंड में पॉलिटिक्स में भी आगे आना ही है ना, एमएनए तो बनना ही है उन्होंने। No way, no way. क्यों नहीं बनना? सरफराज is not making. अच्छा एमपीए बनना है। He's not doing politics. एमएनए नहीं बनवा रहे। I think अच्छा आप तो अफरीदी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे पिछले। मैंने कब कहा है? अस्तगफुरुल्लाह। हद हो गया, कौमी हीरो है वो। एक क्रिकेटर भारी पड़ा है, दूसरा लाना चाह रहे हो आप? भारी पड़ा हुआ है। आपने पीटीआई को वोट नहीं दिया था। मैं आपको पता है मेरा तो गोस्ट वोट है एमक्यूएम को। हम कौन सा डालते हैं? हम कौन सा वोट डालते हैं खुद? 150 हमारे लिए पहले ही डला होता है। 158 for 5 after 59.5. It's all happening. Let me tell you this, Khwaja, though. Let me tell you this very openly. You are asking way too much. फैसल ने बड़ा जबरदस्त कमेंट दिया। सरफराज is little finger master of whispers. वही बात है, वो पीछे से इनको कठपुतली चला। You're asking. Beautiful delivery. I think Butler's dropped a catch. रिव्यू नहीं है, बोल्ड पे भी रिव्यू नहीं ले रहे भाई हम। I think Butler's dropped a catch here. नहीं उसके पैड को लगा यार। Was it a catch? No, look. Has he dropped the World Cup? Look at his face. He's definitely dropped a catch. यार उसकी तो शक्ल ऐसे ही होती 24 घंटे। That's also a good point. That's a good point. 158 for 5, 60 was there an edge? No, it hit the back pad. थैयों को लगी उसकी थैयों को। Let me tell you something. First of all, Sarfraz is a pretty nice guy. He doesn't go around looking for confrontation, except for Guptill. But the other thing is that you're asking so much of Sarfraz and asking nothing from the people that are perpetuating this crap.
यार और मैं तो पहले ही सबसे ब्लॉक हो चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ यार। ये भी है। मैं हफीज से ब्लॉक हूँ, वहाब से ब्लॉक हूँ, आमिर से ब्लॉक है। सिक्कू भाई से ब्लॉक हूँ, आमिर से ब्लॉक हूँ। वी आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड। हम तो आपको पता है 1 मिनट भी नहीं रुकते या बिल्कुल सरोज बैश करने में। सरोज ने बात की, सरफराज ऐसा बंदा ही नहीं है जो रिएक्ट करे इस तरह, एंड आई थिंक दैट माइट जस्ट बी टी। यस Junior saying cha da waqt. Just go through some of these comments, and we've missed a few of them. Reza is saying their podcast name is Lessons Learned with the Greats. Yeah, that's a good one. The Shane Watson podcast. Zainab is saying लोगों को सिकू भाई की वजह से बेचारे से, yeah, we've already read that. Fawad Alam loving the rant. Ramiz is saying Siku Bhai is the root cause of why Karachi is facing this crap. And Heather, Azhar Ali definitely been far quicker after that first 50 runs. Reza is saying Sarfraz may have a quid pro quo with the Karachi Mafia when he was captain, leaking small details such as team names in exchange for continuous support. What do you guys think? I think that is quite the conspiracy theory. Because you've got, one of the features of the Sarfraz Ahmed captaincy was that there was no real disputes in the squad. Everybody, it seemed like भाई आपको याद होगा Afridi got sacked from the captaincy because he used to leave. Why are you comparing Afridi to Sarfraz? I'm just saying कि such things do Afridi was a proven snake alongside Malik and Hafiz. यार वो बात ठीक है. I'm just saying कि ऐसा लेन देन खिलाओ पुलाओ प्रोग्राम होते हैं, ऐसी होती हैं. It's not a big deal. I'm not saying it's a sin. I don't. आप ये नहीं You really think that the likes of Hassan Ali, Shadab Khan, even what's his face, Rahman Rais, all of these young lads that came under cricket in Sarfraz's captaincy, and Sarfraz would sell them out? यार सेल देम आउट की बात नहीं है. आई एम सेइंग अगर उसके मुफाद में वो बात करें तो थोड़ा सा उनको प्रोटोकॉल देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है. एवरीबॉडी डज दैट. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ कैरेक्टर. Having relationships with the press does not mean that he's ratting his players out. हम रैट द प्लेयर्स आउट की बात ही नहीं कर रहे. हम ही जस्ट सेइंग क्विड प्रो क्वो, यू नो, यू सपोर्ट मी, I will support you. The unspoken bond, you mean? The unspoken bond वाली बात. Listen, again, these are the intangibles that we can discuss forever. Right now, we're going to take a job break. Let's take a break. We'll be back in 15 minutes for an Azhar Ali, inshallah, 100.
Welcome back to Change of Pace Live. After that tea break, we are witnessing a very special innings from Captain Fantastic. Azhar Ali on 82 off 174. And it's driven well. Very important 18 runs if Azhar can finally just cross that mark, that triple figure mark that only Shan Masood from Pakistan has done so far. Not even the great Babar Azam has scaled those heights in England at the moment. 158 for 5 Pakistan on the final session of day 3. As this is a beautiful drive from Rizwan. I have to say that he's complimented his captain quite well. Ji, bilkul. Welcome back, everybody, after a short tea break. Azhar on 82 playing really well. Rizwan has backed him exceptionally well. बहुत positive तरीके से खेल रहे हैं. Not shirking away from the responsibility. अपनी game खेल रहे हैं. And England थोड़े से बेबस लग रहे थे, थोड़े से helpless लग रहे थे उनके fast bowlers after not getting a wicket in that session. It was only Dom Best that did the trick, getting Fawad Alam. So still way ahead in the game, leading by 424 runs. But Pakistan putting up a good fight. Azhar Ali this time digging it out to fine leg. It should come back for just a single. Come through for a single. Moves on to 83 does the captain. What's very refreshing about this partnership, Khwaja, is that it's been going at over 3.5 runs and over. वो ये intent उनका अच्छा है and they're getting runs hitting boundaries. Oh, sorry. ये कौन था भाई? Sorry about that. Intent. Hashtag YINTENT intent. But just squeeze that down to square leg for a single. Has to be careful around that pad once again. They're going to be targeting it. थोड़े plans अपने renew करके लाएंगे. And Brody getting a bit upset, getting a bit frazzled. We saw before the tea break that Anderson was of the same emotions. And it's an interesting thing because, I mean, these two have such incredible stamina in terms of fast bowling, but they're very quickly frustrated. VK कह रहे हैं, did you see Jared Kimber's post? Fawad shouldn't have been out. Why? What happened? Let me have a look, VK. Didn't he edge that? I Jared? think he did. Jared is likely to come on to change of pace फिर when मजलूमों के साथ ज्यादती हो रही है अगर फवाद आलम को गलत आउट किया. There it is. With every run, Rizwan makes सिक्कू भाई का BP बढ़ा होगा. Indeed. I think उनके तो pulse फटने वाली हो गई होगी इस वक्त. Also, I'm just reading Jared's tweet here, and he said it looked like Butler's hands were in front of the stumps for that catch, अच्छा. which is the no ball. ये देखो यार. You'd have to see it again, but it looked very close. अब ये क्या करे हमारे ये अंपायर? वो भी दोनों अंग्रेज हैं. That's a good point. Conspiracy. But that's a very good observation from Jared. Shout out. Very good journalist. Pretty funny guy. And he knows his cricket. वो globally अपनी सारी cricket जानता है. He really is, and he's ये नहीं कि सिर्फ ऑजी अंग्रेज cricket नहीं, सारी cricket देखता है वो. keeps a keen eye on proceedings everywhere in the world. As this is clipped off Rizwan's pass to fine leg for a single. वही है ना, वो सोच रहे हैं कि जी हम middle and off से swing करेंगे ball. It's not swinging. It's just going down with the trajectory of the arm, going down leg side. And Joe Root. And Zainab immediately pulling out the law book. She's saying 21 law number 21.9, fielder intercepting a delivery if, except in the circumstances of law 27.3, position of the wicketkeeper, a ball delivered by the bowler makes contact with any part of the fielder's person before it either makes contact with the striker's bat or person, or it passes the striker's wicket, the umpire shall call and signal no ball and immediately call and signal dead ball. बस देख लो फिर हैंड हो गया फवाद के साथ. एक्चुअली हमारे कोचेस को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार वो कैसे आउट ले रहे हैं. So nobody else on Pakistan Twitter or cricket has pointed this out. So it's a good one from Jared. And VK giving a shout out to Melinda Farrell. Yeah, she's quite good as well. हाँ ठीक है. I find her bubbly blonde persona kind of boring, kind of annoying to be quite honest. Okay. But I like Isha. She's really good. Isha Gu have top commentator, I believe. No, but as a journalist, Melinda does write well. She writes well. Content वगैरह काफी अच्छा था. Yeah. 161 for fine. We're talking about Jofra Archer not being able to sustain that 90 plus miles per hour. सरोज कह रहे स्काई वाले वैसे एक एक चीज पकड़ते हैं बट नहीं इसका आई थिंक कुछ जिक्र कर रहे थे अभी ड्यूरिंग द That was the positioning of Butler's gloves, like in terms of how he was catching the ball, not the fact that it was a no ball. अब पेंडोरा's बॉक्स खुल गया तो हमें पता है छोड़ना तो नहीं है भाई हमने.
Lovely shot by Rizwan. Look at that. Rizwan Charles, Lara Brilliant shot. beats the point fielder, goes for 4. What a shot that is. Sachin Ramesh Rizwan. Beautiful cut shot. Back cut. It was short, it was wide, and just rocked back and slapped it through cover point. Lovely shot, यार. Rizwan ने ये shot हमने काफी rarely देखने को मिलती है. Gorgeous. But he's really playing really In fact, well. I think other than Rizwan, only Babar is good to play that shot. And Mr. Arsenal, BC Rizwan. There he is. Brian Charles Riz. What a yeah, lovely Gopi shot. is saying seeing that in real time is not easy. Fair enough. हाँ यार अब कौन. And that's not a kind of, that's such a weird permutation that you don't always check for it. और I bet अगर आप गौर करके ऐसे करो तो कितनी दफ़ा ऐसा होता होगा स्पिनर्स के खिलाफ. Must happen It's a a good lot. point. It's a good point. Rizwan dangerously looking for a single there. थोड़ा कैप्टन को भी एक्टिव रख रहा है. अच्छी बात है. Just needs to be careful. गोपी मियां कवाल कहने वैसे seeing that in real time is not easy only when they analyze the Butler. हाँ, you're right, absolutely. Real time में तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हमें नज़र आती. 165 for 5 after 61.3 overs, so the new ball is not that far away. Good Lovely Yorker. hard drive by Sachin Ramesh Rizwan. Wow. Down the ground and it screams away for another 4. Brilliant That is shot. A marvelous straight drive by Mohammad Rizwan. Honestly, you don't AB de Rizwan. really you don't expect such class from Rizwan. We're yet to see यार कौमी हीरो है हमारे. two क्या- highest of 95 and a total of 369 runs in Test cricket. Well done, yeah. And now he's really growing into his career here. And I think Khwaja, because right now with Sarfraz's age and his form, Rizwan doesn't feel a threat for his position, and that definitely helps the performance. And he's at the peak of his powers. कि भाई मैं experienced भी हूँ और मैंने अपने technical issues भी sort करने. Another Look at that, beautiful lovely drive to cover. यार. This partnership now worth 94 runs at 3.7 Khwaja. Good quick runs. और Rizwan. अच्छा है ना फिर अजहर पे भी दबाव नहीं रहता कि भाई रन्स करो कुछ करो. उधर रिजवान फ्रीली अपनी गेम खेल रहा है. एंड जोफ्रा हैज बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग सो फार. 0 for 39 इन हिज 12th ओवर. फिर बातें शुरू हो जाएंगी, फिर चर्चा शुरू हो जाएगा. इज ही कमिटेड, इज ही डेडिकेटेड टू क्रिकेट. ये वो यू नो इनके जो एक ब्रिटिश मीडिया है उनको तो मौका चाहिए एक पर्सन ऑफ कलर को क्रिटिसाइज करना. जैसे हम हैरी मगवायर की सिचुएशन. Unbelievable headlines. Unbelievable headlines. उसने झूठ बोला और उसने लड़ाई कर दी. उधर ग्रीस में कहते हैं जी क्या कहते हैं Model professional. मॉडल प्रोफेशनल. Astaghfirullah. Mr. Arsenal saying Rizwan Asankara. And Srijan is saying stump में ये mistake catch हो जाती but not in the catches. हाँ ये that's a fair point Srijan. अगर अल्लाह करे हमारी दुआएं कबूल हो कि रिजवान एक 100 कर दे तो आप सब ने सिक्कू भाई को ज़रूर टैग करना है. यू हैव टू बम्बार्ड हिज मेंशंस एंड मेक हिम डीएक्टिवेट टुनाइट कि भाई इन्होंने मेरी बहुत ले ली है, अब मैं नहीं पढ़ रहा और मैं ट्विटर क्विट कर रहा हूँ. दैट विल बी द अल्टीमेट विक्ट्री Of the series. सिक्कू भाई को हमने डीएक्टिवेट करवाना है. हम But I gotta ask you हैशटैग चलवा देंगे I gotta ask you this. डीएक्टिवेट सिक्कू. I'm gonna put it into a bit of a hypothetical for you. 62 overs gone. Pakistan 169 for 5. यार कौमी हीरो हैं हमारी. शुड बी चेंज ऑफ पेस. इतने टैगलाइन हमारे तो टैगलाइन ही खत्म हो गए. वो 500 टैगलाइन. Oh, big appeal. This could be given. I think it's going down leg. Azarelli. किस बात की अपील है? He should be fined for this appeal. भाई क्या मजाक बनाया अच्छी अपील है यार. क्या हो गया? यार. It was way down leg side यार. क्या हो गया? वो कौमी हीरो है हमारा. Umpire Umpire भी कौमी हीरो है. That was way down leg side यार. That was the worst appeal of the day. देखो कहाँ लगी तीनों stumps नजर आ रहे हैं. स्टंप से नजर आ रही है हमारी. What do you make of the fact that again getting hit on the pads, Azhar? यार वो इतनी लेग साइड थी. It's no issue, no worries. और वो ऐसे शॉक हो रहा है जैसे पता नहीं कहाँ फुल टॉस उसने मारी है ऑफ स्टंप पे जो नहीं उसने आउट दिया. वेरी गुड डिसीजन देयर फ्रॉम अंपायर माइकल गॉफ. And he's actually a pretty good umpire, to be quite honest. He's Umpiring in this series has been a lot better than the West Indies हाँ series. वो तो बहुत ही बुरी थी वाकई. And into reverse. कुछ इन्होंने मैं बता रहा हूँ hand बॉल sanitizer. मैन्युफैक्चरिंग की है इन्होंने. Hand sanitizer जो नजर आ रहे हैं ना आपको. ये देखो चौथी स्टंप पे जाके बॉल जाके लगी उसको. But Broad getting some for definitely some movement there. कुछ इन्होंने बॉल मैन्युफैक्चरिंग 100% की होगी अंग्रेज. Yeah. वही बता रहे हैं. फैसल भी लेट स्विंग आ रही. So need to be careful here. Azhar थोड़े से चौके मारो. Knock the swing out of the ball, so to speak. Review तो तुम ले नहीं सकते मनहूस. हाँ. 169 for 5. 62.2 overs gone, and it's a drive from Azhar Ali. Lovely shot, but good good fielding. fielding at cover. Wow. थोड़ी उस तरफ करके उसने बॉल कराई थी. It was swinging out towards the slips, so Pakistan have to be careful here. Khwaja, you're a youngster. जी.
Senior and youngster. No, let's say you're just a straight out youngster, Okay. and you get into trouble for some bad things you did at the age of 17. बिल्कुल. Okay, and I'm your employer at that time, हाँ जी. and you obviously get punished for it. You go and you fulfill that punishment. You get it done, and I do whatever I can to minimize that punishment, and I take you out of jail and or whatever punishment that you're doing, whatever punishment it is, detention or whatever. And I say, okay, I've done so much for you. I've made sure the press stays away, and that the damage to your career is minimal, and this and that. And at this stage, now you're in your early 20s, so you're a young man. You've gotten married. You've got responsibilities, financial responsibilities too. 5 years later, when you're at the peak of your prowess and where your colleagues are really running riot, you call it quits on me. You think that's fair? You call it quits on me. You call it quits on the employer. Do you think it's fair? Okay. Do you? Both. Both. Tell me why at 27 years of age Muhammad Amr is not bowling in Test cricket. Anderson's 38, Broad is 33. यार देखें, अगर उसका दिल नहीं था उसमें और वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, then why do you insist on having him? Khwaja's mic is out again. Khwaja, जब आमिर की बात हुई हमने उसको unplug कर दिया. Let me see if we can get that fixed. 170 for 5. Good defense there by Muhammad Rizwan. 170 for 5. Let me just read the comments for a second. Asad Ahmed keh rahe hain, has this really been as bad as tour as the media has made it out to be? I would disagree with that. I would completely disagree. I think the tour has been pretty decent for Pakistan. The first test was lost on the basis of one session. हाँ जी, can you hear me now? Right, let's bring it back. अच्छा, अब मैं वही कह रहा था आमिर के बारे में कि Pandora's. आपने पेंडोरास डब्बा खोल ही दिया है यार. अब उसका दिल नहीं है उसमें, तो फिर ज़बरदस्ती का फ़ायदा. व्हाट्स द पॉइंट? कि नहीं भाई तुम मेरे गधे हो, तो मेरे नहीं, लाइक उसका दिल क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान पीसीबी यार पीसीबी ने दिल तो बच्चा है जी यार. पीसीबी ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया. ये बात तो है. मतलब दे बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर हिम. नजम सेठी द पहला काम ही उसने यही किया था. वो आईसीसी के ग्लोबल मीटिंग पे गया था मीडिया के खिलाफ, अपने सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ. एथर्टन भाई ने भी इतनी प्रोपेगेंडा के खिलाफ किस प्रेशर्स को पीसीबी ने जो है रोक के आमिर को कमबैक दिलाया. ब्यूटीफुल डिलीवरी शेपिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर. और उसके बावजूद जो है आप 27 पे कह रहे हो कि भाई मैं नहीं खेल रहा. यार तो इसका हल क्या है मुसाद? आप क्या चाहते हो? अब उसका दिल नहीं मैं कहता हूँ कि मेरा हल ये है कि थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है. वो तो उसमें नहीं है ना. नहीं है तो they shouldn't have given him a central. तो फिर I don't want to hear this stuff about Amir being a Pakistan legend. वो तो कोई भी नहीं कहता. कौन कहता वो लेजेंड? कहते हैं ओ भाई चैंपियंस ट्रॉफी में 3 आउट कर गया, ये कर दिया. वर्ल्ड T20 में भी उसने लग रही थी. की है, but he's not a legend. He turned his back on us. और देखें क्रिकेट आप खेलते हैं पैसे के लिए भी खेलते हैं, फैंस के लिए भी खेलते हैं. हाँ भाई आप मुल्क के लिए खेल रहे हो. ये तो सब चीजें turned your back on the fans. Sarosh is saying that Amir is just not good enough for that level. I disagree with that, Sarosh. I think he had some. यार maybe he isn't good enough, नहीं तो वो तो झूठ होगा ना. फिर झूठ बोलने का क्या फायदा? वो भी it'll come back to bite you in the BUND, as they like to say. Lone Wolf is saying Musad going full Khwaja Asif. हमारे अंदर शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होती है. 170 for 5. But the consensus seems that the Pakistan fans, at least on our chat, are pretty okay with the fact that he's bowed out. And I think यार क्योंकि पाकिस्तान टीम क्योंकि हमारे पास शहीन और नसीम है ना, इसलिए अगर नहीं होते और बिलावल भट्टी टेस्ट में बॉलिंग करा रहे होते तो फिर आप गालियां निकाल रहे होते आमिर को. नहीं, वो गालियां तो अभी भी पड़ रही हैं आमिर को. हर जगह उसको वो तड़ी लगती है कि भाई तुम तो ये हो गए वो हो गए. उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. ज़ैनब कह रही है यार he knows his body better than anyone else. वो कह रहा है कि मेरे से नहीं होगा. It's sad that he quit. I would have been happier if he didn't, but अब नहीं खेल रहा तो बस नहीं खेल रहा. I think that's a fair take. Archer down the leg side. ये तो हम भी कह रहे थे लेकिन आपने नहीं माना. ज़ैनब ने कह दिया तो हम मान गए. भाई उनका तरीका है बात करने का. तरीका है, हमारी लुगात है. लुगात. Leg bias 171 for 5 after 63.4 overs. But I think maybe eventually he might change his decision. मुझे लग रहा है कि कोई रिवर्स स्वीप मारेगा वो. जैसे वहाब ने immediately कहता वो I made that decision with the previous management in mind. उसकी मिकी आर्थर से नहीं बनती. Basically just मिकी. बाकी मैनेजमेंट तो अभी तक वही है.
नहीं गोफी भी निकल गया है, ग्राउंड फ्लोर मिसबा भी तो निकल है, गया है। मिसबा तो है. वो तो अभी आया ना, तो इसी मैनेजमेंट की बात कर रहा है वो. Flipped away from Rizwan this time in the same fine leg region. ये जो लेजेंडरी परफॉर्मेंस नॉट लेजेंडरी प्लेयर, दैट्स फेयर इनफ. Hmm. वो भी कितनी कोई लेजेंडरी थी, लेकिन वही है. ले गया यार, ट्रॉफी ले गया वो. हाँ मतलब अपना तारीख अच्छा में हमने तो जब नाम. किया था ना, when we did the greatest performance of a Pakistani player of the decade in January, we did the poll. पोल किया So था. the two finalists of that were Abdul Razak, no sorry, Fakhar Zaman's 100 100. and Amir's 3 for 15. और आमिर का 3 for 15 जो है फाइनल में गया. जीत गया था. सेमीफाइनल में रजाक भाई की साउथ अफ्रीका के खिलाफ यार innings वो में थी. ज्यादा डिजर्व करती थी वैसे, टू बी ऑनेस्ट. Cut away from Lovely Azhar. shot. Over the slips. It'll go down in third man for 4. He moves on to 88. Pakistan in control here. थोड़ी सी रिस्की शॉट. And the partnership now over 100 runs. क्या बात है यार, आई कांट बिलीव कि इस 100 रन पार्टनरशिप में रिजवान के सिर्फ 33 रन है. यानी अजहर हैज रियली पिक्ड अप द स्कोरिंग एंड फाइनली 100 पार्टनरशिप. I think this is the first one since that Shadab Shan Masood the partnership in the first test. Yep. You're exactly right. Counter attack here from Pakistan, especially with the captain making the bulk of those runs. El Capitan. El Capitano. और क्या कह रहे हैं? If Amr comes out of his retirement, I will not drop Abbas, Naseem, or Shaheen. Maybe he can play as a backup seamer. That's fair enough. बिल्कुल 100%. And Reza is saying Rizwan has been Rizwan has been fined of this tour. The find of this tour, yeah. Super impressed by his mental strength, something that we don't associate with our players. Especially wicket keepers. I think both. He's been great behind the stumps as a batsman. Even in the media, he did a great press conference as well. Albeit in Urdu, it was just he's been a breath of fresh air. And I'm saying that as a Sarfaraz fan. So 10 out of 10. I think he's been the player of the tournament of the series for Rizwan for Pakistan. Who's been better really? Runs भी कर रहा है और keeping भी Keeping बहुत अच्छी and की he's keeping up to Abbas is a massive effort too. And the fact is that he also plays at a pretty brisk rate, gets some runs. And Reza, I think his form was kind of he found it back in Australia अब when हमने he got बस that ये चेक 95. करना है कि ODIs में इसका क्या रोल होगा, T20 में क्या रोल होगा. टेस्ट में तो अभी काफी हद तक सिक्योर हो गया, I think. Yeah, I'm a little bit more skeptical about his T20 game. I won't talk about the ODIs yet, but I think that But ODI में हमें इतना पता कि ये naturally 4 पे slot in हो he जाएगा. can हारिस 5 get पे है. those ones and twos and dink it around the inner circle, pick some runs up. I'm very concerned about the T20s. I think I'll go with Sarosh and be like, play that Khushil Shah as wicketkeeper and see what happens. That's a good idea, to be honest. And Sarosh, again, making that comment that we discussed yesterday, Khwaja, about how Rizwan should be considered in the conversation around the captaincy more so than Shan Masood. He captains KPK. Even more than Babar probably, यार. Vice captain यही था पहले tour पे. Babar Azam, I don't understand for the life of me why he doesn't even captain his own PSL franchise. यार अब तो फिर वो सल्लू भाई से आपको सवाल जवाब करने होंगे ना. Maybe Sarosh can help us now. I think he should transfer to Lahore and we'll make him captain. That's a fair compromise. अच्छा आप अगर आप बाबर ले रहे हैं कराची से, आप उनको क्या देंगे? जो मर्जी मांगे, शाहीन के अलावा. शाहीन के अलावा जो एक चीज है आपके पास. जो उनको एक चीज चाहिए. फखर ले लो, आप ले लो. Decent fast bowlers. मामेर है उनके पास. हाँ नहीं, टीम तो अच्छी है उनकी यार, इसमें कोई जीतती नहीं है लाहौर की तरह वो भी. 176 for 5 Gladiators, reigning champions of the PSL. अब तो नहीं है. जब तक कोई और नहीं जीतेगा तो कोयटा ही जीतेगा. यार हद हो गई है यार. Reza saying second test 50 odd was the difference between bundled out for 120. Yeah, that was a crucial यार वो मैच हम बना गए थे अगर थोड़ा वक्त होता हमारे पास. And he's also agreeing with you about the fact that he slots in at 4 in the one-day internationals. Yeah, I just feel like you need a lot more impetus lower in the order in T20 I think cricket. फिर हैदर को वो चांस देंगे ODIs में ओपन करना है. The Zimbabwe Open tour. करना? हाँ क्यों नहीं? In ODIs, he is a natural opener. ऊपर ही खेलता है. बाबर के साथ नहीं, बाबर 4 पे नहीं, उसके साथ इमाम के साथ. वनडो में 176 for 5. हैदर हो गया फिर. What about Abid Ali in one-day cricket? 200 हैं उसके. हाँ वो भी अच्छा. कौमी हीरो है. एक ही 100 है, 2 तो नहीं है. नहीं, उसने बैक टू बैक 100 किए थे. नहीं, ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट में किए थे. वो टेस्ट में किए थे. Trail by 407. हाँ वैसे आबिद, he deserves an opportunity. Yeah. आप सही कह रहे हैं. And I genuinely, I'm very optimistic about Heather, but there's more we need to see. This on-drive played to mid-on for no run. Wasim Bhai said Imad ko captain continue kiya hai to keep the consistency. Fair enough. Consistency of what? Losing? Taking the L's? Zainab pulling one out of the hat. What about Shadab as opener in T20s? Yeah, he's a fairly slogger type batsman. He's good at 4, 5, maybe even 6.
नहीं T20s में ऑप्शन है ना हमारे पास, शर्जील है, हैदर है, फ़खर है, कर सकते हैं वो लोग, क्या बड़ी बात है। और बाबर है एक एंड पे, तो बाबर ही अपना बाबर तो यार कौमी हीरो है बादशाह। हमारे। We need to stop saying this after 176 for 5. लेकिन मुझे हमेशा वो सोहेल तकरीर वाला सीन याद आ जाता है। Oh, a pitch, and it might be. No, ओए it just falls यार short. क्यों तुम क्रॉस बैट खेले, तुम इतना जबरदस्त ऑफ पे ड्राइव कर रहे हो, कटे मारे हो, Yeah. डोंट प्ले अक्रॉस द लाइन बैरी। Rizwan mistaking Southampton for Wimbledon. They're going for a forehand smash and not getting a hold for it. ये शेन वॉर्न के स्वेटर के आपके बारे में क्या ख्याल है, ये जो चॉकलेटी कलर, I don't mind this little brown maroonish. काफी अच्छा है कॉम्बिनेशन Yeah, लग it's रहा है। nice. बस वो बंदे की शक्ल मनूस है, बाकी सब उसका आउटफिट $20 at H&M. नहीं यार, पैसे लगाए होंगे यार। शेन वॉर्न अच्छा खासा पैसे वाला बंदा है, बट दे शोइंग दैट रीप्ले वंस अगेन, बट वी नीड टू सी दैट साइड एंगल, भाई ये तो हमें पता ही है। Faisal is upset. I reckon He's saying Qawmi Hero should not be cheapened. सही बात है यार। Faisal भी Qawmi Hero है हमारे. अब बोलो। 177 for 5. As Dom Dom Bess Bess भी हमारे warming up. यार इसको विकेट दे दी फवाद ने. I can't believe it. यार सीरियसली यार, Asrar is asking going इसको बंदा forward. चपेड़ ना दे, आपने कोई विकेट दे दी सही यार। बात है बिल्कुल. Going forward, any changes do you see in this Test match 11? I reckon. रियासत तो अब reckon- अनटेनेबल हो गया ना। I reckon. I reckon Asad Shafiq for Shadab Khan. हारिस भी तो है ना, हारिस Then Haris for Fawad if Fawad doesn't work out. But अच्छा the आप problem निकाल रहे हो। the problem is that Haris is not going to travel to New Zealand. अब वो तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के बाद है वो टूर, अभी पता नहीं क्या होगा। तो अगला टूर ही हमारा वही है. नहीं अभी जिम्बाब्वे पाकिस्तान आ रहा है ना अक्टूबर में। टेस्टों के लिए. नहीं हाँ, टेस्टों के लिए तो अभी बहुत टाइम है। टेस्टों की बात कर रहे हैं ना. टेस्टों और वनडों और T20 की। Is Archer really a test bowler? Immediately the questions are starting to float. Is Archer really a test bowler? Wow, straight Mask away के दवाई. on the front foot. Naslan इन्होंने खरीद लिया फाइनली वो सेंटर बैक, आर्सेनल वालों ने। कब से रो रहे थे गैब्रियल। कल घूम रहा था वो लंदन में. अच्छा मैं समझा कोई बहुत ही महंगा है, वो तो 30 मिलियन का मिला है, मैंने कहा इसमें क्या इतनी बड़ी तो बात है? शैनन गैब्रियल की भी कीमत है. वो भी कौमी हीरो है हमारे। वो तो पक्के है. वो तो जो उन्होंने हरकत की है वो तो पक्के है. 177 for 5, 65.2 overs gone. न्यूजीलैंड में क्राउड होगा यार, उनके कोविड केसेस तो कम है, थोड़ा बहुत क्राउड They had a crowd at the rugby games, the अच्छा, football अच्छा, games that they rugby do. But then the cases, like 8 or 9 of them popped up, so they have to be a bit careful. Played over the top of the slips. What a shot! Rizwan! He's just scooped this over the slips for 4. A boundary for Pakistan, and the runs have continued to flow after this jaw break. पार्टनरशिप भी बिल्कुल ही ठुस फुस हो गया। अब कराओ ना, उन्होंने उसकी सीम उधेड़ अब दी। कराओ ना 80 अब ओवर. आओ, अब रिवर्स स्विंग है मारो ना बादल है ना अब आज एंडरसन मिलेगा भी नहीं आपको फील्ड पे. अब हाँ बड़े आपने प्लेयर बनाए हुए मुफ्ते यार में कुछ ऐसे ना 600 विकेटें मिल जाती हैं. यार ऐसे तो ना कहें यार, गलत बात है। So I was watching shot. last night. I was watching Breakfast with Champions. With Champions. Bretley episode. और ब्रेटली ने की यार वसीम भाई की जो तारीफें की हैं about when he was KKR coach at 43 years of age. He said Jack Ellis को नेट्स में 3 इंस्विंग करा के एक बाहर लेके जाके निक कर रहे थे. मुझे लग रहा है थोड़े छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने भी। दो. हाँ, वसीम लेकिन भाई के वसीम बारे में भाई- चलता है. 181 for 5, but still, what incentive does Brett Lee have to lie about Wasim? हाँ, That's actually a brilliant cricket show. A brilliant cricket show. But I mean, it's one of my favorite, and the host is quite good. There's a lot to learn from him. 181 for 5, 65. वैसे हमारे जूनियर तो CPL देखते हैं, आप देखते हैं CPL? मैंने नजर रखी हुई है. अच्छा। आसिफ अली पे भी नजर रखी हुई है. हाँ कुकड़ी पे नजर बेरस रखी हुई है. हमारे लाइट तनवीर पे सोहेल तनवीर वो got तो a है couple हमारे wickets yesterday. Qawmi. the cooks। कुकड़ी तो भाई वो तो CPL लेजेंड है भाई, वो वो- हर साल। वो T20 लीग लेजेंड है. अगले हाँ। पिछले साल तक उसका IPL में भी रिकॉर्ड था, आपको याद हो. 181 for 5 after 65.4। हाँ तो वो और कर भी क्या सकता था बेचारा. Perfect. I think he's made the perfect decision at the right time. What is Brett Lee's Indian name? भरत लाल। Yeah. भरत लाल ही हो सकता है, और क्या हो सकता है. But Archer, no wickets in his 14 overs. Broad, no wickets in his 15 overs. Wokes only 10 overs bowled today. उसको तो उन्होंने consider ही नहीं किया. Zainab with a piece of trivia about how Brett Lee has done a movie, an Indian movie apparently. हाँ की है उसने शायद. Good call there from Rizwan. Played it straight to gully and refused a single. ज़करिया खाला के वसीम वकार भाई, अगर जिमी जितने टेस्ट खेलते तो हज़ारों, सही बात है But Jimmy यार. की पर बात ही तो यही है. He's remained so fit for so long that he's managed to play these और हम भूल some गए amount of जिमी tests. ने 170 वनडे भी खेले हुए हैं. वनडो.
And Suhail moves, flexing those moves. Brijesh Lal, Brijesh कहाँ से आ गया? Unbelievable stuff. Yeah, Un-Indian is the name. यार अब सोचो ऐसी फिल्म है. अब ब्रेटली बेचारा उसकी मार्केट ही इतनी है इंडिया में. I think he's also married to. Oh, Edge that it goes flying between Gully and Slip. Go down for the boundary for 4 and Rizwan getting a move on. नहीं, he got a hand on it. Yeah. But good pace again from Jofra, लेकिन वही है, nothing happening. Drop catch? नहीं, any भी लुटनी पड़ी. But we only trail by 400 now. So सिर्फ 201 runs. CCK. छोटी छोटी खुशियाँ. Look at that. Thickish outside. हाँ. Oh नहीं, bounce हो गया. Well short. वैसे अच्छा आपने बताया था संजू was the last Indian movie you watched, right? Yes. तो यानी 3 साल से आपने बॉयकॉट किए हैं. Boycott नहीं, I just don't like. इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं एक मैंने देखी थी. Good friend of mine Faizan, colleague and a friend. लखानी? नहीं लखानी साहब नहीं. मैंने इधर ही काम करते हैं मेरे साथ ऑफिस में. अच्छा. उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी, Amazon Prime पे थी. अच्छा. बहुत अच्छी मूवी थी यार वो. मतलब बहुत अच्छी नहीं, but compared to the other Indian movies I watched, it was one of the best. कौन सी? Can't remember the name for the life of me. क्या स्टोरी? It was about this blind guy. Okay. And Daredevil. नहीं Daredevil नहीं. Daredeva. It was about this. Daler Deva. It was about this blind guy, and at the end, like of the movie, you never know if he's blind or not. अच्छा. I उसमें वो तो नहीं था आयुष्मान वो जो. Yeah. Ayushman खुराना. Yeah. अंधाधुन. There's the one. Yeah, it was a good one. It was a good one. I enjoyed watching it. And Faizan had to do a lot of convincing for me to watch that movie. Well, I gave in. I watched it and I did not regret. I haven't watched Book of E. Denzel Washington. Is Denzel one of the greatest actors of all time? कायदे से मूवी बनाओ, डेंजल प्ले करेगा कायदे आज़म. 183 for Dom Bass is going to be back into the attack. You are listening to Change of Pace Live, the home of Pakistani cricket commentary. A nice little defensive stroke. कोई मसला नहीं. You stay safe, bro. That's the one I watched. Andhadhun is the one I watched. Yes, Rijan, Gaurav Kapoor is actually one of my role models in terms of how he interviews. He is class. And उसमें अगर आप गौरव कपूर के इंटरव्यूज देखें, इंटरव्यू वो अच्छे होते हैं जिस तरह आप गौरव कपूर देख लें. नहीं, सिर्फ वो नहीं है. How I judge an interviewer is the results that they get. तो अगर आप देखें गौरव कपूर देख लें, हॉट वंस देख लें, it moves into the 90s. I don't know if I'm going to be able to stay on the mic, but what? I don't know why we're getting this issue. Can you try plugging it in from the other end, Khwaja? He'll be back in a jiffy. .185 for 5 Pakistan. Yeah, so how I judge interviewers is the kind of results that they get. If you watch the hot ones, or if you watch this gentleman that Srijan has mentioned, what's incredible about them is the kind of answers they're able to get from people like Virat and Shoaib and Wasim and Brett Lee. These are the kind of insight you won't see on any other show. And that's why I rate them very, very highly. His interview with Ashish Naraha, Ashish is such a nice guy. Virat के साथ भी क्या interview था? Definitely, yeah, Ashish, really, really nice person as well. जो इनकी जो मैंने नोटिस की जो नॉर्दर्न इंडियंस है ना, वो जरा चिल माहौल है. वो थोड़े जो फिर आप मुंबई की तरफ आ जाओ, वो बेंगलोर की तरफ थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं. बट उसने जब विराट के साथ जो एपिसोड किया है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल पीस ऑफ वर्क. अच्छा इंटरव्यू वो होता है जिसमें इंटरव्यूअर नोटिस ना हो. हाँ. Played away to third man, short third man for no one. पोक कर रहे हैं, देख के खेलना चाहिए. Gotta be careful, mate. 90 run on 190 bowling. अब स्ट्राउस के भी थोड़ा सा squeaky bum time for Straussy. Trail by only 398. This partnership 110 runs at 3.58. और इधर हमारा practice match is the Wahabria. Oh, Imad Wasim. Ronaldo. Let's take it. He's bowling to someone. Can't make out who that is.
Late I cut. think it's Malik or Hafiz probably. ये Well- भी चौका पड़ गया I think. Little glove हाँ, love चौका there. ही पड़ा है. इतनी बेकार बॉल डाली है. बॉल डाली है. उस पे भी हमाद को चौका पड़ा है प्रैक्टिस मैच में. हद हो गई है यार. Look at this. Look what's happening with the ball, Khwaja. Little hand sanitizer being rubbed on. देखो यार. Bloody cheats. Careful. Can they play until 7:30 p.m. today? Yeah, they can. They Apparently can. This that's is supposed to be a long session. Another 40 overs is still scheduled to go. ओए. यानी हमारे लोकल टाइम 10 साढ़े 10 तक तो इजी फील चलेगा. पाकिस्तान शुड डिक्लेयर आफ्टर अवॉइडिंग फॉलो ऑन यार. साथ ही फैसल भाई आप वैसे दैट्स द ओनली वे वी कैन समहाउ क्रिएट अ रिजल्ट कि हम आए उनको Let's do it. 30 पे ऑल आउट करते हैं. Let's do it. और भाई अभी भी 198 रन यानी 2 सेशन और खेलने पूरे. इसके अलावा बल्कि 1 more सेशन पूरा आफ्टर दिस वन आई वुड गेस. अगर आज 40 ओवर होने you would expect us to get at least 120 runs. Yeah. If a huge big if we get that close. लेकिन जो इंग्लैंड का प्लान था कि जी हम फॉलो ऑन करवाएंगे. It's I think seemingly but still 200 रन चाहिए. हाँ. Archer to Mohammad Rizwan. Now coming right arm over the wicket and he's ducking underneath the अब No, रिजवान brilliant हैज bouncer. प्लेड वेल तो आप कह रहे हैं बट हमें एक साइजेबल स्कोर भी चाहिए. 50 60 40 नहीं चाहिए. नहीं, हमें अब 100 चाहिए. मोटे स्कोर हाँ, करें अब आप देखिए ना, अब जब when Crawley and Butler got in, they just never left. आराम कर दिया हमारा. 150 मार रहा है आपका कीपर तो फिर आपको तो डेफिनेटली यू हैव टू एम्यूलेट दैट. आर्चर ने काफ़ी यार स्कैटर्ड बॉलिंग कराई है. बैक ओवर लेंथ मुसलसल कराता रहा है बट देयर इज नथिंग इन द पिच टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. तो मुंह में देता भी तो चौका ही पड़ना था. So we've gone for 50 runs and no reward so far. There's a look at that, a silly third man or something, and they've removed the slips. There's a gully, there's a fly third man. What interesting field lead. There's a short mid wicket. So It's been a while since there's an actual edge that's been produced, so I think this is a fair decision. And if you get those angles right, Test match cricket, if you ask Misbah Luck, is all about those angles. So that fly slip, a weirdish mid on, it might work for Pakistan. कोई अच्छी डिलीवरी भी मिडल ऑफ द बैट भी सीधा फील्डर के पास चली जाती है. देखिए उन्होंने शॉर्ट लेग भी रखा हुआ है, स्क्वायर लेग भी रखा हुआ है, एक फ्लाई थर्ड मैन रखा हुआ है और एक गली रखा हुआ है. तो यानी कोई भी बॉल आगे नहीं देंगे, पीछे ही सारा काम होने वाला है. See, it's all about those angles that he's trying to play behind square, and it'll go straight to gully or that fly third man. रिजवान को भी थोड़ा अक्लमंद होना पड़ेगा. Even if you do get the chance to hook or pull, just dab it down to third man. Damn. Play the dab, Paul Pogba style. Don't go for a big shot and do what they want you to do. That's the key in cricket. Again, look at what they recognize, what they want you to do, and do not do that. Yes. And Ruti looking concerned कि भाई लंबा हो गया काम after having us at what 20 for 3, 30 for 4. Oh, good delivery. Archer is bowling some hot stuff here. 87 miles per hour. What we talked about. जकरिया ने तो बयान दे दिया. आर्चर ODI T20 बॉलर है और फैसल कह रहे हैं the best thing going for Pakistan is that England have no reviews. Absolutely. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आर्चर की स्पेल देख लें आप स्टीव स्मिथ को पिछले साल, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो टेस्ट मैच केपेबल बॉलर है. ऐसी बात नहीं है. और उसने 5 विकेट्स भी ली थी. हेडिंग ली भी Exactly. उनको उड़ा दिया था उसने. I think Exactly. 6 विकेट्स ली थी in fact. What did we talked about yesterday about some weird sports, some non-popular sports? What did you answer for that question about what is your most favored unpopular sport? मतलब tennis, football, cricket, ये तो popular sports हैं. हाँ. I think even basketball, NFL is popular to a हाँ, certain कह extent. सकते हैं. What is like that weird, quirky sport that you like watching, if any? I know some people on Twitter like watching Formula One. I think that's fairly mainstream too. Motor sports यार I don't. But some people like darts. Some people like Darts. badminton. Some people like snooker. snooker जबरदस्त. My uncle मजा loves आता है. watching snooker hours on end. 185 for 5. Snooker सही mental एक. Is that the one for you? Snooker I don't mind. I'll like won't watch it for hours on end. But Yeah. अगर कोई set चल रहा है तो. You'll have a gander. हाँ बिल्कुल. 185 for 5. स्नूकर में भी पाकिस्तान ने बड़े चैंपियंस प्रोड्यूस किए Yeah, हैं. Muhammad Asif. वहाँ भी reverse करते थे. Played away, beats the Shot. man at gully, and there's third man in place अब as वही well. मसला है ना, उन्होंने गली भी दिया हुआ है और पीछे डीप पॉइंट भी लिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम 1 रन मिलना है. Yeah, but the runs have been coming in that area. लेकिन एक किस्म के इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए हैं कि भाई हम सिर्फ तुम्हें रन्स डिनाई कर रहे हैं. अब हम आउट करने के मूड में नहीं है. Yeah, but if you take a look, कबड्डी इज अ गुड आंसर बाय श्रीजान. kabaddi. कबड्डी, स्क्वॉश तो ऑफ कोर्स यार. I actually prefer. लैक्रोस इज आल्सो अ फन गेम. I prefer watching. टेबल टेनिस यार इतनी आजकल टीवी पे नहीं आती, ढूंढनी पड़ती है. अच्छा. बट टेबल टेनिस इज आल्सो फन. I really like watching badminton.
I like watching. There's an Olympic sport हाँ called the shuffling. यार वो यार it's amazing. बहुत funny है यार. बहुत मजा आता है देखने में. ओलंपिक्स वो बहुत फिट है. लूगर नहीं होता वो जो वो सिलेंडर में जाके उड़ के नीचे जाते हैं. विंटर ओलंपिक्स. Oh yeah. That is so intense. What is it called? It's speed skating or something. Speed racing. पता नहीं क्या कहते हैं. लूगर और स्लाइडिंग और पता नहीं क्या कहते हैं. It's quite cool. Yeah. बहुत cool है यार. और उसकी स्पीड आप देखो. It's terrifying. Man, snow is a very underrated frictionless surface because I went skiing in Ski Dubai a few years ago, and just on the training slope, it's pretty remarkable how quick you can go. हाँ 186 for 5 after 68.1. सृजन कह रहे हैं if you will watch Drive to Survive then you'll start following F1. हाँ the way they sell it वो तो That's यार that's apparently a very good documentary. synchronized swimming वो भी एक गेम बनाई हुई. weightlifting is a lot of fun because I like the reactions Okay. because Olympics के Good shot there lovely cut from, shot. Rizwan. Speaking of Olympic Back foot cut shot into the boundary on the offside. ब्रॉडी तो कमर ही तोड़वाने के चक्कर Tall में पड़ man गया था. Stuart Broad manages to get down in time. They'll come back for 3, I reckon. I reckon Yeah. Rizwan moves to 44. Azhar Ali still stuck on 90. यार ये डॉम्बस के खिलाफ फटाफट बना लो ताकि हमें टेंशन नहीं देने का. फैजान कह रहे हैं लव वाचिंग डाइविंग एट ओलंपिक्स. दैट्स आल्सो वेरी कूल. और वो पोल वॉल्ट भी बहुत कूल होता है. वो भी उसकी Good फिजिक्स ही defense एक from अलग Azhar Ali. लेवल के होते हैं यार. Pole vault is special, man. Special. It's still in Japan. पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप, ये सब चीज़ें Yeah. स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें. हर्डल्स भी बहुत मज़े के होते हैं. एंड ऑफ कोर्स द 100 मीटर वो तो That's class. मस्ट सी टीवी. That's class. Yeah, exactly. It's just great TV. यू हैव टू वॉच इट यार. कैसे मिस कर सकता है. I also like the 400 meter. हाँ little सब भी bit- स्प्रिंट्स A वाले little सब bit भी अच्छे more होते हैं. Volleyball action. is a lot of fun. Yes, Yeah. that's also a lot of fun. playing volleyball is fun too. हाँ volleyball. What about in terms of okay? the peak Ramzan sport volleyball? Is it? हाँ बहुत ज़्यादा चलती है. Good defense from Azhar Ali onto the offside. What's your favorite sport to play, Khwaja? यार cricket football ही है main. Yeah? हाँ. Badminton is also fun. Table tennis is also fun. Badminton is my go-to. That is my go-to. I have a little bit of silverware in that sport actually. Wow. Yeah, national level for Saudi Arabia. Wow. Shout out KS to the side of A. Driven this time Good by shot. Azhar Ali into the offside. Should come back for a couple, maybe even a third. 3 होने तो चाहिए. लंबी boundary है. Should Yeah, be they an do. easy 3. Mm-hmm. भागें. Yes, indeed. Azhar moves on to 93, keeps the strike. 192 for 5 after 69 overs. The new ball is only 11 overs away, so Pakistan need to quickly get their milestones. Azhar Ali फटाफट अपना 100 कर ले. फिर न्यू बॉल के खिलाफ एक नया चैलेंज होगा. The NG, the नया गेंद. Yep, the NG time. NG time is always squeaky bum असरार time. अहमद कह रहे हैं फेवरेट कमेंट ऑफ वसीम भाई. I suppose he is young and he is only going to learn. I reckon नहीं भूलना चाहिए. And I had a chat with him in the morning. वो तो मस्त. I reckon. Let's go. वो भी श्योर नहीं कि चैट हुई थी या नहीं. I reckon चैट हुई reckon I थी, had a मुझे chat याद with नहीं है. नहीं सुना है वैसे वसीम भाई ने अपनी बैकग्राउंड जो रिसर्च है थोड़ी बेहतर की है इस टूर पे. लाइक अब्बास के बारे में बता रहे थे हाउ ही वाज अ वेल्डर इन शेखपुर एंड देन ही बिकेम एन इंटरनेशनल प्लेयर. Srijan likes watching football but doesn't like playing it as much. Fair enough. 192 for 5. 69 overs gone. Joffer Archer. Back at the line, driven to mid on. good Come through for single. at least a couple runs. बल्कि 2 हो गए हैं. नहीं, वो पहुंच गए, Didn't पहुंच गए. time it as well as he would have liked to. Zainab Razvi saying he's up from up north, I reckon. अप नॉर्थ तो इतने बंदे रख दिए हैं वसीम भाई ने. अप नॉर्थ कराची से ऊपर कोई भी up north है. Maybe anything above Karachi is up north. Or from Lahore, I reckon up north in Lahore. I reckon. लेकिन कोई बात नहीं यार वसीम भाई. कौमी हीरो है यार. कौमी वो तो है. वो उन पे हम कह सकते हैं. कौमी उन पे बेस्ड है यार. वो तो छोड़ो. Gets underneath that bouncer Rizwan. I know him personally. वसीम भाई की वही है ना 5-6 Yeah, great catch. set dialogues Great हैं. catch under pressure. And the thing about Wasim Bhai when he's commentating, he also calls out every single statistic in front of his eyes. I don't understand why people criticize his commentary. यार मुझे तो अच्छी लगती It's absolutely horrendous. वसीम भाई की आवाज यार ऐसे मत करो यार. क्या हो गया. अब हर कोई थोड़ी नासिर और Pakistan 193 for 5 after 69.2 overs, trailed by 390. Azhar Ali 94 after 195. Rizwan 44 of यार ये 93. बॉल नहीं छेड़. Archer 0 of 52 after 15.2, I reckon.
Skipper Imran. Gwadar is also up north. वाकई. The great Imran Khan. वाकई. The great Imran Khan. यार इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा deep dive किया है. Need to lock that wrist. यार लेकिन वसीम भाई यार ऐसे मत कहें. बोलना कुछ नहीं है 94 पे आ गए. 54, 193, and we have to remember we were 30 for 4 at one stage. So Pakistan has done a very stern fight back. And somebody hopefully has to do a Zach Crawley here. 100%. Really go deep. Dig in, as they like to say. तो क्रिस वोक्स को अंडर यूटिलाइज किया क्योंकि ही इज नॉट बीन बॉलिंग वेल. ब्रॉड भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं. जिमी तो आपको पता है वो अपने स्पेल The Jimster. राउंड द विकेट नाउ. इंटरेस्टिंग. Good defensive away onto the offside for no run. वेल प्लेड. तो थोड़े से डेस्परेट हो रहे हैं इंग्लैंड. थोड़े से प्लान्स अपने लाइंस. England. वैसे आप नेशनल टीम जो है फुटबॉल में वो कौन सी सपोर्ट करते हो? So in the Euros I supported Italy. अच्छा वाह, आई डिडंट नो दैट. The World Cup I supported England. एक बोलो ना, अब क्या मुख्तलिफ चेंज कर रहे हो? No, because after Frank Terry retired and Cole retired, I didn't care for England. अच्छा तो फिर यानी लॉन्ग टर्म आपकी कभी कोई नहीं? I really like Andre Pirlo, so I supported Italy for that Euro. And before that, I think it's been World Cup 2018 में आपने किसको सपोर्ट किया था? Yeah, I don't think I had a team for that World अच्छा. Cup. If Saudi's playing, I support Saudi. यार ये क्या बात हुई? What do you mean? तुम 5 प्लेयर बता दो सऊदीया के. नहीं है पर मेरे कौमी हीरो है हमारे कौमी. Al-Shahrani. I grew up there. I think they did qualify the last World Cup, so I हाँ फेंटा पड़ा था रशिया से. So obviously I back the green and white wherever I go. 193 for 5. On top of that delivery pass नहीं भाई किधर जा रहे हो? यार ये क्यों छेड़ी जा रहे हैं? एंग्जाइटी दे रहा है रिजवान. 193 for 5 after 70 overs. The new ball only 10 overs away. Azhar 94 of 195. Rizwan 44 and 102 deliveries. Archer no reward so far. Broad and Wokes also wicketless. Jimmy with those 4 wickets. First up with the new cherry. After that it's been a slog for England. Dom Best got the wicket of Fawad Alam. And now look at that 70. ये क्या हो रहा है? अच्छा वो played against वाली game खेल रहे हैं. Kevin Bacon वाली. But hopefully Azhar nearing a very important milestone, one of the most important innings of his career. और साथ ही मुसाद साहब ने चैनल बदल दिया है. कतरी लीग बुलशिट लगा दी है कोई. ओ भाई put on the cricket. And we're back in a single. Azhar moves on to 95. Dom Bess और जोफ्रा यानी इंग्लैंड डेफिनेटली अपने 4th 5th बॉलर्स तक चले गए हैं. Jimmy Anderson still waiting to get his ball on. Probably new ball से पहले नहीं आएंगे. Maybe Root can think about bringing on some spin. जल्दी से ये 10 over निकालो. Bring himself on in fact. Oh, big shot by Rizwan. And that is going to be his 50. Smashed down the ground for 6. 200 for Pakistan. And Rizwan, back-to-back 50s in England. Well played, young man. Brilliant knock. What a shot. Out of nowhere, just stepped out and bang over the mid-off fielder for 6. Way back into the stands. And third 50 in 9 matches. Rizwan 50 of 103 deliveries. और सिक्कू भाई कंफर्म मर चुके हैं. Rest in peace. What a shot that is from the Rizzler. Out of nowhere, he stepped out of his crease and punished Dom Bess for his miserable existence. यार ऐसे तो मारो यार. Sorry. And this time he cuts and he misses. नहीं यार ये चौके वाली बॉल थी यार. बट अब रिजवान की 50 होगी भैया. अपने आप को रिकम्पोज करो. 100 बनता है आपका. Really nailed that shot. Big shot. Absolutely wonderful. Way back into the stands. ये अजहर भी ऐसा मार दे अपनी 50 यार क्या ही बात है यार. दिल खुश हो जाएगा. On the back foot this time, defends away. ओए नहीं यार रन आउट कर रहा है रिजवान. अजहर ऐसे 6 मार दे और फिर अपना स्वेटर फाड़ दे हल्क होगन की तरह. Oh man, great Nichols shining everywhere. Look at that Sikubai. Asrar Ahmed making a comment showing his T20 skills. वो भाई इतनी पुरानी बॉल से छक्के मार रहा है, वो इजी हो जाओ. Defended away onto the offside. But for sure, that might actually be a reason why he played that shot. फैजान कह रहे हैं माइलस्टोन के बाद कंप्लेसेंट ना हो जाएं, बस ये डर है. अभी कोई 50 कोई माइलस्टोन है, आप 400 से ट्रेल कर रहे हो. यार अब उसकी थोड़ी गलती है. वो क्या वो तो कीपर था, उसने बॉलिंग थोड़ी कराई है. But 200 for 5.
Nicely played. Nice. Azhar is gonna keep the strike. Nice, scary. So यार ये कहाँ से बंदर नाचा है आपका? यार ये क्यों आपने उस मैं सोच रहा हूँ काफी टाइम हो गया है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद तक हमने नहीं किया. शुक्र है यार. I'm sick of these bloody Aussies. 200 for 5 Pakistan after 71. Mohammad Rizwan got to his 50 in the last over with a tremendous 6. Zainab Rizvi पूछ रही हैं फिर कौन से हैशटैग से हमने सिक्कू भाई को ट्रोल करना है. वी नीड सम आइडियाज़ प्लीज़. आप आइडियाज़ दें जो 5-6 बेस्ट होंगे उनमें से हम एक फाइनलाइज कर लेंगे. गो सिक्कू गो कर लेते हैं. यार इमेजिन हैविंग अ निकनेम सिक्कू यार. इससे बेहतर बंदा वैसे ही सुसाइड कर ले यार. सिक्कू ये क्या है? Careful. ना तुम तिक्का हो ना तुम सीख कबाब हो, तुम सिक्कू हो यार. Back-to-back 50s. Only 75 deliveries till that 50. So this partnership has really picked up. And now Azhar Ali on 95, 1-6 away. But his arch nemesis, Chris Wokes, is on to bowl. So we'll have to be careful playing that straight ball. थोड़ी सी हमने देखा little bit of reverse Stuart Broad was getting, but जोफ्रा के को लगाने के बाद वो भी वो short pitch ball ही कराता रहा. So we really couldn't see that. Wokes तो ball आगे कराएगा. Nervous 90s कह रही हैं आसिया. Welcome to the stream. And let's hope for the best. 10 overs, 1 maiden for 0 for 26 is Chris Wokes so far. 196 deliveries, a marathon knock here from the captain, and this will do his confidence and the team's confidence a world of good. He's crossed 6,000 test runs in this innings. Still a very fine record, 32 hundreds, 16 50s. Oh, let's hope he makes it 17 and a best of 302. अगर वो उसका करीब करीब भी आ जाए तो फिर क्या ही बात है. Refocusing himself, taking his time. यार वाकई दुआ पड़ रहा है हमारा कैप्टन. यार क्या बात है. A solid bloke, a top bloke, a commie hero, a QH, and let's hope he gets it. I'm getting nervous, Khwaja. Can you feel it? Of course यार. I'm हम getting तो nervous. 50 के बाद ही टेंशन हो जाती है हमें. अब तो 90s तो फिर अनबेरेबल हो जाता है. अब करा भी दो बॉलें यार. कितना इंतज़ार करवाओगे. बट उन्होंने स्लिप्स वापस रख ली हैं. 2 slips and a gully I think I saw over there. So Azhar and of course the proud daddy Yunus Khan. Ooh, good ball right on middle and off, and solidly behind it is Azhar Ali. बस यार सुकून से खेलो, अपना टाइम लगाओ, कोई जल्दी नहीं है. बेशक 6 ओवर भी आपको लगाने पड़े आप लगाएं, लेकिन आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना. Just gotta dig in there, Azhar Ali. This is a massive moment. Just gotta get over the line here. 200 for 5 after 71.2. कोच यूनस भी उनके साथ ही बैठे हैं. नोट पैड भी उन्होंने लिखना बंद कर दिया है. सब परेशान हैं कि कैप्टन अजहर. Good defense this from strong drive but hits the stumps at the non-strikers end. 2 रन बच गए यार. Fazan keh rahe hain, it's pretty sad that Azhar, who at one point looked like Pakistan's greatest of all time, won't be reaching 10k runs just because he's had an awful 2.5 years. No negative vibes about Azhar Ali right now. अगर अजहर भी 5-6 साल और खेल ले तो वो भी कर सकता है. Yeah. He's what, 34, 35? If he has a renaissance Exactly. in his career, कुछ भी He's हो only सकता है. played 81 matches. It's not a lot of test matches compared to some of the other long playing batsmen of the game. And this time he defends it back to Chris Wokes. He's 35. अच्छा फरवरी में ही 35. अब तो भाई हम अगस्त में आ गए. क्या हो गया तुम्हें? But time on his side. If he can keep himself fit, making runs, it doesn't matter. Age is just a number. I think Misbah played till he was 42. Yeah, बल्कि 41. PSL last year तक खेल रहा था. He was there involved with the Zalmi. So you know, यासिर शाह भी थोड़े से anxious लग रहे हैं. पता नहीं पैड तो नहीं उतार दी भाई. पैड पहन के ही रखो. Chris Wokes to Azhar Ali, clips off the pad. That should be 4. There's no square leg in place. Azhar Ali moves to 99. A massive moment for the captain, What the a leader, shot. the legend. Azhar Ali, 99 off 200. He's on 99, I reckon, from up north. Qawmi hero hai yaar. यार back of a length, a Qawmi legend lovely है. flick. Look at that shot. Beautiful timing on that, and just screamed away to square leg. The fielder had no chance. What a Excellent shot. timing यार. What a beautiful moment. यार खुदा के वास्ते लेग स्टंप पे एक हाफ वॉली दे दे. Just या one full away. toss दे दे. Just one away is Azhar Ali. It's an elusive moment. It's one that's rare for Azhar Ali. It's been a difficult 2.5 years.
And it's been a difficult touring. हमारे Luke Skywalker मुश्ताक भी आ गए. The force is with you, son. 204 for 5. Chris Wokes coming into Azhar Ali. पूरे 200 गेंदात बाद The Pakistan captain just one away from a test match 100. उए यार एक तो ये Average of 42.64. टेंशन नहीं देने का. अबे यार सोचो, चलो अजहर के लिए तुम नर्वस हैं. बाबर वाला आता तो वो यार बेहाल हो गए होते अभी हैं. कोई बाबर की बात नहीं हो रही. It's Azhar's वो time. लिखा हुआ है बार यार. It's about Azhar Ali right now. The man, the myth, the legend. चलो यार जल्दी दे. क्रिस वोक्स फुल टॉस दे दे भाई. 1600s, 3150s. And he'll just getting Oy, beat. What a yaar. delivery from Chris Wokes, missing the off stump, missing कितना the inside खबीज edge. आदमी है यार. Azhar Ali definitely nervous, and he survived. Oh Thank my goodness he God. survived. इधर तो हमारी बाउल्स खाली होने वाली थी यार. ये क्या What हो a गया यार? peach of a delivery. Shit. That's the Unbelievable stuff. only from Chris appropriate Wokes. reaction we can muster up. Ooh, good one. But Azhar looks relaxed. No worries. Beat हो गए. Today's your day, my friend. Get it done. और खुदा के वास्ते जल्दी से सिंगल ले रिजवान बेस्ट पे, ताकि अजहर भाई सुकून से कहीं ना कहीं स्वीप मार के या प्लेस करके सिंगल निकाल लें. पाकिस्तान 204 for 5 after 72 overs, trailing by 379. Azhar Ali, the captain, on 99 of 202. The man, Rizwan on 50. the myth. They've placed a ring field around him now, off पे और leg पे, कि भाई अब हम full run रोकने के mood में आ गए हैं. We're not going to be bowling too attacking. We'll just try to cut off the runs. And it's Ollie Pope को bowling दे दी, नहीं, fielding पे है. He's at leg slip, actually a short fine for that sweep shot top edge. There's an easy single to be had at square left. You can just bunt it away, but have to be careful. Joe Root at slip. Tense moments, testing times. Rizwan on strike. Full ball and just dabbed away to third man. That might be another two. Yes, it will. Oh, nay, just a single. And here we are. Azhar on strike against Dom Bass. Batting on 99. 205 for 5. Trail by 378. Oh, God. Khwaja, I've waited this for 2.5 years. I've been counting the moments. There's been a lot of hate that's been directed towards this man, towards Azhar Ali. They've told him he couldn't do it here. They told him he couldn't do it there. He scored 150 in Pakistan. He's got 16 test match hundreds. He's leading this great Pakistan side. And I'm telling Let's you, take a look at the field. There's a point, there's a cover, there's a mid-off, mid-on in the circle. Mid-wicket is close. There's another mid-wicket, a slightly deeper one. But square leg is empty. If you can just dump it away. Here we go, Dom Bass. Dom Bass this time defended and Ooh. resolute by the Pakistan captain. Take your time, Azhar. We're here all night, baby. We're here all night. 205 for 5 after 72.2. All night long. Anyway, 205 for 5. 99 not out is Azhar Ali. Captain fantastic. As he defends this one again, and he'll stay on 99. Just one run away. You can see how fidgety he is, Khwaja. He's always been very nervous when he's in the 90s. Yeah. कभी भी सुकून से नहीं करता. Which is इधर-उधर- funny because he's got a decent conversion rate. हाँ. 1600s and 3150s. And those aren't bad numbers. There Driven it this is. time, and he's There got it! it is! Azhar Ali, captain, leader, legend, gets to his 100. It's been a difficult 2.5 years. It's been a long time coming. They said he was down. They said he was out. But he finally gets to raise his bat amongst his peers. It's his 17th test 100 across 81 test matches. He's become today, Khwaja, the 5th highest test match run scorer for Pakistan. And it's a moment that I've been waiting for the longest time. And I'm basking in the glory of what has been an incredible innings. What a wonderful innings, under severe pressure, under the cosh, with all against him, with everybody against him, the fans at home, the press, the media, and he answers them with a brilliant, stunning 100 against the almighty English team. Beautiful shot, beautiful batting, Azhar Ali, and you deserve it, mate. Let's have a party tonight, and let's make it count. Let's get a big one. Sensational innings by Azhar. His third 100 versus England. I want him to go big now. I want him to get that double, that triple, that quadruple. Cash in the money in the bank. शुक्र है यार, It's an amazing moment. That is the moment of the test series for me.
209 for 5 Pakistan. All our sins have been forgiven. आपने आबे ज़मज़म पिए क्या हुआ आपको? 72.5 overs gone. A dominant display, Khwaja. It was a slow start. It was a difficult innings for him to construct. He was going at about 30 strike rate when he first started. That first 50 came slow, but after lunch, he's absolutely bossed this English lineup. 5 for 1 पे और 3 for 1 पे तो अंदर है. Exactly. Brilliant innings. This partnership, 135 runs. Azhar, his strike rate is over 50 now. And remember, he started off with a very, very slow first 50. The eye of the tiger. It's a bit of a relief. It's relief. It's thankfulness for this opportunity. दाढ़ी सफेद हो गई है. इतने pressure लिया था. और बल्ला ही मार दिया अपने सर पे. What a moment. That just really typifies Azhar. Yeah. It's not elegant. It's not classy. It's a bit clumsy. But it's Azhar Ali. You better believe it. Thank God, yaar. Finally, a responsible player. And Fawad Alamstan ke seeing Misbah and YK shaking hands is making me tear up. Sahi yaar. That was truly a great moment. Mere Karan Arjun aa gaye hain. That was like that kind of moment. Well played. 210 for 5. What a moment. Mr. Arsenal ने खुशी में आके साथ ही KFC ऑर्डर कर दिया. ये हुई ना बात. KFC के हम भी बहुत बड़े fan हैं, especially intern. He loves that fried chicken. Yeah, 210 for 5. We might just indulge it tonight. The khushi of Azhar Ali is left alone. And remember, when Pakistani batsmen are pushed into a corner, they perform. 2016 Yunus Khan, it's reminiscent of that. It's Azhar Ali at his best. Faisal saying second 50 came off just 60 balls, so good pacing of his knock. I remember he was 26 of 100 deliveries, मुझे specifically याद है. So a lot of pressure being taken off the coach, a lot of pressure being taken off the captain. कि यार चलो हम दलेरी तो दिखा रहे हैं, तगड़ी बैटिंग तो कर रहे हैं. And he deserves all the credit. I am ecstatic. I cannot express how happy I am right now, Khwaja. 210 for 5 is what Test match cricket is all about. The greatest test in a man's life is playing red ball cricket. And Azhar Ali has come out on top far too many times for him to be discounted by shit tweet merchants. Whoa. हारून भाई की बिरयानी फैजान पूछे यार वो कब से अब हमने ख़त्म भी कर दी अब वो देख हमने धो के बाहर भी रख दिए. And it's defended well. And again, immediately after that landmark, Azhar looks a lot more solid. He's a very susceptible to that nervous 90s. We've seen him in the past. Passionate man, true to his cricket, true to his batting. He's going to a very long, rough patch. A lot of calls for him to be dropped. But when Pakistan needed him most, when Pakistan needed him to save this test match, he's got 100. And dare I say it, he's going to get another one. I think he's going to go long into this innings. Hopefully, yeah. Definitely hope so. ओए देख के यार अब वो देखो slower ball वैरायटियों पे आ गए हैं. And Azhar is exactly the kind of guy who doesn't bother about time. He doesn't bother about strike rates and whether he's hitting boundaries or not. He just plays. He's a classic player, an orthodox test match. And look at that. That's what it's all about, Khwaja. Captain Planet meets Superman वाला scene हो गया था यार. क्या बात है. We need a screenshot of that and make it our header. Miss you era में their finest Sapoot getting 100 in England. Well done. Oh, be careful. Leading edge going to the cover for no run. Srijan, will you take an Asad 50, 100 in the last innings? That will make this test match for me. I told you, Khwaja, how much Asad Shafiq means to me as well. If he gets that 100 in the fourth innings, what a moment that would be. यार मसला ये कि अजहर का फिर भी थोड़ा सा वैल्यू है. असद की इनिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती. ये हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं. So I don't think we never wish bad for any cricketers. अभी तो इससे कोई बात करने वाली. अगर वो रन्स करके मैच ड्रॉ करवा दें, so why not? We can say, यार, we fought hard. Good defense that from Azhar. 104 not out. 104 not out. Would you believe it? Could you believe it? Should you believe it? यार अब हमें रिजवान का भी 100 देख रहे हैं इंशाल्लाह. Big one. Or it's going to be a long session. England are going to have to toil. Of course, there's only 6 overs left. और बॉल भी पुरानी हो रही है. New ball till the NG, the नया गेंद. तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. But this is exactly the time you have two well set batsmen. और new ball आएगा तो you can get quick runs, especially Rizwan. So a very big opportunity here for Pakistan to claw themselves back into this test match and make England suffer. 210 for 5 after 74 overs, trailing by 373. Azhar gone past his 100. A wonderful innings. Rizwan looking well set, playing good shots. Those scoops, those cuts, those sweeps.
So he's in good touch. Very big opportunity. आपने चलो ऑस्ट्रेलिया में 95 मारे, अब इंग्लैंड में भी अगर आप 100 कर लो, I can't honestly even recall any keeper of ours ever making a test 100 in England. We'll have to go, I don't know how many years back, or even if that has ever happened, maybe Rashid Latif might have done that. I doubt he has. I remember Moeen Khan got 100 in New Zealand. So that was a pretty big innings for him. Kamran Akmal, of course, made runs in Pakistan and in India. Overseas 100 तो मुझे कामरान अकमल का कोई याद नहीं आ रहा है as such. So Rizwan has a very big opportunity to make history here. A well-deserved drinks break for our boys, fighting hard, and Azhar will be mightily relieved that finally, you know, I've played that one big signature knock that can, you know, really validate my captaincy, validate the Pakistani current coach's think tank of supporting him as test captain. सिर्फ एक साल पहले ही उसको test captain बनाया गया था, आपको याद होगा. He of course refused the test vice captaincy. He was resigned from it जब उसको one day captaincy से हटा दिया गया था, which I felt was a pretty rash decision at that time. But I've heard all's well that ends I've well. heard people tweeting in now, and they're telling me about how Nasser is saying on air said you cannot keep a good man down when Azhar Ali got that 100. I don't think better words will epitomize what Azhar Ali means to this Pakistan cricket setup and the kind of person that he is off the field as well. It's a long time coming. और हम हमेशा आमिर और फ़ख्र की बात करते हैं जो अज़हर अली की परफॉर्मेंस थी उस सिटी 17 में. Underrated, bro. Underrated. बहुत largely forgotten है. इस बंदे ने हमें इतने ज़बरदस्त बैटिंग उस टूर्नामेंट में की थी. He was our best batsman by far. And Faisal makes a good point here that because of his position in the lineup, Azhar is actually fairly well equipped to play the new ball as well. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. 15 fours in this century. Cut shots, हाँ, भाई, And it was difficult. That first 50 Khwaja was not a blockbuster innings. भाई, he was literally in the third over of the game. हाँ. तो तब से दूसरी 50 उन्होंने hard bowler पे की है. ये ज़बरदस्त शॉट थी. That flick over the top of the slip cordon and the lovely off drive, cover drive against Dom Best to get his 100. And the celebration to go Beautiful with knock. और फिर बैट स्लिप हो गया और उनको सर पे पड़ने वाला. That was hilarious. But thankfully उन्होंने वो edit कर दिया, नहीं दिखाया. Good job, Sky Sports. Shout out to you for that. But Mohammad Rizwan, 51 of 108. He really needs to fill his boots here. Iqbal is out for a run, saying, "I'm hoping your commentary will make this less painful." It's been a pretty decent day for Pakistan, I'd say. Massive partnership, 135 runs, and even the one before this, it was a 50 partnership. That early wicket of Asad Shafiq now seems like a distant memory. Pujara scored at strike rate of mid-30s. हाँ, काफी slow. I remember. Joe Root and Azhar Ali test match comparisons. यार कितना. Actually मजे की बात है, I was just checking his numbers in the last 2 years of Joe Root in his captaincy. He's played about 25 tests and he was averaging below 40. Yeah. So you know the pressure of captaincy is definitely a But thing. this summer Butler has a better average than him now. हाँ, देख लो आप. But top stuff from Azhar. Finally, one of our senior players, one of our cornerstone this players. This innings from Azhar is, it seems exceptional. It seems out of the ordinary because of his form. In reality, this is the Azhar we know. Yeah, this is the standard that Azhar has set for himself. West Indies में 100 मारे, England में 100 मारे, Australia में 100 मारे, Sri Lanka में 100 मारे. He's made runs all over the world. Exactly. सिर्फ South Africa में he struggled a bit. Even he has a 90 odd in New Zealand as well. I remember on his first tour. So he's that kind of guy who makes big runs. देखें 302 versus West Indies. बांग्लादेश के खिलाफ 226 in मीरपुर. Australia 205. So he's a class act. There's absolutely no doubt about his quality. बस वही है. तो इसलिए हम खुद हैरान थे कि यार ये 2 साल इतना अंडर परफॉर्म कैसे कर सकता है अज़हर अली. And hopefully this can be a watershed moment for him to reboot his career, refocus and re-establish that self-belief. Of course आपका क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है कि यार मुझसे रन्स नहीं हो रहे, कैन आई स्टिल डू दिस एनी मोर. जैसे आपने बताया वो इंस्टाग्राम लाइव पे बता रहा था, आई कैन डू नॉकिंग बिकॉज ऑफ माई नीज लाइक ही यूज्ड टू. But making 100 like this, facing 200 deliveries in Southampton with the best of the best, making runs in their own backyard, will do his confidence a lot of good. And hopefully this will be an upward track for him once again in his test career. 210 for 5 after 74. The new ball is just 6 overs away. अब मुझे लगता है रिजवान को थोड़ा सा एक केयरफुल काउंटर अटैक करना पड़ेगा. Get some quick runs here against Dom Bess. Put some pressure on the English bowlers. But इसको बैलेंस आउट करके करना पड़ेगा. कोई फजूल शॉट नहीं खेलनी चाहिए. But probably it's a good time to maximize runs.
as many runs as possible. This has just been played to cover. Or round the wicket are in Dombas with a leg slip in place. So they're definitely thinking about trying to buy a wicket here. Slip and leg slip in place. Rizwan has a big opportunity here as well. Was batting really well in the second test and has just continued his good form. Big hard sweep once again down to define, but there's a fielder in place. He'll get a single. And Azhar will be on strike. Humne dekha Rizwan, typical like a wicketkeeper, very good with those sweep shots. And of course, he has the master of the sweep shot, the great Yunus Khan himself as his batting coach. So he's only going to improve on that shot. I think it'd be amazing if we could live through and watch a Riz 100 tonight as well. यार बिल्कुल यार क्यों नहीं होना चाहिए. We deserve it. As it's clipped off the pads. And it'll और go down रिजवान ने पिछले अपने जो वो 670 ऑड मारा था सेकंड टेस्ट में, he faced the new ball. हाँ. उधर न्यू बॉल ले लिया था उन्होंने और काफ़ी अच्छे फेंटे भी लगाए थे रिजवान ने उनको. So there's every opportunity, every chance here that he can do well and make runs against the new ball. अजहर को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि थोड़ा सा बॉल सीम हुई. ही इज़ वल्नरेबल टू दैट inducker straight onto the pads, तो उसको बस देख के खेलना होगा. But Rizwan, I feel, has a good chance of making some big runs. Fawad Alamstan कह रहे हैं यार England plays so many tests. Root debuted in December 2012 and has played 16 tests more. बस देख लो यार, ये खेलते भी ज़्यादा and they value test cricket much more than us ना, वो सबसे बड़ी बात है. Driven this time to mid-on. हम हमेशा वो silly सी 2 test series खेलते रहते हैं. It's just I think the test series should be a minimum of 3 now, honestly. I think ICC को honestly rule बनाना चाहिए, and that's why I'm always honestly been in the favor of 4-day tests, because in that same period that you can tour, you can play an extra test match. यार ये एक excuse है, आपने करना चाहे तो आप 3 कर ही सकते हैं. यार कर तो सकते हैं, लेकिन अब जो scheduling है और जो revenue patterns बन गए हैं दुनिया के कि जी one-day T20 में ही सारा पैसा है, टेस्ट तो हम ऐसे ही खेल रहे हैं for the sake of history and legacy and all that. तो you know, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट मोटिव इंसेंटिव आ जाता कि यू कैन वॉच अ टेस्ट मैच ओवर द वीकेंड विद योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट, कोई हर्ज तो नहीं है. मार्केटिंग की बात है. नहीं, बिल्कुल सही बात है. यू हैव टू मेक इट कमर्शियली एक्सेसिबल. हाँ, ऑफ कोर्स. यार मुझे तो बहुत रिलीफ फील हो रही है अजहर के 100 के बाद. सही बात है यार. 213 for 5. आई नो वी स्टिल ट्रिल बाय 370. वो तो रेलेवेंट स्टैट है, वो तो बाद में देखी जाएगी. फिलहाल हम बस जस्ट बैट एग्जैक्टली. #JB जस्ट बैट. Gopi Mian Kawal के ने revenue definitely has a role. Tests are a cash cow for England definitely, especially in the Ashes. अच्छा खासा पैसा बनता है और मुझे लगता है लॉर्ड्स की कोई 100 पाउंड की तो टिकट है और वो भी नहीं मिलती, इतनी वेटिंग लिस्ट होती है. तो उन्होंने अपने एक इट्स बिकम अ कॉर्नरस्टोन इवेंट इन दिस इंग्लिश समर, जैसे विंबलडन है, फिर लॉर्ड्स के 2 टेस्ट होते हैं. So they really value their cricket and they sell it. You have to sell something aggressively to get people to buy in. Good point. 213 for 5. Rizwan now facing. Oh, down the leg side. I think he's got a bat to it. It's given. Oh! That is a very poor way to get out. Yeah. Mohammad Rizwan, you didn't have to do that. You were looking so good. You were looking set for 100. And this partnership was growing and growing strong. It's an absolutely despicable time to lose a wicket for Pakistan. And down the leg side, there's just no reason to do that as a batsman. Such a soft dismissal, yaar. Down the leg side, you just need to get some bat on it. Flicked it straight back to the keeper, and that man Chris Wokes once again, the golden arm for England, and a disastrous fall over the wicket. Yeah, galat time before the new ball. Time. Very disappointing end to a very promising innings from Mohammad Rizwan. Gets a 50, but didn't go through on it. हम तो ख्वाब देख रहे थे यार ये भी 100 मारेगा, but that was not to be. Yeah, that's really poor. But here comes another Test centurion, of course, Yasir Shah. अब मुझे लग रहा है कि आज वाकई हमारी बैटिंग फिर से आ सकती है, because we're going to be exposed to the new ball for an extended period of time, and unless Azhar really carries his bat, it's going to be quite difficult. 213 for 6. I think the onus now falls to the second innings, right? Because there's no real batsman left. अब question ये है कि will England even enforce the follow-on? And you have to give credit to that catch from Butler. Pretty going down the leg side. Pretty decent catch that. Yunus Khan clapping Rizwan, but honestly he should be thumped. आपको ऐसे आउट नहीं होना चाहिए था यार. You have to give some value to your wicket. ये कौन सा तरीका है आउट होने का? And he was close. He was close to that 100, you know. ज़ैन रिज़वी सिक्कू भाई की जान में जान आ गई वाकई. सरफराज होता तो वो तो 150 मारता है, इसमें 50 यार ऐसे ना करो. शुरू हो जाते तुम लोग. यार this is literally what he's going to say, by the way.
right before the new ball, and Yasir Shah has a test best of 113 versus Australia, Mr. Musad Afzal. कुछ भी हो सकता है. Yeah, average of But yeah, 13. average of 13, he's a much better batsman than that. to Yeah, be quite true. honest. But his batsmanship has been more popular of late. और मसला ये रिव्यू भी नहीं लिया यार. रिव्यू ले लेते शायद, लेकिन वही he was convinced right off the edge of that bat, and a good catch by Joss. Of course, he played a very long innings. Then he's been out there keeping, so it's not easy to maintain your concentration, maintain your fitness. But good stuff there from Joss. Oh, this is dangerous from Yasir Shah, just playing it with outside off and just barely missing the outside edge. अब अजहर अली की अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि भाई will he just keep blocking or will he counter attack the English batsmen, the English bowlers, especially with the new ball, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यासिर शाह ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा. और एटलीस्ट ही विल टेल कि यासिर शाह के भाई तुम अपनी गेम खेलो, मैं रोकता हूँ, तुम मारो ऊपर ऊपर से. But Rizwan, a big regret, a big opportunity lost once again. Still waiting to get that maiden test 100. Cut away by Lovely Yasir shot. Brian Charles Shah. And it'll go to point for at least 3, maybe. Yeah, honestly, that did feel like it was a Babar Azam cut shot. Babar Shah. Babar Shah. Yasir Azam. I think Yasir Azam sounds better. यार क्या, it was a nothing ball यार. Good catch though. यार जनरल पे जाए उसका कैच यार. ये क्या शॉट है यार. गुड कीपिंग फ्रॉम जॉस. देखो ऑफ के बाहर खड़े होकर ठीक ठाक ट्रैवल किया उन्होंने भी. But once again Pakistan under pressure after dominating most of the day. अब फिर मैच फंस गया है, so to speak. And Yunus Khan giving a lot of applause for Rizwan, but he's quite disappointed, quite disheartened. Another one Beats the outside off and edge. he's just fending it away. Needs to be careful there. Talha, one पूछे, when was the last time Pakistan survived a test against the odds? ये सोचना पड़ेगा. मिस यू एरा में हमने कुछ ना कुछ तो किया होगा. But I don't remember any overseas draws, to be quite honest. Let's think about it. Tail enders survive कर गए हों. सोचना पड़ेगा यार बाकी. Have we ever even done it, to be quite honest? Survive. यार मुझे याद 2000 good hard drive by Yasir Shah. I remember back in 2003-4 when South Africa had toured Pakistan for a series, and we were battling to save. We won the first test. Second test we had to fight to draw that game to secure the series. एक वही मुझे याद आता है कि एक वाकया था. But that's like what 15-16 years ago. उसके बाद इंडिया में हम कह सकते हैं तो that Mohali test in 2005. Yep. 2007 में भी हमने कुछ Oh, draws he किए leaves थे. that alone. I think that almost rocked his front pad. One in Sri Lanka, I guess. Sri Lanka में कौन सा टेस्ट हमने ड्रॉ किया था? I don't remember. But Shane Warne आके अपनी भोंगियाँ सुना रहे हैं हमें. But Nathan Lyon. the gout. वैसे नेथन लाइन ने भी ठीक ठाक करियर बना लिया अपना यार. भाई कितनी 360 टेस्ट विकेट कितनी है उसकी? 400 तो हो गई होंगी. Wow man, that's unbelievable. And a regular off spinner, कोई दूसरा शूसरा नहीं, ऐसे कोई उसके पास weapons नहीं थे. And bowling in Australia. So that's quite remarkable, yeah, that he's carved out. And he's won test matches for Australia. 390. Wow, yeah, that's quite unbelievable. Nathan Lyon. Gary. तो आपको लगता है इस मैच में 600 हो रहे हैं फिर जिमी के या? Yeah, हो जाएंगे I think. Especially with the new ball. बारिश भी है. Clouds आएंगे. क्लाउडे आएंगे, क्लाउडे. Cloudat. This is a horror ball down leg stump and comfortably left by Azhar. शायद थोड़ा पुल वुल मार सकता था. But no, he's not getting anywhere close. England just rushing through their overs trying to get to the new cherish.
I mean, why would they not? Down the leg side this time. Poor delivery from Bess. Except for that ball that got Fawad. Yeah. Don Best doing the bowling here. Being criticized by Shane Warne on air. And just getting the leading edge down to third man. Another rally will pick up Yasir Shah will pick up another couple. A similar build, these two cricketers. Short and stocky. Pakistan moved to 218 for 6 after 77 overs. It's been a pretty decent days of play for Pakistan. They've only lost the 3 wickets. I think the evening session yesterday was really the penultimate blow. Bauer especially getting out of that last delivery. If he was playing today under the little bit of sun that we got, I think it would be a lot better. 218 for 6. Yeah, we're sorting out the mic right now. In fact, Khwaja just gone to take a break, so we'll be back in about a minute. The second new ball is available in 3 overs. Very likely that England are going to take that. It's going to be Stuart Broad to bowl. Chris Wokes to bowl. And his pull away from Azhar Ali over mid-wicket. And there is cover there, so it'll just be a couple runs. We were wondering what the captain's approach would be now that there's no real recognized batsman on the other end. And immediately he rocks onto the back foot and heaves this away into deep mid-wicket. 219 for 6 now, Pakistan. And again, there is a lot of rain expected tomorrow, more than there was in the past few days. So England would also be looking at the fact that they still need 14 wickets to win. 14 wickets to win this Test match, and they might have to come in within a day. Is my mic dead again? No, it's back on. Acha. And it's gone. It's gone again. Can you unplug it and plug it in? Apologies for the mic issues today. It's been an exciting day of cricket. That might just be the case. And it's flicked off the pads of Yasir Shah, growing in stature with every innings that he plays for Pakistan. I think this position for him is quite good, ahead of the likes of Shaheen Afridi and Mohammad Abbas and definitely Naseem Shah. आपको याद होगा नसीम शाह ने डेब्यू पे एक चौका मारा था ऑस्ट्रेलिया में down the ground. Famous little moment. इधर मारा था ना या उधर उस सीरीज में मारा था? उधर मारा था ना, आई थिंक स्टार्क को मारा था चौका. हाँ, राइट. एंड द ओनली ज़करिया खालिद कहना वोक्स अब्बास की स्पीड पे आ गया बेचारा. यार वाकई ये पिछले 2 टेस्ट इसने बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं की. आई डोंट अंडरस्टैंड. पहले टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. पहले टेस्ट में तो हर चीज़ ही अच्छी की थी यार. इस किस्म के क्रिकेटर्स हैं यार, मल्टी फंक्शनल. Good bowling again, right on off stump, but Azhar solidly behind it. 220 for 6. The new ball just 2 overs away. That's what I think England are just playing the waiting game for. फिर उसके बाद उनका scene on होगा with Broderson immediately coming into the attack. So still plenty to be done for Pakistan to stay in this test. 220 for 6. Azhar on 107. Yasir on 5. What a shot! Cut away! Hard, but straight to point. Good shot there from Azhar. Really nailed it, but straight to the point fielder. Ollie Pope. अरसा ही हो गया जब से ये बेचारा आउट हुआ था और हम मैच में थे. Seems like an age away. But solid shot. Azhar Ali, I think, is gonna take a chance his arm against the new ball. He's not gonna hold back. हमने देखा है on occasion in ODIs he has done
some special innings, made some hundreds as well. But leaves that ball. Ooh, hits Joss Butler on the fingers. That will sting a bit. It's been a long day in the field, which I think it's really hurt there. But they do have Ollie Pope, in fact, as he also keeps a bit, so there's always some options there. Faisal, can a good day of play as a fan? Not bad. It's been pretty decent. It's been lively. It's been better than what we've gotten in the first couple days, I have to say. Zishan भी कह रहे हैं there is rain in forecast for the next couple of days. तो चलो हमने गेम इतनी लंबी तो की, वरना आज तो पक्का सीन लग रहा था कि आज हमारी बैटिंग फिर से आ जाएगी. अभी भी आ सकती है. We still have at least 1 hour and a half, maybe 2 hours of play left to go. I think maybe 30 odd overs to play. So it's not going to end anytime soon. But Joss Butler is definitely struggling. This is the last day. This is probably one of the final few days of the English summer for him. Wasim Bhai is called Joss Butler Joe Root. यार एक ही बात है यार. They all look the same. Second new ball available in 2 overs. यार वसीम भाई यार वो भी थक गए हैं यार. कितने दिनों से उनसे कमेंट्री करवा रहे हो. He doesn't have the patience. Swept from Yasir Shah. Shot. Yasir Khan. क्या बात है. And gets good running as well. Look at him run. Ghalib keh rahe hain Wasim bhai saying great effort by Joe Root when Butler caught that catch. Wasim bhai कोई बात नहीं यार, एक अलाव है. But Jofra ने भी इतनी अच्छी bowling नहीं की. Broad को I feel they've underutilized him, to be quite honest. उसने I think 16-17 ओवर ही कराए हैं, but I guess they're just saving his best spell for the new ball. So one more over to go till that. Yasir looking busy at the crease. Oh, Edge! He's missed the catch. Butler now slipping that butter, and it's gonna run down to third man. I think it'll go to. I think it'll go for 4. It does, yes. Do you think that was a deliberate shot by Yasir? No, it wasn't. In the deliberate shot between first slip and. Oh yes, big edge, and he उसने अपना glove ही नहीं डाले. And it goes right between keeper and slip, and Jimmy is like, oh bloody hell, have I got to do every bloody thing? Abdullah Amin भी कह रहे हैं यार ऐसे ना बोले, कौन ही रहा है about that Chris Wokes अब्बास comment. यार हमारे खिलाफ तो definitely इंग्लैंड का कौमी हीरो है Chris Wokes. 226 unbelievable record he has against us. And it's flicked away. यासिर शाह भी भाई चुपचाप 11 पे चले गए. बाबर आजम जितना स्कोर कर लिया, फिर आप कहते हैं वो प्लेयर नहीं है. टेस्ट सेंचुरियन इन ऑस्ट्रेलिया, कौमी हीरो है हमारा. 100% यार. 200 विकेटें उसकी. 226 for 6, 78.3 overs are bowled, trailed by 357. Khwaja, let's take a step back and जी you know, zoom out करते हैं. After the euphoria of the Azhar Ali 100, how much can we really expect Pakistan to get here? In the first innings. Honestly, I think we'll be wrapped up by 245, 260 if Azhar doesn't stay there. 20 रन में यार न्यू बॉल आ रहा है ना यार, कितनी देर वो लड़ेंगे उसके साथ. वो न्यू बॉल है कि वो थेनोस है. ब्रॉड भी तो 4 विकेटों पे बैठा हुआ है. I can't see us surviving that long. बाद में आपने वो न्यू बॉल को विल्सन फिस्क बना दिया है कि आगे 4 विकेट. वो स्ट्राउस है ना, विल्सन स्ट्राउस एंड फिस्क. 228 for 6 after 78.5. अब अगर हम डे डेविल से दलेर दिल बन जाते हैं फिर तो कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक यासिर शाह faced the new ball in that 100 he made in Australia. I think he did. He must have exactly if he's batting with the tail. और तब अब्बास उसके साथ I remember खड़े थे. Abbas. The last over before the new ball. Here we go. Azhar on 108 of 225. His 17th test done. Yasir on 12. And immediately the clouds are hanging around. देखो यार ऐसे कोई सेटिंग लगाई. मैं बता रहा हूँ क्लाउड सीडिंग हो रही है इधर. फैजान कह रहे हैं न्यू बॉल पे रन्स भी मिलेंगे और विकेटें भी. यही बात है. माज की दवाई कह रहे कोई मुसाद से पूछे कितने कौमी हीरो हैं उसके. आप बताओ यार. मैं बताऊँ आप तो सुहेल तनवीर को भी कौमी हीरो बनाते हैं. PSG versus हाँ उसकी प्रेडिक्शंस ले लेते हैं. क्या कहते हो आप, कौन जीतेगा चैंपियंस लीग फाइनल? यार इतनी कम हाइप एक CL फाइनल के लिए मैंने कभी नहीं देखी. नोबडी इवन केयर्स. इंटर वाला फाइनल हुआ था ना 2010 वाला. हाँ वो भी कम. हाँ वो भी ठप ही था वो बगैर. इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख वो भी. बट दैट वाज अ मोरिनियो मास्टर क्लास. यार एक तो मोरिनियो. Who was the 40-year-old striker for them that was getting goals?
वो 40-year-old नहीं था डिएगो मिलिटो, he was normal age पे था. 36. Samuel Eto'o, Diego Milito, यार. You turned them into world Wesley beaters. Sneijder. Turned them into world beaters. Second new ball available in one over. कौन जीत रहा है भाई आज रात? I think it's going to be Munich. Bayern Boy, München. What a shot that is. To square leg for a single. Let's take predictions. Okay, 3-1 अब Bayern कह रहे हैं अब्दुल्ला अमीन, 2-1 Bayern कह रहे हैं इबाद. So Any PSG fans? Any? फैजान कह रहे हैं will be a boring game, easy win for Bayern. यार जो Bayern की defense है वो No, I think boring तो नहीं the लगती. thing is, what I'm very excited about हाँ is arguably in Europe, these are the best two attacks. हाँ. Obviously, you guys have the great Cristiano Ronaldo. Yes, लेकिन हम वैसे नहीं खेलते. हाँ. और बारसा तो खत्म ही हो गई है जो हमने देखा. नहीं खत्म तो नहीं हुई, but यार 8-2 यार. 8-2. I hate to tell you. Fantastic. 229. उनके तो कोई भी कौमी हीरो नहीं है भाई, खत्म हो गए उनके. उनके सिर्फ कैटलोनियन हीरो रहते हैं. Two steps in place for Nicely played. Yasser. भाई यासर की बैटिंग जो है ना वो फवाद से ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग. 100% यार. Anybody think that PSG is going to win tonight? I mean, we're forgetting. फिलहाल तो कोई नहीं कह रहा. उनके पास किलियन एम्बापे है और नेमार है, दो सांतोस है, तो और क्या चाहिए? माउरो इकार्डी है, एंजल डी मरिया है, बहुत प्लेयर है उनके पास. मार्को वेरात्ती भी है, तो काफी प्लेयर है उनके पास. Verratti. Fajr, you've been watching. Shit on the bed. You've been watching Juventus for what, for 20 years now? Yeah, 15 probably. years? हाँ Picked up any Italian? हाँ, तो वो जो उनकी फुटबॉलिंग इटालियन होती है वो समझ आ जाती है. Okay, fine. 229 for 6. Acha, when YouTube became a thing, there was this one video, one show that went viral. The AC Milan guy. Do you remember? This really old man who would celebrate the AC Milan goals. Do you remember that? People! Yeah, exactly. I got a people! Exactly. Ah, that was funny, man. That guy was hilarious. I think he died, by the way. नहीं जिंदा है, Oh, जिंदा है, okay. जिंदा है. I forgot his name, लेकिन जिंदा है. Driven, wow, Yasser What a Khan shot. on drive, and it'll go all the way to long on for 4 as Jafar Archer gives chase. No, he'll दे man. दो यार चौका, तुम लोग भी क्या बदजौक लोग हो, कसम खुदा की. फैजान कह रहे हैं और गालिब कह रहे हैं यार क्या नाम है. I want PSG to take it, but Tiziano Crudeli, yes, Tiziano, you're 100% right, Mr. Aston. I want PSG to take it, but I reckon I'll reckon Bayern's gonna be. Why do you want PSG? Yeah, they're the most disgusting they club. got the job on a technicality. No history, बस पैसा, no soul, nothing यार. वो बस full made in China, made in Qatar club है. In fact, इमाद ने इतने चौके खाए हैं कि वो अब बॉलिंग बनाना बंद कर दिया. अब्दुल्ला अमीन कह रहे PSG के पास players हैं, लेकिन I think the Germans are too strong mentally. You're absolutely right. I agree with you. I think they will take it eventually. इतना attack उनका stacked है और जिस फॉर्म में है, I don't think Lewandowski उनको छोड़ेगा. Lewandowski यार वो क्या मुलर जो है ना, Müller भी यार अजीब मीम ही है. he's like the German dad. हाँ. उस पर तो हंसी आती है मुझे. 2012 के सेमी फाइनल में उस बंदे ने गोल आई थिंक 78-79 मिनट्स में बायर्न ने पहले गोल किया 1-0 एंड ही सेलिब्रेटेड लाइक द मैच वाज डन. फेयर इनफ. सब्स्टिट्यूट होते हुए आई थिंक ही वाज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड 84-85. ही सेलिब्रेटेड बिफोर ही गॉट सब्ड ऑफ. पूरे क्राउड फाइनल की बात कर रहे हैं. हैं. हाँ जी, पूरे क्राउड में सेलिब्रेट करके गया वो 88 मिनट में. Didier Drogba with a header. यार बस वो अपने होम ग्राउंड में Brought the Chelsea back. बड़ी जिल्लत तो नहीं हो सकती वाकई यार. और मुझे अभी तक मार्टिन टायलर के वर्ड्स याद हैं. Chelsea will just not let go of the Champions League. 232 for 6. What a shot by Azza. Speaking of a champion, beautiful square drive that was running away through extra cover for 4. What a shot. Look at the timing. Casual, elegant bend of the knee and it's screamed away for 4. अब तो कोई घुटनों पे टेपिंग शेपिंग का मसला नहीं लग रहा अजहर का. 236 for 6. The new ball is available. The new cherry, the new nut. The NG, the Naya game. Yes, as we like to call it on Change of Pace, the home of Pakistan cricket commentary. The new game is now available. Should we put this on Twitter, the new game term? हाँ, absolutely यार. हमने अपनी, by the way, हमने अपनी जो अजहर अली की सेंचुरी की क्लिप भी डाल दी है. Oh, very nice. You want to check it out on Twitter? Twitter is a Change of Pace 414. Here comes the new ball. The new game. और फैजान कह रहे हैं PSG is Dubai of football teams, beautiful but extremely plastic and seems fake. No history or emotion as if it's made to perfection, but it isn't. That's actually very well described. लेकिन यार Yeah, I'd like to rebuttal. हमारे hometown की ऐसे ना ले. I'd like to rebuttal that because a lot of people only know one side of Dubai.
You gotta come to Dubai, go to Bastakia, go to Old Dubai. Yeah, nobody gives a shit about those people. तो अगर if you don't give a shit, then don't lie about it. ये अलग बात है. तो ये उन्होंने खुद ही ऐसी एक इमेज क्रिएट किया, अब उनको लोगों को थोड़ी कह सकते हैं. अब्दुल्ला अमीन कह रहे हैं आई थिंक म्यूलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स एवर. यार उसका वो जो सेंट्रल अटैक मिडफील्ड में जो वो खेलता है, ही ट्रैक्स बैक, और जो एक्स्ट्रा मिडफील्डर होता है किसी भी टीम का वो कवर करता है. दैट अलाउज थियागो एंड गोरेट्स्का टू प्ले. फिर किमिक जो है हमने देखा है वो फुल बैक भी है, सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेलता है. एलेबा भी मिडफील्ड में घुस सकता है. बोअटेंग भी हमने देखा है, इज़ वेरी वर्सेटाइल. सो दीज 3-4 प्लेयर्स आर वेरी की टू मेक दैट बाइंड सिस्टम वर्क. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. म्यूलर का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड तो रिडिकुलस है यार. कितने वर्ल्ड कप गोल उस बगैरत ने मारे हुए हैं. एंड ही विल डेफिनेटली गो डाउन एज अ लेजेंड ऑफ जर्मन फुटबॉल एट द वेरी लीस्ट. एंड डी मारिया से ज़्यादा अंडररेटेड है कोई? हाँ यार, डी मारिया तो ऑफ कोर्स he was man of the match in one of the Champions League finals that Madrid won. And here comes, immediately bounce And off a length for Jimmy Chacha. the NGA has been taken, the new games available. नहीं रिव्यूज तो नहीं आते, रिव्यू नहीं आते, खत्म हो गया. नहीं, वो उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे ना, तो हाँ. अब वो हाँ, उन्होंने अब रिव्यूज नहीं वापस आते नहीं आएंगे न्यू वो बॉल वापस, पे. हाँ. And again, as soon as England take that second new ball, the cloud cover is there for them. अच्छा भाई, मीनो रायोला का एक कमेंट आया, वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सून, नो स्ट्रेस. सो यूनाइटेड एंड पॉगबा, द स्टोरी इज गोना कंटिन्यू. लेकिन रायोला का कुछ पता नहीं, बहुत चालाक है. अच्छा खासा इनको लूटेगा. सैंचो तो इनको मिला नहीं जितना ये शोर कर रहे थे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द यूनाइटेड. 236 for 6 immediately. यार एंडरसन against swing in any surface. Well, not under every condition, and that's a यार debate क्यों for नहीं another यार? time. Clouderson, यार ये गलत बात. 236 for 6. Kobe यार. Anderson, yeah, 236 for 6, 80.2 overs gone, 347. I think after Ranganahara, beautiful delivery, shaving the away. edge. Ranganahara is probably the most terrifying bowler for Pakistan. यार उस बंदे ने तो हमें कितने साल टॉर्मेंट किया. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट हाँ, जिमी हैज हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस अगेंस्ट अस. हु एल्स? सोचना पड़ेगा. डेल स्टेन ने भी हमारे बड़े बरकस उड़ाए हैं, नो डाउट. एंड ऑस्ट्रेलियन कौन सा जो बहुत ज़्यादा सक्सेस? मैग्रान हैज़ टेकन 8 विकेट्स अगेंस्ट अस इन पर्थ, आई रिमेंबर. नहीं, एक मैच नहीं ना, मतलब जो क्या है कि यार दिस गाय हैज पाकिस्तान's numbers. आई थिंक हेरात डेफिनेटली. Herat is the man. I think the country like. और उसने तो वही यूएई में भी टेस्ट meets the outside edge again. यूएई में और श्रीलंका दोनों जगह उसने पाकिस्तान के हर दर्जे जगह भाई वो 4th innings में आता था, इस तरह होता था जिस तरह कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, ठक ठक ठक. You play a little carom? हाँ, बैक इन द डे एब्सोल्युटली. थोड़ा I was actually pretty decent. बोरिक पार्ट. तो कैरम तो कोई भी खेल सकता है. ऐसे कह रहे हो जैसे तुम फेडरर हो क्या कैरम बोर्ड. ऐसी बात तो नहीं है, मतलब it takes skill, takes ability. That's like saying I'm a good Ludo player. What does that have to do with you? Seam दोनों होती है उसमें भी. With your kalai, With the kalai, exactly. the finger god FT. Yeah, Ludo is luck. Carom is not luck. लेकिन कहते हैं ना जी ये लूडो बहुत अच्छी खेलता है. What does that even mean? That means jack. What a shot by Ricky Yasishal. Just a flick off the hips and it screams away through square leg for 4. आप कह रहे थे ये प्लेयर नहीं है, आप कहते हैं ये बैट्समैन नहीं है. मैंने कब कहा ये? How dare you? How dare you? Beautiful shot from Yasir Shah. Yunus Khan is like, dear Allah, chit away. Look at those pearly whites. Yunus Khan could be in a dental commercial. भाई आपने वो Dental commercial, hair commercial, model, 100%. and also the greatest batsman of all time for Pakistan. Yeah, that's disputable. Test but, batsman. but a lovely shot there from Azar, as Freddie likes to say. That's Azar. Yasir Greenidge, Faisal तो मतलब. हाँ वाकई यार. Some Caribbean flavor. Caribbean as a. And Ramiz reminding us that Ramiz Yasir likes to Shah say. is also a Qawmi hero. Inside edge 100% onto the leg यार. side. Four 20 पे चला गया यार. 4 slips in place immediately for Yazir. But this is excellent batting. This is the right approach. आप wait नहीं करो कि भाई कोई अच्छी बॉल आएगी और मैं आउट हो जाऊँगा. Counter attack them, frustrate them. 4 for 47. आपको याद होगा he had 4 for nothing in the morning. Do you know if we lost any overs this morning? मुसाद Agassi, legend of catboard यार. कहाँ आंड्रे और कहाँ मुसाद है. मुसाद is more of a Boris Becker type. उन्होंने अपने सिस्टम बनाया. बोरिस भी legend है यार. I love the way he served. Boric powder. Boric powder. Boric Becker. Boric Becker. Yeah. And here comes. अच्छा मैं समझा. Oh, What's happening? It's all happening. Oh, I think he's इमाम fallen. की चेयर ही टूट गई है यार. Yep. यार. Oh my God. ओ इंजर ना कर देना भाई. सैफी यार, सैफी तो मतलब और भी स्लिम हो गया है.
सैफी तो गैंगस्टर बना हुआ है भाई फुल टाइम. सर्दी बड़ी है वैसे. लियारी अंडरग्राउंड बना हुआ है भाई. Yeah. 241 for 6 after 81. Good spirits in the camp even though we're getting hammered. भाई जहाँ सरफराज होगा वहाँ खुशी होगी. तो फिर कि ग्राउंड में क्यों नहीं थी? स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ 15 ओवर कराए ब्रॉड ने यार. दैट्स क्वाइट शॉकिंग. आपने वीडियो देखी है सरफराज अहमद की सोहेल खान को गाली. Oh, look at that. That's what happened. Imam went up for the catch, took the catch, but fell. शान मसूद की एक्सप्रेशन देखे. ओह शिट. सही करना चाहिए भाई. इंजरी वर्ल्ड स्टार. इसमें वैसे इतने इमाम को वैसे है थोड़ा सा goofy. I like him. Goofy type. He's got personality. हाँ. 241 for 6 after 81. It's all happening. Gopi Mia Al-Kawali is in love with Sarfraz Ahmed's beanie. It's a nice hat. Shaji protecting Azhar कह रहे हैं फवाद आलम स्टैन and as he should. Senior player है वो भी. Oh, Lovely scary. back foot defense from Yesa. Faisal saying, as long as I followed Pakistan cricket, whenever we've had games like these, all I hope for is that our players say अपनी पूरी batting लेके जाएंगे. ऐसे ही होना चाहिए यार. ज़ैनबिस भी कह रही यार ये यूनिस भाई के बाइसेप्स देख रहे थे अभी मेरा तो दिल डूब गया. देखो यार. यार ये तो मतलब ज़ैनब का भी हमारा भी. What a specimen. And he's looking even better than his playing careers. Looks fresher, looks fit. अभी भी nets करा लो आ जाएंगे at least 70-80 तो मार ही देंगे. Brand new delivery, brand new ball for Stuart Broad. Edged, taken. Oh, good First catch, slip will take a comfortable catch over his head. Joe Root doing the work there. Stuart Broad gets another wicket. Yasser Shah did well for his 20 odd. Will have to go back, and Pakistan now stirring down the barrel of a follow-on. Unplayable ball, just jumping over a length and a sharp catch by. अब देखिए अब यासिर ने अगर 20 रन किए, you cannot fault him for this. नहीं 100%. The real fault in our stars is that top order. बिल्कुल सही बात है. कल 3 विकेटें 20 रन पे आपने गिरवा दी. But a good catch there from Josephine. An extra bounce just took off. And a good catch. Jolene. ये किसका जोक था? Dolly Parton. नहीं ये अच्छा हाँ उसका जोक था. ओमिर जलीली अगर आपको पता है एक इरानियन कॉमेडियन है. अच्छा. उसने इस पे एक जोक बनाया हुआ है. I think Brits will be familiar with him. He's pretty funny. But good innings, good cameo here from Yesa. Yasser Greenwich. But जैसे हम कह रहे थे न्यू बॉल दूसरे ओवर में विकेट ले गया. But only took about 8 deliveries. Fawad Alamstan कह रहे हैं Asad Shafiq is the only one not smiling. I think not for much longer to be quite honest. And let's see what Shaheen Shahi अब्बास को भेजेंगे या शाहीन को भेजेंगे. It might be Shaheen. Yes indeed. थोड़ा बल्ला घुमाएगा, थोड़े शॉटात मारेगा. So let's see how close we can get to that follow on target. But that's at least another 140 runs away. So that looks nigh impossible. So ये देखना होगा कि will England opt to enforce the follow on. मुझे लगता है जो the grind they've had in the field today, they just might say we'll put our feet up. But of course there is rain forecast for the next 2 days. So they might not have a choice. Yep. But it will be quite interesting if Azhar manages to carry his bat. I hope he does. And does a bit of a counter attack on these Angrez. और अगर हम आज यही innings में अगर हम undefeated जाएं into day 4, that will be a huge moral victory for us. But it does look quite unlikely. I think we have another hour's play at the very least, an hour and a half even maybe. And Shaheen Shah Afridi only in his 11th test, only about 50 odd runs. So he's not exactly a batsman, but look at that extra bounce, caught the edge, flew away straight to first slip, and a good catch by Joe Root. अपनी कैप नहीं पकड़ी उसने लेकिन बॉल ज़रूर पकड़ लिया. And Yasir Shah had no chance on that one. Good bowling by Brody. And he's struck immediately with a new ball. Only took him 2 balls. Some lusty blows Faisal Khan. Yes indeed यार थोड़ा सा हट के मारे हैं पॉइंट के ऊपर से. Fawad Alamstan will be challenging for Azhar to play with tail. हाँ, we've seen he struggled in the past, especially in that horrific loss to New Zealand. जब हम बिल्कुल ही वही रह गया था, अजहर ही रह गया था. अजहर ही रह गया था उधर. And that was a very very devastating. बार-बार स्ट्राइक भी आ रही थी टेल को उसमें, पता नहीं क्यों. 241 for 7, but that really wasn't Azhar's fault either. Sarfraz भी 0 पे आउट हुआ था, शफीक भी 0 पे Babar आउट got run out, I remember. 4 slips in a gully in place down the leg side. What a shot by Brian Charles Shaheen! Just a flick and going through square leg. Would have been 4 अगर fielder ना आता. But a lovely shot, and even Shaheen is making it count. And he's kept the strike. He's the senior batsman, bhai.
क्या बात है. So what would you do if you're the England captain and forced to follow on? Yeah, I'd enforce the follow on. I guess because With of the rain around the forecast, corner, I would back my it's bowlers. been a long slog for their bowlers. 20 over 15 over कराए. Yeah, but they also had plenty of rest in the first 2 days. हाँ ये भी है. देखिए उन्होंने इसके बाद काफी टाइम बाद टेस्ट मैच खेलने हैं. It's gonna just आखिरी टेस्ट है समर का. हाँ, one in final push. और वैसे भी when you have that win by an innings, it's special. But England हमने देखा they tend to not enforce the follow on at most times. I think the weather here will draw special circumstances. शायद ये सोचें कि यार 340 की लीड है, 1 घंटा बैटिंग कर लेते हैं. It will be quite pointless to be quite honest. क्या फायदा? But you never know. Pakistan's scorecard 243 for 7. Shan Masood Abid Ali didn't do much, 4 and 1, and then Babar Azam went last night for 11. After that, it was a mammoth partnership this morning after Asad Shafiq's dismissal and Fawad Alam. Ooh, well played. Shaheen Shah Afridi got behind the line. Pakistan are looking to save this test match. अब इस इनिंग को अगर आप राइट ऑफ कर दें कि अगर अगले 50 रन के अंदर आउट हो जाएंगे सारे, 50 रन अगले 20 रन के अंदर आउट हो जाएंगे हाँ, सारे. ठीक है आपको मैं जो है चलो मिडिल ऑफ द रोड आ जाते हैं. 35 रन में ऑल आउट हो जाएंगे. What's the plan for that third innings, the one that is really going to be the key if Pakistan want to survive this test match? यार प्लान तो यही होना चाहिए कि we have to occupy the crease, we have to play time हाँ. and hope the weather gods अब wash out the I'm game. hoping Azhar will carry his form into the next innings. Hopefully, But the key I think is going to be Babar. 100%. मतलब कुछ भी नहीं And किया our यार. openers need to give us a damn start. क्या तीसरे ओवर में वापस आ जाते हैं. ओपनर्स को एटलीस्ट मरवा के. 20-25 ओवर तो खेलने चाहिए. 100%. चाहे आप 10 रन बनाओ. आप सिर्फ बॉल पुराना कर दो, उसके बाद मिडिल ऑर्डर का काम है. उस पर आके बॉबी खेलेगा आराम से. हमने देखा था Dom Best not getting a lot of turn. It's still day 3. Maybe on day 4 he might get a look at that ball just beating the outside edge. Shaheen had no chance. और बटलर साहब ने जिस तरीके से ये बॉल पकड़ा. जोलीन वाला गाना शाहीन भी बन सकता है. शाहीन शाहीन. But good bowling here from England. 243 for 7. It's been a long slog. It's Jimmy Anderson still looking for that 600th wicket. Still looking for his fifer. But so far no dice. अब अजहर की approach काफ़ी interesting होगी. Will he just go hammer and tongs? Will he go all out? Or will he just look to rotate the strike and get Shaheen on and just secure his end? I don't think that's the right way to go. It's really nice to see the cricketing world rally around Azhar Ali. Ian Bishop ने tweet डाली है. Bishi तो यार he's a top guy. Roshan अभी Singh हाँ. ने भी tweet डाली है. It's just kind of the impact that Azhar has had on his colleagues off the field. I think he's a very gentleman-like. He's a silent warrior. Exactly. Gets behind the line of that one. A bit of shape there for Jimmy. What about James Anderson? क्या scene है? Do you think he should prolong his test career? अभी भी है. Does he have some juice? If he's playing 40 days. Yeah, I don't want him to retire on a low after getting smashed in the Ashes. That'll be very sad. You mean you don't want him to go to Australia? नहीं, I don't want him to कि भाई हारते हुए फिर retire in disgrace, get dropped. But Jimmy doesn't care about that, does he? Jimmy wants to play cricket. But and again, if Anderson, regardless of his age, if he's playing 40 days of cricket a year, 8 test matches, it's fine. अब ये देखना होगा इंग्लैंड के कौन से टूर आ रहे हैं. They were supposed to go to Sri Lanka, but that didn't happen. Next summer, I guess कौन आएगा? It's not an Ashes summer, that's for sure. South Africa भी नहीं होगी. Maybe it's Sri Lanka or somebody. Maybe India. New Zealand हो सकता है मुझे लगता है. इंडिया तो अभी गया था यार 2018 में, लेकिन वो फिर पहुंच जाएंगे. पैसा है ना उस टूर में, तो बहुत पैसा है. क्यों पैसा करती हैं. You're absolutely right. 243 for 7. As Anderson will bowl outside off, left alone. But Broad ने तो clearly कह दिया भाई मेरा कोई सीन नहीं है रिटायर होने का. I'm playing at least another. Why should he retire? He's 4 years younger than Jimmy. I think he has at least another 2 Ashes in him. He's 4 years younger than Jimmy. Well, if Anderson is not retiring, why can't? उसकी fitness में क्या problem है? हाँ नहीं, वो तो कहीं नहीं जाता definitely. और वो effective भी रहता है ऑस्ट्रेलिया में, विकेट ले लेता है वो. He's got the height. हाँ, height भी और and he hits the deck. But Jimmy is the real question. Yeah. This ball is barely 2.5 overs old. Jimmy now to Azhar Ali, clipped away, and it'll beat square leg. And I think they should come back for 2 here. और यार हम underestimate करते हैं कि how difficult a job it is to be bowling, to do fast bowling in test matches, और कितने dedication और कितना उनका जुनून है यार. I used to read the Cricket Monthly, और उसमें पता नहीं किसने quote किया था कि fast bowling, the art of fast bowling, the action of fast bowling is inherently against all the natural tendencies of your body. बिल्कुल.
and to do that as a living, it takes some exceptional talent. अभी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं even us हम कितनी आई थिंक आई वाज जस्ट आप वही आर्टिकल की बात करें किसी ने टेलीग्राफ में कोई डीप डाइव किया था जिमी के साथ कहते हैं ही हैज रन ओवर 400 किलोमीटर्स फॉर इंग्लैंड और समथिंग लाइक दैट और वो स्प्रिंट्स अनबिलीवेबल स्टफ हां फुल स्पीड हम even people like you and me ख्वाजा even change the pace and all of the commentators in the world इतनी आसानी से कह देते हैं यार 150 नहीं करा रहा है 130 मतलब it's not easy even 130 is not easy यार अभी भी 138 आराम से करा लेता है वो yeah look at this ball this is about how much is it देखिए 136 130 में आप बॉल स्विंग कर रहे हो that's all you need to be a world class fast bowler he is a world class fast bowler well, how fast was he when he first came onto the scene I think इतना ही था 140 maximum 90 था इतना तेज नहीं था 2005 में डेब्यू किया ना 2000 नहीं 2003 में ये ODIs में आया था टेस्ट में 05 का टेस्ट में he only became a test bowler around 2008 बट डेब्यू 05 में था हाँ डेब्यू 5 में कर गया था 5 probably yes 5 he was there actually in the 2005 tour of Pakistan ये one day वनडो में था ये वनडो में that golden hair Jimmy 244 for 7 अच्छा उसमें काफी डाइट बाल चल रहे थे उस वक्त केविन पीटरसन ये भी जेम्स था एंडरसन आपने करवाए थे नहीं यार हमने कभी ऐसी वाहियात हरकत कोई स्ट्रीकिंग नहीं करवाई नहीं हालांकि लाहौरीज आर नोन फॉर ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स एंड स्पेशली हमारी जो आंटियां हैं एक ज़माने में लेट 2000s में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था वो बट थैंकफुली वी हैव ग्रोन आउट ऑफ दैट फेज 244 for 7 Pakistan clawing back into this game trying to find is it a way to possible get a that draw if England bat again which they will हम कोई miracle spell अगर उनको 50 पे आउट कर भी लें तो 450 कौन चेस करे नहीं भाई ये कोई सीन नहीं है ड्रॉ का सीन है औकात में रहे तो बेहतर है वो 244 for 7 after 83 overs. Azhar Ali still hanging in there, still battling for his team. Facing Stuart Broad, इसके खिलाफ चांस मुझे लगता है ले सकता है वैसे अजहर. Defended to the offside for no run. I think यही अप्रोच है कि भाई जितना आपने तंग करना है अंग्रेज़ों को करो. Nothing else pretty much. Trail by 339. मुझे क्यों लग रहा है कि इंग्लैंड बैटिंग ले लेगा? मुझे लग रहा है. What's the point of that? There is no point, but I think they'll say यार बॉलर थक गए हैं, उनको एक दो सेशन रेस्ट दो, फोरकास्ट की खैर है. I think we'd be delighted to do that. Have another crack at Burns and Sibbers. Lekin let's see what. Will we be delighted? What's the point? It just feels so nonsensical. Cut away! What a shot that is from Azhar Ali. It's going to go on over the top of point and run down to the third man boundary, but it should be stopped for just 3. Good fielding there. Will they take 3? No, they refused. अच्छा किया दो ही ठीक है. Majority तुम over ही तुम ही खेलो. और क्या? शहीन कौन सा बैट्समैन है? यार शहीन यार क्या हो गया यार? शहीन चार्ल्स. मैं कहना नहीं चाहता है, but you know he's a QH. Oh, QH. The Q triple H कौन हीरो है हमारा? HQH. But good shot there from Azhar. This was a part of his one-day game. I remember. He used to Zainab is straight up saying England will bat again. Modern teams just don't do follow-ons. I actually agree with her, but I think इस situation में अगर वो नहीं लेते, then they'll be shooting themselves in the pair, as they like to say. Well, left outside the off stump. No need to touch those. 246 for 7. आपको याद होना चाहिए. We were what 11 for 3. 24 for 3. 24 for 3. Compared to that, it's not been bad. 250 ले गए बहुत बड़ी बात है वाकई. But the problem is 24 for 3 should not have been where we should have been. यार वो तो क्या कर सकते हैं. वो न्यू बॉल्स पहले हम सर्वाइव नहीं कर पाए जिम्मी का, वरना उसके बाद it was definitely easy batting conditions. I was disappointed about Bauer's dismissal, to be honest. बाकी दोनों से तो कोई वैसी उम्मीद नहीं है. यार ये बात तो सही है, लेकिन I was honestly expecting Abid to do well on this tour. He had that kind of game. It's not been a horror tour though. हाँ, नालायक नहीं लगा, incompetent नहीं लगा, लेकिन बस frustrate किया. South Asian लगा है भाई, outside off खेलते हुए, वही जो typical style होता है हमारा. 246 for 7. Trail by 337. मतलब पहले टेस्ट में उसने न्यू बॉल अच्छा सी ऑफ किया था. सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा खेल रहा था, फिर वो स्टूपिड शॉट खेली. थर्ड ही गॉट अ 60 एंड दिस वन ही गॉट अ जेन्युइन एज, यू नो. सो ऑफ कोर्स वो 60 में भी चांस मिले थे, बट ही इज दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रीकी प्लेयर. वो चांस देगा, मौके देगा, मौके. सो जो एनीवे पाकिस्तान कैन गेट अ लीड हियर. हालांकि पूरी सीरीज हमने रूट से 50 भी नहीं होने दी. आई थिंक नहीं,
से किसने स्कोर किए? बस ये जॉस वोक्स और सिबर्ट। भाई 2 ही लोगों ने तो स्कोर हाँ, किए, और क्रॉली। 3 लोगों ने स्कोर किए। बस यार थोड़ा सा पोप रहा था थोड़ी देर। हाँ, पोप ने भी अच्छा खेला था। बर्न्स को तो हमने हिलने ही नहीं दिया। दैट वाज नाइस। बेन स्टोक्स भी नहीं हिला बेन स्टोक्स पहले हाँ मैच में। आउट कर दिया था उसको। 246 for पैर 7. पे एक कुल्हाड़ी। यस, नहीं इट्स हाँ, वो तो एक्स मार दिया ना हमने सीधा। Look at that edge. Ooh, good So catch. you can't really do much with that as a tail ender. Extra bounce and that new ball effect definitely. It's amazing how difficult it is to bat in Test match cricket, isn't it? And it's all in your mind, to be quite honest. कि भाई मैंने एक गलती कर दी तो मैं कैच दे दूंगा. No, that's down the leg side, and you don't have any reviews, mate. So shut up. 246 for 7 after What other 84. Huh? batting sports are there in the world? There's cricket, there's baseball, there's softball. What else? Hockey is a batting sport? No, It's a stick. It's a stick game. Batting. Rounders भी एक किस्म का है. That's like a English PE game basically, जो physical education school में खेलते हैं. But यही दो ही हैं, I guess. और भी होंगे, I'm sure we're not remembering correctly. Which involves golf भी एक किस्म का bat. वो भी stick ही होगी ना फिर. Stick हो गया. Golf clubs, get your golf clubs out if you know. 246 for 7. मौके नहीं मौके. ओ ज़करिया भाई क्या बात है. खालिस उर्दू में There it is. टाइप कर रहे हैं. I didn't even know we could do that. That's very nice. Shout out to change your pace. But अच्छा आपको पंजाबी में लिखना आता है? नहीं. But वही स्क्रिप्ट है वो. Not that Indian has a Punjabi has a different script. नहीं पाकिस्तानी पंजाबी. I think वो भी उर्दू में ही लिखी जाती है. बट वो लिखनी आती है आपको? उर्दू लिखनी आती है थोड़ी बहुत. नहीं बट उसको पंजाबी जो डिफरेंट स्पेलिंग्स वगैरह होती है वो तो बंदा गैस कर ही लेता है. इसमें क्या है? गैस क्या कर लेता है? इस तरह थोड़ी होता है. इस तरह तो मैं It's not a written language as such. It's just, you know, you can write it if you want. यार इतना लिटरेचर है हमारा कॉमी हीरो. बस कर दो यार, रगड़ दिया तुमने अब. इतना लिटरेचर है पंजाबी में. क्या आप कह रहे हैं कि लिखने वाली लैंग्वेज? I'm saying कि Punjabi itself is a spoken language that is written. It's not. It doesn't have its own script as such. हाँ, नस्तलीक पे ही काम करते हैं वो भी. नस्तलीक. Shout out to Naz. What a shot! अच्छा यार. Mid off है भाई, mid off. मैं समझा it's gonna scream away to that straight boundary, but went straight. अच्छा, let's ask some of the commenters. We've talked about language, Khwaja. If you were to, if I give you a free reign, इस वक्त मैं आपको एक आपकी बॉडी के अंदर एक बस मेमोरी कार्ड लगा दूं जिससे you get one additional language that you can speak. अच्छा, very nice. Speak and write and understand. What one language would that be? एक language. Very good question. एक ज़ुबान. Drop it in the comments. What language would that be? यार मैंने स्कूल में तो फ्रेंच पढ़ी थी, तो वो तो ओ लेवल्स तक. शाउट आउट टू जन्नत मुजाहिद घटिया स्कूल था. फ्रांसे. तो वो तो आती थी. इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, देयर आल्सो. I think maybe I'd like to learn Japanese. One language that you can read, write and speak, and you go with Japanese. I thought you were going to go with Italian for obvious reasons. वो तो यार सेम ही है, सीख ही सकता है बंदा, इतना मुश्किल नहीं है यार. मतलब आपकी डिजायर की बात है ना. I want to learn Japanese because that's very different from any language. Of course कहते हैं Mandarin भी बहुत मुश्किल होती है. Mr. Arsenal saying is Chinese. Zainab is saying French तो बहुत easy है यार, इतनी मुश्किल नहीं है. Big appeal. This might be going down leg. It is. जब से रिव्यू खत्म किया अंपायर ने भी है ना दे ही नहीं रहे. Faizan saying he failed this. यार how can you fail French man? Persian, फारसी. अच्छा हाँ, फारसी भी is also. उसमें बड़े अच्छे. तो imparando italiano ठीक है. फैसल तो I think इटली में ही है या पता नहीं, I'm not sure. Look at that ball. Oh, that was torn. How did he not give that out? Yeah, I love it. This is hitting middle of middle. Oh, you bloody crazy. Oh my God, what a decision. What a howler. Unless there's an inside edge, which I don't think there was. This was hitting the middle of middle of middle. Unbelievable. Lone Wolf is saying Mandarin. Shishi. यार हम उर्दू से इतना बोल रहे हैं, वही बड़ी बात है, to be quite honest. But Jimmy had a wicket there for the taking, snatched away, and Azhar's like, yeah mate, screw you. But let's take a cut the job on a technicality. Did he get in? Oh yeah, huge edge, huge. Absolutely massive. आप अंपायर का मजाक उड़ा रहे हैं. फैसल कह रहे हैं शकूर राना अंपायर. छा गया यार माइकल गॉफ. He's a good umpire. I think he's world class. Keep those languages coming in. We've got Mandarin, Japanese, French. फारसी बहुत लोग बोल रहे हैं. वैसे फारसी एक बहुत ही
जबरदस्त सवाल It's like they're pleading with you. ऐसे रोते ही रहते हैं वो. उनकी it's a very effeminate इतनी language. खूबसूरत लैंग्वेज को आप It is खूबसूरत, but it's like they're pleading with you. या कुछ मांग रहे. ये भाषा दे कौमी दे. It's not very aggressive. What are we gonna Like do? पंजाबी थोड़ी सी terse हो जाती है, थोड़ी सी Gopi harsh हो जाती है. Mia was saying Arabic. I actually might actually go. अरबी हाँ. I would actually go with Arabic too, maybe. यार तुम्हें तो अरेबिक आनी चाहिए तुम्हें. अरेबिक. पूरी नहीं आती ना, मतलब it's just bits and pieces. It's like the Fahim Ashram of language. What does that even mean? Bits and pieces. Oh, he edged. Oh, भाई ban है इस पे भाई, Mr. Coach. नहीं उसके पास है नहीं. How dare you? But यार छा गया umpire यार. Respect for him. फैसल कह रहे हैं Farsi is Latin to us South That's a good Asians. point. Yeah, It's the base. good comparison there, Faisal. छा गए फैसल भाई यार. पढ़े लिखे बंदे लग Yeah, रहे हैं. lad. Have you heard people speaking in Bihari? अरे भैया. इस तरह ना करो यार. 247 for 7 after 85. Oh, what a catch! Josh Butler has pulled up an absolute blinder. Yeah. Shaheen Shah really got a glove to that delivery. And like Superman diving to his right, Josh Butler की keeping बिल्कुल inverse हो गई है पेनिट्रेंस मैच से. यार कितने लेग साइड कैच लेगा ये, क्या हो गया इसको? Brilliant from Butler. Unbelievable, just a flick of the glove and he goes screaming past the leg side, and a brilliant take by Josh Butler. Look at that. Whoa, Gianluigi Buffon, eat your heart That's a out. brilliant What catch. a catch. Show that to यार ये जॉस को क्या हो गया? Ariza Balaga. Tell him how to keep. क्या भाई आप लोग ही रोते रहते हो कीपर्स पे, हम तो कभी इशू नहीं हुआ. You had one of the greatest of all time keepers. अजीब आप बात करते हो. Unbelievable catch, and once again Broad picking up those cheap wickets. अच्छा, मिस्टर आर्सेनल ने बड़ा एक लंबा एक जवाब दिया. Easy Japanese is basically divided into two scripts. One kanji, complex, fixed 2000 plus characters derived from traditional Chinese. Two kana, simplified characters that are similar to alphabets but represent syllables. Kaku. यार ये इतनी डीप डाइव आपने कर दी मिस्टर आर्सेनल, यानी ये बहुत ही fascinating language है. और and I think it's a vertical language, right? What does that mean? Japanese ही है ना वो जो vertically लिखते हैं. Oh, I didn't know that. हाँ ऐसे लिखते हैं ना वो. That's remarkable. It's not left to right, right to left. Okay. ज़ैनब कह रही बस यार अब बैड लाइट के लिए आ जाएं, बहुत हो गया वाकई यार. हमें आज अगर हम बोल्ड आउट ना होएं तो एक अच्छा एक जवाब होगा अंग्रेज़ों के लिए. बट वी स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एज पर द क्लॉक इन टुडेज प्ले. अंपायर्स भी बेचारे ड्रिंक्स ब्रेक ले रहे हैं. मस्ट बी अ टफ जॉब वैसे हैं, स्टेइंग कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर दैट मच टाइम. इट्स नॉट ईजी. Yeah, it's not the easiest. मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना यार उनको चेयर क्यों नहीं देते थे? आई नेवर अंडरस्टूड दैट. बैठ जाए लेग एम्पायर उधर जाके, क्या है? See, that's not a bad point. वो जो आपके पास वो जो फोल्डेबल चेयर है प्लास्टिक वाली, दे दो उनको. Beach chair, हाँ, lounge chair. चेयर जो होती हैं. सोफा ही रख दो पूरा. नहीं वो तो फिर चलो लग जाएगा ना बॉल उसको. वो चेयर पे. चेयर तो यार फिर भी थोड़ा डॉजें तो मार लेता है बंदा. डॉजात. But look at that. Speaking of Dojad, brilliant take by Josh Butler. Unbelievable. I think he's a shoe-in for the man of the series. For me, for England, that's So for sure. both keepers will be the team's best players. That's a fair point. It well could be. That's a good point to consider. उसने runs 250 भी मारी हैं. रिजवान ने keeping भी बहुत अच्छी की है. It might be the first time in history that both keepers from both sides are man of the series for their respective teams. 247 for 8 after 85.1. Pakistan still trailing by 336. Shaheen Shah Afridi finally dismissed by Broad, who's cleaning up the tail with the new ball. Brilliant catch यार. जितने भी दफ़ा देखो उतना ही ज़हर लगता है. But credit to him. England have been pretty hit and miss with their catching behind the stumps. But Joss has been absolutely brilliant in this innings. No doubt. Zainabris भी कह रही, I think I triggered Joss by calling him Joss Akmal. बस देख लें, तब से उसने हमें माफ़ नहीं किया. 50 पे मार रहा है, 150 मार दिए और कैच लेने शुरू कर दिए. बट he's had a hell of a summer to be quite honest. और अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ODIs इनके बाकी हैं, तो it's not done for him yet. I think T20s तो वो नहीं खेल रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, thankfully. But still something left for him to offer. 247 for 8 as Abbas is out there to bat with the captain now.
So what's happening here? Is there a bit of a delay? किस बात का delay? Okay, no. We're proceeding broad now. 2 for 27 in his 18th over. अब्बास भी हमने देखा डिफेंसिव हैं, थोड़े कंट्रोल कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं क्रीज पे. Well played, got solidly behind that one. तो आई थिंक थोड़ा सा सहारा देंगे अपने कैप्टन को कि भाई आसानी से अपनी विकेट नहीं दूंगा. Of course we got 20 from Yasir Shah. I think another 20-30 from the tail here will definitely help. But फैसल भाई कह रहे पावर प्ले स्टार्टिंग, वाकई यार ऐसा ही लग रहा है. मिस्टर आर्स ने कह रहे फॉर मोर इन्फो प्लीज़ प्रोवाइड बैंक डिटेल्स. वाकई यार सीखनी चाहिए. ऑफ कोर्स एक्सपेंड्स योर नॉलेज एंड योर व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. अ बाउंसर देयर फ्रॉम स्टुअर्ट ब्रॉड टू अब्बास. बेचारे क्या यार शरीफ आदमी है, उसको बाउंसर करा रहे हो. सीधी सीधी ऑफ स्टंप के बाहर खिलाओ. एज लगा तो ठीक है, वरना चौका पड़ गया तो क्या बुराई है. फास्ट बॉलर्स यूनियन डेफिनेटली डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉडर्न डे क्रिकेट. बाउंसर पे बाउंसर कराई जा रहे हैं टू द फास्ट बॉलर्स. जॉस बटलर भी कह रहे हैं I didn't see it, mate. I just caught it. But brilliant catch. That was 85.3 overs gone, 247 for 8. Abbas on 0, Azhar 116. Ooh, extra bounce and hits him on the thigh pad. Stuart Broad consistently getting that extra bounce, bowling at 140 late into the day. So credit to him and his fitness that he's still up for it. And bowling at good speeds with good intensity. Although it's been a tiring day in the field for England, they haven't got the results as they quite expected, especially after getting 4 Did you read wickets. Faisal's comment क्या कह रहे हैं? about Harami meaning pregnant in Japanese? Whoa. Harami. 247 for 8. ये ज़ैनब रज़ी से पूछे ना, ये जो जॉस अकमल कह रही थी पहले टेस्ट मैच में, अब किधर छुपी हुई हैं? इधर ही हैं यार, वो तो बेचारी है, पूरे मैच हमारे साथ देखती हैं. शी इज़ अ डेडिकेटेड चेंज कॉपर. अजहर अब 159 मीटर्स के छक्के मारेगा. यार मार ही दे यार, क्या ही बात है. एक तो छिक्का मारे ना जेम्स एंडरसन को. टू द बेस्ट बॉलर एक साइकोलॉजिकल ब्लो तो उनको दे कि भाई मैं तुझे भी कुट सकता हूँ इफ़ आई डिजायर्ड. ख्वाजा मैंने लैंग्वेजेस की बात की. हाँ. मैं अगर एक और मेमोरी कार्ड फिट करूँ. अच्छा यार, ये क्या ड्यूल सिम है ये? And that had any skill, an acquired skill. A skill or a superpower or something like that. नहीं. Ability. Superpower पे आएंगे, but a skill that you can acquire. हाँ. It's in the memory card. I fit it inside you, and you get that skill. What skill would it be? I would love the skill to be able to, what do you call it? Read when people are lying. No, that's not a skill you can acquire. Okay, then a photographic memory then. That's not a skill you can acquire. क्या यार, ये क्यों नहीं है? लोगों की होती है photographic memory. क्या हो गया? No, you were born with that. Skill. अच्छा आप बताएं. I'll follow your lead. Mr. Asli कह रहे हैं skill सीखू भाई की पंडितरी. यार बताओ तुम कौन सा skill चाहोगे? A skill that's acquirable. What, drive fast or something? Playing football like Sadio Mane. चलो, एक तो ये इसने चुस मारनी थी. साडियो माने फारिग तरीन बंदा बनना चाहे तो फिर मेसी ना बनना चाहे. साडियो माने कौन बनना चाहता है? Left foot is haram. 247 for 8. तुम लेफ्ट हैंड से पॉपकॉर्न खा रहे हो. I think I would probably pick batting, opening batting. सिर्फ come on man. It's a massive. नहीं कोई नॉर्मल एवरीडे स्किल बताओ. Everyday skill. That's a good one. Sometimes I ask really good questions. खुद अच्छा अपने मुंह में मियां मिठू हो रहे हो. Umair saying. And if you want to learn a cricketing skill, of course it has to be bowl 150. यार. No. Overrated. It's very overrated. How is it overrated? I'll hit you for 4 fours. I'll blow your brains out with a bouncer pair. Once. Wow, Jofra Archer को ही देख लो. Jofra Archer को ही देख लो. Once is enough. भाई बैट्समैन जितना भी अच्छा हो, the most thrilling sight in cricket is a fast bowler bowling at 150 clicks. यार thrill chill कुछ नहीं होती. Thrill seekers. 247 for 8. I'm thinking of this is a good question really. Yeah, that's a good one. I think photographic memory is a good one. I think for me it'd be to read and play instruments. Musical instruments. Yeah. So I would pick the Guitar,
या पियानो. No, I'd pick the piano and I'd pick the violin. वायलिन तो बहुत मुश्किल होता है. Yeah, that's why. बाकी यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज yeah. आवाज़ें तो हमारी आपको हैं ही पता. हम खुद हम तो बिलाल मकसूद और मरासी तो हैं ही हम. आप दूसरे wanna be Marasis. Hey, it's a take. Oh, drop. Oh, Rory once again has grasped a simple one. Azhar with a big fat edge burst through the hands and dropping some F-bombs as Jimmy will be too. Azhar moves on to 120. This has been dropped. Flashed hard to second slip and Rory Burns has grasped it. Zaram ने जो है ना comment दे दिया है that tops everything. I'd like to have Wasim bhai wale wrists. Wait. Unfortunately, The Zaram. KG Kalaigad. But a hard drive from Azhar. Genuine edge. And his hands were absolutely nowhere. That's another 4. And worst, Sone pe Sohaga, uske 5-fer is still not been completed. So Jimmy frustrated, angry, grumpy, miserable. Rory को तो वैसे ही अब इस टीम से फारिग कर देंगे ये लोग. कहेंगे भाई तू दफा हो जा. FHD is saying Rory needs to wear the V for Vendetta mask to hide his shame. Fair enough. This has been squeezed down to third man once again. And how annoying is that? First you get a catch drop, it goes for 4. Then immediately you give away a single. James Anderson की body language से ही पता लग रहा है कि कोई इसके करीब भी आ You got the job on a technicality. उसने उसको चंबे करा देने हैं straight away. मोहम्मद हफीज़ की भी जो है वो ट्वीट आ गई है. और यार मोहम्मद हफीज़ खुदा के वास्ते बायो सिक्योर में तो अपनी बकवास से बंद कर दो. लेकिन क्या कह रहे हैं हफीज़ भाई. वो हफीज़ भाई he's in real estate too as well, right? हाँ अच्छा खासा construction magnate बना हुआ है. He's our Rockefeller. Wow. 5 slips. नहीं, 4 slips in a gully. Edged, dropped again. Are you kidding me? Look at James Anderson burying his face into his hands. इसने कत्ल कर देना इनको इसके बाद. He's going back. He is mad. He is angry. He's dismissed Abbas twice in 2 deliveries. Well, he's not going to get to say much to Crawley. He's scored 256 runs in this match. Oh my God. And you look up and it's Jimmy Anderson staring back at you. उसके मतलब कसम खाई भी है चेस नहीं होने देने. Yeah, and Gopi is saying, I'd rather Anderson get catches dropped all day long than draw this match. It is a pretty funny sight, I have to say. और बेचारा Crawley, उसका ऐसे ही very new to Test cricket. Senior bowler, senior youngster bowler. And now Mohammad Abbas, full on defensive. He's smiling away. He knows what that feels like, Abbas. He bowls for Pakistan after all. Although our slip catching has been top class. Where is Anderson gonna go hide after this? Burns probably gonna take a break, running off somewhere, trying not to make eye contact with Anderson, and Crawley as well, running away. Both of these lads. Yeah, what mate? He's 4. Might get the next one. Edged. the Crawley drop was horrendous. Straight in their hands. And look at the reaction from Jimmy. He didn't even bother swearing at him. Who would want to be a fast bowler? My goodness. इतनी मेहनत करके भी Zach जैसे क्या बोलूं कौन सी गाड़ी निकालूं. 258 for 252 for 8. They went to the leg side for no run. Iqbal saying, on the question of skills, I'd like to become a PAYO level coder and data scientist and economist. Become a development sector ka daddy. Never out of a job. But honestly, those skills are very much acquirable. You can do them even through like online courses and stuff and just keep practicing. वैसे कोडर की बात की मैं कल ही एक वायर्ड का आर्टिकल पढ़ा था about this hacker called Hutchins, Christopher Hutchins or something. How he saved the internet. आप वो जाके wired.com पे पढ़ें. अच्छा. बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है. Pulled away from What Azhar a Ali, shot! and you'll find the gap between fine leg and square leg for 4. That was Ricky Ponting, Azhar at his best. Beautiful hook shot. Just swivel pull and it screamed away to square leg for yet another Zakaria boundary. Khalid calling it as well. Azhar Ponting. Lovely shot यार. मज़ा आ गया. पैसा वसूल shot थी ये. Money in the bank shot, as we like to call it.
but अच्छा फाइनल सवाल भी आपसे कई लेंगे जो आपने खुद अपने लिए किया था. The final SD card अच्छा for a superpower. हाँ What would that superpower be? यार सुपर पावर तो बहुत कोई और सवाल करे यार, वो तो ऑब्वियस है यार. क्या है? मतलब वो टिपिकल आंसर्स ही होंगे, वो हर जिमी फैलन टाइप शो में ये पूछे जाते हैं. कोई नया सवाल कर Karway, What a wow! shot! Even better, rocks on the back foot and slaps it, caresses it, smashes it through extra cover for 4. Azhar is on fire. Broad is being taken to the sword. Beautiful batting here from the captain of Pakistan. 260 for 8 now. Kya shot diya, shot of the summer. Look at that. Look at that hanging back. The beautiful. Fetch it. That is gorgeous. That is Azhar Ali at his best. That is Azhar Ali that Oy, we've oy, missed oy, seeing. oy, oy. और ये नई बॉल आज इंग्लैंड क्रिकेट की यूट्यूब जो हाइलाइट्स लगाएगी वो तो जरूर अब देखेंगे. ये देखनी मैं पड़ेगी. पिछले 3 दिन से नहीं देख रहा, हाँ, same, लेकिन same. आज देखेंगे. ब्यूटीफुल शॉट अजहर यार, जबरदस्त, मजा आड़ेला है मजा. 260 for 8, 87.3 सुपर पावर. Anderson will retire after 600 wickets. नहीं मुझे नहीं लगता, Played away on the leg side. लेकिन for वही no है, run. हम वही सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारा गेम प्लान क्या है. If somebody can Google who is touring England in the next summer, that will really help. But it's not going to be England, it's not going to be us, it's not going to be South Africa. ने भी 2017 में टूर किया था. I think it might be Sri Lanka and New Zealand probably, something like that. ऐसे ही कोई होंगे. So that should probably, यार अब वही देखना है वो कितना खेलना चाहता है. उसको वो खुद तो नहीं निकाल सकते, इनमें इतने गट्स तो नहीं है. हाँ ये है, कौन निकालेगा. 260 for 8. Oh, that's hit him on the ribs there. Oye, oye! Has he made it? I think he's made it. Should be fine. But look at that effort from Stuart Broad. And Azhar was nailed in the inner thigh. That's going to hurt. That's going to leave a mark. And Broad has also jammed his wrist into the pitch. अभी ऐसा रन आउट नहीं होना चाहिए यार. But I think he did make it probably. Oh, here we go. He's out. He's out. नहीं पहुंच गया. He's out. पहुंच गया यार, पहुंच गया. एमी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो तुम, थ्रिल क्रिएट कर रहे हो, थ्रिल. He's easily in there. Azhar is not gonna get out like that. Not out. Hashtag raise the bat and stick it where the sun don't shine. Anyways, क्या comments आ रहे हैं? Ramiz Hassan is उमर killing अब्दुल्ला it. might possibly go past 619. वो तो definitely रे मिस्टीरियो वाला 619 तो मारेगा ही उस रिकॉर्ड को. बट वही देखना कि और कितना खेलना चाहता. आई थिंक गोइंग डाउन अंडर फॉर अनदर एशेज, आई थिंक दैट्स व्हाट ही ट्रूली वांट्स, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया फॉर हिज करियर, टू बी क्वाइट फ्रैंक. Yeah. Ramiz का comment बड़ा fit है यार. क्या He's कह saying रहे हैं? I'm already a programmer, now अच्छा. polishing my skills in the field of automotive software engineering, working on the development of the Porsche Panamera software system. यार एक पोछा हमारी तरफ भी कर दो ब्रो. रमीज भाई क्या हो गया? सेकेंड हैंड भी चलेगी, 3 पहिए भी चलेंगे. That's a beautiful freaking car. Porsche, I love Porsche. आपके कौन से favorite car brands हैं मिस्टर मुसादब सर? ये ना कहना Hyundai Sonata. कोई सही नाम बताओ. Currently, in super luxury cars, I really like the Aston Martin. Nice one. Because it hides itself in its beauty. Like it's not that obvious. ये तो आप बहुत deep dive चले गए हैं. Yeah, मतलब a car is a man's most important accessory. ये क्या बात हुई? I agree with this. What about underwear? That's not an What about- accessory. That's a requirement. What Khwaja. about a belt? What about his wallet? What about a watch? No, for me it's the car. What about his shoes? For me it's the car. What about Sunny? Although Arnold, one of my heroes, did say that it's not about the car, but the size of the arm that sticks outside of it. 260, 260 for 8. But in more Jaguar यार, ये सही आपने बोला है. in more realistic Jaguar terms, is such a beautiful car. in more realistic terms, the Model S from Tesla, the वाकई यार, top of the Tesla range, लेनी चाहिए यार. the 100D is very nice. Yeah. कि ये कौन सी लेके Mercy? Ramiz is saying, come over to Germany, and the Porsche is yours, AZ. ओए ओए ओए. Nice अच्छा defense. रमीज भी जर्मनी में, फिर तो वो उधर हमारे नवीद भाई भी हैं. Miss. स्टुटगार्ट में थे या हैम्बर्ग में थे? स्टुटगार्ट में थे. Yeah. एन डॉट जो है हमारे चेंज अप पे से, Mr. Arsenal saying उनसे आप मिले और गपशप मारे यार. Mercedes AMG GTS Silver. That's a decent pick. ये बात कहने कॉर्वेट, वाह यार, वेरी नाइस. जैगुआर, बट आई गो विद बी इकबाल. The problem that I have with the Corvette is the inside. It's very unappealing. I'm actually very curious about what Ramiz is doing because I'm a big fan of technology in cars.
लेक्सस हाँ लेक्सस भी अच्छी अच्छा वाह यार वो भी स्टुटगार्ट में है तो एन डॉट इफ यू आर ऑन द स्ट्रीम देन प्लीज Yeah. मीट अप विद आवर गुड फ्रेंड रमीज हसन अच्छा यार दो चेंज ऑफ पेसर्स मीटिंग इन फॉरेन इससे क्या अच्छी बात होती टू क्रेजी क्रिकेट फैंस हु आर क्रेजी Faizan is saying Haroon Baiki Biryani is now on my to-do list for when I visit Dubai. And Zainab is asking for Azhar to come opening instead of Shan or Abid just for this one innings. यार वैसे that's not a bad suggestion to be quite honest He's शान in. को तो थोड़ी रिलीफ दो How many do Pakistan need to avoid the follow-on? अभी तो बहुत 123? 122 to be exact 261 for 8 as Abbas squeezes this down to find like but James Anderson frustrating day for him once again he's had a lot of those looks very grumpy मतलब ऑटोमेटिक आपको 4 विकेट हमने So दी you उसके didn't- बाद you didn't- you पूरा didn't- दिन You didn't pick a car? Who? You did not pick a मैंने car? कहा जैगुआर the one Which one? यार आई डोंट रिमेंबर द मॉडल लेकिन आजकल जो जैगुआर्स घूम रही होती हैं You like them? The new kinds? so nice I like the classic Jaguars more, to be honest. वो भी अच्छी थी लेकिन जो ये जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है रियली लव दैट कार Actually, the E-Pace is an electric vehicle from Jaguar. Absolute beauty. जबरदस्त 261 from 8. Defended away onto the leg side for no run. दोनों सिंगल विकेट लगा दो जर्मनी में वाकई Lexus LX 470 2002 द बेस्ट That's very जरा चेक specific. करें LX 470 ये तो वो 4 व्हील नहीं है वही होगी शायद हाँ वही है आई बिलीव आप दुबई में रहते हैं आपको तो पता ही है Lexus कौन सी होती हैं. हाँ ये वाली है आई बिलीव Yep, it's Zenab is the speaking, it's I the like one that looks Mazda. like the Land Cruiser. Zainab likes the Mazda. She likes to keep it safe and quiet and good resale value. Ooh, Azhar was shaping up for a big shot but got jammed by that back length delivery from Jimmy 261 for 8 Pakistan has almost batted 90 overs so 90 over. 90 ओवर आत कोनिक से यार आप तो फिर आप एलीट हो गए हो ना फिर मतलब हम कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो नहीं बैठे हुए ना इधर. इंसानों वाली बात करें रमीज भाई. यार 261 नाम भी for 8. कितना हॉट है कोनिक से Yeah, साउंड्स लाइक सम yeah. यू नो ऑप्टिमस प्राइम का अब्बा आ गया इधर भाई नहीं but Jaguar is still attainable. ख्वाजा, I'll give you one. हाँ, I'll इतनी give you महंगी a- नहीं है. I'll give you a blank check. Blank check. What are you gonna do with it? अच्छा oh it's in the air and he's dropped it again has he No, I think it bounced. No, it's dropped. And that there, I think there's been a runner on the other end. It's अब complete उसको ताली भी नहीं commotion. देने देगा वो जाने दे It was played uppishly to mid this is on. the third catch dropped off James Anderson's ball but I think Abbas has been run out at the non-strikers and it's all happening Broad is laughing. what the hell is ये देखो it's catch था Easy catch. It's been dropped. उस रन क्यों ले रहे हो भाई? यार मजा आया बास पहुंच गया हो नहीं रन आउट है वो पहुंच गया वो 2 दिन में नहीं पहुंचता वो. जरा बात. यानी विकेट भी गिर गई जेम्स एंडरसन इज बीइंग ट्रोल्ड बाय हिज ओन टीम Yeah, 261 for 9. उसकी कॉल थोड़ी थी बेचारे की कप्तान ने कहा था आजा बट अ डिजास्ट्रस रन आउट ऑफ मोहम्मद अब्बास एंड ट्रेल बाय 322 मुझे तो पक्का लग रहा है भाई इंग्लैंड बॉलिंग ले ले James Anderson will kill someone. सुजुकी कल्टस यार मिस्टर आर्सेनल का If we compared players with cars, which car would Asad Shafiq be? अच्छा दैट वाज उसका जवाब आया. यार वो 1920s में नहीं वो जो वाइंड करके फोर्ड गाड़ियां होती थी No, to be very honest, I think Asad Shafiq would be a बोले Mazda 3. यार ज़ैनब रिजवी की फेवरेट कार मज़दा को आप असद शफीक बना Asad Shafiq है 1200 में कौमी हीरो है हमारा. 261 for It's a 9. car that can play in all conditions but उसमें पेट्रोल खत्म हो But जाता it's है nothing special, yeah. उसकी टंकी छोटी है Naseem Shah coming out of bat. Here comes AB Naseem यार FX तो इतनी resilient गाड़ी. यार FX is like a tank यार So what are you gonna do with your blank check for the vehicle? blank check अच्छा I don't like those splashy McLarens or Exactly. This is why I just like a nice इसमें white कह रहा हूँ, Jaguar बस ठीक है Aston Martin जो है Vanquish तो फिर तो आप elite हो गए हो ना यार Jaguar भी elite है यार not bad but hyper elite the नहीं thing है about the Aston Martin is if you know you know. You know? It doesn't demand attention. It just demands respect. बेचारा बास यार उसने थ्रो भी तो जोर था डोंट लाइक जैग्स इंडियन यार उन्होंने थोड़ी इन्वेंट की है वो तो बस कागजात में वो ओन करते जिम्मी हैं देख नहीं रहा उसको. जिम्मी की 3 विकेटें खाई हैं. सीरियसली यार क्या टीम है ये
Even when, especially when the guy is nearing 6 bloody 100 wickets. और उसको अगला मैच पता नहीं कोई 4 महीने बाद मिलेगा. So he's desperate to get it done this summer. Down the leg side for wide. 595 पे I believe अभी इस वक्त. हाँ. Honda City कौन होगा? And Iqbal is not happy with his car. यार Mr. Arsenal का comment. Shoaib will be a Hummer limo. उस कार के घोड़े नहीं है. घोड़ों का What पानी. does that even mean? मैं देखा जब टेस्ट का डे खत्म होने वाला था ना तो कमेंट्री और कमेंट्स जो है आउट हो जाती है. कंप्लीटली आउट हो जाते हैं. मार left, यार well अजहर left. क्या सोच रहा है यार. Does anyone else feel Strauss to be लगान type? Definitely मुझे लगता है इसके परदादे तो अच्छा असरार 100% ईस्ट असरार इंडिया की- कंपनी में थे. असरार की डिस्प्ले पिक्चर जो है वो जुनून है. नाइस. यार he has No taste. Dodge SRT He's a man of fans. taste. यार एक टाइम में when I was in university I used to like the Dodge SRT. वो जो चार्जर है वो. जी जी. चैलेंजर भी SRT में आती है. हाँ राइट राइट राइट. तो I don't know which one you're नहीं talking तो about. यार अगर ब्लैंक चेक है तो कोई बड़े ख्वाब भी देखने चाहिए ना. मैं तो कहा है मेरी Aston 261 for 9. But realistically, I think the Model S is a good option. Beautiful on drive. That is a What a gorgeous shot. From Mazzarelli, you'll get 4 for it. यार जिमी से फुल स्प्रिंट भी लगवा रहे हैं. कितने बदजौक जा भी 3 कैच ड्रॉप कर. 3 कैच छोड़ने के बाद फुल स्प्रिंट भी मारी बेचारे ने. जैनविस भी कह रहे हैं यार आप मुझे क्रेडिट तो दें. प्लेयर्स को कार से कंपेयर करने का आइडिया मैंने सच आ गया. जबरदस्त जबरदस्त. ये लुक एट ब्रॉड वांट्स टू गेट टू 600 बिफोर एंडरसन. शाहीन फिर क्या होगा? शाहीन क्या होगा फिर? शाहीन Porsche. I think it'd be a Porsche. Porsche. नहीं अभी वो उस हाइट तक पहुंचा नहीं है. नहीं नहीं. That's flashy. शाहीन क्लासी है. 265 for 9. इन सारे अच्छा आपने वो देखी है जो ड्रेक की नई म्यूजिक वीडियो में भी थी. The Maybach 6. The Mercedes Maybach 6. Man, that is a gorgeous car. यार अब ये कलम करेंगे. ये हाँ. रेलू कटा दिया. Broad wants to get 600 for Anderson. ये आया बेचारी. ये जान के ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज ये लैंकिशर के प्लेयर के खिलाफ साजिश है. रवीश भाई ने मुझे कहा था रवीश भाई ने मुझे कहा था आप लंदन से हो तो इधर क्या कर रहे हो. वापस जाओ लंदन. नाइस. Shaheen is a Nissan GTR. नहीं यार इस तरह नहीं है वो. I think Shoaib and stuff would be like a GTR because they're loud and Shaheen is a very classy gent. I think इतनी जो Shaheen की जो quietness है ना off the field, I think Shaheen would be a very fast electric car. 266 for 9. Shoaib वगैरह होंगे इंजन बड़े V8 वाले लोग V12 वाले लोग. Yeah. Iqbal could also be a P100D actually. 266 for 9. Oh yeah, Naseem Shah. Yeah, that's a good pick. Unreleased. Ferrari yaar Shoaib bhai hain. Loud, audacious, red, powerful. Let me see what that says. Kachnar. Oh, अच्छा खाने की बात कर रहे हैं. खाने की बात कल होगी. Yasir Shah, very reliable, not flashy really, but gets the job done constantly. Doesn't really work in Australia. Yeah, I think it would be maybe a Lexus LS300. Ferrari high maintenance 266 for 9. उसका फेंडर ही कोई 4,000 से 5,000 dirham का आता है.
Yeah, we're having issues with Khwaja's mic again. Censorship. All right. The mics have been exchanged. Imran Khan is F1. Mike is Comm Hero today. ये कौन सा कलोन लगाया किसी ने? वसीम भाई के हैं? They better be. पी के? वसीम नाइट्रस यार क्यों आप हमें कैंसिल करवाएंगे इंसाफियों से प्लीज. नो एलिगेशंस अगेंस्ट आवर ग्रेट प्रधानमंत्री. 266 for 9, the 91st over with the new ball. James Anderson just has been played down to point once again. Oh yeah. Coco Chanel कौन सा है? It's a Mont Blanc. अच्छा अच्छा अच्छा. वैसे कलोन्स की बात की है तो आपके फेवरेट कलोन्स कौन से हैं? यार आई एम वेरी अनएजुकेटेड अबाउट दिस. मुझे सिर्फ गिफ्ट मिलते हैं और मैं लगा लेता हूँ. अच्छा. अहमद हसन जो है ना हमारे तीसरे कमेंटेटर, वो अफिशिएनाडो हैं प्रॉपर. अच्छा अच्छा. मतलब वो रिफर्बिश वो लेके आते हैं प्रॉपर, उनको रिसर्च भी करते हैं, ऑल ऑफ दैट. रिसर्च भी करते हैं? या ही नोज हिज शिट अबाउट दिस. But I got one last year, this Mont Blanc that I just, and I have to say, in my life, I've not had a better cologne. Oh. Or नाम क्या है उसका? I don't know. It's just which one is it? I mean, is it Mont Blanc or Chanel? I don't know. Chanel का मुझे तो बिल्कुल brand भी नहीं पता होते. But I'm not a big brand art. Yeah, this perfume stuff guy. But this is in Portrait of a Lady by Frédéric Mallet. ये कौन सा है? ये चेक करना पड़ेगा. 90. वो हमारा वही होता है कूल वाटर और ये ट्रैकर लगा दें. कूल वाटर मैं रखता हूँ गाड़ी में वैसे. It's a good one. Of course, यार. It's OG. लेकिन for sweat I found that Tommy का जो पुराना होता था, it was really good. It's a Chanel. Chanel का है. अच्छा. Which one is it? The other Ahmed is off duty today. He'll be with us tomorrow. It's blue, this Chanel. पर ख्वाजा ये मतलब मैंने मुझे गिफ्ट मिला, and then I went and checked how much it was, and I was like, I am buying it myself. कितने का था? 550 dirham. ओह. और 50 ml या 100 ml. तो आप करामा में जाके वो उनसे लेना, वो जो यार पर वो सही चीज़ थोड़ी, वो सही चीज़ थोड़ी होती है वो. कूल वाटर से बस हो गई अभी. एक बार करें टॉम फोर्ड ऊद वुड इज माय गो टू. But that again is a very expensive one. अच्छा, very expensive. CK1 तो of course legendary है यार. Actually Aqua DG अहमद हसन ने मुझे कल लिस्ट दी थी of list of perfumes that are like affordable for everyday use. And I don't, अभी मैंने यार एक Hermes का बहुत जबरदस्त है. Hermes. It's a very very nice one. सरफराज जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी उसके बहुत बड़े फैन हैं. अच्छा नहीं, but this one the Chanel one is very very good for me. Maison Français ये कितने यार कितने लेटर मारे हैं माजिद भाई. आप भी मुझे लगता है फुल टाइम कॉलोनिये हैं. ऊद फॉर ग्रेटनेस was अच्छा. उमर अब्दुल्ला का एक कमेंट आया काफी लंबा चौड़ा. Let's take a look at that. Hold away, what a shot by us. और अभी हमारे जो जी अफजल मिडल हैं, एक तो हमारी अहमद जूनियर है, मैं हूँ, असद जो बीच वाले हैं लिवरपूल के, वो एक कलोन लगा के गए हैं जिसने अपार्टमेंट में धमाका कर दिया है. We're trying to find which one it is. तो फोन कर लो आपका ही भाई. भाई. फोन कर रहे हैं अभी हम उनको. फोन अ फ्रेंड. Oud Ispahan by Dior. Oh, that's nice. Yeah, that's Versace amazing Eros is a little cheap. The only thing about Oud here. मुसाद यार बेबी पाउडर लगाओ. Yes, Mr. Arsenal का तुम्हारे लिए. Ted Hermes. Yes, B Iqbal. That's a really good one. Azhar walking down the pitch to Jimmy. मुझे लगता है अब ज़्यादा करीब आ गए तो fisticuffs भी हो जाएंगे. हाँ. इधर एक्सपेंसिव होंगे, बाकी दुनिया में एक्सपेंसिव नहीं होंगे. अच्छा अच्छा. तो आप तो कह रहे हो जैसे 2 कतरी बचे हुए थे उसके. यार PSG का मैच देखने गया है, मेरा Chanel ले गया है. ओह कोई तरीका होता है. What a I'm having a shot. boss. Hello. Oh, it's Azarelli. Sorry. अब गया वो. सरोज कह रहे हैं भाई हम तो मस्जिद के बाहर जो इत्र मिलते हैं वो खरीद. Yves Saint Laurent pour Rome says Ibad. Okay, that's very nice. YSL तो
414 वो तो हमारा ये ना रमीज भाई का वसीम भाई शाउट आउट वसीम भाई, हम आपकी इतनी पब्लिसिटी करें आपके क्लोन की, आप हमें कम से कम यार, ये तो इतना स्ट्रांग है, मेरी जबान पे इसका टेस्ट आ रहा है। इट्स असाद, इसका कितना ज्यादा लगाया है इसको इसने एक लगाना होता है, आई एम श्योर उसने जो लगाया होगा ना। यार? किधर देखने गया वो फाइनल? पता नहीं, इधर ही किसी कैफे में क्या होगा। अबे यार, तो घर पे बैठ के देख लो इससे अच्छा। वैसे वी शुड डू द, मैंने आपको पहली भी आपको suggest मेरी किया तो था। आज हाथ में आई हुई है 269 for 9। वैसे अफरीदी वाला अच्छा है वसीम भाई वाले से, वाओ। टू बी ऑनेस्ट वसीम भाई के दोनों परफ्यूम जो थे, बॉटल्स बहुत अच्छी थी, हाँ द स्मेल वाज टेरिबल। रियली? मैं कोई खास नहीं था। अच्छा अच्छा। और टेस्ट मैच वाला था ऐसा जिस तरह कोई बबल गम का फ्लेवर हो, ऐसा कुछ हो। Jofra Archer into the attack, 269 for 9 पाकिस्तान ने। There it is. Oh, there it is. इसको खोलो जरा, छिड़को, नहीं खत्म हो गया आई थिंक ये। कुछ तो हो गया। हाँ लगाओ फिर। लगाओ भाई। We're testing the 414 from Wazim Bhai. We're not getting paid to do this. बहुत टिपिकल स्मेल है, है बहुत ना? ही टिपिकल स्मेल है। It's like yeah, It's nothing special. I don't like बुरा it. नहीं है वैसे, बस ठीक है यार। ठीक है, बस ठीक ही है। I got it because of the bottle. सीन भी बनी हुई है, रिवर्स स्विंग भी होगी। इट विल रिवर्स स्विंग द मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। वैसे ये कितने का बिकता है? महंगा तो नहीं होगा? I got it as a gift. ज़रा गूगल करो इसका प्राइस क्या है इंटर्न, हमारे 414 और 503 की। सिल्क मूड बाय MFK, दैट्स नाइस। जकरिया कह रहे हैं अजहर तो पागल ही हो गया, क्या बात है भाई, और पागल हो जाए। What a shot! Smacked him, slapped him across the face to mid wicket for 4. He's taking no prisoners tonight. अनबिलीवेबल स्टफ यार। ये अजहर अली है, ये किधर था इतने साल? 10 साल से तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वेयर वाज दिस अजहर अली? ब्यूटीफुल शॉट, अ फ्रंट फुट पुल, जस्ट स्मैशेस इट थ्रू मिड विकेट, टू शॉर्ट, not enough juice in the pitch, and look at that, bang, it goes through mid wicket for 4. Beautiful shot by Azhar यार, too good. लोन वुल्फ कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द डिओड्रेंट्स इन पाकिस्तान आर फेक। से हाँ यार, इधर भी बहुत बड़ा इशू है इनफैक्ट। ये जो फेक होते हैं, ये जो 110 वाली दुकानें नहीं होती, हर चीज़ 1 दिरहम, 5 दिरहम, 10 दिरहम, उनमें भी ये सारा फेक माल, टूथपेस्ट और डिओड्रेंट्स और ये माउथ वॉश वगैरह सब नकली होती हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है इधर भी होती है नकली। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर यार, बहुत ज़्यादा। Azhar Ali on a mission to prove himself. Mission accomplished, I would say so far. वसीम भाई 414 कितने का? ज़रा इंटर्न ज़रा जल्दी से गूगल करके हमें बताएं। आप सीधा उनके वेबसाइट आद पे पहुंच गए। जे डॉट के साथ बनाया है इन्होंने यार, के ये होती है पार्टनरशिप। ओह दैट कुड बी, ओह नो, इनसाइड एज, बच गया नसीम शाह। यार नसीम शाह बैटिंग यार थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। 3,000 रुपए का है कह रहे हैं बाद, यार हद हो गई यार, मिलता ही नहीं है। देखो यार वसीम भाई का जादू ही ऐसा है। बट अच्छा, तो इतने वंडो है, वंडो वाले सस्ते ही हैं यार, महंगे नहीं है वैसे। हाँ, कूल वाटर से तो सस्ता ही है, 99 का मिल जाता है मुझे लगता है कूल वाटर आजकल। नसीम शाह थोड़ी कटवट मार यार, बट 273 for 9, respecting his captain, no stupid shots, but he seems to be enjoying himself। काफ़ी बतीसी निकली हुई है बाहर। और नसीम शाह के पास भी यार स्पॉन्सर है, बैट स्पॉन्सर, क्या बात है। माजिद हुसैन कहते this was never a 270 odd for 9 pitch. It wasn't, that's very true, but we were what, about 30 for 4, and after that recovering and getting back into the game is not such a bad position, to be quite honest. And of course England did make 500 odd in their innings. Well left again, just beaten in fact, but Naseem is enjoying himself, a young guy, only 17, on his first tour of England. There'll be plenty more to come. And Broad has gone off the pitch. Kya hua bichara? He looks quite down and out, seems to be limping a bit. I think when he jammed his wrist maybe something happened. Ibad is saying 502 for Herbie hai. वाह भाई, वसीम भाई is वसीम quite भाई तो inclusive. देख लो ना, All inclusive. जिमी की तपी शक्ल देख के बहुत मज़ा आ रहा है। इवन इफ वी आर लूजिंग 300 ऑन, यार 27 रन और करने हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। वेल लेफ्ट, वेल बीट इन फैक्ट। जेम्स एंडरसन, फ्रस्ट्रेटिंग डे फॉर हिम, started off so well but no dice after that. और स्टुअर्ट ब्रॉड भी इन द वॉर्स, बिट ऑफ अ रिस्ट इंजरी, बॉल भी लगी है, कैच भी छूटा है, and actually he's struggling with his pinky finger on his right hand.
रिजवान भी यार गंदा ही आउट हुआ है, स्ट्रैंगल डाउन द लेग साइड, वेरी लूज वे टू, वेरी सिली वे टू गेट आउट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. लेकिन फिर भी फाइट तो अच्छी थी. इज दैट द बोथ? ओह, बीटन वंस अगेन. भाई विकेटों पे डालो बॉल, तुम क्या ऑफ स्टंप खिला रहे हो बेचारे नंबर 11 को. बट ही इज हैंगिंग इन देयर. यार रमीज हसन कह रहे इकरारुल हसन का भी है परफ्यूम, देख लो यार. यार हम चेंज ऑफ पेस ही एक परफ्यूम लॉन्च कर लेते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल भर के. नशा तो देगी कम से कम यार. हर तीसरे चौथे पांडे ने अपना परफ्यूम निकाला हुआ है. हद हो गई है यार. दैट्स रिडिकुलस. और मैं तो हैरान हूँ, ऐसे लोगों की फ़ैन फॉलोइंग क्या है यार. इकरारुल हसन, फाहद मुस्तफ़ा, वकार ज़का, हद हो गई है यार. Edged and finally taken. He's got his fifth at long last. Pakistan have been bowled out for 273, trailing by 310. Azhar is undefeated at 141. Naseem Shah gone for a duck. That's the 29th 5-wicket haul for James Anderson in 156 tests. His third versus Pakistan. And what's going on? Are they going to bat? Are they going to make us follow on? Regardless, we're going to take a bit of a break. We finally need to take a breather. Yes, and we'll be back absolutely. after the innings break. We'll be back after a few minutes as soon as we have Stay some news. tuned.